How very polite of Devi there. Let's get the results of the MasterCard fan poll in. Earlier on, we asked you to pick an early frontrunner for the MVP bracelet. They did in Swiss. You're coming in at an advantage against the teams that are only now showing up to a stage. The majority of these one seeds have rookies, some are even all rookies showing up to the stage. With how loud this crowd has been, मैं जो देख रहा था स्ट्रीम वो लाइव नहीं कर रखा था मैंने. to play against a team with a style like Paper does really seem to favor them. I think the style that Paper X play, where they're making plays all the time, and then the crowd are super loud as well. कॉन्डम और चीज़ों को पूछे थे ना पिछली बार. Team here so far have been Paper X, and like you heard Devi say it in the interview with Jen that they've already been playing the Swiss stage, so they have more experience than Furia right now. I mean, if you total up the amount of international appearances by the player count on Paper X, भाई तूने वो ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू देखा क्या? I mean, let's hear from one of the MVP. नहीं मैंने कुछ नहीं देखा. यार मैं पता है मैं छोड़ दिया सब कुछ फॉलो करना. कोई पॉइंट नहीं है भाई. हाँ मेरे को तो मजा तो आ रहा है भाई. अरे मतलब हाँ लेकिन पता है क्या दिक्कत है क्योंकि इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होता है ना मेरे को नहीं समझ में आता किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं. यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीथिंग. एआई जनरेटेड बहुत सारी चीजें है ना भाई. मिसाइल वीडियो आ रही है जनरेटेड में क्या बहन चोद इससे बढ़िया मैं एआई जनरेटेड बहन चोद कुछ अच्छा ही देख लूं. मैं कोई लड़की को देख लूं जनरेटेड. ठीक है. अबे नहीं साला मैं एक देख रहा था कि ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर ने भंजू एक इंटरव्यू दिया भाई. उसमें सीधा बोला भंजूद वी आर वेटिंग फॉर अमेरिका टू अटैक ऑन ग्राउंड. आने दे भंजूद. सीधा बोला उसने वी आर विलिंग टू कन्फ्रंट देम. क्योंकि अभी भाई वो ऐसे अभी इजराइल से कोई वीडियो नहीं बाहर आ रही ना कि उनके ऊपर क्या अटैक हुआ है, कैसे हुआ है, क्या नहीं हुआ है. राइट. हाँ जो कुछ भी आ रहा है वो मैं भी इससे पहले एक बंदे की वीडियो देख रहा था पता नहीं क्या नाम है उसका वो भी. पर मेरे को पता क्या लगता है ठीक है नैरेटिव ना ये इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव. कि एक पार्टी किसी पर अटैक कर रहा है उसने नैरेटिव बिठा लिया तो पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो गई. इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव. इट्स नॉट अबाउट मैप सिलेक्शन का. इट्स नॉट अबाउट कि हु इज राइट और रॉन्ग. भाई कोई भी राइट नहीं है. सब कुछ ग्रे है. और सबको अपना वो बिठाना है नैरेटिव. तो वह उस केस में ना फिर वही है. क्या बोल रहा था मैं भूल गया. शिट. मेरे को मैं भी मैप पिक ही देख रहा हूं. हां मैं भूल गया. मैं पिक देखने लग गया. Breeze side on breeze for PRX. भाई आर्टजीन को निकाला गया था बहनचोद इससे एमआईवीआर से. अभी क्या भाई क्या खतरनाक खेल रहा है मदरचोद. हां आर्टिजन हाँ उसमें था ना पहले. एमआईवीआर में था. हाँ एमआईवीआर में था. Corrode, okay. Let's ban for Furia Pro or Split. We ban Pro. Pro, so Split is the cider. क्या बोला वो क्या हुआ समझ नहीं आया मेरे को. क्या जोक है. नहीं उनको पता था कि इनका पर्ल अच्छा है ना पेपर एक्स का तो नहीं खेल सकते. तो इन्होंने करोड़ जब बैन किया जिसके ऊपर फ्यूरिया थोड़ी अच्छी थी तो इन्होंने तुरंत पर्ल बैन किया. अच्छा हाँ तुरंत दूसरे को देख के हंसने लग गए. और दोनों जिसमें अच्छे हैं स्प्लिट पे उन्होंने वही पिक किया तो पता नहीं चलेगा कि स्प्लिट पे क्या होने वाला है. Let's ban for Furia Pro or Split. We ban Pro. Pro, so Split is the cider. तेरा टाइम क्या चल रहा है? Side on Split for PRX. मैं थोड़ा पीछे करके देख रहा था. Defense, okay, that's it. Good luck, have fun. फिर भी क्या टाइम चल रहा है तेरे यहाँ पे? और लाइव करता हूँ अभी. लाइव कर रहा हूँ अभी 1 मिनट 40 सेकंड. Either you just giga chat, you थोड़ा pick पीछे what you हूँगा. want, you say we're just as good as Paper X and you go हाँ for it. मेरा Or 131, you take your prep time, 129, you come up with 28, specific counters that you try and throw मैं a स्लिगी का curveball. For स्ट्रीम example, देख if रहा they हूँ. had picked the Corrode, which we haven't seen from them So yet. this is the Giga Chat This is the Giga Chat approach. Okay. They're taking Paper X to maps they are good at. They're saying we're just as good as you. And going to try and beat them there, which is a pretty tough sell. That is साला वो difficult. स्लिगी It भी is बोल रहा very है कि difficult. ये दोनों Well, के let's have a look टीम at the के time मैप पिक्स predictions for सेम है. today. We'll see समझ रहा है where तू? we thought the games were going.
तो साला पता one नहीं believer in Furia and a mixed bag for the second, but only two. सब बोल रहे believers in पेपर जीतेगा Channel मैच। I think that वो surprises साइड शो का me. देखना रिकॉर्ड Honestly, देख I think Channel Mates 10-0 are in a pretty अच्छा, good ये इनके matchup prediction against के वो हैं? Nongshim. Like they've हाँ। found their How many? form Oh damn! तो individually. क्या था उसका? I think stylistically Paper they X- figured out how to 10-0 था। counter Channel Mates. दूसरा कौन सा था? नोंगशिम। Good matchup. अबे सिर्फ दो लोग को M8 लिए? Figure out how to counter Nongshim in that game. First Damn, game, they- वही बोल रहा हूँ नॉन्गशिम Probably they know not something surprised that to we see don't know. Paper X is the heavy favorites. Mimi, would you believe मैं that they बोला ना are भाई that नॉन्गशिम heavily खतरनाक है favored? भाई I would. I agree with that. And just listen to this crowd. Yeah, The majority of these Furia players, first time तो अपना आवाज बढ़ाना थोड़ा। stepping on a stage this big. क्या तो अपना आवाज बढ़ाना थोड़ा। Huge test for some of हो these ज्यादा आवाज आ players रहा है क्या with तेरे को? less नहीं नहीं बढ़ा, experience. इंक्रीज कर। We've got teams with confidence born of experience going up against कम आ रहा है those ना? yet to be humbled. मतलब मैं तेरा फुल कर रखा है। It's time for मेरा खुद का playoffs. आवाज कम आ रहा है तेरे को Crowd is hungry and we मैंने are too. स्ट्रीम इसका भी स्ट्रीम में देख रहा ना मैं, Day तो 6 स्ट्रीम of बहुत ज्यादा लाउड हो रही है, तो Master उसके हिसाब से तेरा आवाज कम जा रहा है, right now. कम आ रहा है मेरे को। अच्छा 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 नहीं आवाज तो फुल है यार मेरा अच्छा तो मैं स्ट्रीम का ही कम करता हूँ फिर, और क्या। नहीं कोई ना ठीक है ठीक है। अपन इतने बड़े थोड़ी स्ट्रीमर है बहन। हाँ नहीं मेरे को नहीं आ रहा, मैं स्ट्रीम पे नहीं देख रहा, मैं स्ट्रीम का तो मैंने चेक भी नहीं किया आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं आ रहा। ये इसको पूछ साला, मैं रुक मैं इसको पूछता हूँ किधर है इनविक्सिया। Bienvenidos a los playoffs de VCT Easy. Santiago. और कॉन्डम तो पूछता हूँ An undefeated team takes the stage and yet somehow they still feel like underdogs. Even when Furia win, people do not trust them. Does that just speak to the quality of the team opposite? This is the first time that this Furia org has found serious success in the VCT League. A team that they've cobbled together in the off-season full of just players from random मजा तो है teams, बहन चोद, all आज of them सब sharing खतरनाक one मुझे लगा common कल है trait पेपर एक्स, of पता है hunger to get into a मुझे लगा कल ज्यादा मजा आएगा, पर मैं Valorant fighting for क्योंकि years ये to नीचे be दिखा रहा था मेरे को। real challengers, grinders like Nerve, a player like a Lim, dinner who just बनाना है, really made a अच्छा, name ठीक for है, ठीक है। himself in that challengers Dinner league तो मेरे को last बनाना है। year. It's just a अच्छा इनका वो चल रहा होगा ना, crazy pull of तारीख। players from all different teams, and yet somehow Fast खुल they just रहेंगे have ना। this beautiful and हाँ, हाँ। chemistry. A culmination of years of work for these Furia players. 3 of them have been playing since the beginning of the game, never having an opportunity to play at this level. But their very first opponent, the squad that has shut down young teams before, sent #1 seeds to the grave, who does this pretty much every day. You just saw it there in the HyperX map select. Our first destination is going to be Haven. Wyatt, you said that this was probably going to be the most one-sided map of the series. The other two, a little more even. Furia have only played Haven once. They are 1-0 on it. What's the reason for you thinking it's going to be one-sided? It has a lot to do with Paper Rex just showing a level of excellence here. They brought this Phoenix comp, into the fold in 2026, which by the numbers has also been very successful against the anti-meta comp, rather. Furia, on the other hand, they are playing the very standard meta comp with the Neon. It's what Gen G introduced last year. And one thing I do want to pull from them is that we spoke about Koala Noob playing the Omen versus some of the other agents like Yoru. This is one where he was playing the Omen, and it's going to be hard for him to find as much success opping as if he were on the Yoru. This is where I'm hoping to see the culmination of the time off for Furia coming together. You know what comp Paper X plays. You even seen other teams like G2 who stole this. They went up against T1. T1 tried that ISO comp to counter and find a solution.
They dominated G2 at the start of that game, barely let it slip in the second half. I think this is Furia's chance to show us that they can counter-strat at this level. Do you want to see anti-stratting, or do you want to see a compositional change? What do you think the best way for Furia to have used this time off is? I would not be mad at a compositional change coming into this at all, because Paper Rex extremely experienced against this set meta comp. I would not be mad at them leaning into something a little bit more unexpected and going for the the agent picks. Alam's still going to be a Neon, Koala Noob on the Omen, so they haven't opted to switch up anything. It's just going to be about playing at an extremely high fundamental level with this classic comp at the moment. A lot of pressure on Alam for this first match. In these solo duelist maps, Furia relies so much on him to break through and create space. And I think that's especially important against a team like Paper X with a chamber. नहीं जब कभी कोई मेरे को Well, on a normal show day, I'll be sat there in the casting booth, smiling, waiting for Golden Boy. स्ट्रीम लैब से आ रही है पर किस चीज की आ रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा. To the goats. So let's go over to Pansy and Hyde Park to cover Furia Paper Rex. I think he wrote that throw to us, because that seemed a little bespoke there, but I don't want to undersell how highly anticipated this matchup is going to be. I mean, you talk about a tough break, a tough start. Well, I don't think that's a tough opponent. They don't get much harder than this. To come into a stage like this, cold, versus a Paper X that is just hot to the touch. Yes. Absolutely insane form, and I absolutely agree with Wyatt. In the form that you would say is leaning towards being the tournament favorite. Team to beat. Absolutely. अरे फर्जी ये टाइम कुछ नया एजेंट ये करने वाले हैं क्या मास्टर सैंटियागो में नहीं आइडिया भाई मेरे को हाँ नहीं आइडिया मेरे को What's catching your eye now? Again, the fact that we start here, Furia obviously had a chance to sit back and watch the games, but what do you learn by watching them do their thing? Furia into the blender here in map 1, the way Paper X performed previously. Slow start here, tempered, at least. Jing, no surprise to see him get some progress early on. Looks like Paper X will look to explore towards, see with the Prowler. Maybe draw a play up. We'll keep Nerve interested, and actually it's got you curious as well. And again, for Furia, I want to see how they kind of hit the stage here, because you kind of want to get a temperature check yourself, how it feels. It's a very different environment. You want to start feeling the game out early if they want to be really competitive here. They are a team that's got a lot of attention and for valid reasons. I mean, their journey is hard to not enjoy, but Paper X showing a little bit of temperance here. Very patient. Crazy है भाई. Very slow on the approach here, but it has also planted the seed of doubt once more. And 3 players are rotated towards C, and it's just Arsen once more now with no util. And the paranoia actually does catch him too, so tries to play it forward. Overwhelmed Paper X. They're in the door, and as said, they caused that rotation so early with just simple silence causing that. So now 4 players on the way back through. Koala Noob still has the paranoia, a couple shot darts. You've got Alam still with a little bit of utility. This is not out of the realms of reality. It's just going to be a man to the good for Paper X and times on their side. Slow down here. Paranoia is now placed in. But crazy भाई. Jing's going to shut it down. Divide to follow up. Jing. It's just so good. Those pressure point swings are stunning. Paper X. यार इनका मैप पूल बहुत इनका एजेंट पूल बहुत अच्छा है यार. बहुत वर्सेटाइल है भाई. कुछ भी खेल लेते हैं यार ये. हाँ ना यार बेंचुद. Paranoia takes forever to be posted here. Fortunately, it just allows Paper X to maintain this hold. The fans back in form today, as you can already hear. It is such a fun concept, isn't it, looking at these two? You've got someone who's team-wise a superstar through and through, and Paper X have been absolutely on the money. An unknown quantity, obviously, regionally an exceptional performance, but it's that transition. क्लासिक से उड़ा है भाई 2 लोगों को बेंचो. That's what we're talking about. हाँ मैं थोड़ा लेट हूँ शायद.
taking away something, taking away Forsaken. इतने long range में बहनचोद. वही तो classic बहनचोद classic. What? Explain it to PaperX. They're baffled too. Okay, and now अभी 5v3 है बहनचोद. वो भी save round में बहनचोद. Doable अब तो. Okay, so PaperX cautiously and carefully clearing through sight, doing the protocols because again they don't know quite what they're in for. Now with feeling no pressure back or fight back, you start looking across the rest of the map. But for Furia, you're gonna have to really stay together to trade in, try and make something work here with again just those weaker weapons. Now at least we'll be aware that there's a player coming towards the flank, but he's well invested yet. They're trying to get towards these weapons. It's a Bulldog down, Divine 2 here. Oh! He's going up for the 4. It ain't pretty in the end, but it might get the job done. Divine removing threats. Nerve you and masterful, but it doesn't matter. Nikala bhai, Nikala. Divine, somebody's already shown us his form here in Santiago. हमेशा Divine होता है बहनचोद. God, that was a chance. हाँ जो बताता है बहन कलौड़ा. This. Again, you understand it to an extent. They want to get that upgrade. They want to try and build something, but again, Divide, big game player. Round 3, Jing already has his ultimate online. Divide is 2 away from the tour de force. Great progress early on here for PaperX. And a big ultimate to swing. Divide को पता था कि guns लेने आएंगे ना बहनचोद. They're up for the fight. No rest, no falling away. सही खेला भाई. Little bit of roommate towards C, but I like the reaction already slipping back CT, playing for the refight, but Jing, the heads out, Zin gets a bit of safety, allows for that spike now to filter up forward. One will come through here. And still got the ultimate to play with. Jing's going to pop it here, go aggressive. अरे भाई भाई Makes भाई. perfect sense, going to work in. Jing ने क्या मारा भाई? Very indicative, but Furia aware of the possibility, playing super deep, making it hard for him to find value. Now they got to go though. If they want a chance in this one, they've got to start building fast. Paranoia shallow. It's going to be Jing on the corner. Gets cleared. Koala Noob, Furia. Opening up possibilities. There's something left in a 1v4. Nice. Okay. Easy now. Don't give Oh. them a chance. Head पड़ा था उसे. Oh my God. कितना close था. How often have we said the team never tell me the odds because they make it happen so often. This time Furia make it out. अरे भाई 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 crazy भाई अभी देख. That was a bonus and they're barely alive. That was a bonus. अच्छा तू late है क्या? Sorry sorry. मैं देखा वो something वाला ना. Start man. खतरनाक मारा भाई. One tap पे one tap मारा भाई बहनचोद उसने. No, yeah, absolutely. We were criticizing. तेरा क्या चल रहा है? Timing बता लोड़े. मेरा 2. What he's capable of. मेरा 39, 38, 37, Forsaken 36. in particular. Envy alongside that. Envy. Finding insane form. Huge X Factor player. I just didn't see coming in the way he has been. You know what I mean? Envy's been nuts to watch. I don't know. He posted up on this. Does have 3 players towards the A site, so right place for Furia. You in support. See how that contact falls down. Something. First man in, and he's sharp. Clean today. Gonna open up the account in this round. That's a brave Aldro, and they are close by. That's not what you want to be seeing. But actually a trade out. They've slowed the roll just a touch, but not for long. Oh, no, still here. He's looking to contest this. I mean, that's a brave attempt. And bravery gives you nothing in this. Koala Noob dead and the site available. Furia trying to be aggressive, trying to be involved. I like it, but it's just not being rewarded. Still now. That's pretty cool. I wonder if it's because of their own stuff or it's because someone didn't see from Furia. Seeing Maybe Artsin when they on the hit up judge. towards side, right, then one back this side. They want Still smokes. curious. They can't hide in the smokes. Gonna have to try and hold on to these rifles here. Welcome to the Right, stage. have you ever seen from Furia? Not going to find any fans early on here in Haven. 5 alive for PaperX. Yeah, I mean, it's a little That's change. quietly alongside that. Look at something's If they've noticed something, Devi's got the tour de force. ready for the rounds that we've seen they do the smoke. They're already building up a bit of a buffer here early on. This was a big difference maker on that. Again, it's no surprises to see Furia saving this situation. Yeah, makes sense. It's a good start. It's good use of PaperX, obviously. We get 3,000 on this one, and it takes any damage like pretty much one of the best starts they can have. Keeps the reset of the money as well. I don't want to say the start anything, but it felt like it kind of broke down that side hold, right? Koala Noob left with. Well, Does he think he should have backed away earlier at this point? definitely. And you get the confirmation effectively on the drone, and the fact that Jing's so happy to come up and try and flash onto that, you know it's invested.
Unfortunately, not many players that can go toe-to-toe with the front line of PaperX when they're hitting your sight like that and get away unscathed. Oh! Double judge. Double judge. This is madness, man. Stupid shots. This is ridiculous. Did they see anything? I guess just maybe the... Maybe ahead of the smoke dropper. Yeah. It ain't much. The fact that EU gets caught, I mean, look where the death marker is. It's just a pre-fire onto that angle as well. Yeah, maybe the first through the smoke. But for PaperX on the attack now, they can kind of try and play the rotation game, right? Look at the paranoia of Artsy in the setup. Everything, I'm tucked on it. Does it work? The smoke goes in towards Garage. That's just a bit of a feint. Those players a little later. So they're going to note the utility. They stick around for and it's now onto Can Artson try and hold this back? The flood's coming. And you can see that front line is hard to deal with, but he's gone unchecked. Artson will be getting away with murder here. 30 seconds. When does he show his hand? Forsaken's already taken away Nerve. So Artson, the encouragement going to be coming in soon. They're looking for him though. They're still out and about here. Artson finds a body, drops it, gets a second. He held his nerve, but not long enough to deny Forsaken or PaperX. 4K here in the chaos from Forsaken. Didn't even with the C sent in here. Oh, it's just a pre-fire on the flash. Oh, God. Again, already Nerve. Crazy, boy, crazy. Hell of a fight towards C. Yeah. In these early rounds. And PaperX able to just smother the sight. Didn't even catch actually the reposition towards heaven there from Forsaken. 4-1 start here and still up against the ropes in terms of the finances on the side of Furia. That's why it's concerning as well, because there's a few here that you almost just have to let them slide. I do like the wicked thinking in setup. Lucky and a stinger to try and make a go of things here. Jing quietly, already back up to decent progress on this next ultimate. Chance here is to find even more. I mean, you look at that as well, Envy. They're close to a full house. Yeah, they really are. So, an implication of a set piece. Hard to check behind it just because of the walls. You've got Envy there, investing the Prowler too. All of these util pieces, but look where the spike's heading. Still being slippery about this. A very passive hold from EU, but again, he can't really deny much from here. Yeah, PaperX is starting to toy with the expectations, right? This util investment comes, so early on, drifting back and forth. Both sides of the map, and then a slower hit towards A. Yeah, they're able to manipulate the map really well. I think it's such an underselling when people talk about PaperX as just this W-based team, because you've seen it, even in a meta that feels like it's very favorable, they are playing with that tempo. They know how to harness it now, use it to their advantage in more ways than one. Oh, because that gear shift will come in, but they don't have to just ride it out the whole way. Envy. As soon as I got As soon as you play like this and the timer comes in, you can go back and play. Get that shot done soon, mate. Of course he is. Bit of a showman in the making. Indeed, mate. As Koala Noob gonna try and go down swinging. Great shots. Got some more. Nah, that's about all she wrote for that one. It's 5-1. This might be a shutdown. By the way, the worst thing that happens there is another kill happens, then the crowd starts cheering. So Nerve just has no idea. He's the main character. Right, scoreline early on. Expecting to see a timeout coming out of this, just to take stock of the situation. Be a crucial buy round here. Was that a smile from Alex? Like a very careful... I didn't catch it. And I wasn't sure. I also don't believe you. You know what? Maybe I made it up. He's probably like, how dare you go for a knife at this point? You wasted so much time. Obviously coming into this, the Coinbase win condition here on the buy round for Furia. It's going to be based around this operator purchase.
Could be nice, but again, the timing when this hits, Mike, I'm worried about that full hand of ults sat with PaperX. They've already got a great tempo read, a really good approach here. I haven't seen Fury do enough to disrupt it yet. I feel like they're not quite in control of the map flow at all, very behind the curve in that. But as I said, maybe they can post up Alum and just be happy with that on an angle, on a line. But for PaperX, they've got tools to bully him off. Yeah, absolutely do. Jing, the ability to cut sightlines and then flash yourself into a site. It's a nightmare. Playing aggressively with his operator. Keyword being aggression. Seeing here a fairly committed angle from Alan. Found a couple of openers here previously on the back of Nerves, so maybe a chance. Speaking of those tools, there's the it's first. Immediately mitigated. Yeah, they are so well prepared here, PaperX. There's your answer. Furia. Is there depth? I'm just going to at least send Jing back. That's quite nice to have dealt with that in a very quick rotation. Trying to go step for step here. I was going to say, they're not going to get there quick enough. Smokes will go up. I'd be surprised to see PaperX commit to an engagement behind this. There's no way they're feeling as if they don't get too much for this, because it didn't take space anywhere else. The heavier side towards C. There wasn't really many people in I mean, position they to might not care anyway. actually capitalize because of Again, the ult usage is good. We've got a little bit of nice. Oh no, Forsaken. EU denies him for the audacity, but something still got sight. He's still got it safe. He's going back in for more. Nerve, great on the reaction. Brawl breaks out. Spray not good enough to die on Devi as Koala Noob, the one to get them across the line. That's the level it takes to get one round for Furia. It's only EU stepping to the side of this Nightfall that really rips this apart. I mean, something's TP as well up to Graffiti. See immediately the amount of pressure that's applied. The fact that he finds Jing early enough. Oh, he did actually get marked. He did. He just turned that great intuition. I thought he'd stepped out of it. Same. Even so, that's even more insane. Yeah. Let's go. Come on, bro. Come on. That's a level. Crazy round from EU. Gotta keep going. Good amount of ults starting to build for Furia as well. That took a big investment from PaperX. They had full hand. So to weather that storm from Furia is wild contextually. Just try and pop the smoke on C long again. If I get the Alva, I was hoping that I could get shot in. And the old side for Fury is in. Yes, we'll note the clone. Dude, Fury lose this round because of the Alva. They're in trouble. Bye-bye! Forsaken secures back sight for a second, but that's not going to stay for long as Koala Noob wants in, takes away the man with the spike, goes back in, still hungry for more. That's 3 kills. Something's trying to be on the back lines, but it's Divine's thing with Koala Noob. Where's the rest of Furia? Trying to fly in. It's on EU, the hero, on that previous round. He's one shot to this. Against Devi. And Devi hunting him down. EU won't be hunted today. Keeps their cool, and man, this is a quality game. Back-to-back rounds from EU. Dragging Furia. crazy man. Koala Noob, gotta say it. Oh yeah, no, now on that site. Beautiful hold from him. To clean up here. Again, Divide is still going to go hyper-aggressive in this situation. And gotta say as well, Koala Noob just looks like a different beast from when we, at least as EMEA casters, saw him last. I mean, so good. Again, you know, the sacrifices he made to go across to Europe. Again, so good to see him back in the set. Alan's going all the way down here. Okay, you're feeling brave. You feel like you want to turn those screws. Does he think about it? No, not yet. Forsaken should be teed up here. A gift from the gods, and it's taken. Forsaken making no mistakes with that. And a little bit of a misstep from Alan there. Slight misread on the situation, was conscious of a second person swinging onto that angle, but the A site wide open. Artsin has the lockdown, so we'll concede the space here in a 4v5. Unorthodox setup here towards A, but PaperX actually going to try and find a space in mid as well. But does this play in Devi? Oh, and look at this patience. Look at that discipline. That's pedigree now. But great from Nerve. This man's been a backbone of a player. Key kills. So they've got down to a 3v3. They are... PaperX on safe here. You can see Jing wants more. He wants to kind of maybe posture up a bit deeper. There's the lockdown. Anything in mind to help out with that?
I think Jing just might give up. Maybe send a red herring into the situation here. He's going to tuck in. Please check this corner. Someone must. No. But this is a stage game. This is a stage game. Jing, they check! They turn around and they check! Furia, heads up work in the end. Maybe with the help of a 6th man, but a 2v2 is not done yet. And there's Nerve again. This man is absolutely key, but something is so good. And Artsin down low, it's perfect for something. You can put your faith in that man today with a Red Bull clutch. Beautiful stuff here. Can Jing almost Daylight gets robbery. away with murder. But the penny drops. Able to clear him out here. And you're right, Nerve just looking so sharp in some of these situations. It's only really the HP that decides this in the end. And I don't want to hear any grumbling about crowd noise on that one. You live and die by the same sword, Paper X. They've loved this environment. It's how it goes. For now, Paper Exo still with a good standing in this. Great to see something starting to find that individual form as well. It's Furia now have to once again try and work this out. Pit will go up and again make that late round pivot towards A little more difficult. Broken by here from Furia, so going to respect this for Kuala Noob. He's found something. Oh, he's found Divide! This team, there is something about Furia unwilling to let even the smallest chances pass them by. 5v3. Last time it was Divide who kept it all in check for Paper X much earlier in this half. They're waiting. Nerve almost making it over now. He does have a Vandal. Kuala Noob the Phantom. Just evading that paranoia. The time's starting to tick here, Mike. They've got to get a move on. Really is. Chance here to maybe get something going from Garage, but the stun will come through. Paranoia to follow here. Jing has to find one. Arlen's gone down, no trade here. Jing gonna try and play this forward. Paper X dig in their heels, but dragged out of there by EU, by the Odin. And the patience from Furia was wild. Was waiting for Paper X to overstep here. Running the clock right down. The numbers just favoring them. On this C-site retake, again, EU just coming through with a clutch cleanup here. Again, Jing, this is a ballsy ultimate from him. Can respect it with how quickly they're able to farm it up. Come back into this now. Still 3 ults to play with on the side of Paper X. First time we're seeing a lesser buy from them. In the pinch a little bit here in round 11. Seems like the most direct we've seen Paper X really, who've been quite tricky. As Odsin going to be negated in this round, forced away quickly. Pace is there. Paper X, this is the gear shift we talk about, and that is why it's so dangerous. Jing slicing through at the same time. Something getting shoulder checked here. Maybe caught a little off guard, but now still goes in for more. I didn't realize he was going to commit to that. The C's fantastic, but a little too late. The paranoia primed, and they swing on it. EU again! Every time it feels like Paper X are on for something, he's taking it away. They're reading the aggression from Paper X, and Forsaken getting hunted down! Kuala Noob, the apex predator today, as Furia pushing up to 5. Furia looking fantastic in some of these chaotic moments of mayhem here. I mean, the freebie there on top of the reveal. Beautiful stuff. And again, they greet this aggression perfectly. Behind window, back towards spawn. Reading some of these situations really, really well. Again, one of the things that you're definitely looking for Furia to look strong in that aspect, to come into this stage cold. There's a huge tick in the box. If you're a Furia fan, those sort of rounds, as scary as it felt, that is such a good indicator that they can handle Paper X at that tempo, at that pressure point. Now Paper X though, again, still the team to beat so far, the team that has turned everyone's eyes towards them in the form they've been hitting. Now though, A-Long in control of Furia as Paper X power forward towards this B site. We're going to follow through on this though. The smoke will go up. Hunter's Fury will come out. I believe a tag on the first. The follow-up found something will fall. No other tag there. Looked good, but
The range. This is a nice just play. Landing. Koala Noob again, going to be played into this corner. As soon as Alan falls off this, he's actually got one on the way out. Do they check? They don't. And it is vengeance served. The patience working well for Koala Noob. Devi in a 1v4. He's got to get past Alan, which is hard because he's buying time. EU's there. 6 apiece, Mike. Really, really stabilizing towards the back end of that first half. A tied-up game is not how it felt in that opening stretch of rounds at all. All credit to Furia here. Can I help you, sir? Here's the bill from the dealership where I got my car, and I'd like you to beat it with a better deal on one of these fine cars. Not how it works. Guess you're not as cool as Verizon. Bring in your AT&T or T-Mobile bill for a better deal today. Aquí, en Chile, en Latinoamérica y en el mundo. Sigamos haciendo la diferencia, sigamos haciendo ruido. Vamos a pegar unos griticos, Santiago. ¿Dónde están los fans de PaperX? ¿Y dónde están los fans de Furia? Santiago, son un público hermoso, en serio estamos muy felices y poder tener también, por supuesto, invitados aquí en el stage. Así que bueno, un último ruido para Adrian. Todos, Dryan, Dryan, no los escucho, Dryan, Dryan. Son lo mejor. El primer día de este evento hicieron el mejor día de mi vida. Y creo que va a seguir siendo el mejor día de mi vida y el mejor evento de mi vida. Gracias. Santiago, grita con el alma. It is a good day for the fans in the venue, Mike. So far, you've got to be looking at this one as, I mean, bang for your buck, 6 apiece. It started off looking, I was a bit worried, if I'm honest. And I think you were to maybe a little extent as well, because I thought, oh no, it's not going to translate to the stage. Yeah, you see this coming out, and you see it being Haven map 1. Yep. Is where it's the most concerning. Furia just gritting their teeth here in the first half. An equal affair, certainly a positive. Anticipating a little bit of aggression here. It's coming potentially elsewhere with this stack towards Garage. You can't whistle at defaults. You can't. They're stacked They want long. more. They want more. Bloodthirsty crowd, aren't they? You bring Dan out for a second and they're absolutely feral. Rabid. But it's a very different look from Furia, right? We're seeing a much different tempo scale here. And for PaperX, they'll probably be scratching their heads to an extent. They can leave at least, who is it? Forsaken tucked in towards Sewer. They can then start rotating players around there, that double stack towards Garage, and it is heading up towards C. There's no onus here on either of the players in Garage to really do anything about this. They prioritise the backlines here. We'll slip straight through grass and towards C long. Devi looking to probe a little deeper here. See what the post plant looks like. 3 kind of playing topside C long, 1 tucked back of box. This is going to be pretty tough. Forsaken, the first one to take a step forward. Waiting for that pressure to mount so they can start that flank going as well. Furia's nerve going to be tested here. Alan doesn't get the shot he wanted, and it's quick work from PaperX, compounding the problems on the site until Koala Noob trying to do the dance, but he can't get away from the fate of PaperX. I've seen that one before. Yeah. Able to whittle away at Furia in this retake.
patience shown by PaperX here. I was talking earlier on, particularly on Split versus G2, their willingness to contest as this spike goes down. Something that's certainly become a cornerstone of their approach to the defense. I mean, I hope we get there, Split being that third map. It was something that you were loving about PaperX. It was the first time we really saw it visually in effect. It is, I think, one of the best examples we've seen here in Santiago in terms of embracing that sort of pace in a very different way. Yes. Some big investments. Yeah, round 2 investment here from 2 members. Kuala Noob looking to find something. Actually, it's EU to find. Kuala Noob will burn? Huh? I don't know how that's just happened. Maybe the C's at the same time, I'm not too sure. But for now, Forsaken trying to hunt down Alum, and he's done it. Threading the needle and finding some safety, but taking a tag on the back. There's a lot of heavy shields here, hence why they're still standing. 18 HP for Forsaken, he's just let off the leash. Go take a fight, take a brawl, take a biff. But now he's got support here. Oh! And he gets broken! 2v2, this is madness, man. Hudson a little vulnerable on the site as Devi going hunting, spots him. That's a bold look from Devi. Very individual effort. Jing's got a Bulldog here, and a 1v2. Artsin should be able to pick up this rifle on back site. There's still 50 seconds, you can do what you want, but do they expect Jing here so fast? Nerve certainly does, but it doesn't matter. 10 HP is still maybe enough. And you're right, he does have his ult. He's got options galore. Artsin gonna try and get the plant, gonna toy him forward. He's worried about getting flanked. Oh, this is so sick. What a head-to-head here. Second time of asking. Well, there's the heal, though, for Jing. Waiting for it. Sorted now, up to 100. Artsin has to gamble, take a chance, and he takes his head! 7-7 Furia, not down, not out. Tough situation for Jing. Oh, the C's. Catch it, he actually gets pulled back in there, but yeah, a massive overstep in terms of the mid-round here. In terms of decision making, I think maybe just the panic of trying to protect the rifle that goes down on C. Don't want to let that spiral out of control, and it does exactly that. It's rare to see PaperX kind of, at the moment, look at, God damn! All right, Devi, I'll shut the hell up. I'll shut the hell up. Didn't take any damage, by the way. That's on me. Do it again, please. Ooh, I thought he was on for another. Okay, EU, got to be careful though. You're very alone here. Yeah, feeling it right. That is such a great backpedal from him. That could have been a real vulnerability they could have exploited, but no. Furia heads up work. They're starting to get a bit of a feel of the heartbeat of PaperX now. That pulse point firmly in hand. Furia, this is very impressive work. Very clean anti-eco here. Crucial to note as well, the Hunter's Fury already online. This is a team to enjoy, aren't they? I was so worried. I mean, you're facing someone like PaperX. You're going into Haven, and they can do things like that, right? You can see why there is always threat. You've seen the form that this team is in. Do I get to play the game or not? No. Not really. No. Not really. Again, the worst role to have to play against a team like PaperX. Sucks to suck, I guess, right? Like, it's one of those you just... And look, if you're in the lead, soak it up, man. Who cares? You'll take it when you get them. Quick and pacey, they've got a plan in mind, and that is going to be a very dead Envy. Can't quite find Forsaken, though. The X Factor. Dead this time! Bloody hell, is this really happening? Oh, Jing! Bloody hell, he's gone right back at him. It is blow for blow here in Santiago. Something in a 1v2, a capable player. Bit of a hot and cold performer so far, though. But always a threat. Always a danger! Oh my God! Something better than the rest! He's broken their ankles, Lauren. The clone just draws the eyes from somebody we were critical of. It's another Red Bull clutch from something. The second of this map. That was wild. It also helped that Jing just went nuclear on sight, just popping off, but man, ooh, you take those. I mean, the timing here, the swing from Artsin's perfect as well. It's good. Almost reads the situation. Don't die, don't die.
and a devious laugh from something. To do that in a server and then be grinning. Oh, 8-8. Alex will hit the panic button, obviously more conscious of what went on early in that round, and particularly with Envy facing the drone and just basically falling by default to the Hunter's Fury. Great connection by EU to open this round up. Point-based win condition, obviously coming out of this already. Old progress for PaperX. Something Forsaken and Jing. Now pivotal that is to some of these Phoenix compositions to really find or maximize the value. I think it's also a great opportunity for Furia, right? This is felt super high tempo, really hard to see a momentum. They're matching PaperX. Yeah, like I said, in some of these more chaotic situations where teams do tend to fold under a buckle under the pressure of PaperX, Furia are going blow for blow with, like I said earlier, what feels like the tournament favorite in terms of form we've seen so far. But we can strip out some of those expectations because we're here at playoffs. There's some new faces. We have this is a great big reset. Exactly. Divide, no shield, no problem. Apparently, that's Koala Noob gone, and it's just no, it's not the prettiest. Yeah, it's not the prettiest. That's 4 up, but look at the HP. On down on 30, Nerve on 15. I'm still not feeling like this is safety yet. Good util left for PaperX as well. He's a lucky boy there. You saw that swing on the back of the site. They're still hungry for this. Still hunting them down. Blood in the water, and they strike. And even with that back line looking a little bit weaker just because of the HP, we're going to need another round from one of these two. Forsaken with the judge, going to make it harder. As Arlem just doing brilliantly here, keeping great deals of space, and something might be hearing the whistle soon. Yep. We'll wait this one out. Maybe a chance to discuss further what the plan was coming out of this timeout. But I like, again, seeing someone showing no fear against PaperX. Yeah, I mean, the challenging window here, even after Alan's like, guys, I can't do anything. Can't do anything. But I'm going. Yeah. I'm going. Like, again, we see a lot of kind of players talking about, taking space in certain roles and that sort of thing, but Alan just doing his job, man. Like, can't discredit it one bit. And obviously the byproduct of that is it's a positive to not see them kind of just shy away. Exactly. Yeah. Putting him forward still. Hunting down that follow-up, even starting to feel out the game. He's down to 30 HP so early on in this, and then still gets up to 3 kills. You're looking at the ults, but you're looking at the money. It ain't there for PaperX. This could be 10. This could be double digits, but never say never with PaperX. Oh, and right back to business, forcing them to back away. Something gets the hell out of there. And that's the only rifle. Got to protect the president in this regard. Forsaken's walking mid here, and there's 3 tucked in to this A-side hold. How much do they read into this? I don't think they saw Jing. They might still consider something here, but it's on again. Just let off the leash. Gonna spot out one. He's actually looking kind of screwed in this. Something's got him dead to rights. Rifle in hand. Fast flood back from PaperX2. They want site security, and they will gather that. But you're looking at Koala Noob's space here. He's done very well in the meantime. And I think the pennies dropped there as well. Forsaken instantly thinking about this. This is fine, though. They've drawn first blood. We'll get a second rifle in hand. That is big. And look, if it becomes really possible, Devi's got ult potentially. I mean, they've got a ton of, they've got a ton to invest here. And it's Gina gets the rifle, so he can make the run it back work. Let's see if Forsaken play this right, though. No paranoia, but still something good util. His ultimate as well is going to draw out the lockdown, but if anything, it's only going to buy them some time to secure this plant. Not taking much space here on the side of Furia. But the pit really causes issues now. And look at the positioning above it too. Koala Noob is the one waiting. Something doesn't see it either. Higher! Sent back to the pit! There's Furia doing really well here. Something's found a pocket to play from, but I don't know how much he's going to get out of it. Now they're hurting. They're trying to pivot straight back in through Garage. But again, the wall is in place here. Furia are not letting them find an easy way through. And that wall was Koala Noob. Suddenly, an availability divide towards Artin. They both won this round and they want it badly. EU doesn't get overwhelmed, but the few started. Numbers there. He's done enough. They bought enough time.
PaperX take it to their limits. Huge investment here from Furia. Got the ult. But you absolutely have to in that situation. There's no easy round against PaperX. Like I said, another rifle cycles into the hands of Jing. Forsaken a jump scare on the TP above, but the pit just causing so many issues for them. Beautiful stuff here for Furia to find 10. 2 rounds to the good here. And on the other side, I mean, look at the investment on the side of PaperX as well. Yeah, very. But no one following it up, though. This is a 2-man endeavor. Oh! They are actually running rings around PaperX. Devi, luckily, able to keep his cool here, but he's not feeling secure about this. He's on 8 HP. He's had to give up front sight. They're already here. Oh my God, Devi. There was no one near you, man. You hoped that they hadn't taken that space. That is a terrible surprise, and now PaperX looking out of sorts. They are looking out of the form that they've been sitting in. Envy does well, but it's still a 2v3. Where is something in the matter? Joined side by side, shoulder to shoulder. Arlem shouldering the corner. Hot flash in, Prowler to follow. Off the angle, back on it fast. A 1v2 needed. It's not happening today, Furia. They're up to 11, Mike. Now he gets to play the game. A few huge rounds from Alem to get himself back on the board and back in control of some of these early rounds. The one to truly take the fight to PaperX. PaperX looking a little rattled. They do. A couple of these decisions now that you usually would credit them, just not paying off for them. Oh, this Furia team. Oh, is this the caliber we're getting now? We are in the playoffs. It is an upswing in form and capability to push PaperX like this, to make them look, as you said, rattled. I mean, it looks like they've knocked the wind out of them. Just with a few, again, pace changes, and happy to just commit 3 or 4 bodies to these opening engagements in mid up towards the top of B. PaperX, unfortunately, trailing behind Furia here on map 1. Certainly a chance for Alex to lay down the law, maybe get them back on the same page. I'm not seeing much in terms of a purchase here, but there's not much to invest. To be honest with you, they almost have to come to terms with the fact they've conceded the 12th already. No ults here for, oh sorry, just the one for Alem actually on the side of Furia. Hunter's Fury just 1 away, so on the next buy round, a couple of tools to invest here. Furia on the brink of potentially flipping us an upset on PaperX's pick here in map 1. An iconic map for PaperX too, in my mind. Recently, kind of the pinnacle of their form. Devi with an early shot, an early information. Furia probably conscious of a little bit of aggression here coming out of the timeout, so we'll allow the dust to settle. It's a confirmation here, but no solid idea of numbers just yet. Forsaken will take contact with the turret outside double doors. Devi wants another stab at this. His scoping work from Koala has been really solid. He's been forced off now, 50 seconds. Well, still alive, still 75 HP. So, again, in terms of info, you'll take that. So where's the pivot now from Furia? Deciding to abscond away from that A approach. Look towards B. Smoke just going to go up now, but Others been great at just kind of working into this. He knows his protocol list perfectly fine. Koala Noob, good for the plant. 30 seconds left. That's now in, and they reset. 5v5 retake on the cards for PaperX. Forsaken is here fast, and he's getting started. I don't know what he's planning. There was nothing in mind for it. Furia gifted a great start in this. Now we'll have a chance to just sit back and spam onto this. Numbers advantage and the weaponry causing further issues now. No pressure coming across towards Furia. I'm going to allow him on that angle. Something's found Koala, though, with a headshot. Okay,
Anything else to rattle that back line? No, Furia standing strong here. And look, he can put it on a show, he can land a shot or two, this man. But it will not change the fact that Furia are up to 12 in map 1. Absolutely insane performance here from Furia. And the timing on the smoke here, Forsaken, I think maybe he thinks he's got another couple of seconds to maybe steal away a half defuse. But up against it now, PaperX. Very, very crucial buy round here because they have to say it has to be clean as well. Like I said, I was talking about the ult cycle here for Furia. It doesn't necessarily get any easier if you find number 9. Yeah, and they're probing way further now. Devi doing great deals of damage to start with. He wanted to stay. He did. You saw that temptation, that one for it. That bloodthirsty approach. He's got a new angle to play from, but there's a problem on the side. Invi's got his side. He can stay focused. Lost a little bit of the scale up behind it, but Invi doing great on the push, holding them back. And now there's a flank on the way. Jing not clean with it, but Devi does his job as leaving EU, who's been top of the board here, to try and handle PaperX. Good luck. This would truly be something of legend. If he does damage here, even. We'll take that, but Devi to clean up man. A 3K for him on the operator. And still a little life left in them. Got to chip away at the finances still. Furia actually even considering a string of 4 rounds. Look at what's left. There's only 3 that are... Oh, That's it. It's through the wall. I didn't catch it the first time what he saw. Maybe just a client side difference there, but... Devi 21 and 15. He's having a game. Desperately trying to keep PaperX in this. He always, in my mind, has been one of those big game players. When PaperX have needed someone to find it, but this time it gets ripped out of his hands. Invi's dead. He's on the hunt. No, he's not. Invi, how are you alive? Overrun and overwhelmed. Forsaken sent back. Jing bodied. 3v2. Something of Forsaken. Behind the curve, but fighting forward. They don't respect it. It looks like they are. They're absolute lunatics! This is 4 seconds! You gotta make it count now! Forsaken! Unthinkable scenes! And now Nerves on the hunt! Has to get it done in time! Does he get it? Does he get this something? Backpedals away. Oh my God. Nerve has to keep it. Something is waiting on that CT side. Utility down, a tap on the spike! And what a world we live in, where David picked Goliath and goddamn won it! Absolutely mental, Lauren. I can't believe it! Furia have just come out and staked their claim here in Santiago in map 1. Going blow for blow with PaperX. 13-9, absolutely insane map 1. Don't go anywhere. हेलो फर्जी फर्जी म्यूट पे भाई तू हेलो One time, not better. Alright, I'm back.
time to write the next chapter in the esports history books is finally here. And they fold it in his hands yet again. He steps up to the plate and he can knock this one out of the park. Now they shall be engraved alongside the greats. Pa' subirle esa chapa me gustan pila y tú sabes que yo soy puto que estoy la es mentira. Full de los bolsillos pa' darte lo que tú pidas, ya están dándole a la tuya. Va con un vuelo de ida. Ponla pa' subirle esa chapa me gustan pila y tú sabes que yo soy puto y que estoy la es mentira. Full de los bolsillos pa' darte lo que tú pidas, ya están dándole a la tuya. Va con un vuelo de ida. Ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla. Jen here with Furia Shaw now. Let's go Furia Shaw! Let's go Furia, let's go Furia! You seem very excited about the map 1 win now. Furia coming out of the gate swinging. So my first question to you is that the team looked well prepared against Paper X, but how did you prepare against a team that looked like they had no weaknesses? First of all, everything has some weakness, but the good point is we prepare a good draft. I think we predicted this entire draft and halves, and we studied a lot the system, how they play, how they use ults, and I think this makes some difference today. Well, can you just give us a little bit of a secret? Let us in. What was their weakness? Their weakness is difficult to say, but they use some ultimates in the predicted way. Okay, so thank you, and good luck on Breeze. Thank you, thank you. Let's go to the Breeze. Now this is playoffs. The top seeds back in the battle. Furia land an early blow, taking map 1 over Paper X, who were undefeated on Haven. 4-0 this year. Wyatt, you said this was going to be the most one-sided map in the series. It went exactly as we all predicted. Furia stealing the map away. Dude, EU was astonishingly Unreal. good here as well. I thought that Furia, if they were to win Haven, would have to come in and change their style. Throw Paper X off with a new comp. But how they win instead was executing on the style that we already knew them for to an incredibly high degree. Paper X loves playing Flood, Retake fighting you constantly on this map. And Furia was just so ready to disrupt that play and shut them down, even with this high pressure.
I totally agree. I think that coming into this tournament, that was the best aspects of Furia's play, but we didn't see that on Haven the one time that they played it. We were seeing it on a map like Abyss, which got banned by PaperX. But the fact that in the downtime, it wasn't about switching things up, it was just about improving on the base that they already had and getting this map up to that same fundamental level that they have some of the top in their pool at. Well, it's funny you say that because there was a turning point in the series, though, which brings us to our Verizon high-speed moment, because this one starts with the Furia comeback after attack timeout. Right out of the timeout, they start fighting so much more aggressively against PaperX on these holds. Early in this half, I was concerned that we were getting the first seed curse coming to fruition, but it wasn't the case. They were playing too passive early on, giving up too much of A, playing too much for retakes. You don't want to be playing a retake style towards A, but then no, late in this half, they are just fighting aggro against PaperX here on this round, shutting down any aggression from PaperX with a good team fight in that choke. It was actually Forsaken there that ended up getting caught out by the high tempo. It's really crazy to watch. For this Furia team, I mean, coming out here after having never played an international event for the majority of these players and playing PaperX, generally, when they're not respecting teams, when they're running you down, making plays like, think about that Forsaken 4K in the first half, that's where the buck stops. But Furia actually managed to slow the game down, remember their game plan, and disrupt this PaperX team at the game they're so good at. Kuala was really phenomenal in this series. I think specifically in that first half, he was the guy keeping the minute and then bringing them back. And EU takes them over the top later, I think, in that second half. But you have to give massive credit here to Koala, who, like we were talking about, has just been grinding for this opportunity for years and is making the most of it. He did not waver at any moment, made great repositions like that one tucked in the corner, playing off his teammates. This ridiculous moment against Forsaken. Great round, by the way, where they were just sequencing out those ults to delay. Like, the play from Furia just got better and better as the map went on. And it's so cool to see him do that on the Omen. I thought that this was going to be Koala's worst map in the series, where he's playing the Omen against a comp that is so good at shutting down offers. Think about the amount of util PaperX had for that. But he was largely just rifling in this game. Looked so good at doing that. And now we get to head towards Breeze, which, in my opinion, is one of his absolute best maps when he gets to play the Jet. Both of those guys are going to be going from playing Omen to playing Duelist. You've got to imagine, with the Yoru coming out for Forsaken, and then Koala Noob's going to have the op in his hands so much more. Playing the Jet if things are as they were before, which, after seeing this Haven, nothing changed. I expect them to just be tightening things up, getting even better at Breeze from what we saw on kickoff. And that's just Koala's classic agent. You know, all the years he's played the game way back when it was just Jet. मैं इतना देखा नहीं, बंदी का फोन आ गया था. क्या हुआ बता ना कुछ ओवरव्यू दे. कौन मारा? I think it was specifically around that composition. Koala Noob और EU ने बहुत खतरनाक गांड मारी भाई. Koala Noob. I think Furia had great prep. Well, let's see what उन्होंने skill. say ahead of map 2 and see how they'll adjust for Breeze. By skill. भाई उन दोनों ने ऐसी गांड मारी ना. और भाई इतना खतरनाक टीम कोऑर्डिनेशन था ना. लेट्स से अगर कोई लेफ्ट देख रहा है तो तुरंत कोई राइट देखेगा. Not particularly. I think they came in with a very clear game plan, and it was very effective, as you can see. I think they played way better. Koala Noob duelist नहीं खेलता था? A lot of individual mistakes in the sense where we tried too hard to like नहीं. people. क्या बात कर रहा है? I think they totally deserve to win the map, so hopefully it will be better map. खेलता था साले यूरो खेलता 36% पिक रेट इसका. जेट भी खेलता 21%. We're headed towards Breeze here. अरे मगर वो दूसरे वाले नावी में था ना. अच्छा हाँ मेरे को EMA में याद है कोला नूब. मेरे को यहाँ का याद ही नहीं है वेंचर. मैंने एक भी मैच देखा नहीं फ्यूरिया का. हाँ वही. EU भी तो वहाँ नहीं EMA में खेलता था क्या EU? नहीं EU 100 टीम में था ना. 100 थी इसमें था. सही. When they were playing their flood retakes, normally they get away with sending one player in, a Phoenix Flash, making that individual play. But Furia was ready to punish it. And I think नहीं भाई crazy वेंचर. ब्रीज निकालना पड़ेगा. हेवन मुझे लगा था इनकी तरफ जाएगा. नहीं करना पड़ेगा भाई. छूट जाएंगे नहीं तो. I think you have to find that balance, which is very tough with PaperX's style. We're about to get into this agent select. I'm taking a look at Dubai overall. भाई something पे झंडू बम सुन रहा है वेंचर. Seeing numbers on Chamber right now. He's averaging 0.94 kills per round right now for 2026 all year. But on the Viper, it's 0.6. यार मैं FNS की स्ट्रीम देख रहा हूँ वेंचर. FNS PaperX को सपोर्ट करता है ना. हाँ. उसके तो लोडेड लगे हुए वेंचर.
he's got to go nuclear on this Yoru. Comp change for Furia, moving away from the Jet for Koala that we've seen on this map before, instead switching to this Neon Yoru. भाई ब्रीज पे भी फ्यूरिया अच्छी है पता है क्या? Meta here, but takes a little bit of that individualism away that the Jet provides. Well, this match has already delivered more than expected. Let's send it back over to Pansy and Hypok for map 2. Yeah, I mean, map 1, 13-9 doesn't even feel like it covers how good that was. So many flip rounds, so many, I mean, unbelievable scenes. So map 2, I don't know what the hell to expect, Mike. I mean, I'm already blown out of the water here today. Yeah, I mean, obviously, with how map 1 went, this slight tweaking here in terms of the composition we'll see on Breeze, I think suits Furia down to a T in terms of how they want to approach this. You can see them happy to just go all out in the early round. I think we even know it in the cast. We're talking about a couple of members of PaperX in the situation where someone's got to make a play, right? Yeah. It was just so sloppy. Which is weird, because they haven't been like that so far. Maybe this is just a different caliber. Now we are in the playoffs. Furia looking like they are after the title of the team to beat. Let's go on. Okay. Gifting out 3 damage, unconfirmed, but looks taken and look at something. Maybe this is just a different caliber. Now we are in the playoffs. So good information to spur looking things like they are all the title of the team. Towards B here. Forsaken, as you notice, 50 HP. Has to respect this, rescind away a little bit. Wait out some reinforcements. What do you think we're doing? Nearly catching on a gap there. They weren't kidding. Oh, We have nobody beat. We have one beat. We have one B, no fast rotate. Before we take on B. Odd map to clear here. Nerve was miraculous in map 1, I've got to say it. This time, swiftly put to bed. A kiss on the forehead. Start हो गया Now something gets to fill the space behind it. Start हो गया Yes, oh, it ain't pretty. हाँ Now he's the target of focus, though. They still got to clear him to get the work done, and he's just completely off kilter, it looks like, Forsaken. Try and work the space back through. We can see where this post plant really resides. They need a big bailout. नहीं क्या कर रहे? Start this off, but PaperX locking it in first round. Down to the wire here. Almost able to slow things down. Yeah, just over a second left on the defuse. PaperX. Stick the landing on the pistol. You can see here the connection. Koala to slow things down in mid. Even here, Furia. A couple of complementary positions, but it's the key people to fall at the wrong time, effectively. Credit to PaperX. Welcome backstage. That scenario. I was wondering what that was, but he's going to our green room. Okay. Now, round 2 flip. That's all that's in my head. I don't think it's going to happen now. Ain't no way. Look at the vibe. It's good. It's all good. It's all good. It's all good. It's all predictable. Fine with this. They get the, yeah, Koala's got it. Echo रहा तेरा थोड़ा. Okay, you're not going to overextend it. Yeah, look at the HP. क्या क्या? Echo रहा क्या खा रहा तू? Get a bit. मैंने पिज़्ज़ा मंगाया. Nice guy. Gonna mop this up. No. वो नहीं बन. Why is it 3v3? Why is it Trade मिला. Why is it a 3v3? 3v3. MV, you're not going to go and do the same thing, right? They're trying to hunt him down. They've seen a vulnerability. Envy might be screwed here. Nice, nice, nice. He keeps his cool. Forsaken was there on the swing, forced to kind of come around that quad side, but all good. All good. Forsaken a hell of a long time to get onto the back side of that. I wasn't nervous for a second. Yeah, I don't think they know just how close they came to flipping that. Yeah. Bloody hell. Still some crucial damage done early on. You'll have a massive impact in terms of the bonus purchase. Something we're going to scope on regardless. I am looking at Koala going to use progress too to the nice little combination ult potentially. Decent early progress between the two of them. And look at that firing squad waiting from Furia. Something's about to creep onto this angle. Obviously full shields here, but Alan tagged up. Second, just not expecting bodies to flood back out into window. Yeah, which is a bit weird considering that something Free दे दिया बे. just kind of looking that way, but
Yeah, spotted on both sides here. Does that change next steps? Something's getting a little bit looser on this. Wants to try and find someone out of position. Timing. They've taken the angle. He's seen a fair few, and he's done a good amount of damage. Like, look at this damage output. Gets away pretty healthy as well. Yeah. 89 HP. Still got shield left as well. As you said, yeah. Artsin and Adam down to just 10 on the first buy. As much as Fury are working the map, sure, they've taken so much damage for it. Very almost mitigating the first blood, to be honest. Yeah. दो बहुत लो Artisan और Alan बहुत लो हैं. Disastrous for them. Okay, Nerves actually caught Divide. That was Mid भी चला गया बे. But Envy gonna go down. Fury are trading in very nicely, and Jing in a position the Feast or Famine. It feels like Doable है, पूरा doable. नहीं. Really diligent work from Furia. Stable steps going towards the B site, leaving just something in a 1v3. Doesn't expect the drop on the smoke. Can't get to it in time. EU picking up where he left off, really. 3K for him to find the first for Furia. Can they catch on Divide? I want to see how it went down as well. If that was just him wanting to get some space in middle, trying to play it back through. Yeah, just here. Just check, yeah, you got fantastic. I know he's caught your eye. Map 1, you're like, it's the second he starts getting those really like valuable kills. It's hard to ignore. Early progress here. You already on the Hunter's Fury. Nothing available for Paper X here, but a couple of players getting close. And something on the op, I guess, is the main factor. He forced off that first sight line. Forsaken playing a very committed corner. And Fury have been patient. We've been seeing that even in these last couple of rounds. They like to work the map a bit, let it breathe, see if they can catch an overstep, which they might get another shot at. Oh, you're not going to walk into this because Furious seems so heads up. Now, I mean, the damage is there. Down to 16 HP now. Something has to retreat. Post on a deeper line for sure, but the full force effectively of Furia headed his direction. Considering the rotation now, with no push out on A. Already now, Alan going to find space towards double doors here as something not going to be greeted. Jing waiting for this. Still got that paranoia ready. And he's going to go ahead of it. That's quite nice, but he's getting instantly traded. The spacing and the timing for Alan. Artin then catching Divide. They are working this map very nicely. However, they are now a little scattered apart here. Spike collected and committed to. They consolidate their numbers as best they can. Still want this A site. Envy's position will be thought about, but not the swing on the smoke. No, it catches them off, but EU is just landing shots, Mike. I think we'll get a consolation, but very few ways back into this now, and with an operator in hand. He doesn't look happy about it either. The roar of the crowd letting him know. You can see them almost considering the TP back onto B here. With EU trading out the spike. A little bit of misdirection still. Able to find success. Get the plant on A regardless, with Nerves very, very late position. And again, I'm just so impressed with Fury's ability to work this map. It's going to put Paper X with a bit of a conundrum, right? It's how do we take security and space here if they're kind of working the map and they're leaving players, you know, posted up towards either B or posted up towards A. Do we try and isolate that player? Do we then go aggressive? But then it kind of feels like that's what Fury would want. This is a predicament for Paper X because the way those rounds have gone. I mean, the checklist doesn't necessarily change. You can still see like things like this. I was just about to say, Forsaken on an island trying to make hero plays once more. But by the way, that is ridiculous. That is absolutely ridiculous from Alan. Nah. And we're talking about him having a slow start. He was still finding value in terms of creating early round pressure on Haven, but as soon as he got the ball rolling, started to find a couple of kills, he was heating up a lot. Yeah, he really was, and that could be another kind of string to the bow, but as it stands, scopes out for Koala Noob. Buy in place, and the remaining factor is that operator with something. Now, already Fury are posturing up a little bit deeper, right? Already searching a little bit further. Aldrone maybe just looking to see if they can identify him early. I don't think they're going to get ground. Early on, where Paper X, I'll say struggled a little bit. We're a little slower with some things reliant on the operator in that opening series. We had a
Disastrous map one. Yeah, not necessarily finding. तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा? एक पे ऑफ पे बाकी सब पे सेव है क्या हुआ लास्ट राउंड? उसने ऑफ सेव किया रे, मतलब फ्यूरिया ने गांड मारी पेपर एक्स की, फिर लास्ट में बस समथिंग ही था। नाइस 1v1। अब इनको ऑफ का साइड मिल गया ना, अब इनको पता है कि कहां नहीं जाना है। एस्ट्रोजन आगे पर नाइस नाइस गन मिलेगा से। And again, even with just sheriffs now with an upgrade, it's going to get difficult. Jing's going to have to again find a lot of damage. He just can't do it. एक निकलना था। In play. Oh, hang on, that's a big kill though. Yeah, that is huge. Actually, I didn't You big, yeah. and now they're going to invest on with 50%. भाई doable है। Pressure's on Fury to find stability and safety. थोड़ा सा लेट करता प्लांट बेंच पर ठीक है। Down towards Alan to keep this secure. Playing passive. नहीं डिवाई। Hang on. You're absolutely outrageous. अरे नहीं। क्रेजी भाई क्रेजी, एलन ने क्रेजी निकाला भाई। नहीं यार। The discipline here. कितना ट्रिगर डिसिप्लिन। A second player into his sight line. Twisting the knife. बहुत मिस्टेक कर रहे हैं भाई ये। Beautiful stuff. क्रेजी भाई क्रेजी। And all of Furia. क्या बोला बहुत क्या? मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ मतलब बेसिकली कॉर्नर में चेक कर रहे ना यार। कॉर्नर चेक नहीं किया वही ऑब्वियस कॉर्नर है वो। इसको पता था कि ये क्या बोलने का समथिंग के पास ऑफ है ना। हाँ। It's another one of these momentum rounds. Furia able to flip on its head. Like you said earlier, you never want to know. एक और ऑफ लिया उसने। Furia are winning एक और ऑफ बाय है उस पे। This is going to be magic. हाँ है मगर स्पीड नहीं ना पूरी। करेक्ट। दो ऑप इन पे। Maybe they can keep lines on both sides, but then again you think about the odds here. 4 सेकंड और समथिंग भी ऑफ पे बेंच। हाँ 4 सेकंड भी ऑफ लिया। Space on site, force back that operator. Just going to get himself a way out of dodge here, and he commits close. This is dangerous work, but he's not alone in his nice. But Forsaken is in unpacking this time. Great connection on the Hunter's Fury. पर क्वाला नूब का इन्फो है क्या इनको? So already we're going to see them deeper into that post plant to find. नहीं निकल गया क्वाला नूब निकल गया। 5 HP है वो। 4 सेकंड 5 HP। Really quieting down just yet. Fury are playing on site here. Nice. भाई ऐसे कैसे मार सकते हैं ये? हाँ बॉल के थ्रू मारा ना? And surely in a 5v3 retake, this is looking good for Paper X. Trying to get a little unorthodox as EU's going to take down something. But that position, you're surely not going to get anything else from. Where is the next string to this? Where's the next step to it? Okay, that's it. EU, Odson, they've made this look possible. The defuse is going to be started. Device not stopping. Nothing is going to stop him. Nice. Yes. Easy भाई बढ़िया भाई। डिवाई है। By the skin of their teeth. By But it cost them so much. Not going to be able to stabilize. सही है डब्ल्यू अल्ट भाई डब्ल्यू अल्ट। Round win at all in terms of the finances. What is that? भाई इसने कैसा मारा बेंच? हाँ वो 4 सेकंड वाला तो क्या क्रेजी मारा। There's no timing उसने बस ऐसे ही बोला कि भाई यहाँ पे हो सकता है कोई तो पीक लेके पलट सकता है बेंच। Again with just a second. ऐसे रैंडम मारा वो। हमारे वेंचर तो वेंडल के स्प्रे नहीं लगते रैंडम। उसको ऑफ शॉट लग गया। हाँ ना वही तो वेंचर। नाइस शॉट। Gives himself some security. There are still players around here though. Something doubling down as Artsin now prepares himself for that counter swing. You have to fight back a lot of the space now being gathered by Paper X. To catch their breath, but wow. Nice. ये राउंड निकला तो सेवा अगला उनका। Catching another kill here. पेपर सपोर्ट कर रहा है तू भी? मेरा ऐसा कोई नहीं है। क्या? मेरा ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है यार। मतलब ऐसे कैसे बताऊं? इस मैच में या इस टूर्नामेंट में? इस मैच में ऐसा कोई मेरा ऐसा फेवरेट नहीं है ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा इस मैच में फेवरेट नहीं है वैसे तो है ना फेवरेट। मेरा तो क्लियर है भाई। मैं तो यार कुछ भी ऐसा देखता हूँ ना को चाहिए कि मैं एक टीम को सपोर्ट करूँ चाहे कोई वो स्पोर्ट में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अच्छा ऐसा हम लोग
वीकेंड वो करते हैं, बोर्ड गेम खेलते हैं, कटान वगैरह खेलते हैं और कुछ लगा लेते हैं टीवी में। डॉग ओलंपिक्स लगा लिया हमने, कुछ भी टैग का वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा वो लगा लिया, तो उसमें भी बेंचत मजा आता है। रैंडम हाँ रैंडम कुछ भी हाई होके बेंचत मजा आता है। वो तो है भाई। ओह निकला नहीं यार मेरा अरे उसका डैश नाइस चिंग उसका डैश फंस गया बे। हाँ यार वो तो है भाई। ओह नहीं रे उसको not what you wanted to see if you're a Paper X fan. Spotted. He did not get spotted on the cross. Work. I think that you saw Envy considering it with the owl drone, but they don't know. Oh, the back. This is. इनको लग रहा गया marvelous. It may not amount to. अल्टी है उस पे यार, वेंडल से मिल जाएगी साइड पे। But he's trying to really get in their heads. I mean, he's got space, and he's got the pit. Yeah, you're right. Now the pit makes it awkward. He's got to consider the plant location. He's desperate to get one more, isn't he? But I just don't know if you're going to get given it with 40 seconds. अरे कहाँ जा रहे हैं नर्व? It's going to be Devi above on the left here. Nerve, it's a gamble. It's a 50-50. But he might be reading it right here. 3 more bullets. He's looking to try and get away, and he has. He's managed to make it out of there. A new scenario and a new sight. सोवा कहाँ जा रहा है? Pit will go out and find a little more value in terms of the placement on A for sure. And again, it will cover the plant. Gets to slip away. Shock dart है, reveal भी है. It's a great spread on the pit as well. उसे दिख गया बाहर जाता हुआ. Yeah, he caught a glimpse. He's got a great idea now, but they still have to clear this man who has been hard to handle. He's trying to be slippery. Trying to get a timing, get something on his side. Nice, Divide. है भाई Divide है भाई, वाइपर प्लेयर है वो भी। सही है भाई। अरे नहीं मेरा कैसे पता है क्या? कि देख मैं पेपर इसको ओवरऑल तो सपोर्ट करता हूँ, बट यार अंडरडॉग को भी मैं सपोर्ट करता हूँ कभी-कभी, पता है क्या? नहीं हाँ बराबर ठीक है। मैं भी जनरली अगर मेरा कोई फेवरेट नहीं हो ना, मैं आई विल ऑलवेज सपोर्ट अंडरडॉग, क्योंकि जितना अंडरडॉग आता है ना उतना कंपटीशन बढ़िया होता है। बराबर नहीं इसलिए मेरा ऐसा था ना कि यार चल कोई ना कोई भी जीते मेरे वैसे नहीं होगा। हाँ नहीं ठीक है। अमेरिका में पहले फ्यूरिया और क्लाउड9 कभी इंटरनेशनल गई नहीं अभी तक। क्लाउड9 हाँ क्लाउड 100 थीव्स भी तो नहीं क्या? नहीं 100 थीव्स गया है भाई, बहुत पुराना पहले गया रहेगा। हाँ जब से अपन फॉलो कर रहे तब से नहीं जा रहा। हाँ अभी तक क्लाउड9 और फ्यूरिया कभी गई नहीं। हाँ ठीक बराबर। फ्यूरिया आई तो इसलिए मेरे को थोड़ा ये लग रहा है कि मैं बायस नहीं होना चाहता इसमें। हाँ थोड़ा उन्हें सक्सेस मिले तो थोड़ा अच्छा रहेगा उनके और के लिए। हाँ ठीक। नाइस डिवाइन। क्रेजी भाई क्रेजी। समथिंग हगना नहीं भाई, समथिंग बाय। नाइस चल सोलो बचा। This is pedigree in action. चल मतलब पेपर एक्स ने ब्रीज पे इनका अच्छा स्टडी किया है। Hunted down, wanted dead. यार मेरे को लगता है ना पेपर एक्स जैसी टीम ना, मतलब स्टडी करना इससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, होमवर्क करना कि कौन सी टीम कैसे खेल रही है। पर मेरे को लगता है ना पेपर एक्स की टीम अपना देखते हैं कि भाई हम ऐसा खेलेंगे मैच, और वो जो खेलते हैं ना, वो इतना यूनिक होता है ना, कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता उनके अगेंस्ट। बराबर वो अपना ही खेलते हैं भाई, वो किसी के अगेंस्ट प्रिपेयर नहीं करते। पर हाँ वो मेटा हो झटा हो कुछ भी हो, हाँ वो अपना ही खेलेंगे। मेटा वैसे देख लेंगे, जैसे 2 ड्यूलिस्ट चाहिए तो इन्होंने भी अडेप्ट किया, 2 ड्यूलिस्ट चाहिए हमें ऐसे करना है, थोड़ा बहुत अडेप्ट करेंगे, लेकिन अपना ही खेलना है ना। और मैच जो स्टेज पे अडेप्ट करना पड़ता है वो तो करना ही पड़ता है, कि सामने वाला कैसा खेल रहा है उसको पोस्ट करने के लिए जैसे खेलना है वो तो करेंगे, लेकिन मैच जो देना फर्क नहीं पड़ता, बाकी टीम करते होंगे स्टडी। वो तो है भाई। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बंदे पेपर के खिलाफ स्ट्रैट बनाते कैसे, मतलब क्या सोच के बनाते हैं। हाँ क्योंकि भाई ये कुछ भी करते हैं, और मेरे को एक पेपर एक्स ही ऐसी टीम लगती है जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है,
जैसे वो तेरे को याद है फनेटिक अगेंस्ट सनसेट में ए साइड पे वॉल करके मारा था फनेटिक के 2 बंदों को। अरे हाँ पता है है ना, मतलब ऐसे स्ट्रेट हाँ डीवाई मतलब सेज वॉल करके जिंग ने मारा था भाई। हाँ राइट, मैं कह रहा हूँ। और एक बी साइड पे भी वॉल करी थी जिससे स्पॉन दिखता है मिड का रोटेशन काटने के लिए भाई। हाँ भाई, ऐसा स्ट्रेट ना पेपरएक्स के अलावा मैं अज्यूम ही नहीं कर सकता कोई और कर रहा है। हाँ बराबर कि ये यही लाते हैं भाई, ये ऐसे टिकटॉक वॉल बहनचोद। और काम भी करता है बहनचोद इनके लिए। I mean, talking about the fine line of madness, this might be part of it. Envy gonna get just smothered. This site is now topsy-turvy. And they're just trying to hunt down Forsaken. और Forsaken ऑप लेके What are you thinking? Oh, Jing, there's nothing. अरे क्या कर रहे हैं? ऑप ऑप लेके क्यों खोला उसने? उसका अल्ट था नहीं, उसका टीपी था कि नहीं था? Have to go and get it, pop the ult for it. But then Divide, Nice, Divide. prowling the site removes Artin. 2v2 without operator. Not feeling comfortable. पिंच है बहुत ज्यादा, सफोकेट होंगे। हाँ वो तो है। वो रोटेट करके आ गया, समथिंग पूरा रोटेट कर लिया। उनको लग रहा है अभी भी स्पॉन्स आएगा। Potentially trade back onto site. He didn't see him. He's absolutely not seen him. Maybe a minimap call there? It might have been. It might have been. Or someone else just watching his POV at that point. Yeah. Koala Noob now gets to play on the corner though! Oh नहीं यार। मारा भाई। Koala Noob is gonna polish you. It's on something, a 1v2. He did it in map 1. This is a tall task though, Mike. नहीं। Trying to play to the time, add some pressure. But now, brutality! Oh my god! Something! Oh boy! They are just absolutely fixated. Something की जगह कोई और बता जो ये क्लच कर सकता था। मतलब माडा वगैरह कर सकते हैं, पर बहनचोद ये क्या क्लच है ये? And the second shot, look at this. It's not even the bullet. वो जो वाइपर है ना बहनचोद, उसने बहुत गलत एंगल होल्ड किया था, पता है क्या? हाँ, मतलब उसका बहुत ज्यादा पैसिव थी वो। यार ये कह सकता है योरू बिना योरू को कवर नहीं कर पा रहा था वो बेसिकली। बराबर। मैं इस राउंड के बाद जाता हूँ, मैं खाना ले। पर क्रेजी राउंड वे क्रेजी राउंड। वो तो है भाई, मगर यार ये अभी इनका अटैक है ना, इनका डिफेंड भी अच्छा होगा। नाइस। Just shouldering up in middle. Anyone else dare take a fight right now? Gap on this smoke as well for Envy to still support him. Divide. Smoke में gap है। Smokes. They're just taking fights down mid. भाई crazy eventually. Give them an inch. They take a mile. Something still on the prowl. Still 5 standing for PaperX. 3v5. Easy. Something को लगता है ऐसा ये हो गया क्या बोलने का यार? Gonna have to be gifted one to get back into. कॉन्फिडेंस आ गया ना उसे बहुत ज्यादा। लास्ट राउंड के बाद सीधा गांड मार देंगे उसके। नाइस शॉट। फ्लिक देखा? मैं खाना लेके आता हूँ, राउंड तो डन है। हाँ टिकट के लिए खाना लेके If this is a sweep in the second half, I'm terrified to go there. I want to see it regardless. I want it. I goddamn want it. Like Furia, you have converted me already. Also, it's just wild though. We're talking about this in round 11. I know. With the way this is trending though, it just feels like the reality check for Furia and PaperX doubling down on the insanity of some of these rounds, as we've come to expect. A chance here again. The buy. It's going to be awkward to say the least. They have a Hunter's Fury to invest. Nobody else going to come close. On the other side, something. Blade Storm
1v2 away from his Hunter's Fury. His light shields here, so Forsaken just swapping out. Was considering a scope. Oh, don't go, don't go! Run and hide! There's Paper X looking lethal, man. And this wasn't a pretty purchase, but something is hungry. This man's out for blood. Oh, they're nasty with a Jing, hunting them down again. EU back to the wall, trying to fight it forward. He's putting up a good performance. I'd say he's not trying. Try as you might. Paper X with a point to prove is a different beast, Mike. These guys look different from map 1 to map 2. This is the big leagues you wanted, Furia. Welcome on board. Nine three way should be easy. हाँ देखा भाई. There's a reason this was a highly anticipated matchup, and it is really giving us a great show here, Mike. 13-9, map 1, Furia wins it. We go into their territory, historically not the strongest backbone for Paper X, but man, they are coming alive. But a map that would allow such a thing to happen, for sure. I mean, the bar is set very high here in terms of this second half. Got to be a comfortable start here, but Paper X certainly winning out in terms of the mental game, the momentum here. The reset of the half-time, and Furia catch their breath. The Paper X here on the attacking side, of course. You already see the pings lined up, their sights set towards B. Will be the heavier side for sure. On the side of Furia, could be a bloodbath. I feel as though it might just be. While the noob. And Ardsin. There's the first contact, there's a paranoia. Ardsin plays to the smoke and adjusts side. Does he get noted? Yes, he does. Revealed slightly and put, nice shot back from Arlen, but it's already been handled, right? Paper X, hold on, Ardsin. Ardsin, you shouldn't be alive here. You're not gonna go back in that smoke, right? I mean, he's gonna give it a damn good go. All right, Ghost. And left dead in the end. Paper X, it's 10 rounds. Double digits, man. This is mounting in terms of the pressure now for Furia. A round 2 flip, sure, but with this momentum, you've got to argue it's highly unlikely. You trade in so well onto the site, Paper X. Like I said, this was 3, maybe 4 argue on the side of Furia to greet this B site hit. And now a total flip of the script. It's potentially just nerve to be tested here. Getting conscious of something going wrong. The device position might just catch the TP sent forwards. Now, if they can bait a little bit of pressure somewhere. Well, don't even need to. boy. Devi
every day of the week. Yeah, no smiling. I think they might be. I'm not going to say checked out here, but this round's not the one to be fighting back in on anyway. As Jing, confident in approach, no allow for the plant. The final three would love to do a bit of chip damage, maybe cost them a bit of something, but can they even deny? Yeah, that पेपर जीतेगी। थर्ड मैप जा रहा है। हाँ, अच्छा है भाई, भैंचोद कोई तो थर्ड मैप जाए मादरचोद। भाई मगर हेवन में साला ये कितने लोग क्लासिक से जीत रहे थे भैंचोद पता है? क्या थ्रिफ्टी? Clinical from Paper हाँ X. भाई I क्लासिक का बहुत खतरनाक था भाई। At 11-3. तू देख हेवन में भाई क्लासिक से 2-3 राउंड निकाले बच्चों इन लोगों ने। फ्यूरिया ने। Right, this is Paper X. अच्छा। मैं मिस किया, मेरे को फोन आया था। मैं मिस किया most of the heaven. I'll still say it. कोई ना to still see smiles on their faces in their opening game here in Santiago. Got to credit them. In terms of the amount of pressure they are under. This is where we come back. I said I didn't want to have this conversation with you, but obviously, in terms of the draw, वो अभी अकेले है क्या तेरी गर्लफ्रेंड कब आ रही है वापस फर्जी? Monday. Something we'll look to in potentially map 3 unless they can भाई build फ्लाइट now. महंगे कब की बुकिंग थी मतलब पहले से ही बुकिंग थी या अभी है करके? नहीं नहीं उसने पहले बुक की थी। मुझे सस्ती मिली। अच्छा है भाई अभी तो बहुत महंगी है बहनचोद। हाँ। मेरा फ्रेंड का वेडिंग है अप्रैल में। मैं अभी न्यू ईयर अभी समथिंग मैं भी न्यू ईयर पे होके आया इंडिया ना। मैं जॉब स्विच कर रहा था तो मेरे पास टाइम था। मैंने कब जॉब स्विच कर लूंगा फिर उसके बाद पता नहीं कब जाऊंगा। तो हाँ तो मैंने कहा एक बार हुआ था वो क्या है मैं बहुत महंगा फ्लाइट मिला मुझे। अभी फिर दोबारा मैं कहा मुश्किल है जाना। अभी मैं देख रहा था फ्लाइट बहुत महंगी हो रखी है। अप्रैल की भी महंगी है। बहुत भाई बहुत। तो उस चैट में है लोकी ने भेजा 7 लाख की फ्लाइट मिल रही है। हाँ देखा वो। तो जाना कैसे? भाई मेरे को जाना तो था भैंचोद मगर फ्लाइट का प्राइस देख के मैं खुद पागल हो गया भाई। कब जा रहा है? आपका सोच रहा है? मेरे को मई में जाना था भाई। मैं अभी बुक करने वाला था भैंचोद। तो मैंने पेरेंट्स से बात की। तो मई का भी इतना महंगा हो गया? भाई बहुत भाई। मई का भी? हाँ भाई। कितना दिखा रहा है? क्या? कितना दिखा रहा है? मैं देखा था तब 6,000 यूरो दिखा रहा था भैंचोद। 6,000 यूरो? हाँ भाई। 6,000? हाँ भाई। बहन चोद। पता नहीं भाई मेरे को लगता है भैंचोद एक आध महीने की पूरी सैलरी जाएगी भाई जो टिकट में। हाँ 6,000 तो बहुत ज्यादा होता है भाई। पैसे नॉर्मली तो 600 में आ जाती होगी। हाँ मैक्सिमम 800-900 ले ले भाई कि तू थोड़ा प्रीमियम इकोनॉमी प्रीमियम में जा रहा है तो। मेरी पता नहीं 1,000 की थी शायद। मैं भी दिसंबर में गया था। मैं तो न्यू ईयर टाइम पे गया था तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था इतनी महंगी होगी। Absolutely. And with this timeout, obviously the Coinbase win condition going to be pinned around some of this inventory that's carried across. Again, we're huffing the hopium here, but it's what they can purchase around what's saved from the previous. It's looking like it might be a Guardian or two. मेरे तो फैमिली प्लान कर रही थी। क्या? घर वाले बोल रहे थे कि लंदन मिलने आते हैं। घूमने आने के लिए क्या? हाँ ना। हाँ यार मैं भी सोच रहा था पेरेंट्स को यहाँ पे जुलाई अगस्त में लेके आ जाऊँ मैं। बट उसके लिए यार प्लानिंग चाहिए होती है प्रॉपर। अगर ये सब बकचोदी रहेगी प्लान कर ही नहीं पाएंगे। वही तो यार क्योंकि उन लोग को भी तो सब अपना देखना पड़ता है ना ऑफिस का और टिकट विकेट करानी होती है। वीजा उनका तो वीजा थोड़ा और मुश्किल होगा। टूरिस्ट वीजा शायद मुश्किल होता है। नहीं यार आयरलैंड का तो हो जाता है। अरे मतलब प्रोसेस रहता है ना। हाँ बराबर। मेडिकल कराओ ये कराओ वो कराओ अपॉइंटमेंट लो वो सब चोदी वो करना रहता है। वो मतलब थोड़ा हेडेक है वो भी। मतलब हर एक बंदे का 10,000 रुपए तो चला जाता है। ज्यादा ही है यूके का तो ज्यादा ही है।
Needs to make sure they can cross up behind. There is a lot of threat in middle, and Forsaken, the one to maybe punish this cross. भाई दीवाई ने ले लिया भाई, दीवाई ने ये साइड खाली करा दी है। Bodies on the other side there. Plant's still not in. Just about cycled across the site now. Issue being no shield on EU. Nerve and Alim. Wrong info है बे. We can post on a deeper angle here. Wrong info नहीं है, वो मिड का बंदे को मार रहे हैं भैंस। उनको पता है कि जहाँ पे नहीं तो ये पीछे क्यों है? मिड से क्यों नहीं पुश किया इन्होंने? नहीं मिड से पुश नहीं किया क्योंकि उनको लग रहा है ना कि अभी मिड से पुश आएगा करके। तो उनका मेजर नजर मिड पे ही होगा देखा जाए तो। नाइस। उनका ऐसा है कि भैंचोद अगर ये रैप अराउंड कर सके तो हम क्यों नहीं? समझ रहे तू? ये बॉक्स क्लियर करने वाला भाई, बॉक्स क्लियर करो भैंचोद, मर गया। कितना रहा टाइम तेरा? हो गया भाई। जीत जाएंगे भाई, ये तो जीत जाएंगे। I think you're right as well. ये तो जीतना ही चाहिए भाई। Some of these rounds, if you're going to write off a map, it's like, right guys, let's take a fight mid. Like, don't just sit back and take this. Exactly, that sort of thing. At least टाइम बता। मैं कल मेरा पूरा रूम साफ करना है साला, मेरी गर्लफ्रेंड अगले हफ्ते आ रही है। ये हफ्ते आ रही है मतलब, सॉरी। बोल क्या बोल रहा था तू? टाइम बता टाइम। टाइम मेरा अभी तो रिप्ले चल रहा है मेरे यहाँ पे। तो स्लो है फिर। 10 9 8 7 तेरा क्या चल रहा है? Something. Head first, he dives in. अच्छा स्लो है क्या? अरे हाँ यार मैं लाइव नहीं है, सॉरी। PaperX want this one sewn up. They're done with this map. It doesn't matter what you do now. It would need a miracle now, and look who is here. खत्म भाई, अभी क्या 1v4 है भैंचोद, हो गया जीत गया। It's done. खत्म हो गया। Lead to split today. That is where we are heading. That is what we wanted. At this level of quality, चल भाई ये हो गया भाई, अच्छा है भाई, कम से कम ये तो तीसरा मैच देखने को मिलेगा भैंचोद। business. स्प्लिट। एक दूसरे के मैप पे जीते हैं। हाँ वही तो भैंचोद। मेरे को लगता है भैंचोद इतना फर्क नहीं पड़ता मैप पे। Give you a Russian standard speech. Like Nazi. What energy are we saving, guys, for the airport? For an airport in 3 days. देखो है। हाँ। नेट से बकचोदी कर, नेट से बोल रहा था ना। हाँ। लो भाई ट्रोल कर रहा है। भाई समथिंग रशियन है ना? हाँ। साला ये PaperX में जो टीम कितनी मिक्स कल्चर्ड है ना? इंडोनेशिया के हैं और कहाँ के हैं? सिंगापुर का है, मले का है और हाँ मले है। पर अच्छी टीम है। मैं जब आयरलैंड में पहली बार आया था, एक मले लड़की को लीड कर रहा था, मतलब इंडियन मलेशियन रे। अच्छा। ये खतरनाक लोग होते साला, मेरे को पता नहीं था भाई मलेशियन में सेकंड लैंग्वेज तमिल है भाई। है? हाँ देख तू। पर बहुत भरे पड़े हैं मलेशिया में। सेंचुरीज अगो वहाँ पे किसी साउथ इंडियन रूलर का रास्ता ना। पता नहीं यार, वो वहाँ की हिस्ट्री मुझे इतना पता नहीं। सिंगापुर, हाँ। सिंगापुर का नाम सिंगापुर पता है, उसी वैसे ही पड़ा वहाँ पे। उनका जो वैसा आइकन लोगो वगैरह भी रहता है ना, वो शेर है, सिंह से आया वो। सिंह, शेर को सिंह बोलते हैं ना। अच्छा हाँ। तो वो उससे सिंगापुर आया, क्योंकि वहाँ पे पहले वहाँ पे मिलते थे, वहाँ पे बहुत होते थे। तो जो ऐसा साउथ का कोई किंगडम था, उसने एक्सपेंड किया वहाँ पे। वो पूरा साउथ ईस्ट एशिया रूल करता था, धीरे धीरे सब टूट गया। सेंचुरीज अगो की बात है, तब से सिंगापुर का नाम है। अच्छा सही है भाई। मेरे को वही ना यार, मैं ऐसा पार्टी बीटी में गया, मेरे को उसके दोस्त मिले। एक मैंने इतना हिस्ट्री नहीं जाना यार, तब तो डेटिंग के टाइम पे अपन बंदी के ऊपर फोकस करते हैं, उसकी हिस्ट्री के ऊपर नहीं, कंट्री के। हाँ ना। फिर बाद में पता चला उसको तमिल भी आती थी, उसको मले भी आती थी, उसको फिर बाद में और एक कोई तो 3 लैंग्वेजेस आती थी। जैसे इंडियन लोग होते हैं ना कि भाई उनको भी पता होती है, राइट?
तो यार वैसे ही उसको भी कोई तो 3 लैंग्वेजेस आती है। मतलब ऐसे है क्या मादर चोद। फिर मैं थोड़ा रिसर्च किया, फिर बाद में हाँ पता चला ओके ऐसा है करके। फिर बाद में वो बोली हाँ ऐसा होता है ये वो फलाना ढिमकाना। बट हाँ भाई चल मैं कॉल करके आता हूँ नेक्स्ट मैच से पहले। कितने मिनट आएगा भाई? ये मैच से पहले आता हूँ। हाँ चलेगा 10-15 मिनट तो लगेगा इसको चालू होने को। चल कर ले फिर। PaperX strike back with a decisive map here at Masters Santiago. Only our second match that's even gone to 3 maps, and PaperX still fan favorites despite the story of Furia. The crowd here on their side. Yeah, PaperX in both those series, the one to take it to 3 maps, and in such PaperX fashion, this Breeze just looked like a complete return to form, and honestly, this match living up to the expectation of PaperX being an outsized favorite. I was scared a little bit right at the beginning, but my fears were dispelled quickly for PaperX. They're kind of getting destroyed over on that B side. Furia came out really hot. I liked what I was seeing from a limb early on. Forsaken was getting caught in some early positions. He really was. But then later in that half, he started to heat up, and especially playing the Yoru. Once he started getting the Outlaw in one of the rounds, into the AWP with another one of the rounds, you're just taking over on Breeze. It's one of the best maps for those weapons. Do you think that's because there was an adjustment to the plan, the game style, or is it the players kind of settling into playing better in the match? Like, what's your read going forward? It felt like for me, at least in the case of Forsaken, just reining things in a little bit and letting the game come to them. It felt that way late on Haven as well, that they were trying way too hard to make things happen. They were forcing plays, but they started to relax and just let Fury come to them. I do also think the latter part was a big piece of the puzzle, especially that second half. They were making a lot of the same individualistic plays. They were making the aggressive things that they got punished for in map 1 yet again, but in this map, they were hitting more to the normal PaperX standard. I think that was especially true for Jing and something who really came online in this game and closed this out so clean. Well, we were talking earlier on, setting up this game, about Jing and Forsaken actually being like weaker points so far at Masters Santiago. Something, though. Yeah, not quite coming online, and yet here, I mean, they absolutely blasted. Jing and Something both going nuts. Yeah, it's interesting to see a Furia who switches Koala off of the Jet, where he had been so excellent, versus Something being put back on that role that's always been excellent for him, and delivering the way he has on Breeze for pretty much forever. It felt like you could really see that massive comfort in his play, the way that he was just working mid, pushing down solo, finding big plays, opening kills just on his own. And then Jing on the Omen, especially that anchoring, that when he started to activate on defense, playing some unorthodox positions on B where he could teleport around, getting multi-kills. I feel like that might have been his best map of this tournament so far, honestly. I mean, it's got to be. Some of the impact. It's absolutely got to be. Well, quickly though, just on Fury on the other side, what do you think about that compositional adjustment, Mimi? You said they moved away from Koala Noob's Jet. Is that important to the scoreline here? I think it is a factor, but I don't necessarily think it was everything in the match. I liked that in match 1 they played their same style, but refined it against PaperX. Here, I felt like they moved away from that success a little bit. You're, in my opinion, better on the macro. I think the flashes are very helpful to have on this map, but at the end of the day, Koala takes over the server when he gets to play that Jet, and he could not become a factor on this map. I want to sell you a narrative here, or at least pitch you on something to see how you feel about it. Because if that map had happened to start the series, I guarantee we'd be talking about they're crumbling, the #1 seeds are out there. Does it affect the mentality of players if it's map 2? Well, funny enough, if you look at the qualifying match that Furia had against MIBR, the second last map, they got dominated on Breeze. The final map was split. They rally back, win, and get into this first seed position. So I think that at least regionally, they've displayed that they have the resolve to get themselves out of a situation like this. Listen, we're talking about that Koala Noob Yoru. He's going to be playing it on split. He's going to have to turn up. But I think that on that map, the team does an excellent job at putting him in positions to find success with that operator, especially on defense, the way they work the lanes. They're so good on that side. I really do feel like they can bounce back, have this at least be a close affair. The real test for a team's mental isn't if they can come out and dominate a quick 2-0. It's when they have that bad map, if they can rally. Like
like you say, they've done it in Americas, but it's a very different game here with how loud this crowd is, with how quality Paper X is right now, and the way they've warmed into this series. But I agree with you, that going to Split, getting to play a map they look so good on, is a good direction for that bounce back. I would say it's their best map in the pool currently. I've been amazed at how good Furia looked there. Yeah, I think it's either Split or Abyss, which was banned by PRX. Now, in this game too, on the side of Furia, I do want to call on their new star player that was just rising so quickly through the Challengers ranks last year, Alim, because he's going to be picking up the Waylay for the first time on this third map. And I think in terms of that agent, he displayed absolute top tier, if not the highest tier play of anyone on that agent throughout their kickoff run from what we saw in Americas. But he hasn't found that same form yet today here in Santiago. I think that he is one of the biggest keys to the success that Furia had at home, in particular his play on pistol rounds. He was so consistent in getting a shorty opening kill, just diving on someone on those pistols, and Furia won a ridiculous amount of them. Today, they're 0 for 4 on the pistols. Isn't that crazy? It is wild, and I want to see Alim being that guy to lead the charge, to win a pistol and get Furia back in this match, Wyatt. Absolutely. Listen, we've got Furia and Paper X, the first seed from Americas. Last year, an organization that couldn't get a single win, on the cusp of maybe beating one of the greatest teams of all time. It's going to come down to these players finding their form that they had on map 1, but finding the teamwork that they had on map 1. And I think this is just the map for them to do it. They display incredible fundamentals here when they were working their way through kickoff, but Paper X are a totally different beast. So far, they've beaten the other 2 Americas teams in this tournament, both on Split. They could be going for the 3-peat in both regards. A 4-match win streak for Paper X here, but Furia undefeated. We were begging for it to go to Split, so we'll hand it back over to Pansy and IBOC. This is one of the maps that has been iconic for giving us great games. Yeah. And these two have just delivered already. Haven, an unbelievable display from Furia on a map that's been home for Paper X. Breeze, a complete elevation from Paper X, suddenly looking world class again. Where the hell does Split land? I mean, it's just such an anomaly here. But you've got to think back to Paper X's ability to adapt on the fly. And we're talking about obviously the benefit of coming in, having the bye to playoffs. You had the chance to really study and diagnose what went wrong previously for other teams. But can you put that into action here versus Paper X? Furia here on the attacking side. Posted up outside A right now, and 3 members ready to greet the wall for Paper X. Oh, it's gonna be like this from the start, is it? Is this what we're in for? A standoff, whether they know it or not. Just around that corner. How long does Paper X hold this? I guess as long as until they don't feel contact anywhere else. Necessary, yeah. And for Furia, they walk closer. The paranoia ready. 3 players poised for this. Alim does get taken down. The Paper X trap gets sprung. Forsaken going back for more with a picture on top. Oh, it's just perfect from Paper X. Beautiful opener here. Just Artscene and Nerve left to try and recover. Already Devi making moves down mid. Sheriff in hand, and he will tuck. God, it feels like map 2, doesn't it? Okay, Devi gets the job done, but we got to talk about that start. Paper X looked prepped for that. He really did. Happy to commit to this setup early on. Faith in the retake towards B for sure. Again, which is something that's looked fantastic previously. Again, certainly something I've got my eye on, but it's more these rounds. Yes, it's a pistol, but Paper X posturing up so deep. It's only going to be the shorty invested on the side of Furia, and another chance to farm here. Yep. Right place for Jing. Well, I say that. Let's see how he handles this one. The paranoia is stunning. And look at the combination of utility that it took to take him down, but still, they get the sight. That's a bold approach from Alim. I don't know if he thought he had complete freedom there. Going for they the have put it back maybe? to a 4v4. Maybe just going for the weapon there to try and
snowball this round, but they're already coming back in though, Paper X. They have the better purchase, keep that in mind. They have the rifles. EU gonna be blinded. Artin, great trade. He does at least get the Bulldog to play with here. Envy gonna be forced off the corner. Hold on, they're still making a go of it until then. Devi doesn't let it go too far. Great damage from Furia though. Yeah, force out a couple of rebuys here. Not sure what Devi's gonna carry across here. Great timing again. The paranoia back in, the flash as well. It actually forces Jing to satchel back into the snake bite. A nerve to catch it. Yeah, the retake just looks so well drilled. Like I said, it was the cornerstone of their success previously in Envy. Another highlight player on split for Paper X here in Santiago, tasked with anchoring the A site time and time again. He even said, put some respect on his name now. Is he given that here versus Furia? Furia need to get the ball rolling again. It's felt like a bit of a drought from map 2 till now. I'm not gonna note something's position. Early attempt made from Kuala Noob here. Does Envy get caught? Yes, he does! A little, I don't want to say lazy, but maybe overconfident that he had that space to play into. Yeah, somebody hadn't slipped through to ramp already. Something quick on the TP though, so able to reset after that. No commitment on the spike just yet. It's still positioned down into the spawn with Artscene. Not sure if Forsaken's taken any contact there or noted anybody, but he's playing deep on main. Yeah, I want to see where Furia decide they want to head here. Again, when you're seeing those two players kind of go towards the A side, towards the judge. Don't go towards the judge. Anywhere else. No, they're going to it, thank God. There we are, that's fine. On the other side would be Devi, who's been a bit of a problem in that last map as well. Him and Something doing some really nice work. So it is, I mean, tentatively on his shoulders if he can do something pretty miraculous here. Still going to toy with the idea of taking away some bodies. Devi slipped forward. He's playing towards Pillar. 15 seconds, Furious hand gets forced. Kuala Noob, brilliant work. Finding stability on the site, allowing for the plant. EU playing it forward. That is the team we are looking to see. Find that fire behind them again. Furia finally stopping the rot. They keep pushing forwards as Furia finally stopping the rot. They keep pushing forwards as well. Something I'm definitely looking out for. Again, not a full purchase from Paper X. Furia keep 4 alive. Pivotal to their success early on here on the attacking side. Good ult progress for a couple of members, but not going to see anything to bring into round 4 here. Something may be going amiss in Alex's eyes. But we'll see another invested ramp stack here by Paper X. Having to kind of task just one player with holding down the fort, taking contact in mid here behind the orb. Issue being devised only on a Guardian. Kuala Noob's, okay, he's only, what did he? No, okay. Gonna have to be a bit careful now. As the reaction from Paper X is here. You've got Jing now, pulled himself over towards this side of the map, get some pressure though. Oh, no way! No way! No way! Jing, I can't believe my eyes when you're landing shots like that, man. Give me that replay, please. But still, it ain't over yet. It might be now though. As Artin tried to find some space for them to work into. And a similar scene on the other side here for Nerve. It's a shutout of a round, and it's really on Jing's shoulders there. EU left in a 1v4, does have the spike, but Something posted. Send out a Prowler here to pull top of the Paranoia to follow. Oh, they want the account closed, don't they? Okay, EU. 30 seconds. And that's instantly forced Forsaken to fall away from this. Devi is wrapping this. Oh, but they're so close. You heads up for this. Oh, it looks like you are. Game back on, fights on, 15 seconds. Where do you go now? It is through a wall of players, though. Envy's still here, Forsaken's here. I think he might be out of time. Just a little too late to the party. I mean, the damage is huge, though. The damage is great, but
Felt like there was a chance for that to have maybe turned with a couple more seconds. But for PaperX, they'll lose out on 3, but... I mean, no, hang on, what? Envy? Why? Envy's been making some curious choices. He was the one who got caught on that crossover towards that rafters. makes the buy even worse. I mean, it wasn't looking good anyway. No. I mean, this is just outrageous from Jing. Give me that again on repeat. Beautiful stuff. (3-1) the scoreline here. And we'll get a pretty good purchase to follow out from that. And again, something going forward for Jing. They're walking middle, and he has mopped him up, punishing PaperX for their aggressive play Forsaken, and it's just overwhelming. Furia sending a message. Well, they've got to go back to the spike at some point. I think there's someone going to be collecting that in V. He needs to keep his composure in these rounds. He's going to be found this time, but Furia, they've had enough, man. How quick this round is just ridiculous. A second posted by Furia. And PaperX is looking to brawl mid. Again, Furia have had this space to play into early on, Lauren. But again, I mean, Forsaken can't really TP to anywhere safe in that situation. So Furia will laugh it off. And a massive overstep here, a reset of the funds. But Ultimate's starting to come online here for PaperX. I feel like my mind's going to remember these last couple of rounds as potentially something that caused a bit of a spiral. We're yet to see, though. As PaperX do have a little bit of a stack here, a little bit of a trap. Noob, maybe trying to just feel this out so far. We can already see the reaction, right? It's a heavy rotation, trying to bait him in, draw him in. They'd love to see them chomp down on this, but I feel like they should be a bit more cautious. Something desperate to find a connection there. Good info, but... Yeah, very good info on the spot. If you're reading this correctly, though... I believe Nerve tasked with holding down A main. Actually, does still have some... Where's the spike going, Michael? Support. They're reading that PaperX would have rotated off this. But they've just heard additional util going down, surely. Like, oh, God. What? I'm so scared of how this goes. And Koalanu's behind Forsaken. This has all gone bizarre. And now something's found EU in middle. The spike's now kind of adrift. Koalanu doesn't feel secure or safe to work forward. 30 seconds, 30 seconds. And something just needs to buy time. If he can just be in enough of a nuisance, they are in a real problem. TP backside, and look who's near. Something is closing in. He's still got this space. He can call this through. The rest of the team from Furia are getting here, but have they overthought this? And now there could be problems. Something! The one to start it might be the one to end it! PaperX! Oh, this is devastating for Furia. It's not over yet, but you're looking at what's remaining. Koalanu's? Can't say he's not got heart in this fight. How do they dig him out of main now, though? I don't know. Envy's only got a classic, though. It's going to be on that. That was where I thought it was going to start and end, with that Vandal in the hands of something. But Nerve now with 43 HP. He's got a 1v2. A Sheriff up against him. Divine now with the upgrade, but they've got the time against them. Can he live up to the name? Ice cold. Nerves of steel now. Divine, you got a player on 3 HP against you, and Nerve! He's held the down! That is Nerves of Steel for a Red Bull clutch, making up for what could have been a disaster of a round. I mean, it's just so dicey. This transition to B felt pretty comfortable initially, but then something gets a kill in a situation where the trade should have come so quickly. Yeah. He's able to pop his ult, cause further issues. But Nerve able to put this one on the board for Furia. It's just the start of that round to how it ended, just obscene. Who's next? Okay, got ults coming through. Divine does get seen, so that could be something to keep in the back of your minds. Can he play himself into this? He's up towards heaven. Focus towards CT, but I think that time is somewhat past. So the plant's going to be in very direct an approach for Furia. Yeah, going to get away with the plant too. I'll see prepping the paranoia here. This crunch towards CT.
I'm still looking at numbers. The showstoppers coming through. They're putting everything into this one. It finds nothing. Allen does well to find one. Traded out is though Forsaken. Coming back in is Jing. Clearing house, clearing sight, and dropping more players. Koala how are they still in this? Forsaken's found! Koala Noob with his own heroics. I can't believe it. This is what we were complimenting PaperX on, Mike. Their diligence, their ability to be on the right timing, and this time it falls apart. But already Fury have done the hard work. Early on in this series, sure, forget map 2, but their willingness to go forwards in these situations and stand their ground, where previously PaperX had run away with that pressure. Fury are doing everything right in my book. And a very, very close scoreline here. Yeah. At the start of this decider. I've got to give it credit as well here. EU, in my mind, has been exceptionally good as well, especially map 1. He kind of stood out to me there. I was wondering if that was just maybe something really comfortable for him. Seeing him already in this position, showing that same validity, fantastic work. Again, Koala Noob, this guy, you talk about resilience and that kind of heart for the game, right? It's hard to not enjoy that idea. And not too many years ago, you put PaperX in that same category. Next but level now, they do sit as the favoured side with what we've seen, but at 3-4, Fury are in the lead. Sure, and yeah, coming out of this timeout, the coin-based win condition being around what they can do with this purchase. The investment's already come in terms of something, and Jing from the showstopper previously. The pit is here for Devi. He's not going to throw a weapon in to maybe capitalise on it. Going to need someone to activate here. I mean, issue being there's 3 players that are very comfortable in terms of the purchases here for Furia. So they can play a scrappy round in this anti-eco. There is a lot of sheriffs on the other side. We've learned our lessons. I don't need to tell you at home. You guys know it. We know it. Basically a buy round. For PaperX, yeah. Yep. So let's just see how Furia want to navigate these waters. Is there anything in the works for PaperX as well? Not particularly. Bloody hell, man. Forsaken. And he's been a highlight for PaperX, right? One of those big players to eye up, but instantly removed. Devi going to try and backfill that space. But in the meantime, look at Furia. Already trying to work the map, manipulate that open space that Devi would have to react to. Again, PaperX almost committing towards this stack on A. And even just showing his hand on B might just force Furia to consider rotation through vents. It's just a clearance for now. We didn't love what we saw last time. You know, the stack, the walking right into it. This time I think they're learning on their feet a little. Nerve wants to test the waters. The PaperX sitting pretty deep on this. They don't want to give away too much here. Jing gets contact, finds him, drops in, Nerve's gone. Okay, upgrade there, and that should really spur on the pack of Furia to head towards that B side. Does Devi then get any sort of impact now? He's probably just going to allow the plant to happen here. Might catch somebody in transition, but Alem not giving him a peek. And he's still going to respect this team. There's going to be a fight in middle, and Jing's gone down that time. So there's a problem in mid. Furia resetting a little bit deeper. Repositioning, great paranoia. EU getting closer. Oh, it's lovely positioning from Furia. Something, nice shot, but not nice enough to turn it around. 2 remaining, and Furia, they're up to 5 rounds. Do you remember what we said earlier, Mike, about those couple of rounds with a couple of weird choices that feel like it's kind of turned the tides here? It definitely has. A string of 4 in response here from Furia. Similar to what we saw in terms of a resurgence in the first half from Haven. And a very crucial buy round now for PaperX. Comes at a moment in the half where things can really spiral out of control very quickly. Certainly could. High, throw down the pit, secure control of mid at least early on here. Remove one of the tools that Fury have relied on a bit of freedom up until now. I mean, other than PaperX's previous attempt to just barrel down mid on the barrier drop. They're kind of herding them towards this A site here. It feels like this is what PaperX would like, to an extent, right? Well, what they were great at doing is kind of doing a little bit of damage, maybe getting a kill, dipping out, and then having a very pacey 5-man
Flood retake. Spacing not really there unless Furia take their time on the way in. Okay, we've got Jing already starting to lean over towards A. You see that ult for Alan being considered. Here comes the site hit. Let's see how PaperX try and handle this one. Something's staying on site. Something's staying on site. Finally gets out of there, but the trades are coming in. But Furia just waiting for the walk out. Decimating. PaperX playing ahead of where we thought they might. This Devi has to obviously leave that pit long ago and walk into a 1v3 where the odds are stacked against him now. The first cleared, but the next two difficult. 1 toward Pillar, now 2. They'll try and limit their options, but hang on, pretty magical. Ardsin, he's thinking about it. How does he want to play a Devi? Doesn't quite know where Ardsin is. He wants to pin him down, find an option. The time going to determine the outcome soon enough. Devi has to tap the spike. Ardsin waiting. Devi can't do it. Furia again. It's close, but they're winning these rounds, Mike. Again, you can see the shift of focus towards catching players rotating out of sight or catching the early side of this flood. And I think almost PaperX have baited in a little bit by finding a kill here from Jing. Something obviously finding a kill. That's the green light for them to contest. And Furia lap it up. Devi got a really tough situation in terms of the clutch. Side by sides, the longer on this one. Force a second timeout here. A 6-3 scoreline. PaperX just absent from the last few. Looking a little bit checked out to me. I want to see some idea of how they want to take this back, and it also just doesn't look like the team that we were complimenting before. And maybe you don't get to play the same way. I think Fury have done their homework. They've watched it. They have the correct approach here, tempering the aggression really well. In some of these rounds, and now they have the advantage of just basically driving this home in terms of the economy advantage. Jing has done a ton of work to get another showstopper in hand. Unfortunately, there's nothing else available to potentially swing this. In terms of ultimates, it will be Sheriffs and a Guardian to make a go of things here in round 10. In a half that feels almost like a lost cause. 5 rounds in succession for Furia. 5 rounds in succession for Furia. Feeling somewhat untouchable. They've been close rounds on occasion, down to 1v2s, 1v1s, but the reads have been right. The approach is correct. The players online, and keeping PaperX under the thumb. Squalanup once again. Look at the respect shown to the showstopper. Wow, speaking of respect. Oh! What? Huh? Show me it from his side. That was so fast. It's a goal. Catch him on the TP, by the way, something out of that. Beautiful stuff. Open up round 10. Very happy now to let this breathe a little bit. Wait for the aggression on the A side, but it's not coming just yet. Stuck in this choke point though. Jing, he's so antsy. And you can see it, you see how they're playing, you see it on the cams, you see it in every aspect of PaperX right now. They look flustered and they look done for. Devi once again tries to make it over here. It's too little too late. Furia have everything right, but show me that beginning. Well, that's not the look you wanted to see on the coach cam, but this. For somebody that started so slow in terms of numbers, right? Coming alive again. In this decider. Furia mounting a very big cushion here. Towards the end of this first half, buy back in from PaperX. And you're staring down the barrel of two very different finishes here. Look at what's behind this buy. This is 7-5 or 9-3. Yep. Look at the pace. Furia are making PaperX sweat. You don't see it often, let alone from a team that's just touching those international stages.
Whereas PaperX, long time players at these sort of positions are absolutely being taught a lesson today. Now the aggression all but dwindles for PaperX. See the adjustment already made on their side. Oh, look at his rotation. It's going to be confirmed as well. Faked out here, and Forsaken staying. Yeah, they're going to double down. They're sticking to their guns. Great paranoia. And a great shot again. What? I don't think he saw it. Maybe he did. I don't know. Again, PaperX finding magic where there shouldn't be any. So is there any room to run? 25 seconds and they have nothing on the A site. He flashed off the angle. A chance to catch the rotation. They They're can't committing really here through stop. Vents, no. And it's on Divide. Can he deny them on the cross through? Going to punish one. Can't get the second. 10 seconds. Still going to go towards the side. Something. Catches one midair. And Furia on the run. It looks like there's a window of chance for PaperX now. Furia just couldn't quite pull those rotations. A ridiculous kill from Forsaken. I don't understand it. Absolutely wild. He's backpedaling here. Paranoia to stall. What is that? It's only really the clock that forces. It's only really the clock that forces Furia to scramble some sort of recovery. They spend some of these key ultimates, still have EU and Nerve. They have some things. Shift back towards mid. Devi has to be conscious of freedom he had previously and stuck now behind the orb. The orb's going to drop. Devi, how are you winning that fight? Okay, finally gets put back into place, but that just felt mad. Still got some ults here. The refight in middle. PaperX want that control. The post that through, but you're looking at the main bulk of the site hit towards the A side, and something's been let off the leash. Maybe with some God-gifted timing here. EU trying to punch one in the middle. It's something on the flank. Still cutting Furia in half here. Great C's. And EU struggling to get back in time. He wants to try and help him out, but something keeping him at arm's length. The body's here now as well. Still two on the site though. They can still make a stand here. 3v4. Jing, it's not clean on the first contact, but they're keeping him further away. And something's trying to clear sight, give them that full information. He's found good information, but he might actually be... Okay, sprayed in the smoke, doesn't get the shot they wanted. Quantum! You are absolutely nuts to get two there. And down to the 2v2, Forsaken doing Forsaken things. Yeah! They'll get you one of those! It's just ridiculous to find these last two rounds. A lifeline for PaperX in what felt like a brutal dismantling by Furia. I thought they were dead, Mike. I thought PaperX were halfway into the grave. I'm wrong. They're still alive, and Furia still have more work to do. Crazy, भाई crazy.
5-7. This one, I mean, changed in my mind in those last 2 rounds, Mike. It was how many in a row? 6 for Furia. And then just a heartbeat of life for PaperX. 2 very polarizing outcomes PaperX were faced with from that first half. Again, success in the pistols is where I look to now in terms of this series. Can PaperX tie things up, swing the pendulum? I don't think it necessarily tees them up because Furia, like I said, are not backing down. No, they are in this. refuse to bow down, to relent to PaperX today. EU just going from strength to strength. Koala Noob shining again. They have to repeat that now on the defense. PaperX stacked up here for the pistol. Big gap between Artsine and the next player. Does have a TP here. Yep, Artsine needs to get out cleanly, and he actually does. Yeah. So the trade of effect here, PaperX going to take the site, get the plant, and something's just going walkabout. I mean, okay, well, if that's what we're going to expect, I guess no round, no second, no peak is safe, but Furia are here. Back early, ready to retake, and already pretty damn close to this. Jing's got to prepare himself. They're not far away, Forsaken. They'll try and deal with that horn, but it's going to be Forsaken swinging. The pillar going to go down, and there's something that checkmate in middle. Perfect. Perfect synergy from PaperX. The pistol is theirs. Continuing that success. The right foot forward here to start the second half. Beautiful take as well as Devi. Again, making that Sheriff just look... Oh, God, he's good. Almost trademark for him. Casual. A chance to tie things up. It's only a Guardian. It's 2 Stingers and a Sheriff. Well, a little swap out here from Jing. Okay, let's see him keep it clean. Some dangerous round 2s from Furia. Kind of gets a little deeper than expected, but he's drawn Artsine off default here. Yeah, he looks a It's a little slight indecisive. panic, but quality. Drops down, but TP's out. Yeah. Okay, Artsine. Nope, gets cleared. Jing. Clean work here. Comfortable stuff. Not really feeling much threat yet. This is good from PaperX. This is going to gap close, right? This is them right back at the door. Oh, dearie me. I thought he was on for that one a second longer, and he might have been. And Jing to make up for it for alive, Mike. It had to be clean. It was. No threats found in round 2 this time on the second half. Something Devi and Jing as well. Crucial ult progress in terms of building some momentum early on. Drawn off default here. Unfortunately, Artsine just has no playback in. The full force of PaperX hitting the site. Will be well protected here in terms of the bonus. EU looking to maybe punish some light shields, but there aren't any on the other side. No, they've not been getting the same amount of भाई क्या बकचोदी चल रही है? even in some of the earlier aspects of this game. कड़वी? Unconfirmed damage, but he feels that there was a little bit of a look towards middle. भाई क्या वो crazy बकचोदी चल रही है? भाई फ्यूरिया ने बहुत गन मारा बहनचोद, तू देखना चाहिए। देखा मैं भाई, देखा, मैं देख रहा था, मैं पैसिवली देख रहा था। बहनचोद ये और ये कितनी गलतियां भी कर रहे हैं PaperX वाले। वही तो। अबे वो राउंड क्या लंड था बहनचोद, एक राउंड में देखा वो क्या क्रेजी राउंड था। फालतू कितना पुश कर करके। वही तो। Hold on. They're not done with this yet. They've got side control and they've got a plant. Let's look what this retake looks like, even with those better weapons. Something able to completely disconnect from this. अच्छा बोनस खेल रही है क्या PaperX? PaperX, this I'm a bit worried for Furia here. Yeah, that's a rough look as PaperX trying to really find stability. Furia need a spark here. Not gonna happen just yet with a trade. 3v2. EU trying to get up close. 1 HP though gets found for free near. Nice भाई, nice. ऊपर स्मोक, हाँ वो और ये पीक भी कर रहे थे, स्मोक कर दिया बेंचेस पे, इस पर गया नहीं। A steady march back. Surely we're gonna see a timeout for Furia. ऊपर से कोई खेलता मत हो जाता बेंचेस इसका। You've got to take a breather here. सब लोग नीचे से ही खेल रहे थे साला। नहीं मगर ऊपर 4 सेकंड था जज लेके बेंचेस। Feels like it is. कोई नहीं, मैं जज लेके बैठा था 4 सेकंड।
Conversion here of the bonus. Force Furia to consider their approach here in terms of Furia का first time out that's 5 rounds across the half now. इस map का? हाँ. PaperX ने तो time out ले ली है. There's not going to be many in terms of the purchase. There's not many in terms ये of the time out half wise होते हैं या फिर match wise होता है? From nothing here. Match में 2 ले सकते तुम लोग. तो match के ही होते हैं दोनों. मुझे लगा half के 2 होते हैं. नहीं नहीं नहीं. 1 point away. तो डिफेंस में ले लिए दोनों ने. PaperX ने दोनों ले लिए भाई. अभी उनके पास कुछ बचा नहीं है बेंच. PaperX again showing they're just able to reset mentally, shift their focus because it's not been them on top by any stretch throughout this series. Yes, Breeze one-sided, but how many times did it come down to just the finest of margins? पर इनके टाइम आउट में भी बात तो कर सकते हैं अपने कोच से. Seem to thrive in it somehow. शायद से पता नहीं है भाई. कर सकते हैं. As you said, it's not much to bank on if you're furious. You may be eyeing up the round after this to have that plan as to how you want to execute this game. And that point, though, it's PaperX up to 9. They have 9 rounds to their name potentially. कोई भी बात कर सकता है. It was such a likely affair into something favorable. ये all chat में बकचोदी करते होंगे क्या? Try and do some damage at least. It's not going to amount to much in terms of the cushion. PaperX have quality, actually postured up, challenging here. Yeah, he won that fight, I guess. But the war far from over. Fury still have 3 players. 2 sat pretty deep towards ramp. Odds in a little bit closer. 2 हैं भाई ramp पे. Confirmation that they've made it up towards ramp. There's a paranoia, but the trap nice. doesn't quite work. Yeah. PaperX just nice spacing to kind of soak that attention up. And they're still going to follow up with these players. Yeah, Fury unable to be as slippery this time. Oh, it's nice. Yeah, it looks like PaperX has got things in line now, crossing the T's, dotting the I's, back to business. एक सेकंड रुक, तेरी आवाज बढ़ाता हूँ. क्या कह रहा है दोबारा बोल? PaperX का fast flood के खिलाफ. हाँ, बहुत मुश्किल है भाई. Flank भी देख रहा है. बट चला गया ना वो अभी. जा रहा है. वो क्या टाइम? अच्छा टाइम तो दिखा रहा है. क्या मैं शायद पीछे हूँ. दूसरा रिप्ले चल रहा है उसका. हाँ मैं पीछे हूँ फिर. जब स्टार्ट हो तो बताइए. हाँ स्टार्ट हो गया. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. मैं शायद आगे हो गया था ऐसा थोड़ा. 32 31 30 29. आगे हो गया. मैं पीछे कर लेता हूँ 5 सेकंड. नहीं 2-3 सेकंड ही. कितना कुछ नहीं है भाई. रहने कोई दिक्कत नहीं भाई. ठीक है ठीक है. PaperX don't slow it down. They might just walk onto an early angle here because Koala Noob's already stacked up alongside Artsine. बेंच जितना ही यहाँ पे ऐसे बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं. ठीक है सिर्फ बैठे हैं PaperX. बेंच अपने उसमें कोई बैठता ही नहीं. इतना बोल लो कि थोड़ी देर बैठो यहीं पे. कोई नहीं बैठता बेंच. सबको उंगली मिड पिक करेंगे. थोड़ा ऐसा प्रोल मार देंगे. Holds his nerve this time. Gives away the game though. They're doing really well at identifying where he is. And now look at surgical in approach. But Artin able to divide behind him. Now done great damage as well. So we're down to a 4v4. This is not comfortable yet for PaperX. Side cult मिलेगा ना इसे? Some sort of space to move out. Side access नहीं मिला. Shifting their focus back towards mid. नहीं. अबे से एक्सप्लोर कर रहे हैं बेंच. ये क्या? Thought here for PaperX. They have to win out towards male. मुझे लगा साइड का कॉर्नर मिलेगा. नहीं भाई अभी ऊपर से खेल रहे हैं. कुछ तो अलग ही करते रहे PaperX वाले. हो गया भाई खत्म. 1v3. Easy plant. PaperX to pause for thought, worked the map and reapproached. Alem a 1v3. This would be 10 for PaperX. All those close rounds, that map 1 starts feeling like a lifetime away.
PaperX, second by second, getting much closer. Alan, he's got another chance, and it fades as Envy कर रहे भाई, कमबैक कर रहे हैं. holds his own there. 10 made for PaperX now. So close to just quietening down that Furia side. And Divide just able to create so much pressure with this pit. You see the instant decision making, the paranoia landing perfectly onto Koala Nu, and I think his TP had just expired. He was happy to then commit towards holding this sideline. मिड से पुश आने वाला है. वो मेन से पुश कर ही नहीं सकते ना. बट मेन का इन्फो नहीं ना, बंदे तो चाहिए मेन होल्ड करने के लिए. नो बट एक बंदा मेन में स्पैम करने का और दूसरा बंदा मिड पे देखे, 2 बंदे मिड पे रहेंगे बेंचो, क्रॉस में खेलेंगे. क्योंकि अगर उसने मेन का अल्ट किया और वो अल्ट नीचे नहीं जा रहा, मतलब वो उसमें ही है ना. नहीं बट अरे बट ऐसा रहता है ना, जैसे उसने अल्ट किया, अब उसका अल्ट साइट में बहुत जगह तक पहुंच गया, अब वो कहीं से भी निकल सकते हैं, किसी भी पॉइंट से निकल सकते हैं. हाँ बट मेरा ऐसा था कि लाइक अगर वो नीचे नहीं जा रहा, नहीं पता ना, वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने कंफर्म कहाँ किया. वो भी है, उनको कोई इन्फो नहीं है कि मेन से आ रहे हैं मिड से आ रहे हैं, कोई इन्फो नहीं है. उनके लिए तो ऐसा भी हो सकता है ना कि उसने अल्ट किया, अब फ्लड कर देंगे 5 जने अल्ट से. Systematic from PaperX. And the fact that they actually back away from this choke point on 8. खत्म भाई, खत्म. Cleans up a 3K. It's methodical. PaperX on 11. फ्यूरिया में फायर पावर नाम की चीज नहीं है. फायर पावर खतरनाक नहीं है भाई, ये मारते तो हैं, खतरनाक ही मारते हैं भी. नहीं मारते तो है, मगर यार वो ये कि होल्ड नहीं कर पा रहे साइट, समझ रहे तू. साइट में तुरंत एंट्री मिल रही है, ऐसा कोई एंट्री इजी मिल रहा है ना, ऐसा ही कह रहा है. कोई ठीक से एंकर नहीं कर पा रहा, होल्ड नहीं पा रही. Fury is still trying their best. I mean, they've had a bit of a quiet time on this half, obviously, yet to even get around. But it's the difference in PaperX, the composure being tested, and they're passing that test every single time. It feels like, yeah, it is next क्या है? You know, the Jing show or Forsaken or Nongshim or something, should I say, actually. Martin or Martin, ये अगला अच्छा होना चाहिए. Strongest for me is a backbone player, but it's been a आज दोनों united खतरनाक front मैचेस हैं from यार. PaperX. They're on the same page. They course corrected. वैसे पूरा ये स्विस ये प्लेऑफ्स भी बहुत खतरनाक है भाई. बहुत खतरनाक मैचेस है, सारे ही मैचेस बहुत खतरनाक हैं. हाँ मतलब भाई कोई भी जीत सकता है भाई. कोई ऐसा लूज टीम नहीं है. हाँ बराबर. ऑल गेमर्स पता नहीं कैसा खेलती है, देखा नहीं मैंने एक भी गेम उनका, पर जीत के आई है तो क्रेजी खेलती रहेगी वो भी. वो तो है भाई. उन्होंने सीधा G2, मतलब उनको पहला ड्रॉ मिला और उन्होंने सीधा G2 लिया है उन्होंने. हाँ वो भी कॉन्फिडेंस से, पर किसको ही लेंगे बेंचो. G2 नहीं तो PaperX, नहीं तो एनर्जी, नहीं तो BBL, नहीं तो जेंटलमेट्स था ना भाई. ओ हाँ जेंटलमेट्स, सॉरी BBL नहीं जेंटलमेट्स. हाँ वही तो. Their protocol list for this operator is so strong. EU though might have got the timing right. ओ भाई क्या कर रही है? They're aware of it. And PaperX, if they feel untouchable, everything's भाई जिनको देखा बेंचो. Site's already open. Now they know it for crazy sure. भाई crazy. Noob's curiosity doesn't matter. हो गया भाई, खत्म है. भाई मेरे को भी सीखनी है शॉट है भाई. बेंचो हाँ यार शॉर्टी का मेरे को 4 मारी डिवाइन है. वही तो बेंचो डिवाइन भाई. शॉर्टी खेलते कैसे बेंचो? वही ना, मेरे तो कभी नहीं लगती शॉटी बेंचो. हाँ ना यार. And the string of rounds just hard to ignore now. भाई डिवाई 4K बेंचो भाई. यही है मादर जो कैरी करता है भाई PaperX को हर बार. भाई इनकी टीम में पता है, हर टीम में ऐसा रहता है कि 1-2 प्लेयर होते हैं जो बेंचो सुपरस्टार होते हैं, वो हर मैच में मारेंगे. इनकी टीम में सारे प्लेयर ऐसे हैं कि कभी भी कोई भी इतना गंदा मारेगा ना भाई, पूरा कैरी कर लेगा वो.
और वो कोई भी प्लेयर है बराबर EU going to find Forsaken though. And Koala Noob makes it towards देखिए ऐसा होल्ड करना होता है जो साइड but that's been cleared. Jing going to get dug out of that corner and अगर इन्होंने ये साइड होल्ड कर लिया तो सही है भाई first time we're not seeing PaperX get that एनमी भी बहुत लो है or that easy way in. Fury on the right वही side तो भाई at that right time. seen him though 100% yeah पर एक ही मैच 12-7 हो गया मैच खत्म ही है तो मैच हां वो भी है भाई Again Furious simply just have so many numbers now. Able to stabilize initially here after this first wave, first barrage. Bencho. Looking to Ooh, timing. The net, and he does. He finds nerve. Stop it. भाई अभी तुरंत Stop it. He's seen more. Down to 16 though. That's a lot of damage done. You need Koala Noob to maybe not go down to Envy here. अरे wait, we were in a 2v3 and look at something. हो गया भाई अभी बी साइड पूरा खाली हो गया Oh no. हाँ no. हाँ खत्म भाई इतनी एडवांटेज पे भैंचोद फक हो गया इनका मिड आ गया मिड आ गया अरे भैंचोद EU's hopes and dreams might be dashed on this. Good damage is possible. There's still room for play here. Look at the HP on PaperX. But this team, it doesn't seem to matter. The flash he turns. खत्म भाई He still has a seize, but समथिंग के खिलाफ 1v1 जीतना मुश्किल है खत्म भाई 1 HP था समथिंग वही तो भाई ऑनलाइन आ रहा भाई समथिंग ये पूरे एपेक में जो इनका VCT हुआ था एपेक स्टेज तब समथिंग नहीं खेला अभी इससे पिछले जो क्वालिफायर्स थे तब भी समथिंग नहीं खेला अब बेंचो धीरे-धीरे गर्म हो रहा है हाँ भाई चल भाई मैं 10 मिनट में आता हूँ ठीक भाई ठीक थोड़ा काम करना है वो करके आ जाता हूँ मैं ऑफिस का काम कर रहा है अरे नहीं यार अरे मैं शेयर्ड हाउस में रहता हूँ ना तो मेरा थोड़ा पर्सनल हाउस अच्छा हाउस होल्ड हाँ वही वही मेरे को बिन्स बाहर रखने हैं और 2-3 काम करना है तो वो करके आ जाऊंगा मैं ठीक है चल भाई आता हूँ आजा 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 to go here, get down and dirty with PaperX and put up a bloody good fight. They did. They should have their heads held high after that one. Probably one of the hardest form opponents to walk into, and they pushed them. They ran out of steam. It is what it is. PaperX, that capability and validity built through years of these international stages. But for Furia, far from done here. Far from out. But for PaperX, another test passed for them, another tick in the box, and probably the toughest chance yet. Absolutely. I mean, the first time they've really shown they're human, right? It is, and we're going to hear from them now. The humans down on the stage for the Verizon post-match interview. And they have won their first match in playoffs. Jing, how are you doing today? Sorry. So, before all the questions, were you expecting Furia to pick you guys for this first match? I didn't think they would pick us, so I was kind of surprised that they picked us. But yeah, I think it was a good matchup and hope it was a good game. Definitely. Y bueno, le estuve preguntando también si es que se esperaba que Furia lo hubiera piqueado como esa primera partida de playoffs. Dijo que no, pero que fue un juego increíble. Now, for my second question, I also want to know that first map was a bit difficult, was a bit rough, but you guys come back on that series. What do you think was the main error on Haven? I think on Haven we were playing too individually and we didn't really have teamwork. So we figured out that we just had to play more as a team and it showed on the second and third map. Y bueno, hablando un poquito de lo que fue el Haven, le pregunté cuál fue el error más grande que cometieron para no poder llevarse ese mapa. Dijo que definitivamente no estaban jugando en conjunto, no estaban jugando como equipo y ese fue el error que cometieron, que no se pudieron llevar el Haven. Now, I also want to ask, you are playing with the Raze as always. You're also flexing some other agents. First, how are you feeling inside that role? And second, do you think you are the best Raze now in the server? Sorry, can you repeat the question? Can you repeat the question? Oh, sorry. I asked, how are you feeling in this role where you're playing as a duelist but also flexing other agents? And do you think actually you're the best Raze in the server or not?
Yeah, I think I am the best because I played it the most, and for flexing on other agents, I just play what the team needs, and yeah, I'm really happy that we managed to win today. Definitivamente, hablando de los agentes, la Raze, él sí cree que es la mejor Raze del servidor porque la ha estado jugando, es la persona que más ha jugado la Raze, y en términos de flexear lo que son los agentes, también él simplemente juega lo que el equipo necesita, y eso es un juego en directo. Now, my last question, you need to wait for that second match. I remember Forsaken saying that it was a bit annoying playing against NRG. Would you rather play again with them or also against BBL? I think I would like to play against BBL because we have already played against NRG, so I want to play against as many different teams as possible. That would be really fun. Ahora hay que esperar para la siguiente partida. Le estuve preguntando si es que prefiere jugar contra NRG o contra BBL. Dijo que prefiere jugar efectivamente contra BBL solamente para ver cómo se sienten también esos otros equipos. Esto es todo lo que tengo por la entrevista. Jing, thank you very much for this interview. You're free to go because we need to wait because we're going to have the second match of playoffs. We have Nongshim against Gentlemen. Stay here. शिट भाई किस पे हैं पर 20 किल्स पे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है फ्लिक मार दिया Victory! Custom ये तो नहीं खेल पाएंगे डैम भाई कितना मार रहे
अरे रीलोड कितना देर होगा बे? अबे पिस्टल से कौन मर गया? पीछे से भी आ गया। इजी पीजी बॉट ही है क्या सारे? चल खेलते हैं भाई। Also insane. The best Neon here, perhaps, if not arguably, I don't know, top two. Who are you looking at? Danby, Mata? Yeah, maybe. I don't know, like those two going at it? Miniboo, I think, was playing pretty well early, but yeah. he got shut down, actually. Yeah, kind of a crash situation. I mean, he was, you know, I mean, he had high highs, but low lows. Maybe some vengeance today against Dombi, but what impressed me about him is where he's playing this very sacrificial dive role, where a lot of teams, your attention goes to the Yoru, that second entry, who's sweeping up off of the space that their dive player creates. Dombi is the star for this team. He's very selective as compared to maybe how he used to be when he was a younger player, of when he actually continues fighting, when he gets in your face. He's very good at finding the right timings to be aggressive, the right timings to slow down. And because of that, he's getting more picks himself than pretty much anyone else who's playing that dive role. Listen, your eyes, they do not deceive you. He's back. He's back on the global stage after a long time away. RB is here. No, this is not DRX. Stacks won't be walking out again. Okay, sadly, Mako, he's not here. But RB is, and he's ready to go. He's had a tumultuous last couple of years. Yeah, he has. Being away from that DRX was playing in China for a while. Yeah, and now joins up with just, for the first time really, a Korean team that is just chock full of new talent. Yeah. We've really just seen the same cores recycled. They'll pick up a one-up player here and there. But not a team like this where it's just all new faces. At RB early days in Valorant, he was known as the Neon player, as the aggressive dive guy when he was in the earliest of days with Vision Strikers, or later throughout his tenure with DRX. Never found the success that Korea wanted at that time. It took a team like Gen.G instead to come out and bring something for the region, and he got sent down, like you said. That time in China was rough, not making any internationals, not even doing particularly well regionally, but a second chance given alongside these rookies, and he's taking it by storm. He also played amazingly towards the end of kickoff too, so certainly a player to keep your eyes on. Another player to pay attention to, though, is the Yoru guy on Nongshim Red Force, who'll be looking to use all of that space that Dombi creates. That's Francis. He spoke with Jen Lee earlier on, so let's hear what he had to say. Jen with Francis of Nongshim. Now, Francis, you guys had 4 teams to pick from. Why Gentlemates? They are good, but they are not on my level. Thank you for an honest answer, and good luck today. Nongshim, Francis saying there that Gentlemates, they're good, but they are not on my level. I'm a big fan of Nongshim. Yeah? They're a solid team.
I like how they play. I love the neon stuff. I'm big on this team. I wouldn't have been able to tell, Josh. What is the get up? What is the what now? You're looking like a little cutie. You've got a little bit of hair, Josh. Hair? No, it's fur. It's fur. Don't worry about it. Don't worry about it. Nongshim, I'm unabashedly a fan of this team. I think they're playing fantastically. Get out of here. Nongshim, though, they had the first pick in the draw, so they got to pick General Mates out of anybody. So why did they go for General Mates, who went 2-0, and they have Martine? I feel like it's more of a testament to how stacked the Swiss stage was when you're looking at the other competition. I think Gentlemates are the pick because they went through EDG and Team Liquid, who ultimately felt not particularly dynamic in that game. So maybe you're looking at Gentlemates like, okay, they had a bit of an easier path than the other team. I know you're saying that's what they might think. Yes. Do you think that? I think this Gentlemates team look fantastic, but I genuinely think whatever team would have gotten the first pick probably would have picked them, and it's not a diss. Like, it's just a testament to the talent. I do think of the teams that made it out of Swiss, they are the least tested given the competition they had to play against. However, to their credit, they did absolutely dismantle on the second map of both these series. Liquid game in particular, they were running it down with aggressive play after aggressive play. Mates were great to counter that out. The attack side calling has looked competent from Starkso at the lead of this team. All the players that were performing domestically have kept it up here. This is a Mates that have looked as good as they did in EMEA, but we still don't know their ceiling given the slightly easier matchups in Swiss. Yeah, I've kind of felt like every Mates map we've watched so far, we've seen a different aspect of what makes them really good. Okay. Like, we got that second Pearl game. Whoa, Glyph is taking over. Yeah. Martine starts heating up there too, and then the second series, he's insane. At the beginning on Haven, you saw Starkso with some great calling. Mini lurking on the Cypher was beautiful. So I feel like there's still potential for many things to click at once where they could dominate a game. But I think that they've displayed across the board competent play from basically everyone up to this point. Well, you mentioned Glyph, and he was talking to us recently about General Mates' extremely loyal fan base in this HyperX player moment. I think we're very blessed with the Gentlemates fans and the fan base. The Berlin Stadium is amazing in itself, and the Gentlemates fans who show up is amazing in itself. But being able to play against the international teams is so exciting to be able to play against all levels of competition and some of the best teams in the world. And I think it gives a good bit of boost in your pride and ego, in a sense. It's very fun. But again, making internationals and seeing the fans, seeing the different places and environments is incredible and a different experience in itself. Gets all three! The victory is theirs! Speaking just directly to the Gentlemates fans, keep on believing. You know, this team isn't at their peak yet. I don't think we're even close to it. There's still so much more that we can improve, that we can be greater on, and there's much better performances that we can show you guys. And so just keep on believing, and we'll always try to do our best to show you the best versions of ourselves. Hearing the way Glyph is taken this Gentlemates fan base to heart and the success he's had on so early with this roster is so impressive, given that not 4 months ago he was still playing with a collegiate team. Spent so long in NA Tier 2 grinding through that system to not really achieve the heights he would have wanted, only to get this opportunity across the pond and become a breakout success alongside Gentlemates to now be in international playoffs 4 months after having to take classes to be allowed to play Valorant still. I don't mean it as a diss to Winthrop University, but I don't think they have the same level of fan base as General Mates. Not quite. Whoa, You know, Josh. Am I being You're not too harsh, ingrained sir? in the Tier 2 scene like that, Am I being too harsh, buddy. possibly? This guy doesn't know about college football in America. Valorant's probably the same. Let's find out where these teams are headed, though. Let's go over to the map picks and bans to see where the playing ground is going to be between Nongshim and General Mates. Hey everybody, we're going to begin map selection. NS, since you're the #1 seed, you get to choose Team A or Team B, so are you Team A or Team B? B. Team B, okay. M8 is Team A. M8, what's your first band? Band Breeze. Band Breeze. NS, what's your band? Band Pearl. Band Pearl. Okay, M8, what's your first pick? Pick Haven. Pick Haven. NS, what's your side on Haven?
Depends. Defense. Yeah. Okay. Defense. NS, what's your map 2 pick? Corrode. MA, what's your side on Corrode? Corrode. We start attack. Attack. Okay, MA, what's your next ban? Ban split. Ban split. Okay, NS, what's your ban? Ban Abyss. Ban Abyss. Last map is Bind. ME, what is your side on Bind? Start attack. Attack. Okay, so as a recap, we have map 1 is Haven with NS on defense. Map 2 is Corrode with M8 on attack. Map 3 is Bind with M8 on attack. Good luck, everybody. I think we're set up for a sick game off that map pick ban. There's some serious overlap in the pools from these two teams. They both love Bind and Haven. They're both undefeated on Bind and Haven. Yeah. So we're going to, at least on that first Haven pick, someone is going to finally take a loss. That's Mates picking it, by the way. They're going into the best Neon on the best Neon map as their first pick. That is easy stuff. Bold, but I respect it. But it is interesting to see how their comp will play out. It's rare that Nongshim has to play against Cypher in Pacific. A lot of it is played for Mates, and I want to see what they can do on defense here on Haven. There'll be more problems on that defense side, though. This is where Martin, Josh, has been an absolute beast, especially when he can get that scope in his hands. Yeah, well, let's send things back over to Jen, who got a handle onto Martin, and see what he was talking about in his arrivals. Jen here with Martin of Gentlemates next to me now. Good day, Martin. Just wanted to quickly ask you, where is your confidence level at facing Nongshim? And could you compare the two Yorus between you and Francis? I would say the confidence is still high. It never changes no matter the team. The sky's the limit, right? And between me and Francis, I would say it mostly on the hard entries. You know, they have Dumby, I have Bipo. I think it's about the chemistry between the duos today. Thank you, and since the sky is the limit, let's jump our way out of the interview. Ready? 1, 2. No, I didn't see it. Yeah, they were gonna that's jump. unfortunate. I mean, Marty's talking about the coordination between the duos. I think on either side, though, you have a player that can take over. And for Nongshim, they've got to be worried about Martin, because he has looked like he could be best player in the world kind of caliber right now with how he's playing. It's interesting because I see this matchup as the best dive player at this tournament playing against the best cleanup Yoru player at this tournament. Yeah, Martin absolutely took over in EMEA, playing that second entry, letting Minibu take space, and then him taking over the rounds. Whereas you look at Nongshim, and the focus falls to Dambi and what he can do in that opposite role. I think it's fair to say, at least in my opinion, I think the Gentlemates are coming into this. We've seen them with the best strategic fundamentals around this Yoru. Martin is not just running around doing whatever the hell he wants, going for crazy plays 24/7. No, he's kind of putting up the most obscene numbers existing within a system that props him up to be potentially the best player at this tournament, potentially a guy that could leave with the MVP bracelet. Which role actually matters most, though? Mimi, if you're talking about one team having an insane entry, one having a big cleanup, what's going to make the difference here? What matters most? I think the dive player is the most important in this meta right now. It's the hardest job to get individual value on. There's a lot of dive players in this tournament that are excellent at creating space, but can't find individual impact beyond that. I think Dambi not only is great at building space for his team, but also is individually excellent. And to me, that's more important than just the Yoru, who very often is, you know, cleaning up kills on anti-ecos with the Outlaw, he's taking over on defense with the AWP. I think it's the hardest role in the game, and from watching the regions, I think Dambi is the best at it. I feel like the Neon, I agree. I do think it's the hardest role in the game, but I think the Yoru can ultimately find even more impact when you're at the level that Martin is currently playing at. The way that they have the system designed around him allows him to be able to get so many big impact first kills, which is what you're going to be relying on Dambi for. But I think that with the way they are able to use Martin, he can do it with even more consistency than Dambi can, and that could take them over the top. This game might just be the answer to that question, though. Is it a Dambi takeover on the Neon? Is it Martin continuing his incredible performances he's had? Such an exciting clash for two teams that, while they play similar styles, have very different focuses.
We just saw Furia, the #1 seed of Americas, come out and played their hearts out, though they have been knocked down to the lower bracket. Now we've got an opportunity to see, yet again, another one of these top 1 teams. Nongshim Red Force, #1 seed from Pacific, against a team that has smashed their way through Swiss. Let's send things down to the stage to bring out our teams. Nongshim. Muy bien, muy bien. Santiago, vamos a hacerlo otra vez. Grita con el alma. Thank you so much, man. Yes. Es momento. Nongshim Red Force. Another unblooded first seed takes on a victor of the Swiss stage. Nongshim got to choose their opponents immediately, and they opted straight into this fight against Martin and his mates. But this one should be an enormous clash. Some similarity between both these sides in that one player who is in the history books of Valorant and Starzone, one on Nongshim and RB are just surrounded by the talent of the future. And so far, the story for Gentlemates at Santiago has been success. It hasn't been one of debuting and faltering under the pressure. But if you go back to the first seed curse, is that going to be a factor here for Nongshim? It's a different context, though. Not one of the top teams coming out of Swiss with crazy high expectations. Instead, this Gentlemate squad making their first international in Valorant themselves with a new roster of their own. The similarities don't just end there. The style, the map pool, these teams are mirrors across regions, and only one can continue through the upper bracket. It is crazy that if this goes all the way to 3 maps, God. Teams who will be suffering their first defeats on Haven and on Bind, where both of them are perfectly flawless. This first Haven game should be an absolute banger, man. This is a map that, despite Nongshim not having picked the most rounds they've lost on it to a team, 5. Crazy. They have won 13-5, 13-5, 13-4, and Mate said, yeah, bet, let's pick it into them. Insane. Crazy. And that was against good teams in Pacific. You look back at previous metas, and the hard counter to Neon was always cited as Cypher. He got a huge nerf going into this year. Most of the world wrote the agent off, but EMEA stuck to it, and Mates especially has played more Cypher than anyone else. So I want to see, after the changes, after the nerfs, can, on defense, Mates actually shut Domby down and make his life difficult on the entry. This team has been so good at problem solving so far throughout this tournament. Even when they've been tested, IGL, Starzo, the coaching staff, they've stepped up and figured out what the problems were. Starzo, by the way, hunting to become the 2nd player ever to win a Champs and a Masters after he hasn't even been at a Global in 5 years. 5 years. Wild that it's been that long, and finally making his re-debut for this team. Same thing like for RB. He was always a player who we were waiting for the other shoe to drop, waiting to see that DRX squad actually make a run deep in the tournament. Never happened for him. Had to go down to a different region to even get another opportunity with the Korean team. He also had to watch at Bangkok as Stax and Buzz completed that arc of their narrative, while he, a former, almost lifelong teammate of theirs, has had to do it with an Ascension team, and they look great. Don't get me wrong. Yeah, he's so different now, though. The IGL of this team, the veteran, compared to all of his young teammates. Not that aggressive Neon of the earlier days. First time that we get to really see a new core of Korean talent coming to one of these events. For sure. Not just one player surrounded by the historic guys that have been here since the beginning with DRX or whomever. No, this is a chance for the new generation to rise up. On the side of Gentlemates, as we get into Haven, though, I really wanted to call back to Mini. He played such a fantastic game. He really did. Debut map. He was the critical player to get the win against an EDG that I think showed their best map there. They were firing on all cylinders. Before Martin got online as well. He wasn't awake in that game, and they were relying on the one player from Mates who is stuck with this team, playing that
more unorthodox in the current day Cypher, and I think around Starkzo's really lovely calling on that map. He was just able to expose so many lanes, find so many crucial kills. I think he's definitely a player to keep your eye on. We're talking about the Cypher player there and how they might look to try to counter the Neon. I just want to touch base with both of you. How good do you think the Neon is currently from what we've seen so far at Santiago? Is it meta-defining? I think it is. I think if Wele was the defining agent of champions in Paris, I think Neon will be the defining agent of this tournament. And for me, Nongshim is the best example of implementing Neon into pretty much every one of their comps. There is no debate that it is defining on Haven. It's essentially a must-pick right now. For Mates, it's not all about Beepo on the Neon, though. He feels even, at times, a little bit more supplemental in the strategy, which has more emphasis on Martin being a star. One advantage Neon has on the defense is how much it helps your defensive macro with fast rotates. Watch Dombi and how quickly off of seeing information from any of his teammates, he's maneuvering to almost always be in the right place to get value out of his stun and defend alongside his anchors. It's funny, I swear, every time we get into one of these Gentlemates games, when you look at the players' faces, they're seemingly nervous. I feel like they're always taking deep breaths. It's like they're trying to calm down, but nerves have never actually been a factor with them. No. They have actually rose to the occasion, called upon every single time so far. And just to reiterate again what Wyatt was talking about, 100% map win rate for both of these teams on Haven. It should be an absolute barn burner of a match and a brilliant map to begin. Here's Achilleos and Paperthin with the call. Gonna have to get used to that sideshow throwing to us, but my goodness, does it feel great to be here for this series. A barn burner, a banger. How far does he search for this? He's being quite cautious about it, but it's already been pinged out. I think they know there's a solid chance for it. Forsaken waiting. Really interesting that Mates has the confidence to go into this map right away, considering how unbelievable Nongshim has looked on it. And let's see if they're ready for it. I mean, like the desk was talking about, you've got the Cypher baked into this comp already. You've got an Astra there maybe that can help you do a little bit of delay, but overall, you're just going to have to kind of get a feel for the pace of the game and try to find ways to shut Dombi down. And many have tried with different variations. Nobody yet has succeeded consistently. As the desk was highlighting, though, a bit of a different flavor with that Cypher, with that Astra. Let's see what Mates do have in store. As first little peek coming through. Francis will walk down mid, just going to be clearing out that Cypher cam nice and early. A heavy stack in towards mid here. You got backup behind Francis at the top of B site. Continuing to linger on this angle. Does he get rewarded? The question, no, we'll back away. Joins it on the A site. Meanwhile, it's like a shock dart landing at the feet of Martin. Does take him to 33. It's all a fake, though, and they pulled the rotations. No follow through. RB making noise. That ping coming down. It's going to be a double push now out of the garage. Wrapping around, and obviously the turret deactivated, given the positioning of Ivy, and now they get the jump, and RB gets the bad news. Mini to find the first kill of the map. As all of Nongshim going to be scrambling to try to get back into position. Tripwire catching one. Martin holding close, looking to catch them off guard on this swing, and will be able to get a kill for himself. Beepo as well, joining in from the garage doors. Looking for a little bit more, but Francis will be able to collect a second. So into a 3v3. Nongshim players low on health. Look at Starkzo. Swinging around the back, and this will be Ivy. Absolutely dead to rights right before he maybe would have had a chance to contend against Mini. Push the garage, clip gonna be good for both, and Mates gonna be good for the pistol round win. Yeah, and this is one of the big things that I noticed coming up to this event, watching Mates, watching them so far in this event, is their mid-rounding is so good. They understand the tendencies of their opponents so well, and Starkzo knows how to use that against you. And in this round, तो देखा है क्या इनको कभी नॉन्गशिम को? at long, यार मैंने इनके शॉट्स react देखे as भाई. Nongshim. You have no choice but to throw your forces at that, because if both duelists are there, feels like a hit. And instead, it's actually just a pullback, and Nongshim never is able to figure it out. Space taken, RB flanked. Great round. 4-player stack up once again, going to be extra himself. Cross towards A. As they 127, 26, collapse 25. In on top of these players, bling into the lighter side of the map. Bling into the lighter side of the map. Instantly. 24, 23. X-Ross taken out. You have to punish found halfway now towards that dimensional drift. Francis, only one buying up a sheriff. Trying to put the use. Downbeat's going to be अरे बेंचो 2K में देखो तो साला going to be left on the floor. Just RB and Ivy
स्लो आता है. hand to try to see if they can make a go of anything, get some damage in, or if they will just tuck back and die to the spike. So they want to try to find some blood here, but it's only going to be theirs. Standing there close. So Martin, having gotten that Marshall, is going to go on this hunt and wants to get even closer to that ult. See if he can funnel it in. And Ivy on the drop down. Martin will be able to pursue and deepen up from behind. A 3K form and a 2-0 start. Clean stuff for mates. Yeah, looking really solid so far. अब मजा आएगा ना बड़ू. See what they can do with this bonus. It's going to be pretty powerful. 3 Bulldogs, 2 Vandals. भाई मार्टिन ने क्या मारा भाई? सोवा को देखा? Good. The Marshall. Desk was talking Smoke about very good with those scopes. Get those in his hands. Can certainly do damage. Francis on the other side also pretty sharp. This time. ये आरबी पहले किस टीम में खेलता था? मैं देखा शायद इसको कभी. Maybe going to challenge the C site. अबे रॉबी भी के था वो turret here. आरबी लेना. Clear it out along with the nano. आरबी तो ये है ना. Trying to once again drum up that interest. Drag Nongshim across the one side of the map. Down B at the same time is going to go for a peek in towards B. 3 players on the opposite side of that as Ivy under some pressure, but Downby able to hold his own for one, but Martin quickly shuts him down. Looks like now going to be open, the plant going in, Martin getting the dimensional drift off the back of this. So even though it's into a 4v4, this is still very good odds for mates as they look to convert the opponents, and immediately that ult gets invested. Look at Starkso again. Swing around the corner. Glyph, however, going to be overwhelmed. Ivy collecting that kill, tries to turn back to find the enemy Yoru, but Martin continues to excel. 6-1-1, 7-1-1. Martin. Can he get some more in the round? RP just stuck here within the smoke is going to be good for the one. Retaps it, Martin, snaps on, looks for the ace, RP will deny, but cannot get the round win. Damn भाई. The bonus conversion is found. Round निकलवाया पूरा उसने. निकला भाई. Well, Nongshim's going to need 9-1 here pretty soon. That is absolutely crazy stuff from Martin. Martin खतरनाक है भाई. मुझे लगता है MVP. Trying to show you he is the best in the world right now. This Nongshim style be damned. And they're all over the map right now. Nongshim is having such a hard time keeping track of stuff, and it's the beginning of this round. That's a setup for mates. They clear the KJ util so they can set up for some of those lurks in the seat. They don't even really end up needing it because they have dimensional drift, but a lot of the follow-through ideas are there. Look at the crunch in the mid. Francis left limping away, 26 health remaining. Frankly, fortunate to be able to escape. RP just staying slotted here within the smoke in case there's that aggressive push, but Omen तो smoke में बैठा है taking it nice and easy. Swing out. Nice shots from Xros. Let's get put down low on HP, but able to find the kill, but Martin now able to go ahead and clean up the enemy. Sova, and now they go pushing forward into the C side. Right across, and Starzo shuts down Downby. भाई Starkso ने सही रीड किया भाई, उसको Downby वहाँ था करके. Go forward here into the smoke. ये तो गया भाई. The walk in. To his demise, Francis gone. Beepo just dashing around, plants his feet, 180s, and is just dancing on him. 4-0 start, back into a bye. Crazy start, away, crazy start. They pop a timeout. And Mate's able to do something that a lot of teams have struggled with in Pacific, and that's not get run over by Dombey with a shotgun. And it's all on this reaction from Starkso. He's expecting it, sees him, hits him right before he comes through the fast lane again. Ridiculous, absolutely ridiculous. Great stuff from Beepo. Using the relay bolt to set himself up for success. You're absolutely correct. It will be timeout time for Nongshim. This is tough, man. It's a lot of trickery. It's a lot of fakes early. It's a lot of misdirection. Heaven कैसे attack sided map है. Game plan for mates. तुझे अगर side में और ये उनके भी same comp ही है. Duelist का. Understanding that Yoru or Neon. The Nongshim coaching staff and Nongshim players want to use that Neon to react quickly to stuff. So if they put some pressure somewhere, they're going to get over rotates. They're going to open up space on the map. And that's what they've been doing a great job of taking advantage of. कितना cringe लगता होगा मैं जो ये ड्रेस ऊपर के आते हैं. मतलब 100% भी कमिट नहीं करते ना. बराबर बराबर. सब कॉमिक कॉन में कैसे लोग पहन के आते? तू कॉमिक कॉन गए कभी? कॉमिक कॉन क्या है? मेरा जो जहाँ पहले रहता था मैं वहीं पे पास में होता था. तो मेरा मेट्रो स्टेशन जो था ट्यूब स्टेशन उसके रास्ते में पड़ता था कस्टम हाउस. वहाँ पे होता है कॉमिक कॉन. तो मेरे को हम जब भी मैं स्टेशन जा रहा हूँ मेरे को दिखते रहते हैं लोग. दिखते रहते थे. कोई एनिमे ड्रेस अप हो क्या है, कोई कुछ ड्रेस अप हो क्या है.
मैं गया नहीं कभी, वो गई है मेरी गर्लफ्रेंड। नहीं भाई मैं ऐसा फैन हूँ नहीं किसी का कि मैं इतना ड्रेसअप होके जाऊंगा। अगर तेरे को वैलोरेंट में कोई एजेंट ड्रेसअप होना है, which one would it be? Of course. तेरा हाइट कितना है? मेरा 5'7". 5'7". Swing now. Down be able to find the first. Looks for a little bit more. Martin again cuts him down. RB is there for that second layer, but Starzo is able to find Francis. Starts on the walk forward, catching Glyph there at A lobby, and RB finds a second. Ivy gets involved. The Nongshim will be able मेरा to हाइट यार 5'9", 5'10" कुछ है। as they get on the board. Love the timeout call here अच्छा from है फिर तो। Nongshim. The plan is अच्छा pretty हाँ simple. ठीक है। Hold your defaults for the भाई most ये part. यूरोपियन कंट्री में रह के 5'9", 5'10" को तो अच्छा नहीं बोल सकता वैंचोद। यहाँ मिनिमम 6 फुट के लौंडे होते हैं वैंचोद। डिपेंड करता है यार, देख यूके में ठीक ठाक है, बट नेदरलैंड जाएगा तो नेदरलैंड जाएगा या फिर इस तरफ जाएगा थोड़ा ईस्ट यूरोपियन कंट्री जो उधर है, नॉर्डिक कंट्रीज में वो इतने लंबे लंबे होते हैं। फिर भी इतना अजीब लगता है भैंचोद। हाँ भाई बच्चे ऐसा फील होता है भैंचोद। यूके में फिर भी इतना ज्यादा हाइट नहीं है, लेकिन लंबे लोग जैसे इंडिया में लंबे लोग बहुत कम होते हैं, यहाँ पे लंबे लोग काफी होते हैं। वो है यार, इंडिया में कैसा है पता है क्या यार, अपना डाइट में प्रोटीन रिच नहीं है पता है। हाँ माल न्यूट्रिशन होता है ना। हाँ बराबर साला। पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में, उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, बट वो तो है भाई। अरे भाई जीत लिया भाई। खत्म भाई, राउंड खत्म। कंट्रोल ही नहीं कर पाए भाई ये साइट लेने के बाद। हाँ वही तो। नहीं अभी ये लोग ये सीख रहे हैं ना कि भाई पुश नहीं करने का भैंचोद। अडेप्ट कर रहे हैं। बाद में हाँ He gets the spot onto the two players, the one behind the box, the one backside. सब साथ में जाके घुस के गाड़ मारते हैं भैंचोद। उन्होंने आधी साइड दे दी, लेकिन आधी साइड होल्ड करके रखी, ना छोड़ी ना पुश किया। पेशेंस बराबर भाई। भाई वो केजे के मौली कहाँ है भैंचोद? देख ना कितना उनको पता है भाई लेफ्ट इधर से आने वाले करके। भैंचोद भाई इनको पता है। दो एक और जाएगा। वैसे भी इनका सेफ स्मोक तो गया। हाँ दोनों लोग ने बाई लिया वैसे। He will reposition. Francis at the same time. The dimensional drift is in, spotting out the two players at garage, calling that for RB, but Downbe's now going to be taken down. Beepo finding him at backside, finds another. He exits there. Francis. भाई मारा क्या बेंच इन लोगों ने? अरे भाई फ्रांसिस अल्टी मारा ना। बीपो ने अल्टी मारा भाई, खत्म जीत गए। खत्म भाई खत्म। 3 मारा बीपो। बीपो ने सीधा अल्टी खोला बेंच। हाँ। I mean, this is just. अगर तेरे पास ऑफ है और तेरे पास नियॉन है ना बेंच, उसको मारना बहुत मुश्किल है भाई ऑफ के साथ। Here is brilliant in the early part of the round. Use the killjoy utility to stall them भाई out देखा in garage. क्या You have the स्टैट्स देखा lineup with तूने? the Hunter's Fury. Yeah, he kept the clone as well. केजे मौली बेंचोद अब समझ में आया कितना प्रेडिक्ट करके बेंचोद ये सेटअप करना पड़ता होगा ना। हाँ ना यार कि बेंचोद केजे में यहाँ पे मौली करूंगा तो गराज से पुश करेंगे तो हम इन्हें ट्रैप कर सकते हैं। हाँ और इसमें अल्ट मारो बेंचोद। क्रेजी भाई क्रेजी। कभी नहीं सोच सकते बेंचोद इतना। नहीं सोच सकते भाई, मैं तो नहीं सोच पाऊंगा इतना बेंचोद। अपने को बेंचोद दो ही चीज आती हैं, डिफॉल्ट खेलो या फिर अग्रेसिव खेलो, बेंचोद दो ही बस। उसके अलावा सिलेबस है। हाँ वही डिफॉल्ट खेलो या पिक्स वही स्लो खेलो या फास्ट खेलो, और कुछ नहीं आता। वो तो है भाई। नहीं यार मगर मैंने एक तो जाना है भाई, तू अगर करोड़ पे खेल रहा है ना, तू टोरी के साथ खेल रहा था क्या? कल खेल रहे थे क्या टोरी के साथ? था कल नहीं था मैं टोरी के साथ। ठीक है कोई ना। नहीं तो उसमें ऐसा था ना भाई। भाई ये क्या है भाई? ये हाँ उनको लिया भाई इसने। लेगा भाई लेगा, लिया उसने 2 को। खत्म भाई। 3 को लिया, खत्म राउंड, गेम राउंड खत्म। क्रेजी भाई क्रेजी।
बिना इन्फो के नहीं घुसने का भाई। नहीं मेरा ऐसा है कि करोड़ पे अगर तू खेल रहा है ना, तू मिड पे अगर स्मोक करेगा ना, लाइक मिड टॉप नहीं, तू खेला है मेरे साथ कभी करोड़ पे? पता नहीं, मैं तेरे को हर बार एक जगह पे स्मोक करने को बोलता हूँ मिड पे। मिड पे स्मोक किया ना, हाँ जहाँ अपन चढ़ते ऊपर, हाँ, उसके राइट में, उसके लेफ्ट में, सॉरी लेफ्ट में। हाँ वो जो ऊपर चढ़ते हैं ना, हाँ वहाँ पे हर बार स्मोक करने को बोलता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि वो जो हेवन पे बंदा रहता है ना, टॉप पे, मिड टॉप पे, वो मार नहीं पाता क्योंकि उसको स्मोक के थ्रू दिखता नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मतलब राइट साइड से जो बंदा होगा वो हमेशा ये सोचेगा कि मैं मिड पे 4-5 लोग हैं, अगर उसने पीक लिया तो मारेगा, तो वो एंगल होल्ड करके बैठेगा। तो तू अगर तू ए साइड या बी साइड भी अगर तूने एग्रेसिव पुश किया ना, तो मिड पे हर बार बंदा पुश करने को ये करेगा, इन्फो नहीं ना उन पे। हाँ, तो वो पुश मारने को थोड़ा डरेगा, डायरेक्ट भागेगा नहीं। तो वैसा वाला सीन है भाई। ये 3 लोग भाई देख पूरे गराज पे बैठे भैंचोद, 5 गराज पे बैठे भैंचोद। भाई क्या मारा भाई। नम्बी मार्टिन Still alive, still in with a chance, our mates. अरे क्यों कैसे भाग रहा है भैंचोद ये? अरे यार, अरे ग्लाइव कैसे भाग रहा है भैंचोद? अरे उसको पता नहीं ना कि साइड में आएंगे करके, ऑलरेडी 3 लोगों को मारा भाई, तो 2 लोग रोटेट कहीं ना कहीं से तो हिले करेंगे ना भाई। जब पैसा मिले तो दिमाग भी चल जाता है। हाँ भाई, प्रोफेशनल प्लेयर है, उनका रोज का काम ही ये करना। बराबर भाई, क्योंकि तू हर बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना। और 3 लोग देख, 2 लोग सी, एक बंदा सी देखेगा, एक बंदा गराज देखेगा, एक बंदा बी देखेगा, ठीक है? तो 3 लोगों को तू एक्सपेक्ट कर सकता है एक साथ आने को, बट चौथे और पांचवे को आने को थोड़ा टाइम लगेगा। करेक्ट। और भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। कौन आया भाई? कौन आया? समी उल्ला यूके, समी उल्ला यूके नाम है इसका। पता नहीं भाई, मैं तेरे को जानता हूँ क्या? ये तो ये है भाई। कौन है? समी उल्ला तो ये क्या बोलने का यार, साइलेंट है शायद से। साइलेंट? वॉल्टर वाइट। हाँ वॉल्टर वाइट जानता हूँ। अरे भाई इनको पता है कि इन्होंने प्लांट वहाँ पे। फक, क्रेजी भाई, क्रेजी। अरे भाई के जल्ट भी आ गई। There's the exit. They know where he's jumped to. They look to try to get this defuse going. Shit, post plant नहीं इन पे कोई। 3v4 and Ivy taking point, finds the first swings in, takes out Martin, but not before he finds himself a third kill. Starts out pinned into the corner. The defuse, however, is just being held to completion. Enough space bought, enough covering fire from अरे यार बेंचोद, इनके पास कोई आंसर ही नहीं है के जल्ट का। वोल्टर हूँ, वेलो में खेलते हैं। हाँ भाई याद है। तेरा इन गेम नाम याद है मेरे को, ऐसे ही वॉल्टर वाइट। हाँ वोल्टर ही है, वैसे ये नाम याद नहीं, पता नहीं मेरे को। तो आए नहीं बहुत दिन से खेलने वोल्टर। भाई वो डेंटिस्ट में काम करता है ना, तो वो बहुत बिजी रहता है भाई। डेंटिस्ट्री में डेंटिस्ट है या नर्स है? हाँ ऐसे ही कुछ तो काम, मुझे याद नहीं पूरा। देख उसको पूछ, क्रेजी पूछ रहा हूँ। यूके में रहता ना ये भी। हाँ भाई क्रेजी लिया उसने भाई। फक भाई। अरे यार हागा भाई, हागा। नाइस। अरे भाई फक। देखा डैम। हाँ देखा भाई। हॉलीडे था जैन में, तो फुल मंथ ऑफ था। ओ हाँ, यूके का हूँ, डेंटल लैब में काम करता हूँ। 14 आवर शिफ्ट दीस डेज। व्हाट द फक, 14 आवर्स? 14 आवर्स तो क्रेजी। 14 घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं। 14 घंटे की तो 2 शिफ्ट होनी चाहिए भाई। क्या पता भाई, 14 घंटे की तो मेरा 7 आवर होता है कॉन्ट्रैक्चुअल पर डे। ये 2 दिन का। तेरा कितना है?
मेरा 8 है भाई। 8 + 1 लंच आवर या फिर इंक्लूडिंग लंच आवर? नहीं 8 + 1। अच्छा मैं 7 आवर्स से लंच और एक्सक्लूड कर सकता था। भाई क्या मारा? अबे नहीं जो तू फास्ट थोड़ा भाई राउंड ले लिया भाई इसने। क्रेजी भाई, सोवा नेक्स्ट लेवल है भाई। Finds another clipped by the option. He's got the finish at 7-5. भाई सोवा क्रेजी है भाई 3 निकाले उसने। 4-0 से 7-5 समझ रहे तो बच्चों? कितना दोबारा बोल। 4-0 से 7-5 किया उन लोगों ने। हाँ 4-0 रहा था। कॉन्ट्रैक्ट में 8 आवर है, बाकी ओवर टाइम। अच्छा पैसे ही छाप रहा है, सही है भाई। ओके नाइस बढ़िया। भाई क्रेजी मारा भाई वो। हाँ भाई क्या मारा भाई। पर बेंचोद वो तो बहुत ऑब्वियस ऑफ एंगल नहीं है, मतलब आई एक्सपेक्ट देम टू ऐसा चेक करने का वो वाला एंगल। ठीक है पर अब जो भी है। ये 1 राउंड निकाल पाए और ये 7 राउंड निकल गए वो ओवर एक टाइम आउट के बाद। वही तो भाई क्रेजी। अरे कैजनेट है। हाँ कैजनेट कौन सी टीम है अब? एनवी किसमें? एनवी अच्छा ये भी स्पेनिश ही है ना भाई। ये कॉर्नर किल्स प्रोफेशनल गेम्स में भी होते हैं क्या? हाँ भाई होते हैं, बहुत होते हैं। देखा नहीं 3 के निकाला उसने भाई। अगर रेडिएंट में भी अगर तुम ये खेलोगे ना, क्या बोलने का, ब्रॉन्ज और सिल्वर जैसा तो मिलेगा भाई किल। हाँ भाई क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करते ना भाई, ब्रॉन्ज सिल्वर टाइप बेंच कोने में करके। कितनी बार तो लोगों को किल मिले कॉर्नर चेक नहीं किए इसकी वजह से। क्रेजी मैच है भाई, क्रेजी मैच है। शॉट गान मार दी भाई। अच्छा मेजर कर रहे हैं कितना डेसिबल लाउड है, इतना लाउड हो सकते हैं। हाँ वैसे रेटिंग करते हैं। पेपर का सबसे हाईएस्ट है। Everybody wanting a piece of the action on stage, rallying this crowd. Good to see Kesnet getting them hyped up. We find ourselves बढ़िया भाई, पेपर एक्स से निकल गया। At the halfway point of Haven, Nongshim able to run it back. हाँ फर्स्ट मैप तो निकाली थी। Get themselves a 2-round lead. हाँ भाई hard to wipe the smile off my face after मेरे को watching that crowd. They are so loud here. फर्स्ट मैप निकल जाता है बट सेकंड के बाद मोमेंटम पूरा शिफ्ट हो जाता है। सेकंड मैच हार गई तो खत्म है। What energy they're bringing for us and for these players. The decibel reader is definitely broken. Yep, it's that should have capped out. रिवर्सिव इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली कर लेते हैं। Look at the tuck back. Francis just forward, is able to find one. Mini holding his own, looking for the second, gets a follow up, but Dami just slides across. Keeps it in with a 3v3. Mate still working on getting everybody shifted over towards this side of the map. Stark Zone now arriving. भाई क्या मारा भाई, डैम्बी ने क्या स्लाइड मार के मारा बहनचोद। Push, ready to come through that garage, but a double face 3v3 है भाई। from Ivy and Dami to try to slow them up. Starks with a shock dart, able to find one, but they get one apiece. And now it is just Starks out. वो मॉली पे चला गया खेलने के लिए। Champions winner to try to clutch it out. ओ बहनचोद फिर से स्लाइड मारा भाई। क्या स्लाइड मार के क्या इन्फो लेता है बहनचोद ये। Moonwalks to garage, gets the right click kill. ये नियॉन ही खेलता ना बस। हाँ सिर्फ नियॉन खेलेगा भाई। It's Clearly you should say Mini. Yeah, Mini, are you okay? भाई स्लाइड मार के क्या मारा भाई मिनी को बहनचोद। Quite the start there. भाई एजेंट बैंड डालना चाहिए ना इन्हें। नहीं यार फिर मजा नहीं आएगा। तभी तो मजा आएगा भाई, क्या बात करता है भाई। कितना बैंड डालेगा, पागल है क्या तू? नहीं एक एजेंट बैंड डालो ना बस। नहीं यार मुझे नहीं लगता उसमें। हाँ मतलब देख इंटरेस्टिंग तो होगा उसमें होता ना, जैसे अरे क्या अभी क्योंकि सेट का कॉम्प होता है भाई, मतलब तुम घर से पूरा प्रिपेयर करके आते हो फिर कि भाई मैं स्लाइड करूंगा, तू पीछे से फ्लैश करियो, ये
कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, ऐसे करके मार देंगे। साले फिर वो हिसाब से तो पेपर एक्स तो हर बार ही जीतेगी बेंच फिर। नहीं, जैसे तूने लीग के मैचेस देखे हैं? लीग ऑफ लेजेंड्स, हाँ उसमें होता है, उसमें पर वेलोरेंट में बस एक रीजन है बैन अभी नहीं होते जो मेरे को लगता है कि इसमें एजेंट बहुत कम है, एजेंट पूल बहुत कम है। अच्छा लीग में बहुत सारे होते हैं भाई, लीग के जो लेजेंड्स होते हैं वो बहुत सारे हैं, 100 या उससे आसपास होंगे, तो उसमें बहुत इजी है, बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं। अच्छा Recon going to be sent out. Martin able to find the first. Francis will fall. Ping reveal there on the Dombi. Starts, end up flying in. Martin able to find another. Now Ivy going to be taken down. The jump out. Beepo trying to finish the अबे jump. यार He takes him low, but cannot finish the क्या कर रही है? The Glyph with that recovered bandit. He's able to find the enemy omen, and suddenly this round starts getting away from Nongshim. It's to be the massive jump start that mates need to get themselves back into the half. Nice, Picks the Mini. timing gorgeously. 4 bullets remaining in this Vandal. The swing, only needed one, swaps over to the Ghost. Camla trying to spot, and अरे यार वैंचोद gets the Red Bull clutch. स्लाइड पे स्लाइड वैंचोद क्रेजी भाई, क्रेजी वैंचोद। It's a great read from mates. हाँ तो मैं कह रहा था वैंचोद ये अगर एजेंट बैन वाला सिस्टम रहेगा ना, उससे फायदा ये है ना कि अभी क्या वैंचोद ये मेटा चल रहा है, यूरू खेलते हैं सब लोग, यूरू और नियॉन, जेट कितना कम हो गया है, रेज बहुत कम हो गया है, तो बेंचो मैंने यूरू ही बैन कर दिया, खेलो फिर बेंचो। ये जैसे डैम भी ऐसे प्लेयर है, मैंने इतना देखा नहीं बट काफी प्लेयर ऐसे होते हैं जो एक एजेंट पे बहुत अच्छा खेलते हैं, दूसरे एजेंट पे हक देंगे या फिर उतना अच्छा नहीं खेलेंगे। बराबर, उसको नर्फ करने के लिए बैन लगा दो बेंचो। बराबर बराबर भाई। जैसे जिंग को अगर बेंचो वो दे दिया रेज, बेंचो इतना क्रेजी खेलता है रेज। बराबर बराबर। अरे नहीं यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, देख आप जैसे तू बोला ना कि यार किल ट्रिप, मतलब उतने एजेंट होने को ना रे। हाँ उतने एजेंट होने चाहिए पर उसके लिए वो सही है। मतलब अभी कितने एजेंट है हमारे पास? 29 है ना शायद, 28 29 है। हाँ वही 30-40 रहेगा। 19 पे गुड लास्ट बढ़िया, गुड रिटेक। अभी छोड़ दिया बेंचो दिनों ने साइट ना, वरना हर बार साइट पे रुके हुए थे, इस बार रिटेक पे कुछ चले गए। साइट पे खेलते तो फिर बात अलग हो जाती है। साइट पे अभी 2 राउंड पहले क्या किया, ये दो बंदे मार दिए, 3v3 था रिटेक पर हक दिए, फिर उसके बाद अभी सबने साइट छोड़ दी, फुल रिटेक मारा। रिटेक खेलेगा, नियॉन की वॉल मस्त है यार, लाइक एज इन हाँ आइसोलेट करने के लिए बहुत अच्छी है। हाँ बराबर, कि आधा इसमें पहले ये कर लो, हाँ खाली है, ठीक है। और इसकी वॉल का एडवांटेज पता है क्या, कि ये 3 चीज आइसोलेट करती है, बॉल के बीच में और लेफ्ट राइट, बेंचो कहीं से निकल के भी मार सकते हो। बराबर बराबर भाई। He's already got an overdrive, something that you always have to be wary of. Trying to sell a bit of a fake here with the fast lane. Hey, Bhagwan. First time, but nobody on mates is buying it. They still have that camera. They haven't moved the muscle, yep. केजे है भाई इस मैप में, केजे खेलते लोग बस मैंने देखा। मार्टिन बेंचोद देखा क्या? मार्टिन ने क्या पिक लिया भाई? देखा क्या? अल्ट करा, पहले टीपी करा उसके, फिर उसके बाद उसने वो खोला। भाई क्या कर रहा है पीपो? Ivy tries to drag it back, and now the overdrive going to be invested. An immediate slide away from Dombi. Still getting pressured out though by Starkso. Pushes forward, shuts him down. Barrels stuffed into the overdrive. And now they're going to go for the pivot all the way across the A. भाई क्या अल्ट मार रहा है? क्या भाई क्या जंप करके क्या क्रेजी मारा उसने। हाँ ना भाई। 2v2 है, डुएबल है, एस्टल्ट भी है। बोल रहा है मेरे को पहली बार नियॉन इतना खतरनाक लगा भाई। हाँ गंदा खेल रहा भाई वो। उनके लिए करेंगे क्या? नहीं कर रहे। This is tough for mates. नहीं भाई ये तो मुश्किल है। नहीं भाई मुझे नहीं लगता ये होगा करके। हाँ ये राउंड तो नहीं है।
Unable to find the spray. मैच भी नहीं लग रहा एक्चुअली मेरे को तो। अरे यार खत्म भाई। Is that right click from Dami? Able to find one. Looks for the follow up. Doesn't make it happen. Is Gunbarrel spotted? Cliff. अरे भाई। Hit. But he just doesn't confirm it. Almost भाई। Almost भाई। I mean, it's the individual effort from Dambi. Efforts भाई, efforts के लिए max। It's just chaos. भाई वो ऊपर से ना उसने हगा पता है क्या उसने मारना नहीं चाहिए था एक्चुअली भाई इतना टाइम था उसके पास वो अलार्म बोर्ड विलार्म बोर्ड सब लगा सकता था समझ रहा है तू हाँ लगा सकता था पर जीत गया फिर भी वो तो है भाई unable to confirm it and that's going to be a timeout call now surprisingly somewhat the first one crazy भाई from the crazy mates camp. A very necessary भाई डैम्बी है बहनचोद भाई वो क्रेजी मार रहा है बे पूरा राउंड खोल दिया उसने वही तो भाई क्रेजी भाई एंट्री लिया भाई जंप मार के वहीं डाल के मार रहा है भाई डाम्बी के 16-11 है मार्टिन के 22-12 है और कोई मार ही नहीं रहा भाई सब 3 प्लेयर तो उनके सिंगल फिगर में भाई 7, 9 और 6 M8 के भाई मिनी और मार्टिन ही मार रहे भाई बाकी के लोग मार ही नहीं पा रहे मिनी भी ठीक ही है वेंचर पर बाकी तो कुछ भी नहीं कर रहे हाँ इनके नॉनशिप में तो बस एक ही बंदा नहीं मार रहा है बाकी सब डबल डिजिट में मार ही रहे हैं भाई उनकी टीम में एक बंदा चलेगा पर बेंचो सिर्फ एक बंदा मारना तो नहीं चलेगा बराबर बराबर M8 डिसएडवांटेज पे ना यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पा रहे भाई मार्टिन का अल्ट यूटिलाइजेशन खतरनाक है भाई अल्ट करता है खोल देता है मार के वापस भागता है अरे बेंचो भाई भाई क्रेजी कितना रहा टाइम तेरा तो पीछे है क्या मेरा 130 है शायद से पीछे हूं मैं 5 सेकंड पीछे करता हूं फिर 27 26 25 ठीक है हां उतना ही है ठीक है मैं पीछे गया Francis now gone RB feeling overwhelmed feeling outnumbered वो नहीं किया प्लांट goes for the back pedal Extros now नहीं किया नाइस gets that ultimate online don't think he'll need it in this one though clear the tripwire कोई बात नहीं ये राउंड तो निकलना चाहिए वेंचो वेंचो अल्ट लग गई इसमें अल्ट में तो एक बंदे को तो ले लेगा वेंचो will be able to locate both these players you would suspect tuck back through there's the exit but भाई लिया भाई इसने को तो लिया नहीं लिया वो उसको पता है स्मोक में बैठा था ना तो स्मोक में खोला अल्ट हाँ उसको पता था कि वो स्मोक नहीं खोलेगा मगर उसको नहीं पता था कि स्मोक के बाहर और एक बंदा रहेगा ना उसको ट्रेड लेगा over towards B, reading that there's going to be the pullback because there's no follow-up layer behind it for Nongshim. अब ये सेव राउंड है ना इनका सेव होना चाहिए हाँ for a moment there that Martin might have made a whoopsie but his teammate नहीं सेव नहीं है पैसे हम पे still getting that valuable info securing the round नहीं इसका नोंगशिम करे भाई ओ नहीं है क्या पैसे हम पे ओके नोंगशिम का तो सेव है भाई हाँ ठीक half armors an outlaw for Martin to counter सेव में जीते तो 10-8 हो जाएगा make a quick hit towards garage yeah might just be certainly feels like through that angle quick smoke drone out cleared by the outlaw here we go Clone catching a shot Martin tucks back flat has to get the reload off his paranoia goes out not connecting on Domini however the swing into the corner, RB looking to try to get some value with that frenzy, but will just fall to the wayside. Francis is going to be good for one, but they're just getting overwhelmed and stormed out of this side. Bipo. बढ़िया भाई Bipo. For him, mates. Marching their way वैसे भी back सेफ था ना into यार this इतना कुछ map. एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं जीतना बस वो डैमेज कर सकते थोड़ी बहुत इकोनॉमी उनकी बट वो पूरा नहीं कर सकते ना नहीं बट एग्जीक्यूट तो अच्छा था इनका वो गन नहीं थी तो मार नहीं पाया एग्जीक्यूट तो अच्छा था भाई not to mention the least of which is the way they got here. The best of 5 they won in a reverse sweep against Fnatic to find themselves into this event. ये राउंड इंपॉर्टेंट है ये राउंड जीते तो फिर नेक्स्ट सीको रहेगा 10-10 हो जाएगा बराबर यस Nongshim another go here
At long A, Martin, this is a little scary, but it's a little bit of an angle. Smoke गंदा है. कंट्रोल स्मोक नहीं दिया इन लोगों ने. मुझे लगता है रोटेट मारना चाहिए यार इन लोगों ने सी पे. तू किसको सपोर्ट कर रहा है? नोंगशिम को? हाँ. मतलब मैं दोनों का गेम प्ले बराबर है यार. मैं डैम्बी को भी सपोर्ट करता हूँ और इसको भी सपोर्ट करता हूँ. क्या बोलते हैं मार्टिन को? अच्छा. यार पता नहीं यार ये बेंच प्लेऑफ ना ऐसा बहुत मेरे लिए बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है. मतलब मैं एक बंदे को सपोर्ट करता हूँ दूसरे बंदे को सपोर्ट करता हूँ. टीम को नहीं सपोर्ट करता. अच्छी टीम है ना. अच्छे प्लेयर है. हाँ वही. मतलब मैं किसी का बुरा भी नहीं चाहता और अच्छा भी नहीं चाहता. जो अच्छा जीते भाई. क्योंकि डिजर्विंग सारे हैं भाई. समझ रहे तू? Maybe making the call for it. They will have the dimensional drift to scout for them. Tripwire going to be spotted. Glimpse there on the mini. Rotate all the way around up in towards heaven. On the exit, only going to be seeing the clone. Push forward, Cliff looking to try to flush up the cross. Be able to find that kill. Players now from mates getting into position here. Mini क्या करा? तो छोड़ देता साइड. ये राउंड तो गया भाई. ये राउंड गया. A flawless round for Nongshim. Finally putting once again, not allowing for mates to get their way back into this. क्लिकी बोल रहा है पहले इसमें उसने डैम्बी को देखा था तभी गोली चलानी चाहिए थी. और क्या? बोलता है ट्रिगर डिसिप्लिन एक तरफ है और मूवमेंट एक तरफ है भाई. भाई वो कंट्रोल ही नहीं कर पाया. You can't do that against Dambi. He's going to hit you anyway. भाई क्रॉसर प्लेसमेंट नियॉन के लिए बहुत अजीब है भैंचोद. समझ रहे तू? इसके लिए ओडिन चाहिए भैंचोद. Mates are confused about what they're doing on the map because it was so slow, it was methodical, they were making some attention through the drift all the way over, get up in the top of heaven, draw some ये हारे तो खत्म है भाई. Now हाँ ये हारे तो खत्म है भाई. पैसा भी नहीं है और फिर खत्म है फिर. भाई मारा भाई. ओ भाई मारा. Work low, 45 health. Still remaining on him, but still his breath in his lungs, the ability to fight. भाई किलजॉय की अल्टी थी यार इनके पास. नहीं अब भी आई लगता है इनके पास. फिर भी 3 अल्टे भाई. कोई बात नहीं. बहुत राउंड है इनके पास. नोंगशिम के पास. हाँ वही. वो शायद से ओमेन कार्ड आने का राह देखेगी और फिर बाद में सीधा ए घुस के खत्म कर देंगे भाई. नहीं अभी तो 2 चाहिए ना ओमेन कार्ड को. बीपो नहीं. नाइस. बढ़िया. चलो इनका भी अभी फ्लॉलेस हुआ है. In reply to a flawless, looking to find a flawless of their own. He can just rotate in, grab himself a rifle. A nice little cheeky upgrade for free. Francis should be dead on the swing. Well, just managed to find the one. It's going to take a hell of a lot more than that. People again, another 3K for this Neon. Keeps them in with a shout. Just 2 rounds separating. Nongshim not yet up to map point. चल भाई 9-11. You can see just 9-11 by 9-11. And again, the adjustments that come immediately here from mates. It's like, okay, they've slowed down the pace. Now we can take some space. Now, if they give us those opportunities, we can catch them off guard, and it works a treat. Again, I love the मारना चाहिए ना भाई. थोड़ा कॉन्फिडेंस तब आएगा ना भैंचोद. और नहीं तो एटलीस्ट अगर हार भी गई है भैंचोद नेक्स्ट मैप के लिए थोड़ा रहेगा तो कॉन्फिडेंस. हाँ वही. Here we go, push out again. This time, looking for maybe a bit more aggression. Wire's still going to be standing. Push forward comes in. Pop of the clone. यार ये यूरो का क्लोन very much overwhelmed. 3 players waiting from the other side of that smoke. X-Rolls with the Hunter's Fury, able to find one. अरे भैंचोद बीपो. Getting himself flush against the wall, staring in towards that A connector. भाई 2v3 on that approach. You should run. Has a Hunter's Fury. केज अल्ट भी आ गई. Trying to invest it from here. Tries to play his way forward. Gets tagged up and now has to back off. नहीं खत्म है भाई. खत्म है भाई. ये राउंड तो गया. Same for Glyph. And this buys an immense amount of बहुत time. ज़्यादा ही टाइम डिले किया भाई. इन लोगों को पुश मारना पड़ेगा. Glyph, however, able to find one. The enemy Yoru going to be taken down. Shock dart not quite tagging up Ivy enough. Consideration on that ult, but cannot go for it. Ivy finds the final 2, and Nongshim find their way up to map हो गया point. भाई. Great little setup here to
to get through डन है that भाई trip quickly. ये गेम तो Start मुझे लगता है taking डैम भी अभी space as अल्ट Dambi खोलेगा भैंचोद used the वो clone डैम to भी लास्ट के लिए identify सेव it. करके रखा था And then उसको पता Dambi's था कि off भाई to the races. Yes, अभी he नहीं doesn't get खोलता a हूँ मैं kill, बाद but में that खोलता हूँ set भाई tees you up for a follow-up there because you get the info, because you get the space, and Xros can rip his ultimate. Plus, you got players just ready there on the point. I mean, Francis भैंचोद क्या गंदी बॉल करी उसने absolutely हाँ यार थोड़ा लेफ्ट साइड पे बॉल करनी चाहिए थी और राइट साइड पे घुसना चाहिए था उसने point. Genomates gonna have to dig deep. A judge for Beepo, a bunch of ultimates. इनको लग रहा है अभी ये साला बहुत बार-बार बी खेल रहे तो बी पे फुल स्टैक करते हैं भैंचोद Have a bit of that wombo combo action that can come निकाला through with that dimensional drift. को निकाला बोला ना भाई But might not need the follow-up. There's yet more kills to be found. RB trying to keep his way forward onto the site. Caught by Starzo. Ivy does manage to punch through as Martin arriving around the back. Keeping Xros's attention tied. Doesn't fall for the clone. Spots that jiggle peek out. भैंचोद यूरो का जो क्लोन है वो बहुत गंदा है सारे Xros now. हाँ सारे मैं कह रहा हूँ यूरो का जो क्लोन होता है भैंचोद सारे के सारे ट्रिप उससे एक्सपोज हो जाते हैं केजे का साइफर का सारे या फिर चेम्बर का क्योंकि वो मिमिक करता है ना एक रियल up in the mix. I mean, Martin, he might drop a 30 bomb in a loss here. See if they could turn it around and maybe force OT. 37 kills है मार्टिन के 27 Ivy's been phenomenal lately. He has been great in these post plants. He is so sharp with that vandal. इतनी जल्दी 37 का जाएंगे भैंचोद हाँ भाई बट फिर भी यार 27 बहुत है भैंचोद हाँ 27 बहुत है अभी तो ओटी गया भी नहीं है Drone to try to clear the way forward onto C. Quick rotations here though from Genomates. They are all in position. Just starts still a ways away, but has that Hunter's Fury to try to go ahead and peel off some of that pressure. Opens up with it. Finds RP. The spike now dropped onto the floor. Glib able to fight too. Because they just align and gets the collat. Francis and Downby both gonna be struck down. ये क्या मारा उसने Ivy, however, अरे भैंचोद comes away with 2 kills. Xros able to find one. भाई crazy अरे भाई A 1v1. He's got the judge in range. 1v1 Needs another weapon. Garage. Does Starso. As he rewraps it right now, Ivy is not buying it. भाई सही बैठा है भाई स्टॉक सो Considering the potential push over. उसने लेके ए जाना चाहिए भाई. Grabs the spike. The regression back through the window. The approach. अरे हाँ यार इसने अगर प्लांट किया तो इसको अल्ट मिल जाएगा भैंचोद. अभी तो अल्ट किया था इसने. A single thing from Ivy. He's got so much utility. अलार्म बोर्ड का साउंड तो क्या रहेगा उस पे गन भी तो नहीं है दल्ले पे This is going to give him a lockdown as well. Recalls it. The swing of the जीत गए भैंचोद. जीत गए भाई जीत गए एस क्या ये फ्लैंक मार के जीत लिया भाई क्रेजी भैंचोद. हिट भाई खतरनाक रिप्ले था भाई खतरनाक मतलब ये सब यहाँ से पुश मारे वो अकेला गैरेज से उसने अकेला गन लेके पुश मारा भाई. ट्रिगर डिसिप्लिन भैंचोद. दो लोगों को लिया मार्टिन को लिया खत्म. खतरनाक भाई. एस निकाला ना इसने नहीं एस नहीं है इसने 4K high octane action and it's going to be Ivy who caps off a stellar crazy भाई. भाई स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था भाई M8 जीत जाएगी भैंचोद. हाँ बे 4-0 था वही तो साला बाद में जो एक टाइम आउट से कितना चेंज हुआ देखना भाई. हाँ एक टाइम आउट से बेंच रुके ही नहीं फिर वो फिर तो टाइम आउट लिया ही नहीं मादरचोद लोगों ने सीधी गांड ही मार दी भाई. क्रेजी भाई क्रेजी. अरे यार फर्जी मैं ना मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है मैं आता हूँ ठीक है चल भाई.
subirle esa chapa me gustan pila y tú sabes que yo soy puto que estoy la es mentira. Full de los bolsillos para darte lo que tú pidas, ya están dándole a la tu si va con un vuelo de ida. Ponla para subirle esa chapa me gustan pila y tú sabes que yo soy puto y que estoy la es mentira. Full de los bolsillos para darte lo que tú pidas, ya están dándole a la tu si va con un vuelo de ida. Ponla para subirla, ponla para subirla, ponla para subirla, ponla para subirla. Jan here with Coach Slokanen of Nongshim now. Congratulations, Slokanen, on map 1. You guys were 4-0 down, and that first timeout literally changed everything. So what was being said in those 60 seconds? 저희가 오랜만에 경기이기도 하다 보니까 처음에 시작할 때 좀 선수들이 많이 굳어 있는 것 같아서 좀 우리 오랜만에 경기고 좀 하다 보면 우리 자연스럽게 풀어질 거고 그러다 보니까 우리 너무 상대 의식하지 말고 그냥 좀 푼다고 생각하고 하자라고 얘기했습니다. Well, I felt like we were a bit stiff and a bit rusty because we haven't played on the stage in a while. So I told my boys, let's take it as a warm-up, and we are eventually going to warm up and be fired up. So don't feel a lot of pressure. We're going to get it. So I think that's what went well during the timeouts. Now, thank you very much, and good luck on the next map. Well, Wyatt, you set it up that one of these teams was going to be taking their first loss on Haven, and it turns out it was Genomates, but man, what a map! Yeah, and given what I said that the best result someone had against Nongshim on this map was getting 5 rounds, maybe you would think, oh, it'll bode well that they got... That was their pick. They picked it, though. They picked it into Nongshim, and they lost. And they lost. You saw the stats. I mean, our team put up 1,000 kills. We were watching him get 3 Ks and the rounds crumbling around him. Crazy. Gosh. The amount of multi-kills he got in lost rounds was insane. Insane. Yeah. I mean, he was trying to do everything he possibly could, bro. It was nuts. Let's look at the other side of things, though, for a player that had enormous impact for Nongshim. It's time for the HyperX Reflex moment of the day, and this is on the pistol round. Again, one of my favorite players, desi, sliding around. His pistol round impact is unbelievable. Let me throw you a stat here. Okay. desi is averaging a 1.75 kill per round on pistols. What? It's unreal. Most हेलो फर्जी है क्या अभी बात कर रहे हैं They're like 70%. Yeah. Yes. Around win rate. They win them all. Plus, It's unbelievable, and he is so good, not just on those pistol runs, but consistently. The second half was beautiful from him. You saw mates come in with this composition, with the Cypher looking to, play that macro on the defense, try and slow him down from the fast hits. But the new Nongshim that won kickoff versus who couldn't make it to an international last year, I think he's gotten so much better at tempering, playing that slower macro stuff before getting in to their actual hard executes, where they still look just so good in the way they're scaling off desi. So we heard in the TAC timeout that there was a call there from the coach to kind of ease into the game. Not necessarily something strategic perhaps, but more just like feeling the crowd, feeling the energy of this game and getting into it, because they are fairly inexperienced. What did you see change after that? I think in terms of the macro, what they did a lot better was pushing through on their defense instead of full rotating back through spawn. First couple rounds, they were over-rotating like crazy. You look at their pistol, they let the turret drop, get flanked through C, lose the round. But here, watch how instead of rotating, they're getting proactive, pushing into space that's been left by their opponent, and as mates go back to reclear, they cook them in this round in mid. Then, just a few rounds later, it's the same thing over towards the A side as they pressure into mid, and then get this embed from X-Ross. It was very effective from Nongshim, and it's something that I was impressed seeing from them regionally that I'm glad is transferring over here with their defensive proactivity. Yeah, and on the side swap, every single Nongshim attack side Haven we've seen so far has just been completely dominant. They are so good at pacing things out with the Neon. They don't get caught in some of the traps that you often see the Neon teams falling into. But obviously, when it comes down to crunch time, desi can just hit the gas at any moment. Dude, I'm watching round 18, I think it was, and Mini is holding. Mini, who's got superb aim, by the way, is holding, waiting for desi to finish a slide, tracking him through the air, and desi is just wiggling around and then slides and kills him. Sometimes when you watch people go up against desi, it does feel a bit unfair. Yep. It doesn't necessarily feel like you're getting decent fights. It's just unbelievable how good he is at it, and I love it too because it feels like he's getting the same effect as teams that were playing the Waylay of just having like crazy stuff going on in the air to break your crosshair, but he's doing it on Neon to the same level. It's great. Martin got like 10 more kills than him, but it felt like desi had more impact on the game. Which is ridiculous to say, isn't it? Well, obviously, Genomates are going to need a bit of an adjustment, so let's hear what Paco, the coach, had to say ahead of map 2. Jen
here with Coach Paco of Gentlemates. Now, Paco, a lot of aggression we've witnessed from Nongshim. What is your plan to deal with them on Corrode? And how much trouble do you think Dambi's Neon is going to be for you? I don't think there is any trouble and that like we need to adjust anything. This game is not about them, it's about us, and we just need to take the control back and like everything will be fine. And we had already a conversation, so I believe the second match will be much different. Thank you and best of luck. Well, given I picked Gentlemates to win, I'm glad that Coach Paco thinks that Dambi won't be giving them any trouble. Yeah. And they'll just be able to handle it on Corrode. It's such a good different, news. such a different answer from Paco, actually, because the whole team has talked about how good they are at problem solving generally throughout this tournament. And then here, Paco's not talking about the other team at all. He's just saying it's all on them. Yeah, it is interesting. I think Mates was a bit slow to adapt in that first half. After Nongshim started to go for these active reclears you were talking about, I feel like they kept getting caught by surprise by players in positions like that. Then you get into the second, and that half was absolutely all about Dambi and how he took over there. And what scares me is that I think this Corrode is another great map for Dambi on the Neon. He looked so good here regionally. Yeah, he looks really good here, but I think what's curious is that this is really the only map in the pool for me where neither team is looking at Corrode like, damn, we're smashing everyone here. Let's pick in one of our best. This is more, to me, of an anti-pick where Gentlemates have not been great here. Their attack sides have not been good in the couple matches that they played against BBL and Fnatic. So it seems like Nongshim just want to close this out, taking Gentlemates to a map where they're not going to be feeling at their best. We saw a fantastic map one. I mean, even though it's a loss from Gentlemates, the quality of gameplay, I thought, I was really impressed with it. We've also got Bind to finish, potentially, where both teams look amazing. But to your point, I mean, we might be seeing a little bit of a dip here, where it's more to do with can you kind of muddle through a map this that's might be towards the bottom? this might become more of a scrap fest, where I think the macro from both teams on Haven is world class. It's just not the case for them on Corrode. It's not at the top of either of the pool. It's, I think, even lower for Gentlemates than for NS. Sure. I do think that this is still a... Oh, okay, that's very different. Let me surely not. hold my point there, because Martine is hovering the Phoenix. I feel like it's already that we got the KO. Yeah, it's already so different. They were previously running Waylay Yoru here. Yeah, just like a default meta comp. Maybe this is why Paco said it's all on us. Yeah, I mean, it would be cool to see this variant continue. It was very popular end of last year. Teams like NRG were excellent on Corrode, playing this double initiator KO Sova composition. They weren't playing Phoenix. No, they weren't playing Phoenix. I don't know if Martine's going to be playing Phoenix, They've though. been studying the EDG VODs. They've been studying them. Maybe don't do Yep, that. and he picked it. I was waiting to see if I was going to get trolled and if he would switch back to Yoru, but we are locking in on the Phoenix. I've seen people run Phoenix Yoru here, had a lot of success. Seen people run a Phoenix Waylay even for PaperX, but never this comp. Yeah, Viper heavy map. Both the Phoenix and the KO are very good for giving active fights and constantly pressuring through the smokes. You have some super powerful ults with this composition to snowball as well if you can get Martine those orbs. But it is so different than the Yoru that he basically only plays. Just quickly, Wyatt, does this increase or lower your confidence in Gentlemates being able to push us to 3? It increases it, honestly. Yeah, I am satisfied with seeing them bring something else out, where typically they have found so much success leaning into the meta. This was a map where I don't feel that was the case, so I'm okay with them switching it up to try and stay alive in this series. Well, it would be incredible if we made it to Bind map 3 here in this series. So let's send it back to your casters for Corrode. Here's Achilles and Paperthin. Okay, some very different looks from Gentlemates. Completely flipping our expectations when it comes down to this comp, bringing us Martine on the Phoenix and our first KO of the tournament here in Mini's hands. Throwing a literal curveball at the situation, trying to do what they can to maybe get this Nongshim team a bit off balance. I don't mind the KO too much here. Gives you a little bit of extra layer of info gathering behind Starkso Sova, as well as, having that ult, that ability to nullify all of the abilities, make sure Dambi can't go nuts on you. Stuff like that could be pretty impactful here, but it's untested, it's unproven, and they're gonna have to debut it in their first round of playoffs here at VCT Santiago. See if they can get the job done. They once again start on an attack side, selling another fake early, so similar ideas to what we saw on Haven at the beginning. They're already pulling quite a bit. They're already getting some good damage in. France is taken down low. Dambi still going to be able to find a kill, as many will fall. You get backpedal there from Stars, but the rest of the team still working their way forward into the B site. Now being heard is Ivy for the opening shot. Won't be able to have it there.
Hippo just repositioning, shows his head for a brief little moment, but does manage to tuck away and keep himself alive for now. Fading on this mid connector, the Prowler to lead it forward. Post-plant setup, but now starting to get broken down. That flank going to be noted as X-Ross finds the kill on a star cell. Dambi just dancing around in heaven, able to find a kill before getting traded out, and just like that, Francis taking that early contact, that early damage, survives and finds the final kill, and Nongshim get the pistol. Yeah, and the way Nongshim is set up for this round is really nice, and even getting that first pick, as those two players were trying to sell a fake on the other side of the map, they kill one. Dambi's immediately running over, but they're not over-pressing, they're not overextending, they're hanging back by B tower, by B elbow, waiting out to see if there's going to be any aggression. They use a snake bite to buy a little bit of space, buy a little bit of time, and then this is a huge catch for X-Ross there to take Starkso out of mid. That really opens up that extra layer for you, that extra angle that you don't have to worry about. And then they just flood in together. You've used all your utility by that point as mates as well. There were no flashes left on the retake. Full force coming through to try to catch Nongshim off guard. Flashes in, Francis with that judge going to be able to find it. Hello. Now they know the buy is in play, but Ivy still so far forward, ends up getting caught by it. हाँ भाई 1-1 कर दिया भाई 1-1 सीधा कमबैक कर दिया भैंचोद 1-1 हो गया Dambi tries to slide right. मार्टिन फिनिक्स खेल रहा है हैं वही भैंचोद ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ भैंचोद ये कब हुआ picking up right where he left off in the previous map. क्या पता भाई one kill, give him that run it back just in case things. और ये बीपोज सिर्फ यही खेलता है क्या नियॉन Thrifty attempt here. क्या पता भाई शायद से with a shotgun playing on the corner, swing in and Martin survives. That heal through as well. And he's got the regen shield. कितना हील होता है फिनिक्स की मॉली में 50 शायद से 50 बस अच्छा पर फिनिक्स सही एजेंट है यार मतलब एक इससे हील होता है ना लाइक एक यूटिल से लेकिन अगर तूने दीवार की तो उससे 50 तूने मॉली डाली तो एक 50 अच्छा हाँ वैसे बोल रहा हूँ मैं पहले फुल होता था ना हाँ बट तेरे को हमेशा वो दीवार और इस पे रहनी पड़ती थी ना समझ रहा है तू वो छोड़ नहीं सकता ना वो एरिया छोड़ राइट डाम्बी भाई क्या बकचोदी है भाई देखा भाई क्रेजी मारा भाई उसने भाई ये क्या हुआ भैंचोद मुझे लगा ये राउंड तो निकल गया एकदम से आया वो फराटेदार भाई अगर वो ग्लिम्स ने स्पैम नहीं किया होता तो भाई खत्म था फिर गेम समझ आया तू देख भैंचोद लिया इसको लिया बीपो को लिया फिर बाद में इसको लिया पर भैंचोद वो बीपो को मारा कैसे भैंचोद इतनी दूर से कैसे लगती है इनकी मेरी तो कभी नहीं लगती भैंचोद लगती है भाई लगती है मैंने मारा है भाई इतनी इनकी लगती है भाई मेरी कभी नहीं लगती बाकी तो ना फिर वो लोड़े के ऊपर ऐसा एम करके मारना पड़ता है वो स्प्रेड बराबर पूरा हो समझ रहे हो लोड़े के ऊपर पेट पे मारना पड़ता है हाँ मतलब वही एब्डोमेन के ऊपर तेरे को ये करके फेस पे नहीं मारना होता नहीं फेस पे नहीं मार सकता अच्छा जो वो स्प्रेड होता है ना वो बुलेट स्प्रेड होती है शॉटगन हमेशा वैसी होती है ना करेक्ट sees to go out the molly over the top RB scouted X-Ross covering fire oh अच्छा मॉली का लाइनअप है इसका more work to be done another smoke going to be bloomed in but RB ends up falling. X-Ross with a follow-up. Martin now dead. The spam coming in. There's the flank from Mini. Nice. 3-1. Mates maintaining the lead. भाई लीड पे है पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि भैंचोद कभी भी कुछ भी हो रहा है वही तो मतलब बहुत chaotic राउंड चल रहा है ऐसा लग रहा है तेरे को बहुत मुश्किल से जीत रहे हैं मतलब ऐसा मौत को छू के जीत रहे हैं जो लास्ट में किसी को क्लच करना पड़ रहा है हाँ मतलब लास्ट मैन तक चल रहा है ऐसा बोल रहा ना तू चल सेव है ये तो इजीली निकल जाए बेंचोद पता नहीं भाई बक्की लेके मार देगा भाई डैम्बी पता नहीं मैं इनका लौड़ा अल्ट भी है बेंचोद इस पे
stacking into this one. It's a great shot to start things off. Martin going to be struck down. अरे 2 गन गिरा दी वेंचर Now a bit stranded. Does it get blinded up? गोली अल्ट को लिसने The overdrive in play. Dambi ready and willing to chase this corner, but people does manage to find him with the outlaw. भाई सब कुछ चला गया भाई क्या है भाई going the way चल of कोई नहीं 1v2 Dust settling and Extra still a world away, just skirting his way into mid at the moment. Continues on this trajectory, can perhaps recover. पीछे से आएगा गन मिल जाएगी इसे वही तो वो पीछे से ही आएगा Fantastic start this round. Ends up getting away from Nongshim perhaps. Moves forward, pick of the litter as far as the weaponry is concerned, grabs up the Vandal. देख रहा है नहीं देख रहे Is very possible for Extros to arrive on. Cliff was reading it for a moment, but now they're pretty tunneled in on other parts of the map. Extros just waits out the Cosmic Divide. Tucked away though. Hiding their positions. Has all his util. I don't think at least. People's going to be able to swing that corner on a dime. Catch him off guard. Oh, there's the spot. Stunned up on the relay. Cannot get that crosshair. Swung across. भाई ये भी almost गया था वेंचर It's mates now up to 4. That's scrappy as hell. It looked like you said, that for a moment maybe. But वो सेफ था रे मतलब क्या बोलने का तू सेफ पे उतना किल किया ना समझ रहा है तू नहीं मैं कह रहा हूँ M8 की तरफ से मैं बोल रहा हूँ मैं वेंचर ये भी ऑलमोस्ट हार गए थे हाँ यार मगर जब 2v3 था बेंचो लाइक 2v3 था तुम तो शांति लेना चाहिए था समझ रहे तू किने उन्होंने इतना पुश नहीं करना चाहिए था नोंगशिम को हां नोंगशिम नहीं अल्ट खोला ना वो तो अल्ट पे पीछे घुस रहे थे वो अरे हाँ तो उसको सपोर्ट करने के लिए आगे एक बंदा आगे जाता तो ठीक है तो 2v2 हो जाता ना समझ रहे तू भाई मोमेंटम में घुस गए वो हाँ वही Yeah, I'll be curious to see what it looks like coming out of this timeout here for Nongshim. A lot of early aggression at वेंचर फिर से 4 राउंड बैक टू बैक जीता है मेट और टाइम आउट आया in the long run over towards अभी पूरा चेंज हो गया देख वेंचर try to spread the map a little bit more. अब मैप खत्म A little bit safer, play a little bit more default. Don't want to give Martin any more opportunities to keep scooping up kills, scooping up ults. Running away with this half. अब ये लोग बोलेंगे देख बी साइड से जो तुम पुश कर रहे हो ना तुम चूतिया पुश मत करो मादर चोद इन्फो पीक लो पीछे आ जाओ बहन के लौड़ो क्योंकि बी मेन पे कितने लोग मर रहे हैं Oh my god. देवा 5 स्टैक बी बेंचो देख बोला ना तेरे को 5 स्टैक बी बाय राउंड में I mean, Mates has no intention of really making any kind of fast hit or early aggression. The spike's still down. They're just playing slow. They're waiting this out. They're anticipating Nongshim getting aggressive. मैं मगर KO का नाइफ तोड़ना मांगता भाई. That spike might remain stranded. That's true. Many watching for the. अरे बेंचो स्पाइक गिरेगी. Send out the 0 point turns away. अरे भाग. अरे बेंचो इसका स्पाइक. However, still going to be out here at spawn. And Francis has the spot, has the kill. Dambi trying to scale his way forward, but Martin still hears supplier, but RB able to trade that one back. RB finds him. अरे स्टक सो. And okay, the time अरे बेंचो. Nongshim get themselves a second round win. This allows them to bolster the economy a bit. That is पूरी गाड़ी मारी भाई. वो फ्लैश मारा ना उसने अगर उसकी जगह नाइफ मारता तो बेंचो निकलता ना. हाँ. नाइफ मारना था साला. नाइफ मारता तो बेंचो पूरा इन्फो आता है ये फुल ले भाग जाते. बराबर. पर बेंचो क्या क्रेजी कॉल रहेगा उनका कि ऑल बी से पुश करते हैं. भाई क्या एग्रो पुश किया उन लोगों ने अभी देख ये पूरे ऑल बी. ये भी ईगो पे खेल रहे हैं लग रहा है. अरे पर बेंचो चुद गए ना ये तो. साइट डब्लू दबाने के बाद भी डब्लू दबाया 2 अल्ट चली गई फिर भी साइट नहीं मिली. वही तो बेंचो 2 लोग गए ना. 2 लोग गए 2 अल्ट गई. हाँ वही तो मार्टिन और बीपो गया. Checking that now, locking on to be able to find a clip. Will be able to trade it back. A 2v4 now. You're not pushing this. Spike widely just going to be stuck at yard, and Francis wants to try to flush him out. Gets the spot here. चलो अब इनको पता है कि ये साइड पे आने वाले करके. Pops out of the dimensional drift. अरे नहीं यार बेंचो. Suddenly Nongshim chaining together these 2 rounds, just one away. भाई क्या करते हैं बेंचो दे टाइम आउट में.
of Nongshim and bad for the economy of Mates. They only had enough money because they're कोरियन टीम है ना ये नोंगशिम to weather through one. एशिया Not able to get that second. कोई जापानीज टीम है कोई VCT में है मगर वो क्वालीफाई नहीं हुई ना कौन सी टीम है जापानीज पता नहीं यार याद नहीं मैंने देखा तो था इसमें है क्या टीयर 1 में हां टीयर 1 में है एक ही जापानीज टीम है भाई You're going to have minis alt, you're going to have the no commands, you're going to have some ability here to I think really stymie a lot of what Nongshim relies on. And क्या करना चाहिए बेंचो दिन run it back so he can get you a little bit of info, clear some space. So for Nongshim, maybe you're talking a little कुछ bit नहीं more भाई ये retake मैच के बाद heavier, अपन they're just going to keep with the वैलोरेंट aggression. खेलेंगे टेंशन मत ले तू Seems like भाई काउंटर पुश कर change up during Nongshim's time out was just hey, let's try a क्या different kind of करा नोंगशिम बेंच डिफेंस में काउंटर पुश करके जीत रहा है वही तो साले कि भाई एग्रेशन से मारो बेंचो था वो एग्रेस दिखाएंगे तो बेंचो डबल एग्रेस हां बेंचो अबे इसने तो पेपर एक्स की गांड मारी थी भाई नोंगशिम की हां ये सीड 1 ऐसी थोड़ी आया बेंचो 2-0 मारा था ना पेपर एक्स को हां you don't want to drop guns over early if you can help it. Sheriff's and a bandit. सेव है तो कर फिनिक्स का अल्ट है बेंचो और केओ का अल्ट है पर सेव करना चाहिए अल्ट मेरे ख्याल से वो यार भाई अभी मुझे लगता है वो जो इनका केओ हर बार नाइफ मारेगा हां बेंचो पहली मारना चाहिए था वो राउंड निकलता भाई नाइफ मारता तो हां वही ना Invest that judge in alongside that vulnerable. There goes Martin, knows that he tagged up the enemy Neon as well. Looks for a little bit more. Glyph with a nice headshot. We'll be able to catch him on the jump, but Ivy still here, still standing, still breathing, still fighting. Swings in, now puts that spike down on the floor. As the Nightfall does go across, gets the K into these players. And Ivy has the transfer, another 4K from it. भाई to tie it up 4-4. Hit Ivy. He's been really इनका आइजल कौन है is the best yet. क्या पता भाई देख ले Everybody talks about Domby Francis. RB had a glow up. X-Ross had a phenomenal best of 5 against RQ, but Ivy is so steady. And usually it's like lurking. He's doing kind of this second layer of information gathering for you. But today he has just been discussing. Look at that track. कहाँ लिखा ही नहीं है उसमें RB है RB क्या Taunting across the stage, but now we go back into a buy for Mates. जेंटलनेस का स्टॉक सो है Null command as well as the run it back still available. Just been held in the back pocket for now. Nongshim abandoned mid. Info initially, they've got to start re-clearing this space. Meanwhile, Mates is just going to try to scale. अच्छा ये पूरा मिड खेल रहे थे Paranoia does go through, but the curveball from Martin is perfectly placed. Peels back some of that pressure. At the same time, X-Ross going to be taken down. भाई वो क्या प्ले बिठाया उन्होंने देखा क्या पैरानोया के साथ हाँ भाई क्रेजी वेंचर splits the difference between the two players and doesn't manage to find the kill. Starzo now cleans up the enemy Oru. Dambi trying to push his way forward but has to abandon this angle. Sets up the fast lane, immediately backpedals Ivy at the same time. Still here, but now dead. Nice. Mini. Great awareness. Flushes out the enemy Viper. 2v4. It's still a very favorable position. Re-establish the lead. फ्लैंक आ गया वो भी 2v2 है ना भाई 2v3 है 2v3 Pop of the ultimate and Martin finds value from it immediately. RB eliminated. Dambi trying to play this one out patiently. Sell him on fake info. Oh, oh he gets whippy. And Starzo capitalizes on that 10 times out of 10. अरे हक दिया वेंचो हाँ हक दिया अच्छा तो पीछे क्या ऐसा होता है पता है क्या Yeah, this is just great from टेंशन में आ गया ना टेंशन में आके मारा वो पैनिक हो गया कि फिनिक्स भी है हाँ इसको मारता हूँ फिर बाद में उसको मार देता हूँ and that completely stalls out Nongshim's cheeky attempt to try to catch Mates in mid. So it's just better reactions from Mates this time. He's laughing a bit. He knows he should have. कितना टाइम तेरा ऐसा ही होता है बेंच टाइम कितना रहा तेरा 0-0 हाँ 0-0 9 39 38 37 तू बहुत पीछे है बे लाइव ओ अच्छा अच्छा
तो मैं पीछे करता ठीक है हूँ। चल लाइव आता हूँ रुक मैं स्लिगी का देखता हूँ रुक मैं आता हूँ लाइव आता हूँ चल बताइए मेरे को टाइम लाइव आता आता एक सेकंड देना मेरे को कहाँ गया यार Francis being there in mid with that operator. Tuck all the way back through the attacker spawn, not giving him the angle into mid. अबे एक बात बता अगर वाइपर अल्ट पे मैं क्यू नाइफ मारूंगा उसकी अल्ट जाएगी पता नहीं यार नहीं अगर मैंने हाँ क्यू का अल्ट मारा तो जाएगी लगता है नहीं नाइफ पे नाइफ पे नहीं पता यार भाई मार्टी ने तो गांडी मार दी भाई अबे तू देखा वाइपर को कैसे मारा नहीं देखा यार भाई गांड मारी पीछे पीछे आके देख ये राउंड तो डन है पीछे आके देख कितना सेकंड पीछे जाओ चल मैं 30 सेकंड पीछे जाता हूं 110 के आसपास देख यार तो एक बात बताओ क्या हाँ देखा मैं बीपो ने उसको ये किया और फिर बाद में किया अरे नहीं कैसा है पता है क्या सीन तेरे को बताता हूं ना अगर तेरे को वाइपर अल्ट खेलना है ना वाइपर अल्ट अगर खेल रहा है तो जज पे खेल भैंचो क्योंकि सबकी हेल्थ कम होती है ना तो जितना स्प्रेड ज्यादा हो ना भैंचो तेरी एक गोली भाई कम से कम 4 या 5 तो डैमेज करती है अबे बीपो ने तो गांडी मार दी आ रहा भाई बीपो मार रहा है बेंचो अब मार्टिन पे डिपेंडेंट नहीं है फुल हां center mass but that's about as good as it got. Yeah, the problem is you've got all these angles already created because Beepo's so far he's into B elbow. You're flooding in through the site. Crazy trying to get that retake to go there as टाइम क्या चल रहा है तेरा 6 5 4 3 tricky to say the least. मेरा 198 97 37 36 sorry once again looking for this aggressive push out to try to get a catch 98 कैसे हो गया बेंचो he is able to backpedal over towards the spawn. Rescales does get spotted, tagged down low. Relay bolt. Mini chudega bencho. Pop flash not going to find the turn, but now blinded up by the paranoia. Things get chaotic. The RB eventually will be able to भाई क्या W push कर रहे हैं? A-site's been taken. Plan about to come through. Players nearby enough. Before scaling into the back, Francis able to find the track on it, but not before Ivy ends up falling. Crazy भाई crazy. He's able to go ahead and get himself a second. यार बेंचो क्या आगू खेल रहे हैं? Collects the kill. Glyph hearing that movement, scale forward. Nice. Shambi outdone now into a 2v2. The swing around the back, the flank, now known. X-Ross, however, good for the kill to go into the 1v1. Battle of the controllers, the tap on the plant, but RB swinging around the world. Flank. 40 seconds, Glyph could do the same, could even sprint over to B if he wanted, but we'll just go for it. उसको पता है कि वो elbow से आएगा mostly. Behind the box is dialed in on the angle. नहीं भाई भाई गांड भाई हार्ट अटैक देगा मानो चोदी That's what makes the lead of the half. It's one of those rounds that you really needed from Glyph. He's been good for those big clutches. He comes up huge here, slowing down Donby, taking out X-Ross, taking out RB. Huge. Taunts are now flying. Mates looking to make this an 8-4 scoreline. Dimensional drift available on the one side. Still 2 ultimates for Mates. Just Fury as well as that. अच्छा clutch. Set them up very nicely for post plant to secure the round. Meanwhile, Nongshim wanted to go for this aggression. The jump kick out, Francis. अरे man, able to win out the fight. The Hunter's Fury now going to be there in reply, but barely elusive. Will get tagged up. कोई नहीं मिला भाई. Get a kill. They get the ult. They get out scot-free. Nice little jump peek to set up Francis on the wide swing. We're gonna make another go at B. Hold up close this time. Bencho, भाई मार Francis. Good for one before getting taken down. The site broken open and again 2v3 here. Glyph पे अल्ट है कर भाई कब घर पर लेके जाएगा क्या बेंचो कर रहा है going to be invested, cutting off that mid-connected position where 2 players are looking. पर थोड़ी गंदी अल्ट है They both lose out. गंदी अल्ट थी
Maybe expecting that the wider numbers were going to be coming in through main. Either way, the defuse is there, and it's going to be 7-5 at the half yet again. 7-5. Wow. I mean, पहला मैप भी 7-5 था ना? High tempo, high pace. Yes. It's definitely living up to that. Loving the way the मगर both teams are just 7-5 going at इनका it. था. अच्छा ये एडवांटेज में थे नोंगशिम. हाँ नोंगशिम था. Insane scenes here from both of these squads. Want to rally भाई back ये in the स्पीड half ट्रांसफर क्या here. खतरनाक करते देख ना. After the first map loss. Let's see if they can take this map. अपना हिस्सा नहीं होता बेंच. अपना बेंच सामने वाला बंदा नहीं मरता बेंच स्प्रे में. तो ट्रांसफर छोड़ो बेंच. इतना गंदा एम है. Vamos a hacer algo, Aquí estoy con mi compa David. ये टाइम क्या चल रहा है? टाइमर क्या चल रहा है? 47, 46, 45. Quiero que ustedes se अच्छा vuelvan ठीक है locos, que se चल levanten 2-3 de la सेकंड ही आगे silla, que पीछे griten lo que अपन quieran. Cuando yo diga paren, nos quedamos todos en silencio, ¿va? David, cuando quieras. Todos. Muy bien. David, cuando quieras. ¡Vamos! Todos. ¡Para! Muy bien. ¿Les parece una más? Santiago. Todos. Arriba. क्या बोल रहा है? Más fuerte. Estamos bien. Muy bien. Vamos a despedirnos ya con la última. Cuando quieras, David. ¡Dale duro! ¡Vamos arriba! ¡No los escucho! ¡Y para! ¡Santiago! ¡Grita con el alma! I think we've solved the energy crisis here with this crowd in Santiago. They have an infinite pool of it available at the drop of a hat or the beat of a drum. Amazing. I mean, we're busting out all the stops here today. I think that's the first musical instrument that's debuted out there. And I'm sure it will not be the last. I have a feeling you're right. भाई तुझे सीड 1 कर्स के बारे में पता है क्या? कि सीड 1 में जो आता है वो बाहर आता है. वैसा नहीं मगर उनका मतलब कैसे होता है? जो प्लेऑफ से खेलते हैं ना वो उनका हाथ गर्म रहता है ना. तो यार around the corner, the pop flash, and here's how many guns are on the opposite side. So we'll just go ahead back away. वो भी तो है चैंपियंस कर्स भी तो है. मॉली में चला दिया. टीपी करा और उसका टीपी में मर गया. वो जो चैंपियन जाता है वो अगला मास्टर्स में नहीं क्वालिफाई हो पाता. लेकिन एनर्जी ने ब्रेक किया कर्स वाला. हाँ भाई. क्वालिफाई किया जीतेगी पता नहीं है कि नहीं. डीप किया उसने स्मोक देखा तूने? मैं स्मोक करता हूँ मैं तो. हाँ बट मैं स्मोक करता हूँ मैं थोड़ा इस तरफ करता हूँ साइड की तरफ. डीप नहीं करता क्योंकि फिर वो कॉर्नर में छिप जाते नहीं तो. नहीं उसने वो वाला क्योंकि मिड वाले को पता ना चले कि बीआर है करके. Potential mid push coming through, but चला गया तब तक. They are getting themselves aligned on the correct side of the map now. Well, टावर के स्मोक का वेट कर रहे शायद. 2-2 crunch. You got to try to get ahead of the curve. You have to win this pretty well for Nongshim. Yeah, they're looking for the swing in. Spot out onto the one player, but Ivy ends up getting taken down. RB dead, and it's just X-Ross with 16 HP. The headshot from Starzo. मेरे को कभी-कभी यूटिल से मारने में बहुत अच्छा लगता है साला. सैटिस्फाइंग होता है काफी. जैसे मैं केजे बहुत खेलता था. केजे की अगर मॉली वॉली से कोई मरे ना भाई बहुत मजा आता है. या टरेट से मरे तो भाई आहा. बट टरेट से मरने के लिए मुझे बहुत कम लाइफ चाहिए. हाँ वो तो है. मॉली से इजी होता है.
मॉली बहुत जल्दी जाती है ना। हाँ नहीं तो अलार्म बॉट मॉली और टरेट का कॉम्बो फिर समझ रहे तू। वनरेबल हो जाता है एक तो। हाँ वल्नरेबल होता है, उसकी शील्ड नहीं होती, फिर बाद में ऊपर से तू तेरा ये कर। अबे हाँ देखा देखा देखा, पहला मिस किया, दूसरे पे वो फ्लैश किसका था? Sends it a couple more shots, but Starzo going to be taken out as Ivy finds a follow-up shot. Headshot swinging through, but it runs out of bullets, and Mini will be able to strike him down. भाई क्रेजी भाई, इनके पास सारे बंदूक है भंचोद। The Marshal really grabbed up here. Mini's position now known. I'll be there around the corner. Mini had heard the teleport, but how are you really meant to try to flush him out? Inching forward, does manage to find it. Jump peek though from Francis, greets him with a bucky. Buckshot to the face, and now it's just on Glimp. Been clutch for them before, but this time cannot make it happen. Nice try, boy. Nice try. Not quite going for as heavy of an investment as we saw from Mates at the start of this. क्या इको पे But इको still मार find रहे the हैं same जो दिए लोग result. यार। It's just wild. बहुत फास्ट है भाई ये डैम भी, बहुत फास्ट। Throwing in a little bit of सोचना वो इनका फिनिक्स मार्टिन बैरियर से इस तरफ ही नहीं आ पाया मिड पे, वो घुस भी गया, उसके मुंह पे मार दिया उसके। वो बैरियर ड्रॉप होके बस वो बैरियर ड्रॉप होके वो मिड भी नहीं आ पाया, उससे पहले ही पील दिया उसे। हाँ वही तो। अरे इसकी बात ऐसे है ना, अगर तू मॉली भी डालेगा भंजो, इसको इतना ये नहीं होता, तो इसकी इतना इसको हाँ निकल जाएगा ना वो, मॉली से होल्ड नहीं कर सकते उसे। That is unbelievable, and Ivy भाई खत्म है भाई, पूरा ए साइड पूरा खुल गया भंजो। हाँ ये राउंड तो खत्म ही है, ये राउंड तो खत्म है। 4 के 4 लोगों ने ये किया, पुश किया, गांडी मार दी भंजो। Show it now. I don't think that there's going to be too much more happening. दे दिया पुट उसने, पुट दे दिया उसने। Going to be zoned away. As they want to try to funnel this kill into Francis's अच्छा hands. गन भी तो नहीं है इस पे। Problem is you do have the gap closed, but there you go. भाई इसको अल्ट मिल गया अभी, ये अल्ट के पास आ गया ना अभी फ्रांसिस। One away from tying it up, and Francis one away from having the dimensional एक और दूर है अल्ट के। Just bananas. तो शायद से बी पे और लेके अल्ट मार देगा भंजो पूरे साइड पे। I gotta see this again. Yeah. उसने दो लोगों को मारा क्या? नहीं नहीं एक को मारा ब्लाइंड में, एक इसने मारा था वाइपर ने। हाँ वो आउटलॉ के थ्रू ना, वाइपर ने 3 मारा, आउटलॉ से 1 मारा उसने। Immediately Martin going to be rerouted back inside of the site. ये ले भाई इसको और अल्ट मिल गया। This is really what they wanted to contend for. Dimensional grip at the ready is Ivy. इनको इनको नहीं है मिड की, what the fuck? And here's the rotation. उसने मिड से पूरा पुश मार के अबे इनको इन्फो ही नहीं है मिड का। भाई हग रहे हैं भाई ये। खत्म है भाई, क्या करेगा? ये ऑफ है, ऑफ सेव करेगा भैंसो। Oh hell yeah you do. Could end up being a little bit risky, but let's see. मगर वैसे भी नोंगशिम के पास बहुत पैसा है भैंसो, ये पुश मार सकते हैं उसके ऊपर। आ तो रहे हैं शायद, जा रहे ढूंढ रहे। Remove this off from their hands. That would be devastating for Mates. Looks like they're not going to pursue too. अरे पर भैंसो ये क्या खेला इन्होंने, मिड से भैंसो को इन्फो ही नहीं है। Nongshim will tie it up at 8-8. It's just explosive stuff. नहीं उसने टाइमिंग के ऊपर खेला, जो मिड पे गया ना उसने टाइमिंग के ऊपर पुश मारा आगे, वाइपर था। हाँ He has a vandal. Oh, and he's got damage on him. And Tommy is around the corner. मार दिया भाई, मार ले ली भाई। Nothing retained. ले लिया भाई, ले लिया। All tied up. Crazy भाई, crazy man. Money in the dumps for Gentlemates. Ivy is. Oh my God, he's so clean today. क्या बोल रहा है भाई? तेरी में आके चेत। कोरियन में। I'm not gonna lie, you don't see that too often in Pacific, folks. मैं हूँ बहन। अरे अब इनका सेव है 9-8 हो जाएगा बेंचो। ये राउंड तो हार ही गए। Now, Gentlemates looking to try to pull off a thrifty. Walk down into mid, Starzo. Slotted into that smoke, the flash going through, but Ivy again just comes in off that side. भाई साहब देखा भाई, देखा बेट
Nice little bait and switch setup. Glyph gonna try to delay, but crazy clone out. This is all a bit of a ruse. है भाई हर किसी का प्लान भी इनके पास. Obviously leads with a dimensional drift. We'll be safe in that. और पता है मिड से जानबूझ के आ रही है. Okay, the mask does go on. Relay bolt to delay down me. The slide forward. He's looking for the shot. Will only be able to find Next Ross is there for the punish. Player advantage is now expounded upon as Glyph is the last one standing, and he is a world away from this A site. Now you can get X Ross's ult off this भाई plant. इनके पास पैसा ही पैसा है बहन. देखना भाई कितना पैसा है भाई. On the attacker side, once Nongshim gets there, it's Ivy with 3. भाई flawless 2 round flawless भाई. खत्म भाई. लग नहीं रहा. Valorant लॉन्च कर ले भाई. अपडेट वगैरह कर ले. This is unreal. 21-11-7 at the moment. It's been a massive performance from him on this Viper. ये कितना ही मार्टिन के भरोसे खेलेंगे हाँ. हाँ भाई बहुत रिलाई कर रहे हैं उस पे. अटैक में बीपो मार रहा था लेकिन डिफेंस में तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं. भाई पर मेरे को लग रहा है बिल्कुल भी रीड ही नहीं इनका बेंचोद मैप का. अब मैप अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं इनके पास. के पास. हाँ मतलब बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं ये. क्या बोलते हैं उसे. लेकिन अभी केओ ने नाइफ करना चाहिए क्या नहीं. हाँ कुछ. अरे यार केओ ने नाइफ नहीं किया बेंचोद. पता नहीं क्या कर रहे हैं. That's illegal. Too damn fast, too damn elusive. Pipo sliding forward is able to find Ivy though. The pit now immediately going to be dropped. Still a player disadvantage, but clean tap finds Dambi. But Martin snapped back. Once again into the connector, 2v3. They're trying to clutch it now, the 1v3 Martin. The way to the world. Martin क्या ही करेगा भाई. अंदर फ्लैश मारेगा और पीक लेगा भाई. 3 लोग को तो कहीं मारेगा भाई. Relatively healthy, the curveball forward. Looks for the kill, but X-Ross manages to hold his own. Nongshim, they hit double digits, and once again, break the economy of mates. देख भाई एक टाइम आउट के बाद इतना बदलता है बेंचोद. हाँ भाई टाइम आउट के बाद बेंचोद गांड मार ली. Fast lane in first, and then they go. But he's actually going, and he throws the fast lane as he's in the door already. Slides through, so I think just the timing there caught Glyph a little bit off guard. These little things that they change individually round around. You know, in particular, Dambi, of course, you're going to be watching him on those. भाई पूरा आउट प्ले हो रहे हैं तो पूरा का पूरा. That is so annoying, so difficult to deal with. गन फाइट वाइट तो छोड़ बेंचोद. कोई ना मैप की कोई रीड है कुछ नहीं है भाई. अरे मगर केओ नाइफ क्यों नहीं मार रहा है. पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई. पैनिक हो रहा होगा. तोड़ दिया होगा नाइफ किया हो तो शायद पता नहीं. अरे मगर अगर मॉली डाला तो तू भी तेरा मॉली डालना बेंचोद. डबल मॉली बेंचोद डबल डैमेज करती है ना. कहां पे था केओ. पीछे करता रुक जा. साथ था ना लेफ्ट साइड पे. वो कौन था. नहीं कौन था बेंचोद. रुक जा पीछे करता हूं. अभी वो चल रहा ना. हाँ कर थोड़ा. नीचे है. हेवन के नीचे खेल रखे हो. मगर वहाँ से कुछ तो लाइनअप बनाना चाहिए ना बेंचोद. जहाँ पे मॉली डाल सकते हैं कुछ तो डाल सकते हैं. रुका सकता है. एंट्री रुकनी चाहिए ना भाई. एंट्री रुका तो सब खत्म भाई. समझ रहा है तू. यार बी साइड पे चोक पॉइंट और ए साइड पे भी मॉली है नहीं उसके पास. उसके पास नाइफ और 2 फ्लैश हैं पर उसने करा ही नहीं वो भी. नहीं करा उसने. नाइफ करा उसने पर वो जब घुस गए लेट करा. काफी लेट करा उसने. काफी लेट करा. शॉट हो गया मेरा 39-38. भाई बीपो की तो गांडी मार दी. हाँ करके वन टैप मार दिया बेंगलोरे को. अल्ट को ली थी ना बीपो ने. हाँ इवेपोरेट कर दिया उसे तो. भाई क्रेजी. अरे भाई नेक्स्ट लेवल है भाई. लवड़ा बेंचोद. अरे भाई मारा भाई. अरे गया भाग रहा है. जाओ भागे. स्टैक से भाग रहा है. And now a weapon upgrade for Glyph as well, a vandal in hand. Oh, look at अरे नहीं. Ivy just missed the timing. Well, Starkso seems he might have heard footsteps.
Might just get caught, but no. Narrowly misses it. Ivy can breathe a sigh of relief, but Glyph is still on that flank. He is still encroaching on this position. अच्छा चल बाबा उसने reposition तो कर लिया भैंचोद. The ping's down though. Knows that he's rotated his way further forward into the side itself. Info है. अरे यार. Push forward into the poison arm. Nice, nice. A 3K potentially the 4 is a shock dart. अच्छा तो नॉक्सिंग सपोर्ट कर रहा ना. बढ़िया भाई finally. Finally भाई finally. अभी तो पीछे ही चल रहे हैं ना. भाई स्टाफ तो और मिनी ने बचाया भैंचोद पूरी साइड में. ए साइड. हाँ भाई. उन्होंने अगर नहीं मारा रहता था कि मिनी नहीं ग्लिफ ने मारा ना ये. हाँ ग्लिफ जो कोई है भाई. हाँ. They try to triple swing that angle. Ward anticipating a judge. मिनी भाई गंदा खेल रहा है काफी. That wave of just running people over on their way in. Got a little overconfident, got a little over aggressive. That is a critical one. In the end, 4v5 conversion बहुत पैसा है भैंचोद. Opli इस बार. Opli इस बार. Able to afford an operator into this once again. Fast rotation is going to be coming through. His Starzo is hitting the thing there. भाई दोनों मर गए भाई. Ivy down to a sliver as well. Oh, nice, nice. Nice way. And now the spike. Spike भी नहीं पाया. हम अगर अब इसको पता लेना कि डैम भी है करके मिड पे. हाँ इसका नहीं ऑन कन्फर्म नहीं है. हाँ मैं तो रहता तो बेंच स्पॉन में चला जाता पता है क्या. Allow themselves to get picked apart. स्पॉन में क्या करता है? में जाता और पूरा स्पॉन से में ए आता. Great, no matter which way you cut it. ये फ्लैंक मिल जाती ना. ये मिल गया भाई अभी. क्या 2v5 है भाई. Slow swing, Francis. Easy pickings there for Beepo. Downbeat making plenty of noise, trying to go diving forward. Hits the. अरे बहनचोद. Hold on a second. Will not be able to avoid that concuss. Just setting up a fast lane here. Plant not in play quite just yet. I suspect a ton of this pressure now on X Ross's shoulders. Downbeat still has not committed to this one. पीछे से आया मर गया ये. मरना चाहिए. Nice, nice. From yard, able to find that kill. X Ross now striking. Finds the operator. Sends out a seize, needs to recover the spike, is able to do so, but it's only 18 seconds to try to play around with. नहीं टाइम तो नहीं है. मर गया. Towards CT. मरना तो चाहिए. फाइनली भाई फाइनली. कुछ रिकवरी हो रही है. क्योंकि इन्होंने पूरा रैप किया ना. हाँ. Get really good reads. They're showing things to Nongshim that they're not able to ये जो मिड पे diagnose किल था ना स्टाक्सो का. ये दो स्टार्टिंग के. दूसरा वाला तो क्रेजी था भाई वो. Gets 2 dinks before he gets the spray down. Big भाई step up डैम्बी ने from फिर the भी IGL वेंचर with कवर the अप way करने they के लिए disguise किया the position. Okay, yeah, Dombi gets 2. Sure. But you've already done critical damage to Nongshim with the way that you're able to play the beginning of the round. Able to hold that mid angle. Here we go. अभी ये पुश मार रहे हैं भैंचोद. भाई डैम्बी वाला. अरे भैंचोद. नहीं मार्टिन ने उसको कवर. मार्टिन ने हाँ. चल भाई इसके पास अल्ट है अभी. मुझे लगता है अल्ट मारेगा भैंचोद ये. मिनी का है भैंचोद. मिनी पे भी अल्ट है. भैंचोद पहली मर गया मिनी चूतिया. भाई क्या मारा भाई उसने. Finds himself a third. Could very well be on for an ace, but Francis will be able to deny it away. नहीं. अरे हक दिए यार. Trying to bail him out. Francis taking point. Double facing towards the connector. Glyph just stays tucked away, playing it quietly. Boom of the orb, the scale forward. Watching for it, but no. Glyph winning out that fight. Francis now dead. Either try to be the difference maker to get Nongshim back into the lead. Or can Glyph deliver another massive clutch? He's just going to be disrespecting this fight. Just strafes across it, but Ivy now aware of this. Knows that he's got some damage on him. They can all come down to one shot. यार भाई मिनी क्या कर रहा है. कुछ भी नहीं कर रहा भैंचोद. अल्ट है उस पे. नाइफ है. Now up to 11, 2 rounds away. मॉली फ्लैश. Closing this out. वो कितना लेट ड्राइव किया देखा क्या उसने. हाँ ना. Immense amount of fight in them. What a round here for Francis.
stops Martin from भाई single-handedly मार्टिन ने जो वन claiming टैप the पे वन lead टैप for मारे भाई Gentlemen. मार्टिन होल्ड किया बे That is तब who इतनी else? देर Ivy, in the हाँ end, ना plays यार this so well, so patient, क्रेजी using भाई his क्रेजी util to buy बहनचोद some time, and now they're just going to rush into 6 the किल पे side. मिनी Economy, though, could stir things up. वही दिक्कत हो रही है Dimensional drift from Francis. Leads the charge, and immediately you've got two players leaning in from mid towards खत्म this है B भाई site. मार्टिन पीछे है The push forward इसने into देख the लिया scout. अभी Should have seen Martin there. Will just be the quick exit. Martin trying to find a punish, but it's going to be RB cover. डैमी ने कवर तो दे दिया भाई Snaps it back फ्लैंक from वाले the को ultimate, and Glyph now gone. डैम भी टावर चला गया भाई Fowler to check, doesn't get the catch there on the Beepo. Ivy just tries to hold forward. साइड का Solo कुछ with the इन्फो नहीं है shorty मैंने hand. Swings in, shuts down one. Technically resible there for Mini. If they can find the space, but there you go. Starzo brings him back from the grave. Swing out the भाई judge. जज से लोड़े मार दिए जज से गांड मार दी भाई क्रेजी बहनचोद Just runs over them. There's टू no टिप chip. टू खत्म Get up to match गेम point. खलास And look at the economy for Gentlemates. भाई in खत्म है tatters. भाई It's going to be Stingers, Specters. You've got one Vandal for Martin. Love the way Domby does this. Just keeps taking space, keeps scaling, finds a kill up in heaven, drops back down. भाई जज के साथ मारते मारते मिलते They कैसे just रहते make रे a meal. हो जाता है जज पे आता है जज पे आता है मैं खेलता ना जज बहुत ज्यादा Maybe on this match. He's got a judge, and he still has an overdrive behind this. The drone over the top. Ivy going to be spotted quickly. Has to backpedal, but will get चल अभी वो caught. गन लेने Critical जाएंगे वहाँ mistake पे here from Nongshim's और ये यहाँ पे Viper. प्लांट कर देगा The flood retake is looking very possible. सेफ प्लांट करेगा भाई Do they just fight their way out? No, they will just go for a अभी backside बीपो plant. पूरा अंदर घुसेगा Half बहनचोद lane set up. X-Ross taking that contact. Cross towards yard. His relay book gets dodged. Doable तो है Domby blinded up. भाई Francis, क्या however, मार able to रहा है find भाई one. अरे बहनचोद Another 3 kills. खत्म है Cliff will भाई sit him जीजी down, but I don't think he can make this one जीजी happen. भाई जीजी He cannot. He is गंदा भाई overwhelmed. 2-0 13 to 10 again. Nongshim pull off the 2-0. भाई घुस के over मारा Mates. बहनचोद And everybody's ये been है talking नॉनचेन about this भाई team. ये डैम्बी का कमाल Maybe तू बोल the रहा था ना best डैम्बी Beyond कौन in है the world. जान लिया भाई बहनचोद मार्टिन Those last couple of rounds, he को went कितना ओवरशैडो हो गया मार्टिन इस गेम में वो अच्छा खेला only got it to go. पर डैम्बी के सामने कितना ओवरशैडो हो गया Gentlemates. दिखाई नहीं है वो Cool stuff हाँ भाई at Nongshim on Corrode. Fought tooth and क्या nail मूवमेंट across है ये both चाइना की maps. टीम है तू बोल This रहा था ना Nongshim बहनचोद team is everything that चाइना की थोड़ी everyone है said they were. हाँ ये नहीं ऑल गेमर्स चाइना की सॉरी सॉरी All gamers ये पैक है हाँ ये पैसिफिक है मैं क्या कह रहा वैंचुद वेलोरेंट खेलता हूँ माँ चुदा ये चलो भाई चलाता हूँ मैं आ रहा है क्या हाँ मेरे को 5 मिनट देना मैं शायद से अपडेट होगा मेरा मैं आता हूँ ठीक ठीक आ जा तब तक मैं बंदे इकट्ठे करता हूँ हाँ कर भाई बाय बाय And it's RB's first win at a global event since Champs 2023. How about that? It has been a long time coming for that guy. And he has been right at home with his noodle bros. Nongshim might just very well be that team to beat here at the event. What an incredible performance. And for Gentlemates still, that drive is there, that hunger is there, you can be damn sure of that. Well, they're not done with them quite just yet, but for now, let's hear from Nongshim in the Verizon post-match interview. हेलो 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 खेलेगा क्या लगा बस अनरेटेड नहीं कॉम्पी लगा दे कॉम्पी लगा रहा हूँ रुक जा वो आ रहा है कड़वी कौन आ रहा कड़वी मौत क्या करना था मेरे को ये हटाना था ना
Settings. Brave. Cheesy guy, cheesy. और कोई आ रहा है क्या? और कोई तो नहीं आ रहा। ये लोग तो 5 लोग पड़े हुए हैं इसमें। ये लोग 5 लोग कॉम्पी खेलते हैं। उनके उनका हो जाने दे, फिर देखते हैं क्या सीन है। अगर उनमें से 1-2 लोग जा रहे हैं तो अपन 5 स्टैक कर लेंगे। फ्राइडे है, मुश्किल ही जाएगा कोई। वो तो है, नहीं देख लेंगे। रुक जा। कड़वी है कोई तेरे उसमें? अरे ठीक। तब तक अपन वो कर लेते हैं स्क्रैमिश। रुक जा। इनका 7-12 है इसलिए मैं रुका हूँ। अच्छा ठीक है। हार ही जाएंगे वैसे भी। स्क्रैमिश लगा कुछ है। एक और को बुलाते ना, फिर खेलते हैं। कोई है नहीं। अरे तू कड़वी मेरी टीम में आई है, ये कब वो? Yes, it's me. Autographs if we survive, yeah? Fight! There. Grenade! हाँ क्या सीन हुआ युद्ध? खेलना है? मैंने बुलाया उसको। अरे बहनचोद कितने फ्लैश मारेगा? ए वायुद क्या सीन है? कौन आ रहा है तुम लोग में? अरे रुक जा ना, बोल रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, रुक जा। ओके। अरे वो चारों का क्या हुआ? गए सर, चारों चले गए। अरे ये ड्वार्फ एक्सडी एक्टिव दिखा रहा है, तो पता नहीं। ये एफके मार दे इसे, स्पॉन में आके मार दे। पता है वो हिल रहा है इधर उधर। चेक सिर्फ माउस से खेल रहा शायद, कीबोर्ड नहीं हिला रहा। ए तेरे पास सलीम छेड़ी है ना?
हाँ है Let me show you how the boss does it. तेरे को तो भेजा था मैंने आईडी पासवर्ड। हाँ मैं Grenade! Satchel out. आ रहा है क्या? Satchel out. अरे गलती से जज ले लिया मैं। अरे यार इसे देख लिया। Hold back. Satchel out. अरे दिखा था। I need to blow something up. Here comes the party. छी भाई। That's it, break time. Here comes the party. Satchel out. Okay, done. Grenade. भाई लोग They're not gonna. हाँ भाई। क्या रे भाई, मैं एक जगह पे खड़े रह के मार रहा भाई तेरे को। Grenade. Here comes the party. ओ भाई फिर भी मिस किया इसने 1 सेकंड के लिए। और कोई आ रहा है क्या? चीजी को पूछना आएगा क्या? चीजी 5 स्टैक है भाई। नहीं मैंने बुला लिया जब आ रहा है। मत मार। अरे बाहर आओ 2v2 कर लेते ना वेंचर 1v2 में क्या। 12 मैं चल। कब आ रहा भाई वो 5 बंदा? भरा है भाई 2 मिनट का। ए तूने उसको ऐड दिया आईडी। है हां 2v2 भाई 2v2। तुमने क्या भाई वो कस्टम में चीट ऑन में रखेगा? भाई एबिलिटी नहीं है, बस अपना नॉर्मल वाला एम ऑफ ही कर दे। ये साला रिजल्ट मार रहा था मेरे पे आधा। हां ना मादर तो यार मैंने भी एक बार टीपी करके दोनों को भाड़ भर दिया जब से फिर हो गया। फिर नहीं आ रहा एबिलिटी में मजा नहीं आ रहा। हाँ छोटा मैप है ना, इसलिए एबिलिटी थोड़ा फुद्दू है। ऐसे नहीं लगता तेरे को कि सारे स्कर्मिश मैप्स छोटे हैं एक रीजन के लिए कि यूटिल नहीं यूज करना होता है उनमें? तो क्यों दिया है ऑप्शन फिर बेंच? अरे कस्टम में तो भाई कुछ भी करो भाई। तो ऐसा सीन है। Enemy spotted. अरे नाइस। ये तो स्पॉन मोड के मारा है, स्पॉन वॉरियर है। राइट साइड है। दूसरा कहाँ था? वर्ल्ड टूर पे गया था वो। Enemy spotted. ये नामी कौन से कौन आया है? मैं अभी तूने तो भेजा। नहीं मैंने किसी को नहीं भेजा। है नहीं लाया क्या? ये माता पे दिखा है। 12 वर्ड ले रखी है और तूने अपडेट नहीं कर रखी। हां वही स्टार्ट करें। एक मिनट। क्रोनोवर्ड नहीं सिंगुलैरिटी। One down. तू बाहर चला गया क्या सेंपाई? हां बात कर रहा हूं। मैं तो लगा बाहर आना है। क्या सारे बाहर आ गए क्या? नहीं मैं हूँ ना। मैं और उपोड़ान बाहर आ गए। तू और फर्जी अब तक है। अच्छा किधर है तू? 12 दोनों 12। ओके ये राउंड। अरे भाई मैं पूछा नामी से कौन आया? तो भेजा तूने। आजा 12 जा कर दे। मुकुल ओके। बोलता इतना है ना कि सुनता है नहीं वैन शो। अरे मैंने कुछ तो सुना। ये लगाऊं कॉम्प लगाऊं? कॉम्प भाई नामी ओनली गाइस। भाई ये कौन है भाई? सांजी कौन है बेंच यहाँ पे? अरे भाई ये 25% क्यों हो रहा है? नामी स्वान मेरा सेकंड आईडी है। क्या रैंक है इसमें? पता नहीं कुछ प्लैट गोल्ड 3 प्लैट रहेगा उसमें कुछ। नहीं भाई नहीं है गोल्ड 3 तभी 25% है। सिल्वर है शायद। कोई दूसरा आईडी नहीं है क्या गोल्ड वाला? वन रैंक है इसलिए जैसे अपना ऐसा आ रहा है।
हाँ तो वो अनरैंक्ड में उसका एमएमआर सिल्वर वाला रहेगा, वो बोल रहा हूँ मैं। नहीं भाई उसका तो प्लैट दिखा रहा है लास्ट रैंक, हाँ लास्ट रैंक प्लैट था उसका। पता नहीं फिर क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मुकुल इज बैक। मार्केल ऑफ सिटी नहीं आया फिर या डायमंड चला गया इसलिए? डायमंड चला गया इसलिए। बेंच जो 3 डायमंड आए सामने, मादर चोद गाड़ मार गए। चेंबर गेम द करेक्ट चेंबर। अबे जीत गई ना पीआरएक्स? हाँ पीआरएक्स जीत गई, एमेट हार गई भाई। क्या ही जीत गई है भाई। एमेट तो ठीक है, मतलब एमेट का हो गया। एमेट का सीन ये है कि वो मार्टिन पे बहुत रिलायंट है। एमेट का सीन ये है कि बस अब वो सिर्फ नाम के लिए बेंच पार्टिसिपेट करती है। नहीं भाई अच्छा खेल रही एमेट थी। अच्छी टीम है भाई, सीरियस टीम है, बट वो पागल जैसे मार्टिन पे फोकस कर दिए। और वो सब देख, सेंटिनल्स मेरे को इसलिए अच्छा लगता था कि जेकन पे वो लोग अच्छे से राउंड अप कर पाते थे, मतलब एक बंदे के अराउंड पूरा टीम। उसी को निकाल दिया बेंचोद। हाँ उसी को निकाल दिया। तभी तो बोल रहा हूँ मैं, वो पिछली बार भी ये पॉइंट वाला मैप ही था भाई। कितना उसने बेचारे ने कैरी किया उनकी टीम को, बेंच जो हग रहे थे वो बोटड़ी के। 10 आएगा ना अभी वापस? नहीं आएगा भाई, लगता नहीं आएगा भाई। वो डिपेंड करता है काइडे ने कितना उसका दिल तोड़ा है भाई। अच्छा नहीं बट 10 एक्चुअल में रिटर्न मार रहे हैं सेंटिनल्स में। नहीं रे भाई, उसने ट्रायल्स किया है, शायद से वो सब्स्टिट्यूट कर रहा था क्योंकि कोई फिफ्थ पर्सन नहीं था। उसने टाइम आई थिंक हाँ वो सब्स्टिट्यूट कर रहेगा। मुकुल पिक कर भाई, कहाँ गया? अबे मुकुल है, इसको मेन आईडी से आने बोलना फिर। मेन आईडी डायमंड है भाई उसकी। डायमंड पे गया वो। कल तो बेंचोद वो था ये प्लैट 3। अच्छा प्लैट 3 था क्या? ओह ओके ओके ओके। यस सर, ट्रस्ट मी आई नो। भाई 2 सेंटिनल लेना है, क्या लेना है भाई? अरे नहीं, मैं सेंटिनल नहीं खेल रहा। अगर सेंटिनल खेल रहे हो तो सेज खेलो। ना ये ठीक है। सेज ना अरे वो मेरे को अरे वायुन, मैं सेंटिनल जैसा थोड़ी खेलता हूँ चेंबर को। मैंने बोला सेंटिनल ये चेंबर डिफ करेगा जो तेरा भाई करेगा चेंबर डिफ। वो देख चेंबर ने कार्ड लगाया है साइफर का, स्पाइडरमैन वाला। Hey, how are my buddies? No, not y'all. I'm talking to these little guys, but yeah, what's up? अरे क्या बोलते हैं ओजस, तो अभी भी वही वाले घर में रह रहा है ना? हाँ अभी भी वही वाले घर में रह रहा हूँ। यस। क्या हुआ? तो तेरी कल शिफ्ट है क्या तेरी? हाँ कल शिफ्ट है। यस। तो सुट्टा लेके आना, मैं तेरे वहाँ शॉप से आके, तेरे रेस्टोरेंट से आके लेता हूँ। शॉप बोल रहा हूँ मैं। कौन सा वाला? क्या चाहिए तेरे को? एडवांस 2 डिब्बे। एडवांस ओके ठीक है। याद से हाँ। हाँ क्या है? गोस्ट है भाई। कोई तो बी पे आया यार। ये कहाँ गया है? शॉट बे, ए शॉट 3। आराम से अंदर आ गया लैंप। फक यार, लो था वो 52 था। मैंने 30 दिया उसको। भाई फ्लैश है तेरे पे। मालूम मेरे को बकचोदी कर रहा था। हो गई बकचोदी। Last player standing. अरे लगती Hostile down. One enemy remaining. मेन भी लो है। मॉली पे खेलेगा।
अरे मारो तुम यहाँ पे। अबे लवड़े रॉन्ग कॉल कर दिया। नहीं वो उधर ही जा रहा था बट टू बी ऑनेस्ट मैं भी यही बोल रहा था। रॉन्ग कॉल दिया यार, मैं देखने वाला था भैंचोद। कड़वी तू तो रहने दे भैंचोद रॉन्ग कॉल। झूठ भाई, मतलब मैं तेरे को जानता नहीं हूँ बट तू झूठ बोल रहा है। हाँ मैं तेरे साथ खेल रहा हूँ। तू ये ट्यूब के अंदर से खेल सकता है क्या? ट्यूब के अंदर खेल भाई बस चलेगा। और अगर वो आए ना तो फ्लैश डाल दे बस ऊपर। मैं ये वॉल कर रहा हूँ, हुक्का वॉल कर रहा हूँ। नाइस वॉल यार। Enemies A. No peeking. तेरा गोला डाल दे यहाँ पे। नहीं है अरे क्या लिया? मार उसको भैंचोद। अरे क्या कर रहा है? किसको? अबे उसके सामने तो रहना थी भैंचोद। अरे वुडन बॉक्स पे थी वो, नहीं इतना एंगल नहीं था। नाइस No peeking. टैप कर। अरे स्मोक मारे। अरे कल आएगा ये एक सामने लॉन्ग। Last player standing. इसको बिठा दिया भाई मैं दूसरे बंदे का पता नहीं था ना कहाँ है वो यार। अरे वो आई तो थी टेली की साउंड उसकी। नहीं ब्रिम पीछे था। ब्रिम पीछे से मारा मेरे को। अरे पीछे से वो टेलीपोर्ट करके आया और फिर वो इधर आ गया। नहीं ब्रिम मुझे यहाँ से मार रहा था भाई। अरे वो ही तो बोल रहा हूँ, यहाँ से करके इधर आ गया ना घूम के। और क्या बोला मैंने? अच्छा उसका इन्फो नहीं था भाई। हाँ अच्छा छोड़ मैं कुछ और। भी लग रहा है तो इनके अंदाज से। इन है क्या? टीपी सारे टीपी। क्या शाणपति कर रही है? मॉली डाल दिया यहाँ। हाँ ना मैं तो जान ही नहीं दिया। Spike planted. अबे यार मेरी वैंडल पड़ी है इधर। Last player standing. मदर चोद भाई। भाई मैं क्या बोलता हूँ, साइट होल्ड करो भाई, पुश मत कर। Chamber, don't listen to her. You look great. सेव करे क्या? यार गेको मैं क्या बोलता, तू ए पे ही जा भाई। यहाँ पे आ ही नहीं रहे बहन, आ रहे वापस जा रहे भाई। तू वहाँ पे ही खेल भाई। अभी तक कुछ नहीं है भाई। कुछ नहीं है भाई। ए भी कुछ नहीं है। ए पे रुक। आए बिलोंग। नो पीकिंग। तो भी घुस रहे हो तो मार बहुत बढ़िया। वो जा रहे। अरे बी रुको, ए रुको यार, कोई तो रुको भाई। अबे दो बंदे हैं अभी यहाँ पे यार। अरे तो जाओ भाई, जाओ। देख टीपी मारेंगे। मैं गन लेने आया था यार। हाँ के यार
तेरे ऊपर है, सब तीनों के तीनों वहाँ तेरे पास है। अरे एंटी वाइपर 30 seconds नहीं left. यार दोनों साइड आ गए। Spike planted. One enemy remaining. ये बैक साइड गया, बैक साइड गया है। नाइस रे कड़वी। एक कड़वी तेरे पे भी सेम गन है। थैंक यू। हाँ ये मेरी भी तो है। ये उठाना, हाँ ये उठाना। नहीं मेरे पे भी सेम फैंटम है, बस वो अबे साइड एंकर करो ना वेंचर, मत छोड़ो ये। हाँ वही तो वेंचर, क्या भागने आ रहे वेंचर। गन एक गिरी तो वेंचर सब गन लेने गए वैसे ही। मैंने बोला उसको ये गन रख और उसने लास्ट मोमेंट पे कार्टू ने घायल उठा ली भाई। वो लास्ट में दिखी मेरे को, तो चुप रहे। नहीं भाई तुम सब लोग ए पे ही खेलो भाई। सॉरी कोई नहीं ब्रो, चिल खेलो, चिल कहीं भी खेलो, चिल खेलो, रीटेक कर लेंगे। तू बेंचोत गन क्यों नहीं खरीदा सेनपाई? नेवर माइंड। यहाँ पे स्टीम बीकन डाला किसने तो? रुक जा, मैं स्मोक करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ओह नो मैं पीछे आ रहा था, मैं चला गया यार उसके। टीपी करेंगे। अरे मार बेंचो, सीख लेना कोई तो। नहीं क्या ठीक यार क्या मार रहे यार। बोलो ना यार, प्लांट हो रहा है तो। अरे 2 सेकंड चांस दिया करो। ओ भाई ऊपर है। One enemy remaining. ऊपर है। Last player standing. Like I never left. पीछे बैक से Last player standing. राइट। नाइस रे। Excuse me, I'm working. Let's reset. Deep breaths and all that. भाई तेरे साथ जो प्लेयर था ना वो मर गया था यहाँ पे इधर मॉली में, और मॉली था तो कोई कुछ नहीं कर पाया। अरे मेरे को तुम तीनों से पूछना था, पहली बार खेल रहे हो क्या कड़वी के साथ? मैं शायद पहली बार खेला हूँ एक बार पहले। अपन मिले जब थे ना पहली बार फर्जी। हाँ तब अपन साथ में मिले थे, अपन उसमें नॉर्मल कॉम्पी में मिले थे। ओह अच्छा। You want to play? Let's play. शाबाश। Down A. अरे वो उधर है, क्या बोलते हैं ए पे, वो दो शॉवर Short. कर रहे हैं। 2 शॉवर 2 मेन अभी है। Spike down A. मैं चेंबर मेन है, ऑफ है, पिक मत दो। One enemy remaining. Nice. लो है, बहुत लो है। नहीं सॉरी माय बैड। नाइस। I hate to say it, but probably best to play as a team. भाई दो आप क्यों खेल रहे हो भाई? हाँ दो आप मत लो ना बेंचो। बाय दियो सेनपाई बाय देना। फ्लैश तोड़ रहा था वो बेंचो से हेडशॉट पड़ गया उसको। यार मैं क्या करता हूँ बेंचो, डबल स्टन डाल देता हूँ यहाँ पे बेंचो। कान मारा है बेंचो, देखिए। ये जस्ट दे सेनपाई जस्ट देना। अरे तू पहले सेल करना पड़ेगा ना। हो जाता है वो, कहोगे ना सर। यहाँ पे मत देखिए, यहाँ सही भाई, क्रेजी भाई क्रेजी। यहाँ पे बेंचो। Spike down B. भाई कब बड़ा है? एक इधर बैठा है और एक इधर बैठा है। दोनों यहाँ पे, दोनों लॉन्ग पे।
स्पाइक अपने में पड़ा है ना, तो क्यों चिंता कर रहे हो? पीछे देखना भाई, पीछे देख। मेरे पे स्पाइक है, मेरे पे स्पाइक है। No peeking. One enemy remaining. वहीं पे ही है। फिर पे आएगा चेंबर। अरे ये एल्बो में गया क्या कोई? तो पीछे देख के तुम्हारे घूम के आ सकता है। एल्बो गया क्या? अरे ये कौन है? ये हुक्का कौन है? यहाँ पे देख। नहीं देख, वो लॉन्ग ही है। चला अभी उसने फेंका ना कुछ। 30 seconds left. आपके मरने के बाद मुकुल बाय देगा क्या? मुकुल ही सेंपाई बाय दे। सेंपाई यहाँ पे लगाओ क्या? नहीं लगाओ, यहाँ पे लगाता हूँ। हाँ हर बार सेटअप बदल दे, वो लोग तो वैसे भी पगलू है। हाँ कर रहा हूँ भाई। बढ़िया। मैं दो भाई 3 लोग क्या कर रहे हो? मतलब माना तो मेरे साथ रिग्रेट करेंगे वो लोग अभी। भाई दोनों अटके भाग। कोई बात नहीं, छोड़। ये मादरचोद अपना बैक स्टैप देख रहा है। अभी बहुत फट्टू इनका चेंबर। अरे मादरचोद भाई। Spike down A. One enemy remaining. अरे बहुत बढ़िया। ये कहाँ है? पता नहीं। शायद से शॉर्ट, शायद से ही शॉर्ट। Last player standing. Drop in a smoke. उस पे ड्रोन वोन सब कुछ है यार, ड्रोन रेकॉन सब कुछ है। मैं क्या बोलता, रैप करना उसको। खेलने दे। 30 seconds left. रिस्पेक्ट। रैप करता तो सही होता भाई। डबल माइक मत किया करो यार, एकदम लास्ट में किसी को बहुत दिक्कत होती है। हाँ डाउट हो गया। अरे तू आ जाता ना मेरे साथ शावर करना। बाइक थी मेरे पे। और मैं उसको जस्ट में तो कौन बचा था लास्ट? एकदम से आ गया था। अरे अच्छा। वो नहीं है देखो, तू भी खेलता क्या? मैं ए पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे वॉल डालता हूँ। मैं ए जाता हूँ। बिलोंग यहाँ पे लगाएगा क्या? आ गया। नहीं चला गया। No peeking. मेरे स्टन के ऊपर खेलना। स्मोक दिया देखो जेट। अरे सेंसर ट्रिप हो गया। लॉन्ग सब लॉन्ग है बेंचेस। नाइस। अरे कोई स्मोक यहाँ से यार। एक हुक्का आया। घंटे हो गए। एक हुक्का से नीचे गिरा है। एल्बो में घुसा होगा कोई, तो पीछे देखना एक बार। एक हुक्का है और एक मेन है। ये फाउंटेन है ये बंदा सोवा। टीपी करेगा। स्पाइक किधर है? One enemy remaining. बेंचोद। Nowhere to run. वो टीपी करेगा। 30 seconds left. अरे बेंचोद। अरे Last player standing. आ गया भाई। बेंचोद। आ गया भाई। अबे रुको, शांत। यही करेगा। 10 seconds left. टॉप पड़ी है लॉन्ग पे। ऑलमोस्ट रख दिया भाई। 2 बार रखा मैंने। Race it to the spike sites.
इतना टाइम क्यों लगाया तुमने मेरे फ्लैश के बाद उस पे जाने पे? नहीं वो इंस्टेंट गया था भाई, वो पूरे चमक के वो उसने भाई रैंडम मारा फ्लैश पे, ब्लाइंड था वो फिर भी। भाई उनका रेस का अल्ट कितना बड़ा होता है, मैं खुद खा गया मैं। मजा आया भाई, पागल जैसा अल्ट था वो। No peeking. रेस भी यहीं पे। मैंने इसको वो Drop in a smoke. परेशान पीछे देख गया। अब उनके चेम्बर ना आगे नहीं आएगा, देखो फटी रहेगी। तू फट्टू है साला, मादर चोद। मेरा ट्रिप तो Spike down A. यहाँ पे अरे होम ही कर दिया तूने तो उसका। लेफ्ट है, लेफ्ट। One enemy remaining. गन ले सनपाई। Outside of this अरे सनपाई गन ले। खरीद लूंगा। अरे तो वो तो खरीद ही लेगा, पर फ्री में मिलते तो लेना। हाँ मेरे को दे देता बेंचो, बाय नहीं। भाई मांग देता हूँ। मांगा मैं। भाई वो रहना पता आएंगे। हर वो मेरे 10 में से 8 राउंड मेरे से वो बना है। इधर अपना एक इधर लगा, उठाओ उसे, इससे उठा और इधर लगा। अरे कल तक अब तो पता चल गया उनको। अबे ए पे जा कौन है ये? ये पूरा खोल दिया भाई इसने, कोई नहीं है पे। Drop in a smoke. अरे वो केज के अंदर आएंगे तो ना बहन। चेंबर रुकना, चेंबर टीपी के पास रुकना। रुका में कोई तो है। टीपी करेंगे मेरे को लग रहा है। अरे भैंसो लिया मादर किट को लिया भैंसो। उसके बंदे आ जाएंगे छुड़ा ले। उसको मार। अरे फुटी निकल गया बंदे लोड़े। और निकलना ही था उसे भाई वो। टीपी करेंगे क्या लोग? नहीं प्लांट कर रहे। जान दे दे उसको। Spike planted. अरे हागा भाई हागा भाई। Refreshing. पीछे दो लोग हैं। Last player standing. और असली वो है। दिखा नहीं मुझे। भाई गेको खतरनाक खेल भाई। Last round in the half. इतना अच्छा खेल रहा हूँ, इतनी देर से थोड़ा हंसना तो पड़ेगा। तो सामने वाले हैकर बोलने लगे। लास्ट राउंड। अरे मगर भाई किसी ने पिक क्यों नहीं लिया जब ये स्टन था तो? और यहाँ पे फ्लैश या स्मोक अपना तो भाई। मेरे को अकेला छोड़े थे, उनके साथ भी जा। वो हर बार वहाँ पे मॉल ही करता है, हम नहीं घुस पाते साइड पे यार। ट्यूब में खेलना, ट्यूब में खेल। मैं ट्यूब में खेलने का बोल रहा हूँ भाई तेरे को। ए से आ रहा था मेरे मालिक। नाइस। Drop in a smoke. मैं ए जा रहा हूँ भाई। प्रेम के पास अल्ट है तो थोड़ा पीछे ही खेलो, रीटेक खेलेंगे। बाहर खेलो। रेना इधर लो। बाहर खेलो। अरे ट्यूब में खेलना, ट्यूब में खेली तो पीछे खेलेगा तो मॉल में आएगा। उसकी अल्ट है। हाँ वो भी। मैं नहीं बोला। No peeking. अग्री। नाइस। और डबल पिक करना है रेना को। सोवा लॉन्ग रेना भी है। मेरे स्टन आएगा, स्टन हो गया रेना स्टन हो गई बेटा। Feeling FBI. टीपी क्या है कि ने? हमारा टीपी है वो। अबे यार ये रहा था मेरे को भैंचोद। ए रहा। दोनों टीपी के। तेरा सेंसर लगा ना, एक को मारियो पहले फिर साइड से। One enemy remaining. Spike down A. 30 seconds left. ए बैठ गया। Last player आना तू।
मारा भाई, मारता हूँ मैं। अरे तो साथ में करते हैं। अरे नहीं ठीक है। एक मिनट भाई कड़वी मत, वो कड़वी मत भाई, ये बी पे लड़ रहे हैं, तू ए पे बैठ के हमें कहानी क्यों सुना रहा है? हमें नहीं सुनती। ठीक है भाई वो ऐसा ही है भाई, वो ऐसा ही है। अबे हम लड़ रहे हैं, हमें भाई उनके फुटस्टेप से ज्यादा तो ये भाई मतलब ठीक है, तेरी ट्रिप में फंसे मेरे को भी, मैं फिर साइड में था, बट वो कॉल तो सही थी। और फिर बाकी चले देखो कितने गिफ्ट है। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्यों सर भाई? भाई ने एकदम पैराग्राफ पढ़ दिया। हमारा भाई एकदम वाह। मंगलाओं की थोड़ी मेरे रुक जा भाई। मेरे को बेस ने डाल दिया मेरे बॉडी पे। No charges. स्मोक कर दिया भाई, रुक जा स्मोक कर रहा हूँ। चेंबर ऊपर खड़ा है साइड में। कूदा उतर गया। क्या कर रहा है टीपी? मैं मादर चोद भाई, 87 है चेंबर। टीपी करो साइड क्लियर करियो, कर लो। सिटी पे आ गया एक बंदा। एक हेडन है। अरे मरते यार, फाइट नहीं लेते तुम। चेंबर 87 है, बहुत लो है। -50 रेज। Player standing. ओपन है। भाई मैंने ही प्लांट किया है, मुझे पता है। तो साल के वैसे एक्ट क्यों नहीं करता? तेरे को सोवा सुनाई दे रहा तो सोवा को मारना पहले। कैसा आदमी है ना ये? भाई जो बंदा डिफ्यूज कर रहा है मैं उसे क्यों नहीं मारूं? वो हाफ करके बैठ जाता फिर। अरे लो है भाई, वो ऑलरेडी फट्टू आदमी है, फट्टू ऐसे बिहेवियर करते ही करेगा। ये कॉल देना मेरे को कि वो सोवा लो है, स्पाइक ओपन है। सोवा लो नहीं था, चेंबर लो था, मैं बोला सेम थिंग। अरे सेम थिंग कैसे? जो कॉल देना था तूने वो नहीं दिया। राउंड के बाद में उसे कॉल समझ नहीं आ रही, राउंड के बीच में ये कॉल कैसे समझ में आई है? वेंचर इतने आओ कुत्ते वेंचर, कूदो वेंचर भाग गए। रेना ये पे वो है यहाँ पे, मोटा है यहाँ पे, मोटी गन। उसके दोनों स्मोक यहाँ पे वेस्ट करो। चलो ए पे। नहीं क्यों ए पे कुछ क्या इन्फो है तेरे पास ऐसा कोई जो हमारे पास नहीं है? नहीं रेना कभी में है, यहाँ पे है, वैंडल लेके बैठी है वेंचर। सब पता है इसको, सब पता है तेरे भाई को। भाई के पास हेक्स है, हेक्स। आउटला है। सोवा बहुत आजा भाई। लैग हो रहा है मेरा। चेंबर स्मोक नहीं है क्या? अरे नहीं है। Player standing. अबे मेरा लैग हो रहा था, बहुत गंदा लैग हो रहा था मेरा। नाइस, ठीक, अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अरे वो कितना हिल रहा है इधर-उधर। प्रैक्टिस कर रहा है क्या? गोली मारता उधर जाता है। चेंबर साले आए कि नहीं मेरे साथ? अरे मेरा बहुत लैग हुआ उधर, मतलब पागल जैसा लैग हुआ। ओके इसको मारते चेंबर को हो जाता वेंचर। बोल भाई। हाँ स्पाइक वही चाहिए था। हाँ दिया भाई दिया। कुछ कोई बोल सकता है क्या कड़वी मत तेरे को कोई? हाँ भाई बोल तो रहे भाई, वो खुद ही इतना बोल देता हमारे लिए बहुत। यहाँ पे रहना खेलती है कहीं तो। डरते क्या अपन? हाँ डरना चाहिए भाई। डर गया मैं, सॉरी। भाई बी जाना है तो बी जाओ, वो नहीं है क्या को? बी जा भाई, आवाज मत कर।
अरे बहनचोद अरे उनको ए फेक करता हूँ ना बहनचोद लौड़े। यहाँ पे 2 स्मोक तो चलेगा इसके। गेको रुक, मैं भाग के आ रहा हूँ। स्मोक है मेरे पे हुक्का में कोई तो होगा। चेंबर का मार दिया स्मोकर को, मार दिया बहन के लौड़े को। अभी उनको ए पे रोटेट मारना पड़ेगा, बी पे जाना पड़ेगा जल्दी। स्मोक दे, गेको घुस, गेको घुस। राइट चेक कर रहा है। आउटला है बस एकदम। 10 एचपी कर देगा हम लोग को। नेट से ये उधर नार के लोग उधर नाच रहा है। One enemy remaining. अरे तू गया बेंचो। ठीक है भाई, ठीक है। 40 Drop in a smoke. राइट साइड। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्जी मार गया भाई। तूने कितना मारा उसको? चेंबर को 40। बेंचो मैंने भी उसको 80 मारा। बाकी लास्ट गोली ये 84 मारी मैं। बेंचो थोड़ा मार रहे हैं। ए पे आवाज मत। ए गेको खेले। ए पे आवाज नहीं करनी। हाँ बी पे आवाज करो बस। वो बी। अरे ये बहुत जल्दी रोटेट मार रहे भाई। चल जाएगा भाई, अपन यहीं पे तुरा रुक जाएंगे। अरे आवाज नहीं करना। मार दिया मैंने। मत पिकले, मरेगा। अरे मैं गन देखने का ट्राई कर क्या था उसमें। मैं और ले रहा हूँ फर्जी। अरे बहनचोद। 117 चेंबर भेड़ चोद। स्पाइक नहीं अपने पे। स्पाइक किधर है बहनचोद? अरे वो शॉटगन। स्पाइक लिख क्या? कहाँ से लाऊं बहनचोद? उनको दे के आया वो मुंह पे। अरे भाग रहा था भाई वो, मैं क्या करूं? क्या कर रहा है ये कड़वी में? मार दिया बंदे लोड़े को। चल फर्जी तू जितना जल्दी रहा। अबे जल्दी आ स्पाइक लेके आ सकता है क्या? नहीं ला सकता, ऊपर ही बैठे हैं। एक यहाँ पे है। 30 seconds मादर चोद। Spike down B. दोनों टावर है शायद। हाँ दोनों उधर ही है। ग्रेनेड डालना उधर तेरा। One enemy remaining. गुड शॉट। लाला अकेले नहीं जाने का स्पाइक लेके। भाई वो लिया वो हर बार है ना वहाँ पे क्या बोलते हैं हुक्का पे स्लो अप लगाता था। बहनचोद इस बार नहीं लगाया और चुपचाप से शॉटगन लेके बैठ गया। तो भाई नाम दे दिया इसको। बाहर तो ड्रॉप दो ना भाई। दिया। Come on, little homies. ए में अल्ट करता हूँ। ए पे अल्ट करता हूँ। एल को लैंप लेके जाऊंगा, ठीक है? You want to play? Let's play. अरे यार अरे शावर हेल्प चाहिए। मैं लो हो गया बहुत। रेज इधर फैलेगा। हाँ रेना 120 है मादरचोद। इधर है यो, अंदर जो रोटेट कर सकते रोटेट कर लो। यहाँ पे 3 लोग आ चुके हैं। हल्का सा निकल। बहनचोद भाई एंगल होल्ड करके बैठे हैं चला रहा है मादरचोद। भाई यहाँ पे स्मोक करके टीपी मारना बहनचोद। स्मोक नहीं है। 10 सेकंड में स्मोक है। अरे यार नामी स्वान हक गया भाई। अरे सुनो जब दो लोग जिंदा हो तो प्लीज कमेंट्री बंद कर लो यार। मैं बस सजेस्ट कर रहा था कि स्मोक देके टीपी मार बस। स्मोक नहीं था। कोई मना कर रहा हूँ मैं। मेरी बात सुन भाई। क्या
भाई एक तो तूने मेरा अल्ट जा रहा है, तूने उस पे ही ग्रैब नट डाल दिया बहन, जो तो आगे ही नहीं जा पाया। अरे टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई भाई। और ये उस गेको सीधा बढ़ दिया कि बोले अरे आ शावर पिक करते हैं। एक जना शावर पिक करेंगे। मादर चोद भाई मर गया। सिंबल का ट्रैप। राइट में रुक जा पीछे। Last player standing. Spike down A. अबे सुनो भाई, स्प्लिट मत खेलो, एक साथ खेलो, बहुत हो गया। ये सब इधर आओ। ये सब दिख गया भाई। इसका था ना चेंबर का अपने। नहीं तेरा एस तो था 5 पॉइंट देते थे। फर्जी लौड़े। भाई सेव है क्या ये? लौड़े ना भुज्जम सेव है बेंचो। कड़वी सेव कर। अरे यार आओ डब्ल्यू दबाओ, मैं स्मोक करता हूँ फटफट। अरे रेना यहाँ पे खेलती रही। गेको फ्लैश है तेरा। अरे यार बेंचो बोला डब्ल्यू दबाना है, बेंचो क्या कर रहे हो तुम लोग मिड पे? तेरा स्मोक चला भी जाएगा बेंचो। हाँ तो तभी तो बोला घुसना था, अब मत घुस, अब फायदा नहीं है। वो आ गए यूटिलिटी आ गई। बहुत आगे तू, वो कवर नहीं। अरे भाई Spike down A. 110 एक लॉन्ग। Last player standing. कर दे। अरे इधर मुंह पे खड़ा था वो। Headshot. भाई चेंबर लो है, 110 है। सोवा की इन्फो पता है? दोनों बीत है। 30 seconds left. चुप खेलने दो उसको। 15 सेकंड। पीछे से सोवा आएगा ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को? 10 seconds left. क्या इतना ही कर सकता था, यही कर सकता था यार मैं। One enemy remaining. लौड़ा ना भुज्जम। Vibe check, you feeling good? Hope so. अबे ये सारे पोकेमोन है क्या? अम्बेरियन, वेपरियन, ये सब तो पोकेमोन है। हमको छोड़ के भाई। हम भी हो गई बेंचत कोई पोकेमोन। भाई चेंबर यहाँ पे खेलता है गार्डन में, ठीक है? उसका टीपी ऊपर होता है। गोला डाल फर्जी और अंदर घुस। Dropping smokes.
अरे बहन शो दोनों सिटियां ब्लॉक ने यहाँ पे आराम से आप एक करके मत बनना चलो यहाँ पे ब्लॉक दो लौड़े ना वो जम अरे 53 No peeking. अंदर आ गया बंचू तू तभी पॉकेट आ गया Yous don't get a reset button. लौड़ा ना बुज्जो भाई इस बार मैं जो फर्जी इन्फो सही थी ना चेंबर के बारे में हाँ डब्लू तो बाता अरे दो ही खेलते हैं इनके देख एक सोवा यहाँ पे खेलता है और वो यहाँ पे खेलता है अरे इस गेम के बाद जाने वाला है क्या नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगा कुल तू खेल रहा है ना नीलेश पूछ रहा था इसलिए पूछ रहा भाई वो यहाँ पे रहेगा ये लेके शॉटगन लेके मादर चोद अरे कहाँ चला गया को ठीक है भाई ठीक है देखा हम अरे इसने देखा ना डेडलॉक अरे बहनचोद फक थोड़ा ऊपर दीवार बनानी थी यार Let's end this. कोई बात नहीं भाई मैं तो यही स्मोक कर देता हूँ बहनचोद बहुत सही स्मोक है इनका ये और ये इनको पूरा कट ऑफ जाता है अनलेस स्मोक में कोई बढ़िया बहनचोद फिर अगर किसी गलती से पीक कर लेना तो लोड़े लग जाएंगे हाँ स्मोक में अगर बैठ गया ना कोई तो गांड लग जाएगी तो कुछ भी तो भागेगा फिर अरे ले ले गुस्सा हो गया क्या मैं सीधा कॉल करता हूँ गेम के बाद Yikes. गेको फ्लैश सॉरी बेंच सॉरी मैंने किसको तो तोड़ा किसको तो मारा मैंने Spike down A. वही खड़ा रहा अरे यार बहुत लेट हो गया हम दो लोग पीक रहे थे फ्लैंक भी देखना जेट फ्लैंक देखना मेन एक बार देख ले मैं तेरे साथ खेल रहा हूँ भाई डिफेंस में मत तू कौन सा फ्लैंक कर रहा था वैसे मैं शॉट से कह रहा था ए शॉट पे अपने एक दो बंदे खड़े हुए हैं कोई नहीं खड़ा वो गेको भी साइड देख रहा है और एक वहां पे शावर से हाँ तो वो मरेगा तो पता चल जाएगा ना नहीं वो पहले तेरे को मारेगा गेको थोड़ा अंदर वही इंडिकेटर होगा भाई फ्लैंक ठीक है भाई ये कड़वी मौत जैसा खेलना है बराबर भाई ठीक है भाई 11+ हुआ वेंचर क्यों अरे -25% भाई गोल्ड की आईडी नहीं है क्या अब तो कहाँ अब तो 25% हट गया क्या ओके लगा ही क्यों था वेंचर अरे वो क्या बोलते हैं नीलेश और उप्पू बोल रहे थे खेलने को क्या सीन रुक जा एन पाए वो नीलेश और वो आ रहे हैं क्या बोलते हैं उप्पू हाँ तो अपन चले जाते हैं ना उधर दो लोग इनको फिर ये 3 स्टैक कर सकते हैं उप्पू आ रहा है ना ठीक है पक्का आएगा ना बट वो हाँ वो आ रहे हैं दोनों आ रहे हैं ठीक है गाइस हम लोग तुम्हारे साथ बाद में खेलते हैं ना ओके भाई बाद में खेलते हैं यार मैं और ये उप्पू के साथ तुम ओके ब्रो बाय बाय जी जाओ भाई जल्दी जा रहा है जो अबे नीलेश दूसरा अरे नहीं चल उप्पू आ रहा है
कौन जा रहा है भाई? जल्दी जाओ जो जा रहा है बेंचो, हम तो खेले। भी चले गए बेंचो, सब चले गए। ये क्यों चला गया? ये इसी के साथ तो खेलने जा रही है। अच्छा। ठीक है भाई, लगा चल। कोई और नहीं है क्या बेंचो? अबे टोरी और लूफी एक साथ खेल रहे हैं, बट वो 4-0 है बेंचो। 5 स्टैक है ना ये? नहीं वो 5 स्टैक नहीं है, 2 स्टैक है। हाँ 2 स्टैक है। ध्यान दे, लगा अपन दोनों ही खेलते भाई। चल प्लेट 3 था बेंचो दोनों का ब्रिम। ब्रॉन्ज आया था ये बे। कौन ब्रॉन्ज था भाई? सोवा लवड़ा ब्रॉन्ज था बेंचो तू। मैच फाउंड। भाई मैंने तो ब्रिम को बहुत बार मारा है बेंचो। हाँ तो क्या हो गया? क्या लेना है यार? मैं क्या लूँ यार? सेंटिनल में इनिशिएटर में क्या लेना चाहिए बता? ब्रीच ही ले ले भाई, तेरा फेवरेट एजेंट। या केओ लूँ भाई? रुक जा, प्लेयर 3 को लेना पहले। अच्छा ये तो ड्यूलिस्ट ले रहा। तो मैं केओ लूँ क्या फिर? फ्लैश ही रहेंगे अगर ये बेले ले रहा तो। मगर स्टन भी तो चाहिए भाई। हाँ तो ले ले कड़वी, यही ले ले। नहीं इसने फिनिक्स लिया भाई। कड़वी मोती ले ले फिर तो। I've got all the time in the world. भाई आज के तो VCT मैचेस एकदम ऐसे झट आए और झट चले गए बेंचो। नहीं फर्स्ट मैच तो चला था, 3 मैच हुए थे। 3 मैच वो तो लंबा हुआ था। नोंगशिम ने तो गांडी मार दी भाई। हाँ भाई फर्जी तू यहाँ पे खेल भाई। फ्यूरिया भी अच्छा खेला बेंचो। मतलब फर्स्ट राउंड उसने निकाला पेपर एक्स के खिलाफ, अच्छा खेला। मुझे लग नहीं रहा था फ्यूरिया इतना सस्टेन करेगा भाई। कौन? फ्यूरिया इतना सस्टेन करेगा लग नहीं रहा था मेरे को कि एक भी जीतेगा। हाँ भी कोई नहीं है बेंचो। ए हाँ ये सॉरी रैंप पे क्या ध्यान से। Spike planted. Reloading. Healing. Enemy spotted A. Reloading. यहाँ पे Reloading. Not ready yet. Refreshing. Freak. One enemy remaining. अच्छा रिटेक। Unweave our world. No. They're still fighting after seeing what we can do. Not wise. Can someone come help it? I come.
भी है क्या? Someone's mid. Spike down B. One enemy remaining. Long. Awesome. बढ़िया बढ़िया. Awesome threesome भाई. We get a pick, we move in. Got it? भाई इनकी नियॉन भी डेंजर है हाँ? भाई जो स्लाइड मार के अंदर घुसी भैंचोद नेक्स्ट लेवल घुसी भाई. Drop in a smoke. Right here. Eh. No peeking. I shot something. Spike planted. Phoenix कहाँ पे? अरे मैं इधर चुपके से क्या भाई ये फ्लैश किसने नहीं हुआ भैंचोद? हुआ बहुत क्लोज था ना तो थोड़ा ही हुआ. No peeking. Last player standing. One enemy remaining. ठीक है भाई ये भी ठीक है. डैम से इंस्पायर लग रहा है. Listen up, you muckers. अभी भी देख के आया मैच ये भी. Give me a nudge. I might not be dead. Just take बोला नहीं कौन किलोगा भैंचोद ने. मोटिवेट हो गया है. मोटिवेट हो गया उसे देख के. भैंचोद. ब्रीच तो भैंचोद ब्रीच क्लोव तो कोई खेलता ही नहीं भैंचोद. क्लोव तो जब नई आई थी तभी खेलता था. चल मैं तेरे साथ आता हूँ चल इनको खेलने दे नहीं जाने. फिनिक्स आ रहा है तेरे पास. नहीं तू बी खेल भैंचोद ताकि बी की भी इन्फो रहे अपने को. तो कुछ बोल कॉल इन दे रहे. Someone stay mid. अरे बंचो ये वाला एक बी मिन एक मिड है. Someone stay. Someone go A. My ultimate's ready. फर्जी ए जा बंचो. ए जा तू इनका मत सुन. ए जा और ये कोने में खेल. वही है क्योंकि ओमन गया रहेगा पक्का देख. ओमन ए आया रहेगा. One enemy remaining. Spike down B. गन निकाल मिड से आ सकता है वो. Drop in a smoke. 30 seconds left. Healing. They think they're so secure. I need a drop. मेरे पास बाई नहीं है यार क्या करूं मैं से मांग दोबारा मांग. नहीं छोड़ मैं बोल ले रहा हूँ शील्ड लेके ले. आप शील्ड लेके दे. नहीं छोड़ मांग ना जल्दी मांग. I need a drop. I got you, bro. थैंक्स भाई.
Use that. No peeking. Many enemies B. Careful now. Thank you. Come on, let's go. My ult's ready. Spike planted. Here. One of these. Blocking sight. अबे नीचे है राइट में One enemy remaining. This is our home. भाई मेरे ऊपर तो 3 लोग चढ़े थे वैसे। अरे मैं साइड आया बेंचत कोई यार रैंडम किल की दिक्कत है कोई कॉल ही नहीं होती बैक साइड बंदे थे ये सब ले लिया उन्होंने वो नियॉन चली गई थी भाग के नियॉन भाग के हाँ चली गई थी। हाँ पर कोई कॉल ही नहीं ना क्या ही करने का मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ए पे रहेगा भाई ये टाइम मैं जा रहा हूँ मैं जज कर रहा हूँ पे बाकी चूत They should stop trying. No peeking. Powerless. Joke's over. You're dead. अरे बेंचो मरे नहीं Last player माधव standing. क्या मारा भाई मेरे को बेंचो ये क्रेजी खेला भाई ये हाँ ना Drop in a smoke. अरे फक हो गया भाई कोई ना इनको पता है Spike planted. टावर है भाई 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 This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. भाई तो जज पे मरा कैसे बेंचो मैं मारा एक को अच्छा एक तो मारा मैं और एक को घुसने देता ना फिर अरे वो फ्लैश मार रहा था अच्छा फिनिक्स भी अल्ट किया पता नहीं कौन अल्ट किया Oh shite, I lost my pet rock. Watch this. Here. My ult's ready. Gun here. Drop in a smoke. ये हो सकता है क्या प्लांट हो रहा है Spike planted. अरे मादर चोद भाई फक हो जाए अबे हो जाता शायद नहीं होता One enemy remaining. Last player standing. बॉडी डिफ्यूज कर दिया उसने वही तो भाई वो सब वहाँ पे थे ना हाँ लौड़े लोगों ने अल्ट बहुत गंदा मारा Anyone else feel like that? Okay. यार फिनिक्स मेरे साथ कुत्ता ना बेंचो मार देता भाई एक को लौड़ा कूदा ही नहीं बेंचो छूतिया यार फिनिक्स मेरे को लगता है नियॉन अल्ट मारेगी बेंचो नियॉन अल्ट मारने वाली थी उसमें ही मैंने मार दिया उसको बेंचो ए
Reload him. मैं भी रुकता हूँ भाई। Going up. Just in case. अबे वो रेस देगी बहनचोद। हाँ बट रेस देके यहाँ पे आएगी ना भाई। You will not kill my ally. My ultimate ready. Hi. That's a kill. One enemy remaining. यहाँ पे Here. हाँ मैं और प्लेने जा रहा हूँ भाई, तुम ले लो। टावर Drop in a वो smoke. लगता है यहाँ पे आएगी फिर। टावर है स्पाइक पता नहीं कहाँ। He's here. आ गई। नाइस। Time to stock back up. 3 बंदे मारा भाई, मजा आया। नहीं मस्त खेला, अच्छा खेला भाई। भाई जितना डिफेंडिंग में निकाल सकते हो उतना निकालो भाई। फर्जी भाई दे उसको, फिर वो ज्यादा पैसे। हाँ मैं देखा नहीं। Six, can you wall and immediately put a store over here? I think they'll fast rush AP probably. I got enemies B. Wonderful. Here. Come on, let's go. Oops. Enemy spotted B. Joke's over. You're dead. Gun here. Drop in a smoke. Right here. Back like I never left. अरे यार बहनचोद। शिट। Here. One down. आ सकते हैं तेरे पे। Here. Enemy spotted mid. Here. 30 seconds left. Drop in a smoke. ऊपर मार दिया टावर पे से। Here. भी जा रहे Player हैं। standing. बी 10 seconds left. उनको साइड पे नहीं होल्ड हुई यार। अरे पता नहीं क्या इधर उधर देखे जा रहे हैं बहनचोद, ये रुक एक जगह नहीं रुक रहे। गन रख टावर होंगे। अरे यार क्या चूतिया लोग हैं यार, एक साइड होल्ड नहीं। अरे पता नहीं कहाँ देख रहे हैं बहनचोद, ये रुक ही नहीं एक बंदा रहे। यहाँ से खेल और एक बंदा यहाँ पे खेलना यार। Stay out of the fire. बात खत्म बहनचोद। High level tap. Remember, yeah? मेरे को एक्चुअली बी खेलने का मना है बहनचोद, मैं इनकी वजह से खेल भी नहीं पा रहा। मैं बी खेलता हूँ। खेल रहे क्या तू भी? मैं जाता हूँ, चल। हाँ जा। मेरा माउस चला गया बहनचोद, बट मैं यहाँ पे तो आ गया। अच्छा कितनी देर चलता है तेरा माउस, कितना पुराना है? अरे वो बीच में डिस्कनेक्ट होता है, पता नहीं है, चाइनीज है। आ गया। जेट कैन यू होल्ड रैम्स? ओडिन बहनचोद। दो मारे भाई। ओडिन है, ओडिन जज। I'm gonna stay. You guys cover up B. घुस रहे हैं। नहीं ए होल्ड मत कर, चले जा बात मान चले जा। घुस गए वो अंदर, प्लांट हो रहा है। बोला तो साइड होल्ड क्यों हो पा रही है यार इनकी? पता नहीं क्या कर रहे हैं गांडू लोग। रेस भी दे दिया बहनचोद। कहाँ देख रहा है चूतिया? Player standing.
One enemy remaining. Nice way, nice. Nice way, nice, nice, nice. भाई क्या निकाला बेंचो राउंड में। हाँ भाई, बेंचो स्टार्टिंग में 2 निकाल के दिया है। गांडू लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओडिन लेकर आया था। करूंगा बेंचो नहीं क्या? हाँ उसको लगा मैं फिक्स करूंगा बेंचो। नहीं वो शायद दूर था, मिड था वो। नहीं वो मिड से पूरा रोटेट मार रहा था। नहीं वो आया ही मिड से, वो था नहीं यहाँ पे, साइड पे नहीं था। नहीं वो मुझे पता था कि कोई ना कोई तो आएगा वैसे। या ए हेवन। No, then it's faking. It's faking. Fake. No peek. नहीं स्पाइक है। Spike down A. अरे जेट बहन चोदी बहुत चूती है अपनी। One enemy remaining. He's on ramps. Last player standing. हक दिया उसने। स्पाइक भी ऊपर ही है। You know he will rotate. हैं? हैं? वहां से कूद गया वो। कहाँ से? ओह बेंचो। Last round before the switch. क्या चूते हैं भाई? इतना लो था क्या वो? हाँ मारा हो ना 170 ऐसे ने। हाफ शील्ड पे आया हुआ। वो कर रहा भाई। ड्रॉप देना। Thank you. लास्ट राउंड है ना वैसे भी चल। अरे यार फिर तो मैं फुल स्टिक नहीं ले सकता यार। ठीक है चल कोई नहीं। चल मैं जज लेता फिर ये ले। नहीं अरे ले जल्दी ले। अरे बहनचोद। Spike planted. One enemy remaining. For you. Up one of these. अरे फिनिक्स वेंचर फ्लैश करके मादर चोद। गांडू छूते है भाई। किसने थ्रो किया होगा मादर चोद में से? इसी का तो फ्लैश था। इनका फिनिक्स से मार दिया था मैं। Switching sides. अपने फिनिक्स का स्मोक था, तेरा स्मोक था, फ्लैश था वेंचर। नहीं अभी लास्ट को मैंने किया था वेंचर। नहीं राउंड के बीच में मैं फ्लैश किया ही नहीं भाई। तो ये इस दल्ले का ही होगा वेंचर। इतना लंड फ्लैश। Jet, can you dash on ramps? I'll stun like this. Jet. I'll stun on ramps like this. 1, 2, 3. एक है ऊपर। Distant. अरे एक स्मोक में ऊपर। इन स्मोक्स टावर। There is one more in vent. Healing. Screen. One enemy remaining. अरे यार ये तो मतलब यहाँ से आएगा वेंचर। No peeking. Can you play cross with me from here? छोड़ना।
तू ही खेल क्या कह रहा टूरी का इनवाइट आ रहा है हाँ सेम लवड़ा वेंचर लवड़ा ना बुज्जम हाँ ना वेंचर Find the weakest link and kick him in the shin. अच्छा है कोई और है क्या एक और यार लूपी है नहीं भाई करनी हाँ मैं इधर रंडी खाना खोल के रखा हूँ वेंचर रंडी खाना खोल लिया हाँ या ना बोल रहा हो एडी छोड़ हाँ या ना बोल नहीं ना लौड़ा रे मैं इसका भी खेल रहा हूँ और कैसे कहाँ से ढूंढूं वेंचर क्या करना है Hit him. I'm going to stun again, yeah? 1, 2, 3. Yeah. Enemy spotted A. क्या करना जल्दी बोल There are two on ramps. Going up. Drop in a enemy spotted A. Come. अरे वैंचो Can you come back? Good attempt. Come back. One enemy remaining. Arey bhenchod. Come back. I'll take care of him. You go. Run. उधर ही है वो नहीं आएगा यहाँ से साइड था वो टावर से आएगा बंदी ये क्या अपन ही बॉटम फ्रेगर है बेंचो दोनों किल पे दोनों They were not good enough. I'm twitchy here. Let's go already. कोई ना भाई अपन हेल्प तो कर रहे ना इवेंट सिलेक्ट में चला गया हाँ बेंचो चूतिया Dropping smoke. My ultimate is ready. Barrier created. Blasting. Help. Enemy. वर्दी पीछे आ जा मैं Here. Oh no, one's flanking both there. One heavy, one. Here. One enemy remaining. Last player standing. मैन का लोड़ा जज चला रहा है मादर चोद डैम्बी Match point. Oh look. मैं इसीलिए पीछे क्यों खेलता हूँ पता है क्या मेरे को पता है भैंचोद ये मादर चोद मार आके मारेगा भैंचोद लोड़ा फर्जी बाय देता हूँ मंग लोड़े Could have a drop. Thanks. जान मार बहन लोड़े ना बुज्जम कर हाँ इसीलिए ना तू अगर खेल रहा है ना किसी और के साथ फर्जी क्रॉस में खेल भैंचोद नहीं मैं भाग के आ गया था वैसे तो क्योंकि जस्ट थी उस पर Reloading. Dropping smoke. Reloading. Healing.
One enemy remaining. अरे वेंचर मैं ये मादर चोद फिनिक्स के फ्लैश से मर जाता हूँ, कभी अपने टीममेट वाले कभी अपोनेंट के वैं की चूत। और ये वेंचर ये बेकार लगता है, वो डुओ खेल रहा है ना, तो वो उसी को हील देगी उसी को रेस देगी। कोई है क्या वेंचर? करो ना, इनका कैंसिल हो गया शायद। ले इसको ले। इनके पास चलें क्या? तो चीज़ी आ रहा है। चीज़ी तो खेल, हाँ। चीज़ी वाइब आ रहा है। आजा खेलते तब तक बैठे बैठे। लगा। अरे इसे म्यूट करो वेंचर, इसे म्यूट करो भाई, क्या वक्त चो दिया है, क्या बिग बॉस बना रखा है। हाँ ना भाई, फिश मार्केट बना के रखा है वेंचर। Wherever they run, I will find them. आगे टॉप फ्रैग करने का, ठीक है? क्या? मैंने खेलूंगा ये। कौन था आज? तो अकेले कौन था आज? हाँ तू जा आगे मारने का, फिर मैं आता हूँ। अरे लूफी बोल क्या बोल रहा है? तू आगे जाएगा मारेगा, फिर मैं देखता हूँ। हाँ सही बोलता है मेरे को। अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी ले ले। तो चेयर लेके बैठ जा वेंचर फिर। मेरे को छुट्टी हाँ चाहिए। चेयर लेके बैठ। कौन भी चाहिए तो ले ले। तू क्या फर्स्ट में बैठता क्या वेंचर? हाँ? The gang's all here. This is great. They don't stand it. गाइस तुम लोग किससे मरना चाहते हो? Fight. अच्छी वेंचर। नाइस भाई नाइस। अरे फोड़ी चला रहा है वो फैल्ट का लौड़ा। 70 है वो। इसे बक्से के पीछे होना चाहिए था, राइट साइड। तेरे बाजू में है देख। अरे बहनचोद ये सिर्फ हेड दिखता है यहाँ से, गंदा एंगल है। पिछली बार भी ऐसे ही मरा था मैं। इससे मारे क्या? इससे मारे? नहीं तुम्हारे। Sleep, brother. Be still. साले बेट कर रहे लोड़े। कौन? लूफी ने बेट किया फर्जी को, फिर फर्जी ने मेरे को मार दिया बहनचोद। नहीं क्या पता नहीं। एक खेल के अरे बेटी तो तेरे लिए वेट कर रहे हम लोग। तेरी माँ की छूट नहीं कर रहे थे। नहीं साथ में खा नहीं कर खेल पे चल जा रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं वेंचर? अचार बेचे वेंचर। Let's go. अरे उसने लियोन को बुलाना, आ रहा है तुम? लियोन नहीं आ रहा है। आ रहा है ना, मैं बोला था तुम बोल रहे। चुपचाप आ इधर। अभी आ बड़ी चोद। आ रहा लॉन्च कर इसको। हेलो ठीक है आजा। अबे कर भी रेडी के गन को कर भी क्या डर रहा है उससे? कर भी हेलो हाँ बोलना भाई। अपग्रेड नहीं किया गन को? अपग्रेड नहीं किया गन को मतलब? लेफ्ट एनिमी डाउन, एक राइट है तेरे पीछे। दूसरी नहीं लगी यार। होता है पर भी। अरे यार अरे मादर चोद। मस्त भाई मस्त। स्टोरी सीकर्स एडवांटेज पे खेला भाई, मस्त खेला। Enemy spotted mid.
139 है 139। हेलो मादरचोद। क्या भाई जो उधर जाके क्यों चला गया? नहीं एक खेल के अरे ना बोल रहे एक ही खेल के चल जा बोल के प्लीज बोल के बोल रहे थे लगा दिया। अरे यार अरे बाकी छूट निकल भी नहीं मारा मैं मादरचोद। खेल रहा हूं चल थ्रोवर क्या रुक जा। हम क्या करें तब तक? एक 5 मिनट में आ गया रे मैं रुक जा। कितना स्कोर हो रहा तेरा है? कितना स्कोर हो रहा है इसका? 0-0। तो भैंचोद 5 मिनट में कैसे आएगा? चूतिया है कि हमें बना रहा है? रुक बुलाया वापस। अरे भैंचोद मिड पे। अरे होता है साइड से आ गया। अरे बहन की लोड़ा मादर चोद रंडी का बच्चा। कैसे यार कैसे छी आया ना गंदा खेलता है फर्जी। अब उधर है बीच पे बेटी चोद वो। अबे ये एफके चला गया ये दल्ला। किधर है? अबे ये है किधर भैंचोद? जा जा जा। तो एक काम कर तो एक काम कर तो रुक जा खुद ही आएगा दल्ला। पूरा 7 फेरे ले लिए उन्होंने। शादी हो गई तुम्हारी? मादरचोद बहुत गंदा खेलते हैं वो दोनों। अरे यार बॉल थ्रू मारा है वेंचो दिए। क्या लंड गेम है यार। क्या करना है? वेट करना है उस चूते का। 0-0 है वेंचो क्या ही वेट करेगा। दो खेल लो भाई दो एक बहुत है वेंचो दे तो दो से एक खेल लो। 0-2 हो रहा है भाई। वो नहीं आएगा वो वेंचो लोग के साथ ही खेलता है। वो तेरे साथ नहीं खेलेगा। ये खेल के आएगा बोला ना वो। नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ वो नहीं आएगा। वो उन लोग के साथ खेलता है भाई। लिख के ले ले बेंचो। क्या जाएगा? आ जाओ एक खेल लेते हैं तब तक दो का। हाँ पिछला राउंड उसके साथ ही टोरी के साथ ही खेला ना वो। अरे नहीं आएगा भाई वो उसकी टीम है। तुझे पता है कि मुझे पता है? मैं बता रहा हूँ ना नहीं आएगा वो। मैंने ज्यादा खेला उसके साथ। क्या करना है? एक खेल लेते आ जाओ बाहर। लियोन वियन को किसी को बुला ले या तो या फिर अकेले खेलते हैं और क्या। और लियोन जैसे पहले था वैसे ही करो भाई। ठीक है भाई फिर दो ही कर लेते हैं गन मरवा। मैं देख रहा था मादर तू ट्रियो तो नहीं करने लग गया। मेरे को लेता है बहन। क्या? मेरे को बहुत कम लोग ऐसा पार्टी में ज्वाइन करवाते हैं। नहीं तो मैं बहुत बकचोदी करता हूँ ना कभी। तू कम बहुत ज्यादा करता है। इनके साथ फर्स्ट टाइम खेल रहा था जो इनके साथ अभी वो खेल रहे थे ना बाइंड। तो वो भी किलर्स गए। चुप हो जा। वही तो वो भी बोले भाई नहीं जमेगा इसके साथ। हाँ भाई इसीलिए तो चले गए भाई वो वरना खेल लेते वो। समझा भाई। भाई ये भी ब्रीच ही खेल रहा है वेंचर। इसका रैंक देख तेरे पास है क्या? नहीं है मेरे पे ट्रैकर। अरे यार तो क्या खेल भाई मैं बता। स्मोक खेलता हूं चल मैं। नहीं डिपेंड करता है क्या खेल रहा है। आई नीड गर्लफ्रेंड। चल मैं स्मोक लेता हूं अभी। अच्छा कोई और एजेंट पे हाथ रखियो। देखना मेरे को कॉपी करेगा क्या। कुछ भी रख ले एक्स्ट्रा रख ले। नहीं कुछ भी रख ले। तेरी मैं की चूत।
क्या लवड़ा है वेंचो तू? भाई स्मोक चाहिए हमें वेंचो। स्मोक ले तू ले भाई क्लोव, तू कुछ तो ले भाई। कोई नहीं लेगा तो मैं ले लूंगा। कोई नहीं लेगा तो मैं ले लूंगा। अरे वेंचो उधार जाएंगे। लंड कॉम्प है और ये बकचोदी कर रहा है भाई। बहुत घटिया घटिया कॉम्प है वेंचो। इससे बढ़िया तू सेंट्रल ले लेता। छोड़ भाई। हाँ it is what it is. Reyna Jet. Hey Phoenix, if you die, Phoenix I Jet. got dibs on your jacket. Oh, don't be like that. You know you also want my shoes. ये ट्रियो है क्या? पता नहीं। हीजर माइनर क्या? चैट पट चैट उसका जेट का नाम है ना। आई नीड अ गर्लफ्रेंड। Someone's been reloaded. अरे बेंचोद भी आ गए सब। Last player standing. Spike down B. भाई भी ही बैठे थे सब बैन के लोड़े। अरे मगर भी गए क्यों? ये पुश कर गए, मैंने स्मोक करा फिर। नहीं भाई मैं तो पीछे रुका भाई। इनकी गांड मराने दे भाई। अपन अपना अपना खेलेंगे भाई। तू इनके साथ मत खेल भाई। तू अपना अपना खेल। ये स्मोक मांगेंगे तो स्मोक दे भाई। समझ रहा है तू? फर्जी। नहीं भाई अगर साइड घुस रहे हैं तो करना पड़ेगा ना स्मोक। नहीं नहीं इनको बोलने दे तब तू दे। कॉम्स इंपॉर्टेंट है। अगर कॉम्स नहीं देंगे तो गांड मराने दे भाई। डिफॉल्ट खेल भाई। तीन लौंडे पे बेंच बहुत दिखा रहे हैं। Jets grounded. फर्जी मत जा ए पे फुल स्टैक रहेगा। Last player standing. डेडलॉक 78 है। रेना के पास गन है। मैं बोल तो रहा हूँ इनके साथ मत खेल भाई। ये जब बोलेंगे तब कर। देख लिया मुझे। Come on, Jet. Me and you, we never lose. Let's do this. You guys have mic. फेड यहाँ पे आग करता है भैंसुद। कहाँ और पे? डेडलॉक यहाँ पे खेलता है। हाँ वो वॉल करता है। भाई डेडलॉक का मतलब सी पे पूरा ये रहेगा। Reloading. Dropping smokes. Blinding. One enemy remaining. अरे Spike तो down C. कोई ब्लाइंड तोड़ने वाला नहीं आया। क्या लंडूरी टीम है। Careful now. No charges left. Watch your eyes. सिटी है सिटी है सिटी है सिटी है। They're
crew got sloppy. अंचु कितने फ्लैश इनके पास? 2 ही तो है साले। अरे कितने ब्लाइंड करके मारा? किसका फ्लैश पे ब्लाइंड था मैं? फिनिक्स नहीं, शायद उसका था, ओमन का पैरन आया था। ओके मिड पे है कोई तो। Someone's mid. Refreshing. Wall raised, dropping smokes. Can you hear me? Healing you. Red flank. Yes, I'll take it. My rules. One enemy remaining. Right here. Last player standing. अबे रेस दे देता है किसी को, क्या कर रहे हैं भाई ये? मैं को भी पीक नहीं करना था मैं। तू टाइम खेलता ना यार, तेरे को पता था वो कहाँ पे करके। मैं इनके भरोसे नहीं रह सकता। शिट। हाँ? Stay safe. Dropping smokes. Blocking sight. अरे स्मोक इसके ऊपर बैठा है। Last player standing. Spike down. C. My ult is ready. Aye, where to? टोरी और लूफी भी हार रहे हैं, वो तो 0-5 हार रहे हैं। अच्छा Chin up, cutie. It's not over yet. Clearing out. Dropping smokes. Someone's A. अबे चूतिया है क्या ये? इसको दिखा किसने? Spike down A. One enemy remaining. I got the spike. पिज़्ज़ा बेंच। जा रहा हूँ। Spike planted. और यहाँ से पूरा रैप कर। धीरे धीरे तेरी आवाज आएगी। तू कभी पीक मत ले अभी। इसकी पीक। Like I never left. Last
player standing. इसको पता कैसे था यार भाई वो तू वहां पे करके? पता नहीं, गेस किया. Watch your eyes. गेस किया भाई वो. नहीं तेरी आवाज आई थी लौड़े. यहाँ मारा था ना तो तेरी आवाज आई थी. किसकी बात नहीं है. हाँ मैं भी. इतना कूद के जा रहा था तो वो ऑब्वियस. अरे वो बेंच नहीं होती है. इस सीढ़ी से कैसे जाऊँ मैं? सीढ़ी से अगर मैं नीचे आता हूँ तो आवाज चली आती है. नहीं तो यहाँ से चल के भी आ सकता था. यहाँ से कुछ नहीं. शिफ्ट मार के तो अगर स्पेस बार दबाएगा तो आवाज नहीं आती. शिफ्ट मार के स्पेस बार आती है साले. कंट्रोल के बाद स्पेस बार नहीं आती. नहीं आती यार. शिफ्ट पे आती है. Dropping smokes. Watch your eyes. अरे वेंचो हट जा. ये मादर चोद Spike down. बॉडी ब्लॉक कर रहा है. Last player standing. One enemy remaining. छी भाई, छी भाई. हग्गू. ओ ला ला ला. I'll outshine all their radius. साले और भी यूटिल थी तेरे पे. नहीं कहाँ यूटिल थी लौड़े. एक लास्ट फ्लैश था. Stacks, is that you? Face your fear! Enemy down. Spike dropped. I have the spike. Don't bother. Gun here. अरे माँ की चूत इसके. भी स्मोक दे दे मैंने. Rena is here. नहीं बड़ी पैच. 30 seconds left. Wall raised. Light planted. अरे हक दिया है. गंदी बॉल है. चेक हो सकता है तो. Last player standing. गंदी बॉल करी उसने. I'll do my job, you do yours. टूरी उनका 3-6 चल रहा है. जो बराबर चल रहा हमारा स्कोर. वो अपनी टीम से नहीं बेंच. अरे भाई फेड के आए के लिए रुको ना मादरचोद. उसको तोड़ो मत. फेड के आए तोड़ मत. पीछे आ जा बेंच. ये मादरचोद तोड़ते और इनको दे देते बहन की लौड़े. गांड माराओ बेंच.
Dropping smoke. For you. Enemy spotted C. पंद्रह सेकंड में स्मोक है। फर्जी बीजा 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 बी नहीं नहीं, यही चलते हैं, छोड़ दो चलो। चल फिर ए पे अल्ट मार रहा हूँ मैं। 1 2 3 मार चुप, मेरे को बिल्ड कर दिया। Planted. I want of these. Flash out. Last player standing. Careful now. Watch the lights. भाई पूरा साइट मिलने के बाद भी भैंचुद कुछ नहीं हुआ, लौड़ा जैसे भैंचुद। क्या चूतिया टीम है भाई अपनी। My ult is ready. All right, lucky socks. Don't fail me now. नहीं भाई क्यों लंटी नहीं हो रहा यार? अरे मर जा रहे हैं ना वेंचर, क्या करें। Can you give this spike? Sage, can I get this spike? नहीं दे रहा वेंचर स्पाइक। मादर चोद भाई, बुल्ले का बाल। Like I never left. Last player standing. जीजी है वेंचर देखें। नहीं यार 9-3 तो करते चल। कोई ना भाई। मेरे को नहीं लगता कुछ भी होगा इस गेम में। कॉम भी लंड सा लिया हमने। कोई साथ खेल ही नहीं रहा ना अपने भाई। अरे कोई कॉम सी नहीं है, वो दिक्कत है। बोल भाई तू उनको बोल मादरचोद लोगों को। Can you drop spike? Phoenix, can you drop spike? चला शावर से घुसता है, मैं जज लेके घुस रहा हूँ। आखिर चूत। My territory is mine. I have them now. Last player standing. भाई एक साइड घुस ही नहीं पा रहे भैंचोद। नहीं घुस पा रहे भाई, वो इसका नेट आया यहाँ पे In the half. और फिर अल्ट कर दी होल्ड उसने। कर पा रहे भाई। अगर डेडलॉक है वहाँ पे तो दूसरी डायरेक्शन में जाओ ना भैंचोद। एक ही डायरेक्शन में क्यों जाना है भैंचोद? भाई मैं यहाँ पे स्पाइक ड्रॉप कर रहा हूँ। गांड मारा। भाई किल के लिए खेलते हैं वेंचर, माचुदा है। हाँ किल के लिए खेल भाई, ये इनके साथ मत ले भाई। गांड मारा है भैंचोद। अभी तक ये फिनिक्स माता की आवाज कर रहा है। Give me those back. Get out of my way. Dropping smokes. Multiple enemies. The hunt begins. Spike down, C.
फिर पे ओमन होगा। Last player standing. Careful now. Watch your eyes. चुदा भाई है Enemy remaining. ये चुदा ये चुदा। भाई किल के लिए खेल रहे हैं। Switching sides. गांड मरा है भाई। अपना अपना नेगेटिव नहीं करना भाई। हो गया भाई नेगेटिव बेंचो 10-2 चल रहा है। अरे खेल जीत सकते हैं भाई, बस तू 2 किल ले, मैं 2 किल लेता हूँ, खत्म भाई। बाकी के इनके अम्मा मार चुका है भाई, मैं इनको ब्लॉक करने वाला भाई। किसको रे? तेरे को बोल रहा है, तेरे को गाली दे रहा चाहिए तब से साले। तो खेल नहीं रहा ना, खेल नहीं रहा ना साले हमारे साथ। मैं क्या किसको ब्लॉक करता है? लाइट ले तेरे को बोल रहा वो, कहता हमारे साथ नहीं खेलता है। अरे चुप कर रे। अरे बहन चोद इमोर्टल हो, गांड फोड़ दी रे लास्ट गेम मां का जात। इसलिए पार्टी तो निकल गया मैं उन लोगों की। चुप 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 चुप। चुत कहाँ मारा उसने? ए फुल पुश है भाई। आई क्या चूतिया प्लेयर है ये वेंचोद। ए पे ही घूमे जा रहे हैं, कोई इन्फो ही नहीं है इधर लोगों को। बी पे प्लांट हो रहा। Spike planted. ए लिंक का प्लांट है शायद। Last player standing. शुद्ध भाई। Enemy removed. भाई क्या लंड टीम है हमारी वेंचोद। This reminds me of this one time where I actually, never mind. टोरी जीत गया। उसको बोला बेटी चोत को। हेलो टोरी जीत गया तू? नहीं चल रही है। जल्दी हार ना। तेरा क्या सीन है? मारने वाले। ओए बंद कर आवाज बंद कर। शांत। Bye. परजी तू फ्लैश होगा। भाई 2 मार दिए मैंने अपने। तेरी बारी अब। One enemy remaining. ए सिलोंग है सिलोंग है सिलोंग है। Easy, mate. There can only be one hero. Just swapping in. अरे बेंचो तू कीबोर्ड की फैक्ट्री में काम करता क्या? इतना आवाज क्यों आ रहा है? ऑफ ले ली भाई इस बीटी जोन ने। कुछ किल नहीं हो रहे ना उसको इसलिए। चीजी हां म्यूट कर। मैं अच्छा पुश टॉक कर। कीबोर्ड का हिला रहा है क्या तू? अच्छा नेट अरे बेंचो स्मोक करते हुए मर गया मैं। कड़वी तू बेंचो ये लोग नहीं देख रहा था? Spike down A. ए लॉन्ग देख तो रहा था लौड़े। साले वो क्रॉस करके कैसे आया शॉट से? मैं ऑफ एंगल खेल रहा था लौड़े। ओ तू पहले देख रहा था, मुझे लगा देखेगा। नहीं मैं ऑफ एंगल खेल रहा था। अरे नहीं। Spike planted. 40 on deadlock. I know you're gonna lose, but anyways. Sure. Last player standing.
Nice up. Fucking Indian dick. Nice up. Fuck you, fucker. Fuck you, Yeah, motherfucker. See? Yo, can you shut up, man? अरे इसको क्यों बोला अलग अलग है साले वो Match point. जेट बकचोदी कर रहा है सी गन में Can't speak properly. टोरी कितना बचा तुम्हारा हो गया 4-12 लूफी को तो बुला बेटी चौथा अबे तुम 4 बार हो गए तुम्हारा तुम तो ठीक ठीक चल रहा था तुम्हारा क्या बात कर रहा है My territory, my rules. No peeking. Spike down. C. Last player standing. अरे बहनचोद कभी कवर ही नहीं मिलता वहां की चूत ये चूतिया है क्या यहाँ से क्यों आ रहा है Spike planted. Nice strat, Phoenix. One enemy remaining. Come on, let's go. My ultimate. Watch your eyes. He's flanking. He's in garage. Careful now. छी भाई छी भाई छी Fuck, man, you asshole. अबे छी भाई कितना गंदा बहनचोद भाई रिपोर्ट मार बेंचो तुम दोनों को मैं तो मार रहा हूँ भाई तेरे को बैन लगा तो लगा मार कान मारा है बेंचो तेरे को क्यों बैन लगेगा 24 माइनस हुआ माँ की चूत किधर गया कौन था वो अपने टीम में बेंचो ये ना जेट था रिपोर्ट प्लेयर क्या बोलते हैं इसे टीम सैबोटेज गाइस स्क्रीमिश स्किल्स लगाए क्या एम प्रैक्टिस करके थोड़ी यहाँ पे लोगों की एम्स नहीं लग रही हमारी भी नहीं लग रही मैं 14 किलो गोल्ड प्लेयर हूँ मैं कस्टम खेलते ना क्यों बेंचो इतनी मुश्किल से 5 बंदे हुए हैं इतनी मुश्किल से 5 बंदे हुए हैं बेंचो अब इसे कस्टम खेलना है तू गांड मारा ये लोग कहां जाएंगे गेम में हिला मादर हां वो सीढ़ी वाला तू एक काम कर जब तक लग नहीं रहा चार्ज चार्ज हो रहा है मेरे कोई बात नहीं मेरा माउस रिचार्ज हो रहा है गांड मारा बेंचो उसको गांड में डाल ले बेंचो जल्दी चार्ज हो जाएगी तू ऐसे ही करता कि अपने ईयरफोन गांड में डाल लगे हेडफोन अच्छा फिर तो एक एक करके होते होंगे ना बेंचो पहले लेफ्ट वाला राइट वाला या एक पारी में दोनों चार्ज कर लेता तो तेरे से पूछ रहा हूँ ना तू करता होगा ना कुछ तू बोल रहा दो है ये तो मुझे नहीं पता भाई ईयरफोन तो 2 होते हैं ना साले तेरे कान तो 2 है ना बेंचो गांड ही क्या तो क्या पता बेंचो तूने कन्वर्टर वगैरह लगा रखा हो गांड में क्या पता ये सब स्ट्रीम कर रहा है अभी बैठे बैठे हाँ जी भाई तू ये सब कर सकता है मैं बोल भी नहीं सकता फर्जी तेरा रैंक अप था नहीं तो था क्या बेंचो 76 था ना भाई मैं छोड़ दिए मोबाइल बेंचो अब अपने रैंक में धीरे धीरे जा रहा है फर्जी भैया फर्जी कैसा बोल रहा था जो सच बात है रे इसमें शर्माने की क्या बात है मानो चोद तू अपनी ओरिजिनल में जाना ब्रो व्हाट्स अप नाम क्या है भाई अपना तू भी स्ट्रीम कर रहा है और लफी भाई तू स्ट्रीम कर रहा है नहीं तू कर रहा क्या किससे बोल रहा फिर तू
स्ट्रीम में बोल रहे हाँ स्ट्रीम कर रहा हूँ ना मैं। तो वही तो पूछा मैं, तो स्ट्रीम कर रहा है मैं चूती है क्या तू चीज़ चूती है क्या? नहीं अलग सुना है, मैं अलग सुना था मैं पूछा स्ट्रीम कर रहा है, कह रहा नहीं। किससे बात कर रहा है, कह रहा स्ट्रीम पे। तू भी स्ट्रीम कर रहा है? चैट से हाँ। कहाँ स्ट्रीम कर रहा है? बहुत सारे 63 व्यूअर्स है ब्रो। 63 क्या बात कर रहा है? चैट जरा हाय बोलो पब्लिक को। कहाँ लगाया भाई? कहाँ कर रहा है स्ट्रीम, बता ना। कहाँ कर रहा है स्ट्रीम? यूट्यूब पे, ट्विच पे? ना भाई ना। कहाँ फेसबुक पे? Match found. कहाँ फेसबुक पे? पॉर्नअप पे? हाँ बोलना। अबे एक चीज बता, तू जो ये सब वैलोरेंट स्ट्रीम करता है मैचेस रायट वाली, हाँ परमिशन लेनी नहीं पड़ती उन लोगों से? नहीं। अरे कॉपीराइट थोड़ी है, नहीं है कॉपीराइट कोई भी। वैलोरेंट पे नहीं लेना पड़ता परमिशन, सीएसगो में लेना पड़ता। गेम पे डिपेंड करता है। हाँ राइट गेम्स वाले उसमें क्या है, हारे तो हारे, जीते तो जीते, ठीक है। मत करना मादरचोद, वैसे हार रहे हैं दल्ले, मादरचोद हार रहे हैं, कड़वी मत कर। मादरचोद एक गेम जीत नहीं पा रहे। ये भी ले सकता है तू नहीं ले सकता है मादरचोद, तू चुपचाप तमीज से कोई एजेंट ले। हाँ लूफी कुछ और एजेंट आ जाएगा। नहीं लूफी को खेलने दे भाई, एक बंदा तो कैरी करे। मादरचोद तुम तीनों से तो भरोसा नहीं है। लूफी कुछ कहना चाहता है तो भी वांट से एनीथिंग। अबे टोरी तू रेना लेना यार, तू रेना ले बेंचो, रेना अच्छा खेलता है। नहीं खेलता अच्छा ये बेंचो, नहीं अच्छा है एटलीस्ट। नहीं फिनिक्स बेंचो एटलीस्ट रेना में टीम फ्लैश तो नहीं करेगा मादरचोद। हाँ वही तो इसीलिए बोल रहा हूँ, रेना ले बेंचो, तू डिसमिस तो है ना बेंचो। अरे एम चल रहा है उसका, खेलने दे। अरे खेलने दे रे, छोड़। अरे हाथ सेट कर उसका। अरे हाथ सेट कर। ये मैप पे नहीं होता रे, ये मैप पे बाइंड पे रहना खेल लेगा। चल क्लोव ले तो क्लोव ले। तू क्या लेगा? मैं सेज ले लूंगा। नहीं दो ना को तू मुंह में ले बेंचो तू, फिर तू बस मिड ले लौड़ा सारा। अरे स्ट्रीम में क्या बात है? नहीं तू सच में कर रहा है क्या स्ट्रीम? बता ना कहाँ कर रहा है। क्या बोला? कहाँ पे स्ट्रीम कर रहा है? मैं स्ट्रीम में चले हैं? क्या बोल रहा है कड़वी, तेरे को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? हाँ स्ट्रीम में हम लोग क्या फर्जी। नहीं यूट्यूब में कर रहे हैं। तो नाम बता ना अपने यूट्यूब का। द चीजी वन टैप। लिंक भेज डिस्कॉर्ड पे लिंक भेज साले। हेलो सब डिसलाइक मारो रे, कोई भी जो सुन रहा है डिसलाइक मारो बेंचो। द चीजी से तो कोई नहीं है बेंचो भाई। अगर तुम 50 अनसब कर लेते हो चीजी को तो मैं। अरे हाय 340 रे, अब उसको भी 50 अनसब बोलते क्या? हेलो आवाज आ रही है मेरी? दा चीजी करके कोई नहीं है बेंचोद। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, नहीं कर रहा हूँ। तो किससे बात कर रहा फिर दल्ले? ऐसे तुम लोग बकचोदी कर रहा था। अरे भाई चीजी बेंचोद। फर्जी तेरी स्ट्रीम आ रही नहीं कहीं को? मैं नोटिफिकेशन सब ऑन करके रखा भाई। नहीं तू दिल से ऑन नहीं किया। बोलना दल्ले। नीचे से आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे दो स्मोक्स देना। क्लोज है। तुरंत मत स्मोक दे, पहले एंट्री मार। जा बैक साइड मार दे, बैक साइड। क्लोव मिड में। क्लोव मिड में। एक स्पॉन है। तीनों जा रहा है। जाना लुकी जाना। क्यों पुश कर रहे हैं? अबे जा, मैं बता रहा हूँ किसी से आएगा ना। अरे क्लो 30 है, क्लो 30 है। पिक कर। नहीं दोनों क्लो 30 है। कर मार। अरे बेंचो मार उसको। कड़वी क्या कर रहा है कड़वी? कड़वी क्या था वो? अरे मेरे वजह से बेंचो स्टन तो हुआ लौड़े। हाँ वेल प्ले। अरे किल दे दिया। अरे गाइस तुम लोग को थ्रो करना था, पहले ही बोलो ना। थ्रो करना है बोल दिया।
हां ले भाई ले बोल दिया गान मारेगा इजी मैच है भाई, जीत चलो 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 चलो। ये लूफी की आवाज क्यों नहीं आ रही? आ रही है अभी? आई हाँ। तो बोल नहीं रहा था क्या? बोला ना स्पॉन पे करिए, एक दो थे। मैं पीछे नेट कर रहा हूं, डेडलॉक नेट कर उधर। अरे माँ की चूत, कितने आई है? गेको भी है साइड में, गेको भी है राइट पे। एक किल छोड़ दे भोसड़ी का। यार हक दिया, दो है उधर। ये बाइक हो सकता है। अरे लौड़े बुल्ले ना, लौड़े ना भुज्जम तेरी गाड़ मार। लौड़े का पिक्चर, लौड़ा ना भुज्जम। अरे यहाँ पे क्या करना प्लान? कौन में? हां फ्लैंक है। टिपी क्या? अरे फक छी। No peeking. अरे भैया छोड़ो, सेव करो रे, सेव करो, टाइम नहीं है। भागो। लौड़ा ना भुज्जम। कोई तो मर गया। लौड़ा ना भुज्जम हो गया इसका। वो लोग भी सेंटी नहीं है। लौड़ा ना भुज्जम। बोनस भाई, बोनस बाय करो। बाय बोनस कहते रहे नेक्स्ट राउंड पे भाई, हम पे नहीं होगा। ये जीतेंगे ना। वो नहीं बोनस ले बाय ले टोरी। मादर चो, तू कर डुलिस्ट है। ड्रोन करने दे, रुक जा। क्लोज आता है नियो ने। Deploying drone. भागा। अरे क्या फ्लैश है रे? शूट मारेंगे। एक ऊपर है, एक और। अरे भैंचोद मर गया मैं बहुत लो भाई। ऊपर है। आराम से पीकी मत दो, कट पीछे देख। पीकी मत दो रे। पिक मत कर, पीछे से सिर्फ उधर होल्ड कर। मैं इधर दिख रहा है। तू ऊपर देखना। हाँ अबे गांडू, मैं भी स्टन होएगा। लो है उन्हें दो इधर है। अरे 40 है, लो 40 है। नहीं थ्रो हो गया रे। पीछे वाले पुश क्यों कर रहे हैं? गन भाई किसने दिया रे? अरे पैसा नहीं है, पीछे क्यों पुश कर रहे भाई तुम लोग? यहाँ पे आ जाओ ना मेन पे। मैं तो यहाँ था भाई। ये पुश कर गया, ये यहाँ तक पुश कर गया फिनिक्स। चोरी मत कर भाई, मेन पे चले जा प्लांट पे बाहर। तू लौड़ा साइड के अंदर, तू यहाँ था मादर चो, तू बाद में आया यहाँ पे। से अरे डिफॉल्ट खेलो। बाय क्या? अभी तो बाय राउंड रीगेन पे मांग। चल ये चल। डिफॉल्ट खेल। ठीक है, क्या बात कर। जिधर पिक मिला उधर चलते हैं। रेस वहाँ पे यूरो आता रहेगा और प्लेन है। हाँ उसको मार देना। ठीक है ना, प्यार से बोल रहा है। मिड पे है लोग शायद। अरे 70 है वो। गन है मेरे पास, कर गया। फैंटम है मेरे पे। यूरो तो नहीं है। जा बीजा लौड़े, बीजा मार। बीजा 70। एक हेवन है। मिड पे कोई तो है। मिड पे क्लो है। दो हेवन है इधर। हेवन है। अरे बहनचोद। अरे कहाँ? नाइस। गेको भी वहीं है। मर गया। पीछे पीछे क्लो है। वेल प्लेयर है।
got me serious? You got अच्छा मारा क्लो ने फर्जी भाई थे ना थैंक यू हेडशॉट हर राउंड बाय दूं क्या मैं हेडशॉट में अरे मेरे को कब दिया तो भाई अरे किसी को तो दिया लास्ट राउंड में हाँ हमारे भी दो गरीब होते हर वक्त लूफी और चीसी भैंचो कुछ अरे कड़वी देख भाई ने जरा सा तो कितना हरामी है Thanks. लौड़े इकोनॉमी थोड़ा संभाल ना मादर हाँ मादर ड्रोन करने दे नियॉन लो है और उठाने दे चुप रुक जा मैं मर गया भैंचोद मैं जा रहा पीछे गाड़ मारा भैंचोद मिड क्लियर कर मार दिया एक को लौड़ा फ्लैश एक और है मिड पे कोई तो स्मोक देख के स्मोक से नहीं आए दिए मादरचोद और कितने स्मोक्स दूं अरे बीचल अरे कोई नहीं है पे अरे पता नहीं ये लोड है ना बुझ टावर स्मोक दे रहा हूं ये दोनों आए गेको होता है यहां पे One enemy remaining. वो मिड पे था 80 अरे ऐसा रोटेट क्यों कर रहे हो भाई साइड अरे नहीं भाई मत करो बे ये करा मैं तो मिड ही खेल रहा था इसको बोलो भैंचो साइड दिलाया मैंने घुस के पूरा और स्मोक आया था मादरचोद क्या जिंदगी भर का नहीं होता स्मोक को बाय दो मेरे को और चाहिए रुक जा जरा मेरे को और देना ठीक है Let's keep it rolling. नहीं भाई तू इधर नियॉन का तेरी मादरचोद यहां से पास से जा बहन के लौड़े पास से जा मादरचोद नेट नाइस रुक जा ड्रोन कर रहा हूं रुक जा स्मोक दे ये रो पीछे फ्लैश करेगा मेरे को अरे अल्ट नहीं करना था रे प्लांट दे अरे दे रहा हूं फ्लैंक देखो कोई तो फ्लैंक देखना कोई तो फ्लैंक देखना भैंचोद रेस मेरे को वो करके वेट करके हां अरे लोहे देख 40 देख गन लेने आते देख उन्हें अरे अच्छा मार रही है भोसड़ी आओ क्लो मत मार रही बे ब्रॉन्ज है वो एस मार पे बे अभी से मत कर तो रुक एक ही फ्लाइट है कर तोड़ो अरे देखो Player standing. My turn. हाफ हो गया थोड़ी अरे हील क्यों रे जीत गए अरे फर्जी हील मत कर रहे अरे वो रीलोड हो रहा था रीलोड कैंसिल करने के लिए करा मैं जल्दी उससे जल्दी रीलोड होता है भाई मैंने लास्ट मिनट में भैंचोद मैंने गेको का ये तोड़ा मादरचोद मैंने तोड़ा मादरचोद बुल्ले मैंने तोड़ा नाइस रे अरे कड़वी मस्त खेला अच्छा गेको का तोड़ा भाई तू अच्छा दो तोड़ा क्या मैं किसी को तो मारा मैं ग्लोब को मारा शायद हां तूने एक को मारा अरे डिफॉल्ट खेल अरे शी अरे डायरेक्ट पुश कर मत करो रुको जरा स्लो खेलो हैं मिड में एक को ले तुम रुक जा अरे क्लो क्या मार रही बे वन टैब थैंक यू भाई थैंक यू अभी नहीं करेगी यहां से मारेगा वो स्मोक कर दिया मैं देख रहा हूं भाई कहां जाना है बेंचूत मेरे पास स्पाइक है क्यों ले गया स्पाइक तू इधर लाना स्पाइक ला एला Dropping smokes. ए स्पाइक ला दल्ले अरे मैं लो हूं रे मारो तुम मारो बेंचूत तब तक ले नियॉन थी तेरे पीछे तो झाट है भाई वो बॉट तेरा अरे चिरी दिया जा बेंचूत हमको मारने दे हां चल मरने दे अपन भी जाते क्या मार चोद रहे हो तुम लोग स्पाइक भी जाओ 40 है नियॉन अरे मेरे को पुश कर रहे बेंच के लोग अरे तू आजा भाई पीछे शॉट किस अरे बेंच अरे चौपट मत वॉल कर रिलोड कर ले मिड पे थी वो
कड़वी बॉट के अंदर जा रहा है मेन वॉल नहीं, सिटी वॉल था, इधर नहीं है, ऊपर है। हाँ ऊपर या मिड से आएगी। पीकी मत दो रे, पीकी मत दो। यू सेंसर पे खेल, मिड से आ गई। वन वे दे सकता है बेटी, चोत रुक। स्मोक है 6 सेकंड। ऊपर है। नाइस, वेल प्ले रे। थैंक यू भाई। में कैसा बचा मालूम मैं वहाँ पे, वैसे देखे मेरे को नाइस, बहुत अच्छा मारा वो दोनों को। अरे ये नहीं, ये दिलो ना गाइस। स्पाइक एक साथ में। फर्जी तेरे को नेक्स्ट में पक्का दिलाता मैं। फर्जी हां मांगना। अरे नहीं मांग कोई नहीं। ये बेटी चोत करेगी हमारे साथ। आ चोत क्या? मैं यहाँ तक पुश करता हूँ, यहाँ के ये वॉल कर। स्पाइक सोवा को दे। क्या बोल रहा? पता नहीं क्या बोल रहा। चोत ये वॉल कर, मैं क्लियर करता हूँ। तेरी बाकी छूट चलाई। अरे मंजू नीचे गया। ए 70 है रे पीछे। अबे लोड़े कितना फ्लैश करेगा मदरचोद। मेरे को क्यों फ्लैश कर रहा है बहन? वो फ्लैश कैसे नहीं होती? चूतिया तू झट का फ्लैश करता है बहन का लोड़ा मदरचोद। ऊपर उठा के किया थोड़ा। गाइस तुम लोग कोशिश नहीं कर रहे हो। बी पे है। बस हम दोनों घुस रहे साइड पे। मैं अकेला घुस रहा हूँ। मां की से तुम लोग अकेला लौड़े। मैं भी आया ही था। हर राउंड आ रहे। तेरे को बोला भाई बी पे है वो। ऐसा क्यों भाग रहा है? मिड से आएंगे। ओए तेरे लेफ्ट से आएगा। सेव कर ले। तेरे लेफ्ट से आ रहा है एक। ये चीजी लौड़ा बहनचोद। ए तेरे गली में से आ रहा है वो इधर। बी में। दिखा देखो। I got the spike. 30 seconds left. ये बात जाए नहीं टाइम। ये आ जाए। घुसो। Last player standing. ऊपर है। Down B. सेव कर ले भाई। ये लंड सी ऑप लीग खरीदी है ना तूने, 2 मेंडल की जितनी बहनचोद। एक बंदा मारा इससे। अरे उन्हें पीक ही नहीं रहे तो। ठीक है 4 मिनट तो लौड़े मिड पे ही खड़ा है तू मदरचोद। अबे टोरी तेरा मुंह खोल फ्लैश करते वक्त। तो हम लोग को फ्लैश कर देता है, हम लोग पीछे आएंगे ना फिर चूते जैसा फ्लैश कर देता है कभी भी। फिर बोलेगा बेंचोद मैं साइड में घुस गया हूँ, तुम लोग नहीं घुस रहे हो। सामने वाले साइड में आते चूते है, अपना टीम फ्लैश करके बैठता है। फ्लैश मार दे ना खेल बहन के लौड़े सबको फ्लैश करता है मदर। बाय मांग टोरी, बाय मांग। मैं इधर था तो ये कोने में कड़वी ड्रॉप दे से। फ्लैश मिल रहा है बेंचोद। ड्रॉप दे से। अबे ड्रॉप दे से। लो खेलो रे, पुश मत करो रे। अरे मेरे को और देता बेंचोद। Dropping smokes. 140 है देखो ने। नाइस। घुसते हैं क्या? इधर भी है इधर भी है देखिए। प्लांट कर दिया मैंने। इधर भी है अंदर। अरे मादरचोद कितना चिल्ला रहा है। प्लांट इधर दिए ना। कितना चिल्ला रहा है तू। अरे स्मोक दे। कहां कितने स्मोक दूं बेंचोद। चांद। सॉरी अरे पीछे जा। फिर 80 है। 2 आ रहे तेरे। इन्हें रेज़ चिल मारो। एक और है। दोनों पीछे है। One enemy remaining. नाइस। अरे कड़वे। मेरे सर पे खेलता हूं बेंचोद। अरे कितना चीख रहे हो बेंचोद तुम लोग। हां भाई बहुत चीजी का आवाज कम करो बेंचोद। थोड़ा धीरे बोलो ना गाइस। हां खेलो आराम से। ये तू भी मादरचोद धीरे नहीं बोल रहा। मादरचोद इतनी जोर से चिल्ला रहा है। कहां जा रहे चीजी बेंचोद अब? चुप बोल रहे नहीं, दूसरा गेम आओ बोल के बोल रहे लोग। माना चोद में जैसे बेंचोद। गांड मार लेंगे। चीजी गया तो बेंचोद। नहीं जा रहा। अरे टोन करने दो। अरे मार।
किल शॉट अरे मादर चोद अरे मेरा मुझ पे चला आया गया तो अभी भैंचोद। क्या करूं? स्कैनिंग अहेड Face your fear! अरे भाई Not escape me. स्मोक नहीं है। अरे राइट में नाइस नाइस स्मोक स्मोक ऊपर ऊपर टावर आराम से टावर। हेवन हेवन हेवन। अरे तू मार दे यार टोरी बहनचोद ये पकाएगा कड़वी पूरा लेके जा रहा मार चोद दे। जाना टोरी मार दे। मत मत बहनचोद पकाएगा फिर 40 सेकंड तक वो डिफ्यूज होगा। 30 seconds left. अभी ने तो ये बोल रहे पूरा सेटअप करता रहता। हाँ मैं सेटअप करेगा। इसको यही होना था रे सेटअप करने। अभी नेट के लाइनअप पे जाएगा। अब नहीं नेट के लाइनअप पे इसके पास। वो टोरी मर जाना मेरे को देखना है इसको खेलते हुए। मैं तो रुको बोल बिना बोले मरेगा देख आया नहीं। मारा मारा मारा। कितना मारा तुमने नियॉन को? 195 मारा है मैंने। किसने मारा नियॉन को? मैंने 195 मारा है 195। मैंने 39 मारा नियॉन को। वो एक घुसेगा तो बोलिए मैं स्मोक दूंगा। मैं दूंगा। ड्रोन करने दे। ओए स्मोक कॉल करना बता रहा हूँ मैं। स्मोक कॉल करना स्मोक कॉल करना स्मोक कॉल करना स्मोक कॉल करना। तेरी मां की जो चुप एक बार सुनाई देता है। ला मार बहनचोद को मार लौड़े को मार बहनचोद मार बोले मार बहनचोद। अबे गिर जाता अभी मैं। अरे बहनचोद नीचे हो गया। सॉरी यार यहाँ पे आउटफ्लो है। अरे लौड़े बहनचोद दो है यहाँ पे। एक इधर है तेरे पास आ रहा है कड़वी लेफ्ट से। One enemy remaining. इसका आउटफ्लो थी। तो इधर ही है। नाइस नाइस। एंट्री देखा मेरा बेंचो घुस के। बहुत लंड था। Round before the switch. बहुत ही लंड था। हाँ वो दीवार की वजह से हम फ्लैश नहीं हुए इसलिए तेरी एंट्री हुई लौड़े। नहीं तो झाड़ भर के मैंने बनाया ना दीवार मैंने। अच्छा इधर नेट मेरे पास ए चलते रे वापस ए अल्टी मेरे पे। नहीं जा तू जा। हाँ तू जा खेल खेल। बच्चे को नया खिलौना मिला खेलने दे। अरे बेटी चोद। अबे माँ की मार इनका मादर चोद देगा क्या? Oh yeah, monster on the loose. मर गया। बच गया? ऊपर। One enemy remaining. क्रेजी भाई क्रेजी। किल दे दे बेचारे को। सही है भाई यही तू है भाई। Switching sides. जो कुछ भी है यही तू है। ए पुश करते हैं। क्लोआ इधर आ। ओए तू फ्लैश मत करना पहले। बॉल मेडल लो क्या? हाँ कर दिया ना नेट से कब तक बेटी चोद। ओए तू भी आ। ओए डेडलॉक। अबे उसका अलग ही दुनिया में। मैं अपना मॉली फेंकूं।
मॉली फेंक तू। यहाँ पे जाना सब एक ही टाइम में तीन चारों चल जाएंगे। बोल रहा है मैं फ्लैश कर तो मैं स्मोक नहीं ले रहा फिर। तू अगर हम चारों यहाँ मर गए तो वहाँ कूद जाइयो। हाँ बस यही है। वेट गाइस वेट नहीं है कोई। यहाँ कोई नहीं है शायद। मिड यहाँ पे नेट तोड़ रहा है मेरा। नेट तोड़ रहा है। शिफ्ट फंसे। शिफ्ट कर मादर चोद। देख लौड़े। यहाँ पे। One enemy remaining. मार 70 देखो। अरे नाइफ कर रहा था। अच्छा मैं नाइफ कर रहा था। देख साले ऐसा तो बोलते भैंचोद। तू भी मजा आया। अभी आओ मेरा भैंचोद वहां से पुश मार रही मादर। ओए इधर आ डेडलॉक अभी आएंगे। अरे नहीं गाड़ मारा तू भैंचोद। तुम्हारे चारों पे मेरे को कोई भरोसा नहीं रहा गाइस वापस मैं फ्लैश करे फिर पीक देना तुम लोग। थोड़ा मेरे को भी जगह दो भाई, पिछली बार नहीं डाल ही नहीं पाया। इधर है। तू फ्लैश मत कर। हां तू फ्लैश मत कर। तेरे फ्लैश पे ही नेट थोड़ा दूर मार। अरे फ्लैश क्या मार। अरे फ्लैश मैन चोद। अरे कुर्सी चक्कर में गां। अरे छोड़ दे चुद गया अपन। 2 बार फ्लैश हुआ तेरे से नहीं। अच्छा मैं इधर था भाई। अरे चोरी क्या बकचोद दिए चोरी। शांत हो गया मर गया ना तुम शांत रहो। कोई ना रे इट्स ओके कंट्रोल कर सकते हैं। आपको फीनिक्स टीपी क्या नहीं फेक है। इधर ही कड़वी 3 किल्स इधर ही कड़वी देख रेडी है कि। अरे ए रुको देख गिर क्या मार सोच रहा है। लैग अरे हो गया भाई। क्यों पीक प्लांट हो रहा है। आजा Spike planted. देखा क्या? नहीं हाँ देखा बड़े ने जाए पुश कर कैसा भी शील्ड नहीं है। कन्ना रे ना रे। One enemy remaining. नाइस। हेवन उसके पास वो है देख वो है। No escape. हेवन का तो किल चक्कर में हेवन का तो झूठे वाला बोला। झूठ बोला। थोड़े 4 लोग तुम इधर थे मादर चोद। लौड़ा कुछ कर पाया भैंचोद। मैंने तो एक मारा भाई अपना वाला। इसी टोरी की वजह से किल फ्लैश की वजह से ना। ये फ्लैश मादरचोद टोरी दल्ला। ठीक है रे चलता इतना नहीं चलता मादरचोद। तू रे नहीं तू नहीं खेलेगा फिनिक्स भैंचोद। आजा वापस करते आजा। मैं गांड हो रहा मैं तो नहीं आता मैं भी नहीं आ रहा भैंचोद। मैं डेडलॉक के साथ मैं बोलूं ना अच्छा मैं मेरा साइड खेलता हूँ भाई। मिड इधर मत आने देना भाई। जा पीछे जा टोरी फ्लैश देके मार मत लौड़े। टोरी मरने वाला है। मर गया जज लेके आ गया वो टोरी। तू अभी पप्पी लेने जाएगा तो पप्पी देखा ना भैंस। दे दिया भोसड़ी वाले ने अपनी गन दे दी ना मादरचोद ने। मैन का लोड़ा। कौन है? नारे नाइस 3v3 है आराम से चिल है। नारे। अरे टोरी क्या है रे फिर से थ्रो कर रहा है। नारे। सभी पर लोगों को मारते हैं। स्पाइक नीचे प्लांट नहीं हुआ। नीचे प्लांट नहीं हुआ। ब्रिज पे स्पाइक है। ठीक है माय गॉड बिग भाई क्या स्ट्रैट है भाई क्रेजी भाई। ये YouTube पे देखा मैंने वाला।
भाई सेंटिनल का जो 5वां बंदा रहेगा ये रहेगा। Spike planted. One enemy remaining. एरिस रिवील अल्टे बहनचोद अल्टे। राइट नीचे। अरे क्रेजी भाई क्रेजी। पता कर सकता था। अरे भाई गोल रिंगा रोजेस। अरे भाई 110 मारा उस। ये भाई एंटी भाई सेंटिनल का 5th बंदा भाई। मिल गया क्या? कर दो भाई, फोन कर दो, जॉन क्विटी को फोन कर दो। रॉब मोर को कॉल कर भाई। मरा नहीं शिट। फिनिक्स तू बी पे खेलना है एक टाइम बी। तेरी गंदे ना मुंह में ले पहले। फाड़ करके आते देना भरोसा नहीं फिर क्या होगा। अब पक्का मार के आएगा दे नहीं अल्टीमेट करना नेक्स्ट राउंड करना चलो उड़े देना खत्म मत ये राउंड खत्म कर जल्दी दे। अरे नहीं होगा खत्म। तेरी मार बी है। देख तेरा अल्ट बचाया लौड़े। मदर चोद। नाइस रे। देना कर भी देना मैं खत्म कर सकते हैं राउंड अभी। यहाँ पे कैसे दूं मैं? मैं किधर है तू किधर है? अरे बयान की चूत है भाई। भाई कहाँ मारा तू गन से यार? एक बैक साइड है नियॉन और ये ले जा दे Reload him. अरे हक दिए दल्लो हक दिए। 40 है। चांद एक मेरा गन लेने आएगा देख तेरे पे डेडलॉक। गन निकाल तेरे मुंह पे। किल का भूख है बोल तेरे स्टोरी मदर। One enemy remaining. अरे किल का भूख है भाई ने तो। हाँ भाई तभी तो गन मांग रहा है उससे। अरे पिस्तौल है मेरे पे। एक थोड़ी तेरा अल्ट बचाया मदर चोद। अल्ट बचा क्या कर लेगा बचा के वेंचर राउंड खत्म हो गया, मैच खत्म हो गया। याद रख वेंचर। फर्जी सुन। हाँ रुक जा भैया भाई चीजी सेंटिनल का कॉल आ रहा है चीजी को। सेंट्रल को कौन है? Match found. सेंट्रल से कौन है? ठीक है डन। चिकन कहाँ पे हो? फ्रिज में नीचे ना? हाँ डन। भाई इधर भी भेज रहा बिरयानी वेंचर। बिरयानी क्या बोला? बिरयानी बोला। ये कोई फ्लैश वाला डोर खेलेगा? मैं ये खेल सकता है। तू मत खेल। नहीं तू नहीं खेल सकता ये टोरी वेंचर। मत खेल भाई जो आता है वो खेल। क्लो खेलना चाहिए। मैं रेना खेल। टोरी मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ तू रेना खेल भाई। रेना देख ले। रेना खेलना तो रेना का रेना खेलना है तो रेना खेल चाहिए तो मैं स्मोक खेल लेगा पर तू ड्यूल ये फिनिक्स नियॉन बिल्कुल मत खेल। नहीं क्या दिला सकता है एंट्री मत तू ही करते रहे अकेला एंट्री करते रहे। अपने आप को दिलाता तू एंट्री वेंचर। वैसे सामने वाले तो एक भी बार मैंने देखा नहीं तूने फ्लैश किया है और जैसी एंट्री तू दिलाता ना तू ऐसी क्लोज से भी दिला सकता है। खेलने के वापस फिनिक्स चल हो जाएगा। नहीं मैं फिनिक्स लॉक मार दूंगा वेंचर। तू फिनिक्स लेगा तू। फ्लैश ले स्मोक ले रहा नहीं ले रहा तू? मैं लेता हूँ ये मैं डॉज करता अगर ये लौड़ा लेता तो। मैं स्मोक ले सकता था। स्मोक तो मैं भी ले सकता था छोड़ भाई। बट तूने गांड में लेना सही समझा। अबे आप फिनिक्स खेल सकता है रे। मैं जीतते हैं ना हम लोग फिनिक्स में अटैक में एंटी दिलाई ना मैं हर राउंड। भाई अगर ये गेम फ्री है इसका मतलब ये नहीं तुझे खेलना ही है। नया खेल रहा फिनिक्स में टाइम लगता है थोड़ा। तो पहले तो टाइम लगा फिर आना हमारे साथ बेंचो। मेरे को
मुंह आ रहा है, बहुत देर से मैं आता हूँ। यार जल्दी आ। चीज़ी ये पे जा जल्दी। टोरी सुन ना, तू यहाँ से खेलता है, यहाँ से पीक ले बराबर। मैं मेरा पूरा इससे सेटअप उधर करता से हूँ। पीक लूं, इससे हाँ इधर से पीक ले, जब देख मेरे पास ये क्या जब है? टर्न होगा ना, ये वाला, तो तू यहाँ से और पीक ले। ये टर्न होगा तो मैं यहाँ से पीक लूंगा, ठीक है? मिड देख के वॉल टूटेगी तो स्मोक देगा या तो हाँ मांग वॉल दो। टूटी स्मोक दे। इन्फो इधर टूटी। मिड देखना मिड देख। वापस चले गए बंचू। मिड से रोटेट मार रहे। आया। नाइस। Spike down A. बेस्ट। One enemy remaining. रेना भी है अंदर। ये मेन पे। अरे रेना इधर है, रेना मैं जो मिड में थी, मैं आधा छुपी हुई है, देख रेना। स्पाइक अपने पे। अरे अच्छा मारे। हाँ वो मत मार। स्पाइक है। जा करे इधर ही लेफ्ट में रेना। लिंक में देख। 3 सेकंड में स्मोक है, 3 सेकंड में स्मोक है। दे रहा हूँ स्मोक। अंदर स्मोक दिया। Last player standing. प्लान करने दे, रुक जा। 30 seconds left. 1 HP नहीं है। अबे डिलीट हेड मारना है। छी भाई हेड मारता भाई। छी कड़वी। छी भाई। लौड़े तू तो झाट उठता क्या मदरचोद। छी भाई क्या फ्लिक शॉट मारा भाई उसने। लेकिन रे तू मार सकता था, ऊपर रखा था उसके बबलों पे दे मार। देना तो एक स्मोक दे देना, यहाँ पे क्या जाता है। मगर फर्जी तूने एक भी नहीं मारा क्या उसको। 30 मारा मैं उसे। कोई था ही नहीं। मेरे को तेरे को इससे फ्लिक मारा, मेरे को भी वैसे फ्लिक मारा। वॉल था ना मार के गई उधर। हाँ तो लौड़े क्यों पिक कर रहा है उधर। मैं उसको बोला स्टन के ऊपर पीक ले बहन मादरचोद। अब स्मोक दे। अबे यार हेवन जेट हेवन। अरे पिक ले Spike down. जेट हेवन। Someone's there. जेट हेवन है। Spike's here. अपने में स्पाइक है। लो देखा है किसी ने? हाँ साइट है। एक साइट है केविन। एक बॉक्स के ऊपर है। कूदा। Bomb buddy out. जा रहे शायद लोग। ए मिड देख मिड से आ रही है शायद। रेस मिड से देख। Last player अरे standing. भाई पूरा रोटेट करके मार काल। One enemy remaining. That's 3. लूट कर। स्पेक्टर ले। तू भी फ्लैंक कर ले मैच। 30 seconds left. Spike planted. अरे नाइस शॉट। ग्लोव डिफ। Mate is ready. बात तो सही है, पहला किल है उस क्लोव का। और रेना डिफ नहीं है क्या? मेरे केस में भैंचो 4 लोग फंसे थे भैंचो। मैं उस जेट ने स्मोक कर दी मुंह पे, कहां से मारूं मैं। अरे तू स्पैम तो करता लौड़े, मारने का सीन नहीं है। आउटलाइन स्पैम से भी मर जाते। मारा ना मैंने जेट 52। मेरे पास पिस्तौल थी बेंचोद। अरे मेरे पास भी पिस्तौल ही थी बेंचोद। अब है ना मेरे पास। ए जा ये तोरी ये जा बेंचो जा। चार लोग। थोड़ा स्मोक गंदा है। कुत्ता नहीं है बेंचोद, जा रहा है मेरे पीछे। और क्या मारा बेंचोद उसने। हाँ ये मेरे Player standing. बुलेट हो गया हम। अरे तू मेरे मुंह पे आके खड़ा हो गया लूबी। माय बैड। मैं स्मोक देखने आया, मैंने को देखा ही नहीं। माय Too many brain cells. नहीं भाई मैं ए जा रहा हूँ भाई। भाई तू एक काम कर, तू ए जा रहा हूँ। अगर कोई तो बी जाओ ना भैंचो अभी।
है ना। देख 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 फर्जी ये ना ये इसके ऊपर खेल के। अबे तेरे को मैं ट्रिक बताता हूँ, ये वाला नहीं, यहाँ पे लगाता है, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे, उससे बाहर भी लगता है। मैं जज पे हूँ, मैं पिक नहीं करूंगा तेरी ट्रिप पे। स्मोक देना। भाई ए पे रुक। अरे ए पे रुक ना लौड़े। भाई मिड से रहना ही। ठीक है। अरे मिड से बोलो भाई, बोलो। बोला उसने। अरे बोला नहीं, मार किसी ने बेंच। Last player standing. Gotcha. भाई ये दाल में कुछ काला है भाई रेना का। अरे वन टैप तेरी बहन की लोड़ी यार वो। कहाँ कूद रहे हैं बेंचोदी? मार एक मार ले। अरे कैसे कूद रही? अबे तेरे मिड से आएगा एक पीछे से। अरे कैसे, क्या कर रहे हैं बेंचोदी? अरे हम लोग ने बाय क्यों किया भाई? नेक्स्ट राउंड बाय करेंगे करके बाय नहीं किया, आउटलॉ बाय किया। तू तो नेक्स्ट। भाई मैं जा रहा हूँ। अब थ्रो करना। अरे वो चीज ही बोला बेंचोद, वो मिड। हाँ मैं बोला नहीं वैसे नहीं, हाँ बोले तुम लोग। अरे यहाँ पे ट्रिप लगाना, सुन कड़वी, यहाँ पे लगाना प्लीज मिल ले। अबे लूफी मिड पे फाइट करना। यहाँ पे मैं मक कर रहा हूँ ना, साइड के अंदर। भाई मिड पे कोई नहीं था और है ना बाद में उधर से। ए मेन भी कॉल बीट में एक दूसरा स्मोक भी दे देता ना। इधर है ए। चुप बात कर रही हो वो। चल लौड़ी स्मोक दे यहाँ पे। अरे लौड़े स्मोक देना मदरचोद। अरे रुक क्या है, इधर मुंह पे जेट है। देखा Go get him, buddy. Shot my wingman. Back to me. Spike down A. एक तेरी तरफ से आएंगे। 13 सेकंड है। स्पाइक है मेरे पे। मिड पे मॉली डाल। Saw you, Mosh. आ गया। अरे अपने स्पॉन्सर भी आ सकते देखिए। स्पाइक है मेरे पे। अपने स्पॉन्सर यहाँ ऐसे रिकॉर्ड। Last player standing. आई स्पॉन से पुश कर वरना मर जाएगा। पुश कर दे सारे। कहाँ पुश करता मैं, उधर से थोड़ी करता। लॉक इन करो बे। अबे लौड़े कुछ तो भाई गड़बड़ है उनकी इसमें भाई। वन टैप मार रहे बेंचोद। ए मैं मिड खेलता है, रुक। इतना कोई वन टैप नहीं मारता मदरचोद। अरे भोसड़ी वाले बेंचोद डायमंड के। अरे चीज़ ट्रैकर है क्या तेरे पास? ट्रैकर है? हाँ है। तो इनका ना हेडशॉट परसेंटेज दिखना, ये रेना और इसका जेट का। रेना का 30 है, जेट का देखा 24 है। ए पे स्मोक नहीं दे सकता है मैं। अबे एक यहाँ पे लगाना, तो दोनों यहाँ पे क्यों लगा रहा है? अरे लगाता हूँ भाई, तू टेंशन मत ले भाई। पीक मत लो रे। टोरी मादरचोद 06 क्यों कर रहा है पिक? Face your fear. मिड से भी आ सकते हैं। देख रहा हूँ मैं मिड। Spike planted. Get out of here. My ult's ready. मदरचोद भाई, ये जहाँ मिड पे ये Enemy बेंच। spotted B. तेज मिड पे। अरे जेट Dizzy's up top. Dizzy's down. Last player standing. नीचे ही है। नाइस भाई मैं बी पे जा रहा हूँ भाई। जाओ भाई। बेंचोद मेरे ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं वो लोग। You're still ringing. फ्लैंक मार सकते ना, फ्लैंक क्यों नहीं मारते हम लोग उनको? भाई लवड़ा मेरा मैं फ्लैंक मारने का ट्राई किया यहाँ पे भाई कोने में। नहीं स्प्लिट खेल रहे हैं ना। पीक पे खेल रहे थे। रेना तू पिक करके नहीं मरेगा, गांड नहीं देगा बेंचोद। देख फिर जा रहा था बेंचोद। देख तू मच्चू देगा देख। नहीं खेल सकता मैं। अरे तू मुंह में ले। जा दे गांड दे। You will not kill my ally. सोच रहा है।
Shock and a smoke. Call them to their grave. Reeling them in. मारो बेंचो तो जेट को आइज होगी बच गई One less. नाइस Spike down. हगा यार जस्ता मेरे पे Enemy remaining. Last player standing. भागना मत यार जस्ता भी मेरे पे कोई नहीं One enemy remaining. चल निकल ले कड़वी Spike planted. घूम के जा स्मोक अरे मादरचोद लौड़े क्यों घूम के जा बोला मादरचोद हट अरे खेलने दो बेंचोद मर गया ना तू मादरचोद तेरी मैं क्या और टोरी मत करना पीक भोसड़ी वाले अरे 2-3 राउंड जीत रहे बस अटैक में निकाल ले सकते अपन अरे टोरी सुनना मादरचोद मत करना पीक एक ही राउंड पहला राउंड पीक दिया मैंने ओ भोसड़ी वाले लास्ट राउंड में तुम यहाँ पिटा है ठीक है भाई मैं क्या बोलता हूँ इधर मत तुम सब ए पे खेलो अरे मेरे यहाँ पे मिड में अर्ली स्मोक दे भाई एक ही स्मोक है इधर है बी है खुश हो रहा है स्मोक दे स्मोक देना 140 रहना Spike down B. रहना 130 फेड Last player standing. दोनों में क्या है मेरे बोला मैं पहले बोला था यार वो मेरा Spike फ्लैश तोड़ planted. देते हैं इसलिए मैं फिनिक्स खेलता हूं फेड लो है अभी स्मोक है फेड लो है स्टोरी क्या रन कर रहा है आराम से रुक के इधर से मारता हूं लोग को मेन पे मर्जी वो फ्लैश तोड़ दिए मैं बोलना फ्लैश नहीं लूफी उधर लेके क्यों था भाई यहाँ पे कोने में खेलता ना बेंच जज था ना उधर उसका ये जाता है पेड़ का प्रॉब्लम करती है अरे तो कोई दूसरे को तोड़ने को बोलना बेंच मैं तोड़ा भी रहे थे उन्हें मगर उन्हें अंदर कर ली जड़ वो उसको मालूम था उन लोगों को ए जा कड़वी तो जा रहा भाई क्या यार जीता हुआ गेम बेंच हरवा दिया यार जीता हुआ कौन सा बेंचो 0-8 चल रहा है भाई मतलब जान दे क्या बोलूं यार यहाँ पे ए पे बी कोई नहीं है अरे क्या मार एक लिंक है रेना लिंक है दो देखा क्या विंच देख के करके आ रहे हैं बड़े हुए आना रेना जल्दी आ Spike planted. मार भोसड़ी वाली को मादरचोद भाई पूरे अच्छा खेल रेबेल लोग अल्ट मार Last player standing. कि भाई क्या इतना गंदा कैसे खेल सकते हैं बेंचो तुम टोरी भाई हग रहा है बेंच ए मैंने अपना मारा जेट को अच्छा भाई बहुत मेहरबानी हुई भाई बहुत मेहरबानी मर्द नहीं है ये ऐसा ही है गेम 5 स्टैक में विंच एक डायमंड आता है या तो एक असेंडेंट होता है बाकी चुत और बाकी सब ब्रॉन्ज होते हैं ये बड़े सेज वगैरह ब्रॉन्ज कौन परेशान कर रहा है तुझे इतना भाई ये कौन है गेको तू बीजा भाई मिड खेलने तो बीजा भाई गेको पांचों जन ने साथ में पीक दिया मुझे तो लवड़े तो पिक क्यों लिया मादरचोद थोड़ा सा डिले करो मेरे पलट है थोड़ा सा डिले बस मिड देख रहे हैं ना कोई तो मिड आ रहे हैं कड़वी तेरे पे आ रहे हैं स्मोक में अरे मादर ओडन लिया बहन के लौड़े ने इधर क्यों आएंगे उधर इधर है One enemy remaining. Last player standing. Spike down B. ए आएगी क्या नहीं उसको वो कॉन्फिडेंट है बी पे ही प्लांट करेगी देखो देखते हैं वो अपने जैसे नहीं खेलेगी जाना फिर तोड़ के जाना तो मारा है भाई
हिल ही करी। नहीं उसने हिल नहीं किया क्योंकि सेज ने मेरे को मारा ना। यही जाएगी। 30 seconds left. बी कर रही है बहुत। मैं बोला बहनचोद तुम सुने ही नहीं planted. Drop in a smoke. उसको मालूम देख के एक्सपेक्टेड रहता। No peeking. मिड में चेक करी थे पहले उन्हें जाके मालूम। Don't be spending too many brain cells figuring them out. Overthinking is just as bad as underthinking. भाई क्लो तू यहाँ पे स्मोक दे सकता क्या? दे सकता है ना। दे फिर। बेंच एक राउंड भाई 2v5 था याद रखो 2v5 ओके 2v5 ए क्या ब्रो क्या है मिड में मारा। अरे घुस गया बता ना घुस गया एक। अरे मुझे कहाँ दिखा मैं फ्लैश में था लौड़े। अरे यार एक लेफ्ट में मेरे पे पिक मत ले इधर ही है जेट इधर है। Spike down A. ए 70 है मार दे मेरे को मारने दे इसको मेरे को मारने दे। लो किधर है? One enemy remaining. मेन है भोसड़ी वाली। छोड़ दे मेन। एक तो जीतना है भाई। अल्ट खोलना खोल दे भाई अल्ट बेंचो एक राउंड तो जीतते हैं। Last round in the देख half. तेरे स्मोक ने भाई गांड मार दी मैंने। माता दी शोध बुल्ले का बाल लौड़ा इनका। और एक जी तो मैं छोड़ूंगा मैं। अटैक में निकाल सकते खाली एक जी तो बस। मिड आएंगे लगता है। नहीं बी आएंगे निकालने वाले हैं। तू मेरे को स्मोक दे बस खाली चल। कर भी एक मेन पे लगाना प्लीज। मेन पे क्या को चाहिए Get लौड़े। out of my way. Barrier deployed. Target spotted. स्मोक दे उल्ले। वो लोग मालूम है जाओ ए पे भागो कर भी जा ए पे भाग जा। वो लोग को मालूम ऊपर जाना तू ऊपर से खेल ये कौन है लूफी ये कौन है रेस कौन है रेस कौन है ऊपर से खेल। हां भाग ए पे है यहाँ पे एक बंदा है। बी आएंगे शायद। पिक मत दे कर भी रुक जा उन लोगों ने मालूम है ना पिक मत दे तू। मिड है 2 मिड है। You will not kill my allies. ए लिंक कर रहे। नाइस ट्रेड रे। मादरचोद यहाँ पे भयंकर लौड़ा रे कौन ऊपर टॉप पे बोल लो ना भयंचोद। अल्ट है तेरे पे लिंक आ गए। शिफ्ट कर अरे यहाँ पे सब टॉप पे 30 seconds left. अभी इधर बेस जेट बेस पे ऊपर आएगी। ए प्लांट हो रहा है। अरे Spike planted. जेट 140 भैंचोद। Last player standing. भाई क्या मार रही है ये? स्मोक में स्मोक में नहीं है स्मोक क्या आ गया? Switching sides. चलो मैं बॉटम फ्लाई करती हूँ यहाँ। कौन है मैं हूँ क्या? अरे बहनचो ठीक है भाई। चलो पूरे बी चलो रे स्प्लिट मत रे पूरे बी आ जाओ। मैं सेज बहुत करती है बी। तेरी माँ की चूत रहा उसको। बी बॉल नहीं कर देगी वो सेज।
क्या लगता है भाई टोरी यहाँ पे स्मोक देना एक। हाँ वहाँ पे एक स्मोक अभी से 5 सेकंड के बाद पुश करेंगे। अरे रुको एक 5 सेकंड के बाद पुश करेंगे। इधर 5 सेकंड। अबे वो रिवील मारेगी, आई मारेगी, थोड़ा पीछे आ जाओ। हां इधर काजा ठहरे देख इसको रोके केको होने भाई जाने ना कुछ। यहाँ पे कोई तो पुश कर रहा है थोड़ा। बिल्कुल तो देखो रे मादर चोद भाई। रुके लो। मारो फ्लैश। Dropping smoke. अबे बहन छोड़ दो। Spike sticking. एक को तो मार बहनचोद। साइड पे क्या है? Last player standing. अरे क्या कर रहे भाई मैं एक को मारा रे। मां की 4 भी मारना तभी ये होता है। ब्रो अरे हट रे इजी गेम था बे। ये कड़वी तक छूट दिया कहां कड़वी इधर मर गया। फ्लैंक करने भी नहीं आता उसको। अबे लोड़े फ्लैंक की बात नहीं मेरे ऊपर 3 लोगों का पुश है वो भी जेट और रेना मादर। गाइस अभी क्या करूं मैं? पिक्स पे खेले क्या? तुमने एक को तो मारा क्या? एक राउंड क्या बंचो एक ही राउंड है। चलो रे बी पे चलो रे आ जाओ। अरे बी पे आओ रे पिक्स पे डिफॉल्ट खेलो भाई डिफॉल्ट खेलो भाई। हां डिफॉल्ट खेल। Let's see how it goes. मिड टू फाइट। यहाँ पे स्मोक डाल लो। नहीं एक ही स्मोक है। अरे बंचूद भाई बैंडल लेके आई मादर की यहाँ पे। यहाँ पे मिड पे यहाँ पे पुश मत कर। You did good. मिड और एक मिड लिंक के पिक मत दे इसको पिक मत दे। स्मोक नहीं है क्या? फ्लैंक है। एक और है क्या? अरे स्मोक नहीं है। वो कोने में राइट कोने में। पिक मत दो। दोनों साथ में पिक दो। One enemy remaining. नाइस। Go get him, buddy. Ace. ओह सेक्सी बॉय। गन है कहीं पे? हां रेना के Combat is a means to an end. And we ना कर कड़वी में तो देख रहा हूं जीतने में वक्त दिख रहा है। अरे ए पे जेट पुश मारती है यहाँ पे जेट पुश मारती रुक मैं फ्लैश तू फ्लैश दे सॉरी फ्लैश दे मैं नेट डालता हूँ मैं यहाँ पे चल एक ही फ्लैश है मेरे पे देखो वो बोलना मैं नेट डालता हूँ यहाँ पे चल यहीं से फेंक उधर अरे तोरे तो फैंटम विदाउट शील्ड कैसे ले सकता है भाई घुसे मार बे लोड़े मार Reload. अरे मारो ना दूसरे वाले को साइड से बॉक्स के पीछे One enemy remaining. मिड थी वैंडल है वो मिड पे थी Back to me. Wingman's planting. हेलो भाई Spike sticking. Thanks, little man. कहाँ है वेंडल का मेन पे इसके पास है अरे मदद चोद मेरे को दे देता भोसड़ी वाले चोद अबे सुन वापस ये फर्जी सेल कर मैं खरीदा नहीं कड़वी भाई मांग I could use a drop. फुल शील्ड लेकर भी ये बढ़ गई हां ए बड़वी कड़वी मैं नेट डाल रहा हूँ कान मारा बहनचोद उनकी सब फंसे थे अरे गलत फ्लैश पैंच मारती छूट भाई मिड पे स्मोक देना अरे स्मोक ये वाले स्मोक भाई यहाँ पे लिंक पे इतना लेट आया स्मोक
और एक क्लिक पे Refreshing. जेट साइड हो सकती है। फ्लैंक फ्लैंक है क्या कोई? जेट साइड थी। अरे भाई जो क्या है रे रेना तोरी मातर चूत। तोरी कहाँ घूमने निकली है क्या भोसड़ी वाले? अरे इसलिए नहीं खेलना रे इसके साथ चूतिए के साथ ये खाली किल के चक्कर में गांड मारा था। Last player standing. क्या टोरी कहाँ घूमने निकल गया क्या? चूतिया है क्या तू? नहीं वेस्ट है बेकार है चूतिया है। क्यों आ रहा है? क्यों जब सब साइट में क्यों आ रहा है? यहाँ पे छुपी हुई थी रे जेट क्या है तू? हट मादर चूत। अरे क्या चूतिया कसम से भाई कहाँ घूमने निकल गया चूत? अरे खेलना चीज एक खेल अच्छा घूमने निकल गया पार्क में। अरे तोरी किल्स के साथ खेल रहा है तो अनफ्रेंड कर दे तूने अगर किल्स के ऊपर खेल रहा है तो तू बोल रहा हूं पहले लगता है ये जीतेंगे हम लोग जीतेंगे नहीं रे फिर। अरे भाई थोड़ा तो बचाता बहनचोद चले जिया तू तो गायब ही हो गया बहनचोद पूरा। कम से कम हारने का तो इज्जत से तो हार बैठ। अभी मेरे को लास्ट राउंड का रिप्ले देखना है। चीज ही प्लांट कर रहा है प्लांट होते ही मारा उसे। चैट में ही बैठी थी वो निकली नहीं वो पूरा प्लांट करने दिया ऐसे। सही करता है हमेशा किल्स के लिए ही मरता है। नहीं ना कोई इसको सेज और डेथलॉक नहीं ये डेथलॉक ये खिला और इसको सेज खिला आपसे बहनचोद। इसमें भी वही करता है वो और कुछ अलग नहीं करता है। वो एजेंट की दिक्कत नहीं है। नहीं अच्छा खेलता है रे बट क्या है रे टीम सब नहीं क्या है बेकार सोलो नहीं तू वो खेलता है उसके लिए वो खेलता है अच्छा पता नहीं पर खेलता है के लिए खेलता है वो खेलता है बस। अभी वो सोचा रहेगा उधर बेस से आके 2-4 मारेगा। हाँ कि बेस आएंगे कोई बेस मैं बताऊं कोई बेस से नहीं आया सब लिंक थे और जेट तो साइट ही थी। तुम लोग को क्या मैं तो मेरा काम किया मैं तो एक मारा मतलब एक पूरे मैच में एक बार मेरे से ऊपर आया तो कह रहा बॉटम फ्रैगर तो नहीं हूँ मैं। अरे वो नहीं सुन फर्जी क्या हुआ मालूम? अच्छा मैं तोरी मार रहा था जब मार्शल से बेंच पीछे से जेट और वो तेरा स्मोक लेट आया था लूफी लास्ट में बेंच इसलिए मर गया मैं वेट कर रहा था मेरा आइट आ गया था बेंच ये तोरी देखे तो उनके घरों पे बैठा हुआ है। टोरी निकल गया भाई टोरी घूमने निकल गया और तू मरा फिर भी उसके बाद घूम के आया वो पता है वापस आ सकता चला गया पूरा घूम गया। तेरी टीम को सपोर्ट कर रहे टीम का अगर ड्यूलिस्ट ले तो टीम के साथ खेलना रे। ठीक है एक में अच्छा है वैसा बोल के नहीं ये छूतिया पावा जाके उन लोगों के घर पे बैठ जाना बहन चोद ये क्या है रे बोल। क्या नेक्स्ट राउंड की तैयारी कर रहा था ना वो कह रहा नेक्स्ट राउंड में स्पॉन होंगे तभी मार दूंगा स्पॉन होंगे तभी मार दूंगा उनको बाय करने से पहले ही मार दूंगा। अरे बहन नहीं वो लास्ट मैच में अच्छा प्लस हुआ था बहन जो पूरा माइनस ही हो गया 0 बहन का 19 प्लस हुआ था 27 माइनस हो गया बहन चोद। क्रेजी भाई क्रेजी गेम था भाई। Match found. आया रे भाई ये फाइनली मैं थोड़ा इसमें ट्रायल करने वाला ठीक है क्या होगा तो ट्रायल मैं भी कर लेता हूँ फिर बेंच चोद। मत भाई ओके फ्लैश फिनिश जैसा ही है ब्रीच ले ले उससे अच्छा। फर्जी मत ले रे ब्रीच लेना है फर्जी तू ब्रीच ले चल तू जो बोलेगा वो मैं खेलूंगा। ब्रीच मेरे को नहीं खेलना मेरे को कोई भी एजेंट खेल लूंगा एक्सेप्ट जिसको फ्लैश होते हैं मेरे को फ्लैश करने नहीं आते। जा सेज खेल जा अरे जेट खेल तो जेट खेल लूफी मैं फिनिक्स खेलता हूं मैं फिनिक्स खेलता हूं चल भाई मजा आएगा। नहीं है जेट नहीं आता है मेरे को जेट मैं फिनिक्स खेलता हूं चल भाई बस। क्या खेलता है तू बोल रेज और क्या खेलता सब खेलता है जेट और केओ छोड़ के। अबे कभी ट्राई करते हैं भाई अब मैं लेता फिनिक्स मैच रुक नहीं भाई तू फ्लैंक कर मैं तेओ ले तुम छोड़ सेज न को ले तेओ ले तो मैं छोड़ मैं क्या लूं छोड़ खेल अरे कड़वी बहन का लौड़ा तेओ लूं
कड़वी भोसड़ी के तूने भी फ्लैश किया ना माधव, तो तू भी कभी फिनिक्स नहीं खेलेगा क्या? तेरे फ्लैश नहीं लगने चाहिए। आवाज नहीं आ रही। मैं जब भी फिनिक्स लिया मैंने गेम जिताया, ये याद रखना। जीते हैं वेंचर। गेम जीते हैं, तूने जिताया है, दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है भोसड़ी के। ये दोनों, इसका तू वेन डायग्राम बनाएगा ना तो वेंचर म्यूचुअली नहीं है। हाँ दोनों अलग अलग पाई चार्ट हैं, अलग अलग गोले हैं ये वेन डायग्राम में। डिसजॉइंटेड सेट है। हाँ साइड क्लियर किया मैंने। अरे मादर चोद के बच्चे भाई, कोसे प्लेयर्स आ रहे रे भाई। हट। बिलाल आया भाई, बिलाल माय गोट। बिलाल ने अरकनीम, हाँ कलवड़ा। ये इसमें के कोई आने लॉबी में, मादर चोद का बच्चा। हाँ बिलाल लिखा है, इमॉर्टल है बहन का लड़ा। बिलाल उस ओमन का नाम है ना। अरकनी। ओमन दिख रहा है मुझे, बहनचोद नाम कहाँ से दिख रहा है? तूने हाइड कर रखा होगा। When I'm done, there'll be nothing more than ash. तू अगर खुद को हाइड करता है ना तो दूसरों को नहीं दिखता। समझा क्या तू? हाइड कैसे हटाते कैसे है वो? पता नहीं। मुंह में लेके कहाँ होता है? किधर खेलूं? एक खेलूं मुंह में होगा ना, मुंह में लिया था तो। नेड करना है इधर। अबे वो बाहर होता है शायद, गेम में नहीं आता। रेस नेड करना, नेड इधर। हाँ डन। चल भाई मैं फ्लैश मार के दे रहा हूँ, देख रहा हूँ। पिक ले पहले, अगर मैं स्टन खोल के रख रहा हूँ, अगर हुए तो तुरंत कर दूंगा, तू भी नेड कर देना। तू वो अगर ले तेरा सीधा हो जाए, क्या बोलते हैं? मरा तो मरा, ठीक है। नहीं है इधर। यहाँ पे ये अबे ऑडियंस में दे बे। अरे वो जल्दी में दिया, सॉरी। पीछे ये स्मोक देना अगला, ये वाला। आए भाई आए। देख मार भाई। फर्जी बात सुन मेरी। अरे भाई नाइस क्रेजी भाई क्रेजी। एक बॉक्स के पीछे बूमबोटल राइट साइड को। इधर खेलने दे बेंचो उसे। नहीं उसने भी मेरे साथ ऐसे ही किया था, मादर चोद गांड मारा बेंचो। अरे बॉक्स के पीछे इधर। फर्जी। अरे हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम बोलियो ना। ये दूसरा देना। कौन सा दूसरा? पहले इस स्मोक ये देना, वो लोग साइड घुस गए तो ये वाला देना दूसरा। ठीक है भाई साले वो बहुत लेट आए, उनको ऐसा लगा था कि बेंचो में फ्लैश देने वाला हो बेंचो करके। अरे पुश मत कर रहे कड़वी, पुश मत कर रहे। अरे सारे के सारे फ्लैश हुए थे बेंचो। पर कड़वी तो पुश मत कर। अरे यार नहीं यार, हट साला। मैं बीस्ट है यार। कड़वी पुश मत कर, उधर ही रह। कड़वी तुम मरेगा तो अपनी गन मेरे को देके जाइयो। ठीक है। आए भाई आए। बी है क्या? हाँ नाइस। Weapon here. अरे हील दे रहे तू अपने आप को। अरे मिड दल्ले मिड। मैं इधर तो मिड को जा। अरे मिड में देखो रे मादर चोद हो तुम लोग। मैं मेन देख रहा हूं इधर। मिड है। अरे तू देख, अरे तू आ रहे मेरे पे आ रहे। उधर ही रहे। मारना बेंचो। 80 है रेना। One enemy remaining. एक और। Spike down mid. नाइस भाई क्रेजी भाई। गने। हाँ स्पेक्टर है हम पे। वो रिस्क तो गाड़ी टूट गई। तू क्यों छोड़ दिया मिडिल सेज? अरे ले लोफी वो मन भाई कर ले। अरे पर मिड मेरे मॉली में बेंचो 200 का डैमेज हुआ बेंचो, सब लोग मर गए थे बेंचो। सब कैसे मर सकते हैं 200 में? अरे नहीं मतलब 4 लोगों को नहीं सब कैसे मर सकते हैं 200 में? गांड मारा बेंचो। अब यहां से खेलना। तो यहां से खेलना। ठीक है। 4 का सेट कैसे मिला? पर मेरे पे स्पेक्टर है मेरे पे। ये लोग का पिंग इतना क्यों है? स्टन है। Drop in a smoke. नहीं यार स्मोक नहीं खेलता। मार राइट कोने में। One enemy remaining. भाई क्रेजी भाई। देख मैंने फिनिक्स लिया तो ऐसा होता है। अरे मां की छूट भाई। अरे तू ये खेल रहा था क्या? आउटलॉ खेल रहा था? सॉरी
देखा नहीं आउटलॉ से कितना मारा है? आउटलॉ से मारा तो लूफी? नहीं मारा, मारने ही नहीं अरे मिला। फर्जी मिड खेलना भाई, यहाँ पे स्मोक चाहिए मेरे को लगता है मेरे पे पुश वॉल कर। अरे वॉल कर दे, मिड वॉल कर दे। वॉल कर रहा हूं मैं। ये लोग का पिंग देख 130 है, लोग कोई अलग सर्वर के। दुबई से खेल रहे हैं लोग। दुबई वाले खेल रहे हैं। आए यहाँ पे। पीछे जा। No peeking. भाई मैं 2 मिनट है भाई, कोई तो भी रोको, अरे सेज भी रोक अंदर। लौड़े के बाद एक बात अरे यहाँ पे है मिड आ रहे। मार उसको मार। अरे टावर है। अरे भाई फेक कर रहा था रे, चुप रहो रे तुम लोग। Spike planted. कड़वी क्या कर रही? नाइस। Reloading. इन्फो चमका। राइट स्मोक दिया। One enemy remaining. ओमेन साइड पे था, लेफ्ट अबे यार एंटी भाई। अरे कड़वी मत बोल रहे, तू मर गए बाद खामोश बैठ रहे। उन्हें फेक करा, मेरे को मालूम था। अरे बट तू धीरे से जाता ना भाई। अरे धीरे नहीं, उन्हें देखा रे, मेरे को फेक करा था। तू क्यों बोल रहा रे? अरे कैसे देखा तेरे को? तू धीरे से गया था बंचू। बहुत चढ़े गए। सुन टीपी लिया ना उन्हें, मेरे को देख लिया ऊपर, इसलिए मैं हल्का बैठा हुआ था। तो वॉल भी नहीं करना था यार। ठीक है चल कोई ना। ये क्या है? Treated his master right for the first time. बकचोदी कर रहे। मार ले सारे लूफी उसको अपना। थोड़ा लेट करियो। पीछे। No peeking. मौली डाल दे। मैं बहुत लो भाई। अरे मर गया बंचू में। फक। रुको मेरे लिए रुको। नाइस वन। तेरे पास है। Spike down B. नाइस रे। अरे हर बार नहीं चलेगा सेज बेंचो, हर बार बॉल के ऊपर चढ़ जाएगा तो नहीं होगा वो। नेड खोल के रख इधर। हाँ वर्स्ट रबर सच एक्चुअली वर्क। किसका था? ये लूपी नहीं, कौन है चीज़ी का? मेरा वर्स्ट है, बुल्ला वर्स्ट बोल रहा हो। मारा ना दो। हाँ तो बोला तो वर्स्ट एक्चुअली वर्कड। मिड पे Drop in a smoke. देखियो क्रॉस देखियो टोरी, मेरा क्रॉस देखियो। हाँ मिड पीक में Drop in a smoke. अरे मिड में देखना। अरे इधर वॉल टूटी मिड के। उन्हें अल्ट करता वापस गया। एजा रेज एजा। प्लान करने मत दे इसको। फेक किया। अरे बी पे रहो। मिड देख। फेक किया। ये फेक किया है ना मत। क्लोज मिड क्यों छोड़ रहा है? तू था ना। अरे भाई सब यहाँ पे बहनचोद। भाई सारे लोए बहनचोद। व्हाट द फक, सारे लोए भाई। 140 सेज 120 रेज। एक नीचे Kill my ally. Last player standing. अरे यार तुम बहुत गलत इन्फो देते हो यार। मिड नहीं छोड़ने का। अब मेरे क्या गलती है बेंचो, इसमें बिया है वो। अरे क्या फेक तोरी लौड़े, तूने मिड छोड़ा मादरचोद। तू यहाँ पे था लौड़े मादरचोद। छोड़ना, सेव कर ले। सेव कर। मेरे को नेक्स्ट वाई दे दे भाई। या इनका गन ड्रॉप करा दे।
इधर ही रहे। ओ तूने साउंड भी नहीं दिया था। फ्री फायर मारते हो यार। भाई बहुत स्लो कर रहे हैं ना। दोरी कोई बाई पूछ रहे हैं। भाई चीज़ बेंचो टोरी मेरे को एक बात बता भोसड़ी के तू वॉल भी कर रहा है मिड पे, तू सोच रहा है मैं भी मिड खेलूं बेंचो, ऐसा थोड़ी होगा। तो मत कर, या तो वॉल मत कर बेंचो। मैं 20 सपोर्ट मारूं क्या? वॉल करते हैं। मत कर वॉल मत कर। नहीं अभी से मत अभी से ना मत कर वॉल। कर नेड कर। नो पीकन। नहीं रे लेट हो गया रे यार। स्मोक देना। नो पीकिंग। दिया। अरे स्मोक दिया मैं। ओमिन 100 है। नाइस ट्रेड रे लुफी, नाइस ट्रेड रे। कभी इधर भाई मिड पे देखना यार। सॉरी तू मिड छोड़ दिया भाई, दीवार भी नहीं बनाया लौड़े। लुफी मिड। अबे अपना है। हाँ लाउड है, मेरे को लगा रेस कर रहा है वो। अबे ये क्या है? एक है रेज है यहाँ पे, रेज है रुकी है रेज। अरे रन कर रहे क्या? 30 seconds नहीं सेट ले ली पर। दो ऊपर है। अभी क्या रन करना है बेंचोद? अबे क्यों ऊपर तक है? दो साइड है। मैं अल्ट दे सकता हूँ, एक सिटी है शायद। Watch your eyes. अल्ट मार। मार दिया। आराम से रे। अरे मादर चीज यार। आराम से मारता रे, आराम से मारता। अरे तू थोड़ा पीछे से यहाँ से मारता ना अल्ट तो सही रहता भाई। तू मेरे आने का रुका ही नहीं तू उधर मारा ना, एक किधर था ना तू? इधर था एक, किधर मारा? मेरे को लगा आ रहा है। तो मेरे आने का टाइम रुकता ना तू। वो नहीं, वो लोग फेक बहुत कर रहे भाई। ये साइड में रहो, छोड़ी मत। वॉल नहीं करो मिड पे, बता। कर दे कर लौड़े मगर होल्ड करके रख। कर दे और मिड होल्ड करके रख वहीं पे। हाँ वही तो मादरचोद। केओ अल्ट मार के आता देख के कड़वी। हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पे है। मादरचोद यार कोई तो स्मोक तो दे भाई यार। मत करना पीक, तू हट सकता वहां से। सामने वाला स्मोक दे जल्दी से मारा। दिया मेरे पे ओवर टीपी मारा। क्या लौड़ा, क्या अल्ट मार रहा है भाई पूरी। Player standing. अब इसने स्मोक कर दिया। वो स्मोक नहीं, फ्लैश कर दिया। Spike planted. रेड 70 है देख। Weak. रेड 70 है। अरे कैसा मार रहा है? अबे ये रन गन नहीं कर रहा है मादर चोद। मेरे को 3 बार इसने रन करके मारा है। अरे भाई लोग यहाँ पे स्मोक तो दो यार। जब तू क्यों पिक कर रहा है? जब तेरे को 4 लोग दिखे तो छोड़ देना। सुन फर्जी नहीं आ सकता बैठ के खेल बस भाई, नहीं होगा यहाँ से। कैसे नहीं होगा? तुझे पीक ही मत दे, 2 जन ए पे खेल, मैं भी सपोर्ट दे दूंगा। हो गया ना? वहां पे फिर 4 फ्लैश दे बहनचोद यार। क्या यहाँ पे फिर बैठे रहो बहनचोद, कुछ पॉइंट नहीं है यहाँ पे खेलने का। ना गन है बहनचोद ना कुछ है। क्लोव है, स्मोक करेगा। तू मर गया तो स्मोक्स इंपॉर्टेंट है। हेवन रैंप है। Dropping smoke. रैंप आए तेरे पास। तेरे पास आए 120 है रे ना। अरे भोसड़ी के कौन है रे? कौन दिया रे? चल हैं?
Spike planted. अरे स्मोक देना, इधर स्मोक दे। नहीं है स्मोक। चल हमारा। अरे यार राइट पे कॉर्नर में बेंच मार। Last player standing. Target down. देख फट से तू भी वैसे कर। वहां की चोट नहीं होता पर अपन से बेंच चोट। भाई मैं तो भाई इसमें क्या बोलने का, अटैक में बेंच ओडन निकालने वाला, गांडी मारने वाला। नहीं देख तू देख। अरे अपन भी ओडिन निकालेंगे नको फिर अपन निकाले तो लवी निकालते बेंच। अब के अल्ट मारता रहे मेरे को लगता वो है नहीं देख अरे साइडों में रहो, पीछे मतलब क्या बोलते थे, ऊपर बैठना ऊपर। अरे तू दीवार बना ना, टोरी कर भाई जल्दी। यहाँ पे दीवार बना। ए रुक भाई, सब लोग बी पे क्या बहनचोद। हां टोरी बाय कर कुछ भी तो। No peeking. देखिए फर्जी इतने चेक करते लो ईयरफोन्स मेरे। वॉल करना भाई। क्या है कि नहीं टोरी क्या ऊपर है, टोरी क्या कर रहा मार। ओमन ऊपर है, ओमन मारना भाई। Last player standing. एक नीचे है। Down B. One enemy remaining. वो राइट साइड का माता। कहीं टीपी लिया वो। ऊपर टिपी लिया, दोबारा टिपी लिया, साइड है इधर ही है। अरे ऊपर से बेंच कोई कवर नहीं है, बेंच ऊपर से कैसे। भाई तोरी क्या कर रहा, वॉल कर रहे मिड पे। अरे एव के था ना भाई वाह बेंच ये राउंड निकल जाता पता है भाई। ये कौन है लूफी, मेरे बॉडी को कवर कर भाई, मैं अल्ट मार रहा हूं बेंच के हाथ से। बाय दे तोरी बाय दे। लूफी मैं अल्ट मार रहा हूं, मेरी बॉडी को रीड कर। मैं स्टन कर रहा हूं, फिर करता हूं। हां ठीक है चल भाई वो तो 150 पिंग पे मार रहे हैं यार, मारो भाई। इधर यहाँ पे पीकी मत ले। साइड छोड़ दी मैंने। कैसा मार रहे ना। एक लेफ्ट हो सकता है यहाँ पे। चल एक लगा तोरी एक लगातार मिड पे सेज 80 है, हील होगी। कड़वी कौन दे? ऊपर कितना है, ऊपर भी है क्या और कोई? नहीं अभी नहीं है। ओमेन था, मर गया वो। ठीक यहाँ पे एक राइट कॉर्नर है, राइट हाँ उधर है, बॉक्स के पीछे। बॉक्स के पीछे। नाइस वेल प्लेस। देख साले मैं फ्लैश तो हुआ कम से कम, उसको तो फ्लैश किया लौड़े। हाँ मादर चोद। हाँ वो फ्लैश था, पूरा फ्लैश था। हाँ ना बहन चोद, इसको बोलते फ्लैश। कौन है, कौन खेल रहा था रे तो ये फिनिक्स? Last round before the switch. एक ही है बहन जो बोल नहीं रहा अब, जिसके बोलने मन हो गए। लौड़े ना हाँ ना भाई, रेस पहले ही नेट डाल दे तू। देख यही आएंगे अभी, इधर से नेट डाल। देख इधर डाल, इधर। अरे मैं अल्ट मारने सोच रहा हूँ केओ अल्ट ऑन कर देता रे, मेरे लिए वेट कर रहा चूतिया वो। मैं फ्लैग मारूं क्या? वो मैं हर वक्त मिड चुन मिड से आता है। हाँ रे मिड में, हाँ वेट कर। शंकर फक रे भाई, गंदा पीक लिया रे मैं, गंदा पीक लिया रे। No peeking. Last player standing. भाई Refreshing. Spike planted. लेफ्ट पे राइट देखना, Will राइट। not kill my ally. कपड़ा मैंने निकाला है, एक तो कपड़ा सूखा चुप करना। अरे चुप करना। हाँ यार जीजी है भाई। Switching sides. अरे क्या करता अल्ट का, बेंच खोल थोड़ी सकता हूँ। You're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. से जेले प्लांट करियो। अरे फेक करेंगे अपन, फेक करेंगे पहला राउंड, फेक करेंगे भाई।
अगर जीतना है तो फेक करना पड़ता है उनको। तो साथ में सकते हैं ना? नहीं स्पाइक ले से। अरे इधर लुफी पीक मत देना, इधर आ जा। फेक करने दे, स्पाइक लेके इधर आना। तोरी स्पाइक लेके इधर आ। तोरी अरे तुम ए पे फेक करो, ए पे उन्हें कड़वी फेक कर रहा है। ए पे फेक। अरे बीजार लवड़े मादर चोद। ए पे फेक कर बड़े। बोलना है साइड पूछना है, इधर उधर बुला रहा है। वो अरे यार बाहर बोल रहा है यार वो। इधर Right here. नाइफ करता। कोई क्लोज है शायद। Right here. मादर चल दोनों सब यहाँ पे। तीन लोग ये आए। बी पे बस 2 लोग हैं। बी पे बस 1 लोग बंदा रहेगा कोई तो। मार भाई चल। दीवार बना पीछे। दीवार बना। हाँ साइड पे खेलो भाई चलो। देख मैंने फेक किया मादर चोद। अरे ऊपर ही आ गया बहन कितने। और क्या वहाँ पे ऊपर हेवन कैसे भागा भाई क्यों इतना भाग रहा है यार तू? सब भाग रहे भाई, मैं भी भागा भाई। कम से कम मैं फेक तो धमका किया मादर चोद। पूरी साइड तुम्हारी थी। दोनों ब्लाइंड थे यार इनके। मेरे को तो हवा में मार दिया बहन चोद। भाई ओडन निकालो बहन चोद चलो। फर्जी अपना यंत्र निकालने का टाइम आ गया भाई। पैसा भी तो होना चाहिए ओडन का। अरे वापस सेव मार बहन चोद। अरे चलो ए पे चल रहे, आजा ए पे पुश कर देंगे। आजा हुआ तो मेरे साइड पे देख, साइड में चल जाता हूं। भाग गया। स्पाइक लेके जा। मैं डिफॉल्ट खेल रहा हूं। मैं ये कर रहा है रन करता हूं। डिफॉल्ट खेल भाई। डिफॉल्ट खेल बहन चोद चल। अच्छा सब बोलते डिफॉल्ट क्या होता है डिफॉल्ट है बहन चोद? 2-1-2 इसको डिफॉल्ट बोलते हैं। रुक तो 1-4 चल रहा है। चल घुसेगा, मैं रैम स्टन कर सकता हूं। स्मोक दे रहा हूं। चल 1 3 2 1 Dropping smokes. Wall raised. अबे ये वॉल कर हमारे पे तो ठीक है भाई। एक रेस अटैक मार रहा है भाई। वहाँ पे यहीं बैठा है। यहाँ पे ये स्मोक कर। अबे पहले ओमेन को तो मारो बहन चोद। Spike down A. Last player standing. क्या लंड बॉल करी थी तूने बहन चोद? ये बॉल करनी होती है। Listen up, you muckers. If I don't get back up, just give me enough. भाई मैं ओडन निकालूं क्या? नहीं इधर आ जा। ए पे और पूरे ए पे। फर्जी स्टन कर, फिर से स्टन कर तू। हां चल ओडन भाई चल भाई। फुल गन मारने का ठीक है। देख रेज ना यहाँ पे ऊपर से खेलता है बहन चोद। चल मैं नेट डालता हूं। रुक जाने तो वहीं साइकिल मारता मेरे को। स्मोक जल्दी कर देना। रेज ऊपर से खेलता है। चल कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है बहन चोद? साइड आना मेरे साथ कोई तो। रेज ऊपर जाएगा। ये मादर चोद ले बहन चोद। चल अब एक वापस गंदा स्मोक। Satchel out. Barrier created. आज साइड मिल गए। खुशी मत करो बहन चोद। Spike planted. इनको कॉल देते रहो। नाइस फिनिश खुद को। स्क्रीन जा रहा है। One enemy remaining. 50-60 है भाई। मेरा ओडन ले ले यार कोई तो। मेरा ओडन ले ले और गन ले ले मेरी प्लीज। गन ले प्लीज। हाँ बस थैंक्स। दे गंदे मेरे को चल। अरे ले लुफी वो फेंक दे गंदे भाई दे ना भाई दे। मांग तो सही लोगे। शील्ड तो ले ले कड़वी। हाँ लेता हूँ 1 सेकंड रुकना भाई। इनकी अम्मा को चोदो बहन चोद। मिड से चलते हैं नेक्स्ट राउंड। हाँ स्मोक देना इधर। स्मोक देना। स्मोक में जा रहा हूँ मैं। हाँ स्टन दे रहा तू
रुक, तुरंत मत दे, यहाँ पे पिक लेगा माधुर, कोई तो पिक लेगा, देख। घुस रहा है 1 2 ये स्मोक एक साइड पे कहाँ साइड पे कहाँ अरे मारो रे इसको, यहाँ पे मारो रे, जल्दी पी पुश मत कर रेना को Spike down A. जज ले सॉरी जज ले रहा हूँ, कवर दिया कोई, जल्दी जाओ। अरे जा वो नहीं है ब्रिज, जा भाई तू भी जा कड़वी आओ ना ये साइट है मारा तू गंदी वॉल कर रहा है, तू ये वॉल मत करना, तू ये वॉल कर, कौन सा ये यहाँ पे वॉल कर। अच्छा उन्हें मैं क्या समझ रहा हूँ, वॉल तोड़ दे रहे इधर करे तो समझ, अच्छा उन्हें वहाँ कर रहा था, वो यहाँ वॉल कर रहे, इतनी गंदी वॉल बहनचोद। ओके मैं ना वॉल करूँ मैं नहीं मत कर वो वॉल बहनचोद, अगर ये वॉल हो गई, ये क्रॉस वॉल करेगा ना तो उनको 3 वॉल तोड़नी पड़ेंगी। अरे सुन हेवन सन यहाँ पे एक ही वॉल तोड़ के घुस जाएंगे वो। देख आल्ट मारूंगा, ए सुन ना, ये ओडन ले, मेरे को नॉर्मल गंदे कोई तो या नाइस चल मैं आल्ट मार रहा हूं, रुक Dropping smokes. यहाँ पे राइट साइड पे कोई तो, राइट साइड पे अरे क्या मार उसको। One enemy remaining. अरे ब्लाइंड हो गया मैं। इसकी अम्मा को छोड़ू है। ए पीछे भी मारा बहनचोद, मार उसको, चल नाइस भाई। क्रेजी भाई क्रेजी। अरे सुन, अरे अब ए फेक कर, तू मेरे क्या मैं करता दूंगा जॉब भी पे। अरे मैं फेक करता हूं, रुक भाई। हां जा। नहीं यार मेरे पास उड़ने बहनचोद, मेरे को नॉर्मल गन कोई तो नॉर्मल गन खेल रहा है। ओडिन ले लुफी ये गन ले, पीछे और भाई का नहीं। अरे सुन पुश मत करो, रेड का भी अल्ट है, देख के ठीक है ना, आराम से खेलो। मैं मिड पे हां यहाँ पिक करना है, नहीं करना। अरे रुक मेरा माउस नहीं चल रहा, एक मिनट रुक मेरा माउस नहीं चल रहा यार बहनचोद, रुक। हां चल रहा है, मैं जाता हूं। रुक किया यहाँ पे। नाइस ऊपर है बहनचोद। ऊपर कहाँ? पीकी मतलब है। हाँ 40 है, 40 है। ए हो फ्री फायर कर। एक ऊपर है, फ्री फायर कर रहे हैं लूफी, फ्री फायर करते यार। One enemy remaining. Of course मुझे मारना था मैंने। ओडिन ले। राइट में ओडिन मार चोद। टेंशन मत ले रे भाई। अबे स्किन वाली लेता ना, स्किन वाली चीज। ये ले इधर वो। कोई ना भाई, कोई ना, चल। अरे टोरी भाई मांगना लौड़े यार, इतना पैसा है बहनचोद सबके पास, भाई मांग मादर चोद। क्या लौड़े भिखारी से कर रहे हैं। मादर चोद भिखारी बोल रहा है, खुद बोल रहा है भाई ले, फिर बोल रहा है भिखारी। अरे पुश मत करो लो। हां ओडिन लेके बैठे हुए हैं right there. अल्ट इस पे, अरे इस पे अल्ट घुस जाते हैं ना स्किल्ड पे। मादर चोद मार दिया मैंने। ये कोने में। हां पीछे चलो जल्दी पीछे। अरे लैग हो रहा है बहनचोद मेरा। भाई मैं अकेला फेक करता था ना मादर चोद, तुम जाते थे ना
अरे नाले में किया बहनचोद। अरे तो नाले में किया भाई। उनको पता है भाई। वॉक करो। अरे बहन जो वॉक करो रे तुम लोग क्या So what I missed? लवड़ा मेरा। अरे वापस ए जाओ बुल्ले। अरे सब लोग नहीं खाली स्पाइक वाला बंदा ए जा, बाकी सब बी पे फेक करो। अरे मादर चोद, अरे तुम्हारी मैक का टन्ना। भाई खाली स्पाइक वाला ए जाने दे, बाकी यहाँ पे फेक करो बहनचोद। गाना मारते हैं। एक खाली है क्या? अरे तू मिड से जा 30 seconds left. नाइस अरे नहीं नाइस रे भाई अरे तूने बोला ए जाने के लिए मादर चोद। अरे लूफी भाई तू ए पे चाहिए था भाई, ये क्लियर करना। अरे इसको मार जा मार उसको। One enemy remaining. प्लांट Spike down A. टावर है। पीकी मत दे। टोरी यहाँ पे देखना, प्रियम यहाँ पे करना मादरचोद। खेलने दे कड़वी मादरचोद, तेरी वजह से भी इतना वो हुआ बहनचोद, बी जाके प्लांट हो जाता इजी। गांडू भाई मेरे इतनी लंड कॉल दे रहा है। मुझे लगा उसने पूरा साइट क्लियर करना चाहिए था, वो साइट नहीं क्लियर करा बहनचोद, उसकी तो गलती है भाई। वो गलती तेरी नहीं है। ले भाई मांग। मेरी तो है ही नहीं मादरचोद। अबे साल मैंने सही कॉल दिया था, लूफी ने क्लियर नहीं किया भाई। अरे लूफी गाली पढ़ रही है, उसे पढ़ने देना बहनचोद। माय बैट तू क्यों बोल रहा है, उसे बोलने दे। मादरचोद लौड़े बुल्ले के बाल गांड भोसड़ वाले। नीचे बैठ, घुटने पे बैठ। लो रुकना, बैठूंगा, रुक जा। वही राइट लेफ्ट राइट बैठते हैं। मत रन दे, स्मोक से मत जाओ। रुक। अरे इतना आवाज मत करो ना, रोटेट मार रहे हो तो आवाज मत करो ना। क्या लौड़े लोग यार तुम। जा ए जा भैंचो, चल ए जा भाग। अरे लूफी ए जा तू, ये सपोर्ट करके बंदूक निकालो भैंचो। तुम लोग बंदूक निकालो भैंचो, उसको सपोर्ट करो। साइड पे कोई तो होगा भैंचो। One enemy remaining. मैं बोला ना बाकी लोग बंदूक निकालो भैंचो। हिल देना सेज। अरे मादरचोद हिल दे रे। सेज कहाँ है? अरे भोसड़ी वाले क्यों बोल किया? गान जल रहे होंगे लोग तो भाई। टावर है। वहाँ पे मिल गए। दौड़ा के मार रहे। ये उड़ते वेंचर गांड पड़ रही इनकी। माँ का लौड़ा है। देख मर्जी, अपना टैक्टिक सही है ना। गिव मी मेंटल, आई वोंट शूट। नहीं। अरे वो पूरा मिड आने वाले भैंचोद। नहीं। तो यहाँ पे कोई तो क्रॉस में खेल भैंचोद मेरे साथ। आजा लूफी जरा इधर आ रहा, रुक जा, मैं आता। आवाज मत कर भाई। धीरे से लौड़े, धीरे। ऐसे रहे भैंचोद। चल चल हल्का आगे चल, ऐसे चल। नहीं। रुक उसको पिक करने दे भंचोद। जंप पिक कर रहा हूँ। और उसे जंप पिक करके मार दे क्या? 1 2 3 करके। नहीं रुक मत जा। करते ना 1 2 3 बोल। आया भाई। हां पीछे। ए पे जा। तेज जल्दी जा। अरे भाई उसके साथ जाओ। अकेला स्पाइक के भैंचोद। अरे मादरचोद, अकेला स्पाइक को क्यों छुड़ा? अरे केव रहता वहां पे, देखिए। अरे भैंस क्यों जा रहा है? स्मोक ही नहीं आया। अरे तो कैसे दूं? रेंज नहीं ना वहां की। तू लौड़ा है क्या? अकेला क्यों गया भाई वहां पे? अकेला क्यों गया मादरचोद? जा एक गोटे नहीं जा, क्या करूं मैं भैंचोद? अरे तू अकेला क्यों गया भाई? किसके लिए तो रुकता तो सही।
तुम लौड़े लोगो भाई, लौड़े लोगो, तुम मर के लौड़े लोगो भाई। सेज पूरा थ्रो हो गया रे। चीजी बोला टोरी टोरी नहीं 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 चीजी नहीं बुल्ले। क्या हुआ? नहीं सुन मैंने बोला देख उन्हें किल्स के लिए जा रहा था। अरे किल के लिए जा रहा था रे, उन्हें समझ रहा था किल्स के लिए जा रहा था उन्हें किल, मर गया उन्हें। अरे गंदी कॉल दी बेंचो, किल्स के लिए नहीं जा रहा था, तुमने गंदी कॉल दी उसे कि ए जा, सेव करो, सेव करो। नहीं जाना था बेंचो द किले। शांत शांत शांत। वो लोग साइड नहीं छोड़ रहा, अपन एक साइड पुश करना पड़ता। चलो तुम मादरचोद लोग क्यों बोला उसको कॉल दिया कि जा भाई, सब साइड बी मिड और बी थे तो आई को गया। चूतियां है ना भाई ये लौड़े झाटू लोग भैंचोद। ये इसने बोला, इसको गाली दे मादरचोद मां की आंख भैंचोद बुल्ले के बाल। चले लौड़ा ना भुज्जम। अरे कड़वी ए पे आ रहे कड़वी। अरे डब्ल्यू दबा के घुस जाते एक राउंड। आजा हां आजा चल चल डब्ल्यू करते, यहां पे एक कोने में रहेगा बेंच। चल यहां स्टन देना बस। नहीं अपन इधर खेल रही नहीं, स्प्रे दे रही उधर। हां ऐसा स्टन देना, ऐसा देगा। स्पाइक ले टोरी स्पाइक ले। ऊपर मत जाना। हां ऊपर नहीं, पूरे साइड में चलो भाई। मैं यहां वॉल करता हूं, मैं यहां मेरी वॉल करता हूं। चल कोई वॉल इसमें रहेगा ही नहीं भाई। अरे हटो रे साइड में। ये एक साइड है शायद। अरे भाई क्रेजी भाई, क्रेजी है तुम भाई। तुम्हारा क्या स्पाइक कौन लिया रे वहां पे? ड्रॉप कर दिया ना दल्ला। एक बंदा नहीं मारा तुमसे। स्पाइक के पीछे भाग भाई, तू स्पाइक के पीछे भाग भाई, स्पाइक करने के पीछे भाग। क्या है मादर जो स्पाइक कहां छोड़े रे से? अरे खेलने दे लौड़े को। चल अरे क्या है रे स्पाइक किसके पास? अरे तो साइट आना, तेरे को कितनी बार बोला ये वॉल मत कर, ये वॉल कर। तो क्यों वॉल कर रहा वो? नहीं यहाँ स्पाइक कौन लिया? स्पाइक कौन रहा वो बोला मेरे को पहले। ये ना ये सेज सही थी, पकड़ स्पाइक। भाई सुन मैं बी जा रहा हूँ, तुम लोग ए जाओ, सब ए जाओ बहन। चलो मैं फेक कर रहा हूँ। अरे ए जाओ, अरे मार, यही तो सही है। अरे बहन के तुम ए जाओ। अरे शांत शांत ए जाओ बहन। मैं अल्ट मार रहा हूँ बी पे, तुम जाओ ए पे जाओ। मेरा अल्ट होने के बाद तुम ए पे पुश मारना, ठीक है? किसकी है? तू चला रहा क्या? कहाँ चला रहे हैं? मिड चला रहे हैं, ए चला रहे हैं? Enemy spotted A. Dropping smokes. अरे भाई सब साइड पे आ गए, राइट साइड पे आ गए। अरे बहन मैं बोला ना लौड़े। अरे फ्लैश हूँ मैं, क्या करूँ? अरे तो फ्लैश लोगों को सब हेवन चले गए। लौड़े क्या कर लिया चीज़ ही तू ये? ये स्क्रीन के पीछे कर दे अल्ट कर दे। क्यों भी था? अरे क्यों भी था? Spike down A. 30 seconds left. अरे से चूतिया रे तू, साइट आना। भाई बहुत गंदा खेला भाई तुम लोगों ने। देख उन्हें टोरी स्पाइक रे खाली वो भाई राउंड की वजह से हार गए। तू वो कोना अगर दीवार करता ना तो वो आते ही नहीं, पता है क्या? वो सब कोने की दीवार से वैसे आते। और पता लास्ट राउंड बेंच टावर नहीं जाना था। हाँ भाई, अरे मैं कितनी बार बोला भाई तुम खेलो बेंचो साइड पे, पूरा साइड तुम्हारा था बेंचो। मैंने पूरी साइड ऑलमोस्ट पूरी साइड मिल गई थी बेंचो। खेल है तो भी वैसे ही कर रहा हूं, क्या खिलाना रे इसको। बोला फिनिक्स खेल के साइड घुसता है नहीं। अरे भाई लौड़े में तुमको पूरी साइड दिला रहा हूँ, पूरा रोटेट पूरा मेरी तरफ खींच रहा हूँ और बेंचो नहीं थे साले कड़वी। 3 लोग थे साइड पे, 3 लोग थे ऐसे। अरे देख रुक मैं बोलता हूँ। देख जब तू दीवार बना रहा है ना भाई, तू वो राइट साइड पे अगर दीवार बनाता ना तो गली में नहीं। अरे वैसा नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं सोच रहा भाई, खाली किल की चक्कर में जा रहा। बोरो ना बस क्या है कि भाई कड़वी यार, टोरी ऐसे नहीं खेलना चाहिए यार। अरे टोरी मत कर रे, क्या है वो एक राउंड की वजह से हार गए पूरा। मान हाँ वो राउंड तो गंदा। तू साले तेरे को पहले भी 2 बार बोला मैं ये वॉल मत कर,
वहां पे बॉल कर। वो गली एक बार वो पूछना है तेरे को, तेरे पास खुद का दिमाग है ना? है क्या नहीं? हाँ ना? तो जब तेरे को बोला है वहां पे, चीजी ने बोला भंजू वहां पे जाके प्लांट कर, ठीक है, तेरे साथ कोई नहीं है तो तू अकेला क्यों गया? मुझे लगा खाली होगा इसलिए। कॉमन सेंस नहीं कॉमन सेंस भाई। एक भी नहीं मरा उनका। हाँ वही क्यों होगा खाली? वही मरा ही नहीं था, क्यों होगा खाली भाई? और पहला राउंड थोड़ी फेक कर रहे हैं बहन, जो कितने दिनों से फेक कर रहे हैं। हाँ इतने राउंड से हम फेक कर रहे हैं बहन, करेगा ना कोई तो एंकर। हाँ भाई क्या भाई क्रेजी है भाई। हाँ हर राउंड सही कह रहा। वही तो ना यार, क्या कर रहे, क्या करें बहनचोद? लौड़े ये प्लेट कैसे रे बहनचोद? ये पता है ये भोसड़ी वाला घुस जाता है प्लेट कैरी हो के, और फिर हमारे साथ खेलता है बहनचोद, हम डी रैंक हो जाते हैं। हाँ ना, ये मादरचोद 2 महीने नहीं था ना तो मैं गोल्ड 3 आ गया, गोल्ड 1 से। इसके साथ खेलूंगा बहनचोद, गोल्ड 1 आ जाऊंगा। बहनचोद मेरा कान दर्द करने लग गया यार। ठीक है चल, एक पहले मेरे साथ मत खेल, फ्लैट आ गया तो बताना, खेलते वापस। मेरे पास अब टाइम नहीं है ना, तू तेरा मैं आ जाऊंगा फ्लैट। चल अगला राउंड तू तेरा बेस्ट एजेंट, ठीक है चल। हाँ ठीक है। और उस वही खेलने का बहनचोद हर बार। लो खेला था ना फिनिक्स अच्छा खासा, वो तेरा बेस्ट था। अभी बेस्ट हो रहा है धीरे धीरे वो। क्या नहीं फिनिक्स? हाँ मादरचोद तूने पता है कितने टीम फ्लैश किए हैं, टीम ब्लाइंड किए हैं, वो तेरा बेस्ट नहीं है। किया तो क्या होता है? मेरा फ्लैश हुआ क्या भाई? सब लोग हमारे साथ आया भी पर तो हाँ तुम्हारे साथ आया भी नहीं मादरचोद। साले मैं जब वो फ्लैश किया था जब तूने सेज को मारा था, मादरचोद फ्लैश होता क्या तू लौड़े? वही एक ही बार था। हाँ तब तो हुआ तो नहीं था वैसे, पर बहनचोद टोरी बहनचोद गंदे फ्लैश करता है तो। मैं साइड के साथ घुसता है, मैं पूरी साइड क्लियर करते था तुम लोगों के लिए। तो एटलीस्ट बोल देना बहनचोद कि मैं फ्लैश कर रहा हूँ, तो साले दूसरा बंदा हट जाए। तुम ना बोलता है ना, मैं कर देता बहनचोद, मैंने तो कर दिया, तुम गांड मराओ। हाँ भाई ये कड़वी वाला एटीट्यूड, ये कड़वी वाला एटीट्यूड से मत खेल बहनचोद। ये कड़वी भोसड़ी का ब्रीच खेलता है, मैं तो कर दूंगा फ्लैश, तुम गांड मराओ। मैंने कर दी अल्ट तुम अगर आ गए अल्ट में तो आ गए। मेरे अल्ट के साथ तो ये होता है भाई, मैं मानता हूँ भाई, अल्ट मेरा मादरचोद। तेरे फ्लैश के साथ भी होता है। क्या स्टन कैसे भूल सकता है भाई? हाँ बराबर सब सभी यूटिल बोलते हैं ना मैं। नहीं ये आफ्टर शॉक ध्यान से मारता है। ओह माय गॉड, बड़ी मेहरबानी भाई। नहीं कह रहा हूँ ध्यान से मारता है हमारे ऊपर। तुम उसमें भागते हो तो मैं क्या करूँ बेंचो? छी बेंचो। डी कितना टोरी कितना चाहिए तेरे को डी रैंक होने के लिए? 2 मैच और। अच्छा शील्ड है क्या? कोई नहीं 2 मैच खेल लेंगे, 4 बजे सोएंगे आज। बेंचो अबे कुछ नहीं है, अबे 0 पे है लोड़ा। अबे शील्ड होगा ना, चूती है। नहीं है, शील्ड भी नहीं है, देख तू। दिखाता है शील्ड, दिखाता नहीं कि दिखाता ना लोड़े, शील्ड दिखाता ना बेंचो। क्या बात का? ये कोल्ड 3 पे आ जाएगा अगले मैच। चल भाई मैं कहाँ दिखाता है शील्ड? 3 स्मोक भाई चल। अरे शील्ड दिखाता कहाँ है? अरे नहीं है भाई, शील्ड नहीं है इसकी। नहीं है क्या? पता नहीं फिर। अबे तू मेरा करियर खोल के देख ना, शील्ड दिखाता है क्या? नहीं दिखाता ना, सिर्फ अपनी है शील्ड दिखाता है तुम्हें। ऐसे कैसे क्या यार? हाँ लड़ बुद्धि बोलते थे, लड़ बुद्धि हो सकता है। अरे मुझे क्या पता भाई, मैं तो इतना करियर में जाके झांक के देखता नहीं भाई दूसरों। देख तेरे को इसकी दिखा रहा है चीज़ की। नहीं यार। तो फिर इसका तो 0 प्लैटिनम 0 क्यों दिखा रहा है भाई? मैच फाउंड। की चूत भाई। ले बहनचोद लौड़ा ना बुज्जम। भाई अच्छी कॉम्प लो यार, मैं केओ ले रहा हूँ। चल भाई अच्छी कॉम्प बोल के बहनचोद मैं क्यों ले रहा हूँ गांडू? चल तेओ लेता हूँ, चल फ्लैश नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, चल इन्फो तो निकाल लूंगा बहनचोद। अबे तुम ढंग से खेल बे। ओह माय गॉड, लुक हु इज टॉकिंग। अरे भाई फ्लैश वुश नहीं चाहिए तुम लोगों को? हाँ तू फिनिक्स ले चल। मैं क्लोव भी खेल सकता है इस पे। क्लोव खेल चल तू। बट मैं मिड पे गाड़ दूंगा मैं जाके, बट वही है। ये क्या बहनचोद क्या
हमारी लड़की से शादी कर रहा तू, वेंचो शर्तें रख रहा हमारे साथ है। वेंचो देखियो दामाद वाले नखरे नहीं इसके। देख टोरी, तेरे को मिड पे खेलने की जरूरत नहीं है, अपना फर्जी। अरे यार वाइपर ले रहा था। वाइपर लूं क्या? वाइपर लूं? मेरे को यार पर्ल में खेलना है, पर्ल आएगा तो लूंगा वाइपर में। सेंटी ले फिर। अरे केओ लेता हूँ यार, केओ थोड़ा मैं फ्लैश भी मार सकता हूँ वेंचो। देख ले तेरे ऊपर है। फ्लैश एजेंट नहीं है ना यार अपने पास। फ्लैश नहीं, हाँ ब्रीच ही ले लेना बेंचो, एक राउंड जिता ना। नहीं यार Death is not an option. फ्रैंकफर्ट सर्वर बहन चोद, हारने वाले भाई अपन।